especially when you are looking at hot sun, it is difficult to judge these kinds of catches. But every catches are very, very important now, because as we all know, catches wins matches. So dangerous batsman Vikram Prabhu is ready to face the bowler Rohit now. Rohit Kamath from the Puzalana end. In the left arm over the wicket fashion, he bows to Vikram Prabhu. Ball is in the air, it could be six. Yes, it is. That's one more sixer. Fourth sixer from the bat of Vikram Prabhu. What a brilliant knock there by Vikram Prabhu, a tall man. He hits that so effortlessly, and he has been able to clear the fence effortlessly here. What a great piece of batting performance from this man. We will have to really appreciate the batting performance, what he has shown in this important, crucial match. So great comeback by the players of Auburn Diamonds of Udupi team, and Volalanke fighters are losing their hopes here. 53 runs on the scoreboard now. Much better discipline line. No runs resulted here. End of the over. Last 2 overs to go, and 9 runs required for Volalanke, Auburn Diamonds to win this match. So let us see what is going to win this. What is going to happen in the remaining 2 overs? Who is going to win this match? So I'm going to call Mr. Gopi Bhatmam to proceed the further 2 overs of commentary in our Konkani language. ಒಂದು ರನ್ನ ಮಾರ್ನು 62 ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಲಾಲ ಪಳಿತನ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ತಶಿಲ जलरी तवळी सांगेल प्रकार आभरण डायमंड्स अंतू लायक बॅट्समॅन असाची मन केला असाध्य नाही म्हणून सांगितलं. आता पळेच्या गेलारी 2 ओव्हर अंतू 9 रन मात्र जाऊ का पुळका दोन्ही ओव्हर कशी वळलंके फायटर्स मुलकी त्यांनी घालता म्हणून सांगून सुरीला फुडला एक टॉप एज जाऊन सनामटा एक कॅचचे एक अवकाशी अशिला विकेट गेला जलरी हॉड एक संघर्ष आणतो आपण डायमंड असतील दीपक सुरिका चंद एक बॉल पडी जलरी अंपायर सिग्नल वाईड ऑफ स्टंप मस्त बाहेर येईल तसल बॉल एक एक्स्ट्रा रन मुखांतर एक ॲड जत्ताची 54 रन रेन पवला 2 विकेट खेळून घेऊन आपण डायमंड्स 8 रन जाऊ का दीपक वापस एक्स्ट्रा वाईड 1 रन वापस एक्स्ट्रा दिनो स्कोर्स तुमका स्कोर इन ॲप तू पळोवचा मेळटा सर 5.2 ओव्हर्स सॉरी 5 ओव्हर का वापस ऑफ स्टंप बाहेर येईल तसल बॉल वाईड ग्राउंड अंतशे एलईडी डिस्प्ले तो स्कोर ಸ್ವಲ್ಪ प्रॉब्लम असा डिस्प्ले तुम्ही पळे येता वाईट लाईव्ह अंतू 56.2 जाला 56.2 लॉफ्ट करो पडेला सुरीने एक पडी वग्गी मॅच फिनिश करूया म्हणून सांगून जलारी लेकिल दितले बाउंस जायनी बॉल 56 रन जाला सर रन जाऊ का इक्र बॉल का सर रन जाऊ का आभरण डायमंड्स आदंगा वापस सोरीना ओगुर सिंगल केल्या रिस्क घेऊच कसला का विकेट गेली मुंजलारी 9 बॅट्समॅन कशी आता वापस टीमाक संघर्ष घालचे नका कॅप्टन इनिंग्स खेळ्या म्हणून सोरीना सांगून एक रन उठूची सुलभेन विंजवच मॅच कसला सोन दिवच्या म्हणून सांगून भारी चंद एक बॅटिंग प्रदर्शन ते सुरीला लक्की टॉस विन मोनेत या सुरीका इता म्हणारी खंडिते फर्स्ट इनिंग्स आणतो सुरे 2-3 ओव्हर इतली वारी नाशिला तजी नंतर वारी प्रारंभ झाला टॉस विन झाला खंडित सूरिका वरदान जल्ला म्हणून म्हणता कितले हॉट स्कोर केल्यावर चेस करता म्हणाल धैर्य सूरी तंगल टीम आशिला स्ट्राइक आत विक्रम ऑफ स्टंप बाहेरी वाईड दिला वापस अंपायर वाईड दिला 4 वाईड मुखांतर 4 रन मिळला स्कोर मस्त काढून आशिला तजोटूची एक्स्ट्रा 4 मुखांतर 50
58 ಏನು ಪೌಲ LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತೂ ತುಮಕ 50 ವೈ ಅತ್ತೆ 58 ಜಲ್ಲಿ ತಂತು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ तुमको स्कोरिंग ॲप दिसता स ग्रुप ಏಂತು रॉयल चॅलेंजर्स बालंबेटू 2 मॅच अंतू 1 विन जावनो 1 सलून 2 पॉइंट सरस जैका स्ट्राइकर्स कवर ड्राइवर कंचे फील्डर राहते ह्या बॉल अंतू विन जाता की बळका 1 रन धावल्याची दोन्ही रन वय आउटफील्ड ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ असते करू 2 रन मात्र मिळता 60 रन रेन पावला खाली 2 रन जाऊ का विन जाऊचा का ग्रुप ಏಂತು बळया तुम्ही 4 टीम रॉयल चॅलेंजर्स बळंबेटू जैका स्ट्राइकर्स मोडबिद्रे कोडियाल सुपर किंग्स आणि यूके एकादश सारस्वत सुरे 2 मॅच अंतू 1 मॅच विन जाऊन 1 मॅच सोलून 4 टीम 2 पॉइंट सार खेळता असं लॉफ्ट केला या बडी 6 मंचा का कंचे डाउट नाते सरना विक्रम अत्यद्भुत प्रदर्शन बैटिंग प्रदर्शन विक्रम आला अनेके पळया 9 रन 9 बॉल अनेके बाकी शिला तसे म्हणताना ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಾರಿ ಒಳಲಂಗೆ ತನ್ನಿ 75 ಮಾರ್ಲಾರ್ ಜಲ್ಲರಿ ಕಾರ್ಚಿ ಧೈರ್ಯ ಆಬರ್ನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಲಂಕ ಬಹುಶಃ ಆಶಿಲ तशीची पॉइंट्स टेबल वाजून संघा मुंजलारी ग्रुप बींतू मल्पे युनाइटेड 2 मॅच अंतू 2 विन जाऊन 4 पॉइंट सारी टीम मालसी 2 मॅच अंतू 1 विन जाऊन 2 पॉइंट सार गेलता असं डेडली पॅन्थर्स कोडियाल 2 मॅच अंतू 1 विन जाऊन 2 पॉइंट सार गेलता असं रायझिंग स्टार्स मँगलोर 2 मॅच अंतू 2 कळवून घेऊन ऑलमोस्ट या टूर्नामेंट तुलाना रन रेट अंत चारी पोजिशन रस ग्रुप सीन तू ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ತನ್ನಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರಶಿಲೇಚಿ पॉइंट्स अंत 2 पॉइंट अशिला जला आत्ता ग्रुप सी च्या टॉप प्लेस सारी आबर्न डायमंड्स येऊन पावला 2 मॅच अंतनी दोन्ही विन जाऊन 4 पॉइंट सारी ग्रुप सी च्या टॉप प्लेस रसची ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ 2 पॉइंट्स अंत पर्ल सिटीज क्रिकेटर्स पुत्तूर 2 पॉइंट वीर वेंकटेश वॉरियर्स 2 मॅच अन 2 सोलून कंचे पॉइंट्स गेनी तवलची मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच नो डाउट 15 बॉलाक 35 मारल तसला विक्रम प्रभू 35 रन अंतू 4 6 हार्ड हिट 6 4 6 आमका विक्रम प्रभू बॅट तुलाना पळोचा मेळला विक्रम प्रभूना जल्दीतली बघी यंग स्टेजला गे मॅन ऑफ द मॅच तागेला प्रशस्ती घेऊ का म्हणून घेता तशीच ग्रुप डी अखेरीच्या ग्रुपाच्या मुंबई पल्तान्स 1 मॅच अंतू 1 मॅच विन जाऊन 2 पॉइंट सार गेलता असं उडुपी ब्लास्टर्स 1 मॅच अंत 1 विन जाऊन 2 पॉइंट सार गेलता असं टीम एबीएनजी 2 मॅच अंतू 1 मॅच विन 1 मॅच सलवून 2 पॉइंट सार असं जीएसबी रॉयल्स कोडियाल तांगेल 2 मॅच अंतू दोन्ही कळून घेतला खंचे पॉइंट्स ना येदोड या आमगेला पॉइंट्स टेबल तुमका स्कोरिंग ॲप अंत इपळोच मेलता तशीची मुखारच्या पंद्याट मुखारची मॅच उडुपी ब्लास्टर्स आणि मुंबई पल्टान्स यावे दोन्ही लाइक मॅच तुमगेले इधर अपोलोचा मिलता टॉस तावळी उडुपी ब्लास्टर्स तानी विंजारो फील्डिंग येतलस मुंबई पल्टान्स तंका बॅटिंग आमंत्रण केला त्यांनी पुळका ह्या मॅच कशी चलता म्हणून सांगून मुंबई पल्तान्स तुला नंगा प्रशांत पुराणिक माम कमेंट्री बॉक्स अंत येऊन बेशील असा उडुपी ब्लास्टर्स डॉक्टर विनोद नायक हांगेले का टीम दोन्ही टीमा मध्ये मुंबई पल्तान्स GPL इतली सीझन अंतू म्हळ्यार 6 वर्ष अंतू दोन्ही पटी विनिंग ट्रॉफी मारल तसल टीम मुंबई पल्तान्स तांगेल सुरवे वर्ष तुलानाची तमडी जर्सी री खेळता असत आणि ह्या वर्षी तमडी जर्सी तुमगेल मुगारी आता बॅटिंग आयल्याची टॉस विन जलाले उडुपी ब्लास्टर्स आणि डॉक्टर विनोद नायक यांनी कंडिशन्स पळून घेऊन ग्राउंडाच्या बॅटिंगाक मुंबई तांका आमंत्रण केला मुंबई म्हणले कुठले आमका बॅट्समॅन आणि दोन्ही नाव चिरपरिचित आणि दोन्ही नाव फेमस ते कोण म्हणारे चिराग शानबाग आणि प्रसाद नायक प्रत्येक नाव प्रत्येक जण 2 नाव ऐकून असतात दोन्ही बॅट्समॅन तुम्ही राहता मुंबई तुला ना ओपनिंग बॅट्समॅन जाऊन वाईल असची
तशीची तवलची मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच विक्रम प्रभू हांगा येऊन पाविल आसा संतोष भंडारी संताना विक्रम येऊन पाविल आसा तवलची मॅन ऑफ द मॅच तशीची तांकां स्मरणीक दिवन जाला धन्यवाद संताना तशी तांगे सगळे टीम हाका तशीच कंग्रॅच्युलेशन्स विक्रम प्रभू उडुपी ब्लास्टर्स आणि मुंबई पल्तान्स हांगे लोटू पंद्याट चलता आसा ग्रुप डी च्या दोन टीम मुंबई पल्तान्स आणि उडुपी स्ट्रायकर्स तांगेल्या फुडल्या मॅच लीगाचे फर्स्ट मॅच दोन टीमय विन जाला दोन्ही मॅच कोण विन जावन सद्या मट्टाक तांगेल्या ग्रुप डी च्या टॉप पोझिशनर वता म्हण पळोवका चिराग शानबाग स्ट्राइका जलारी प्रसाद नायक नॉन स्ट्राइकारी बॉलिंग गलुका कौशिक शणाय चिराग शानबाग का लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅन येदोळ पर्यंत असल संदर्भात लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅन मस्त हिट जला पळोवका फर्स्ट बॉल आउट चंदेक डिलिव्हरी ते चिराग शानबागाल एक हॉट एक विकेट म्हणता खंडित डेंजरस बॅट्समॅन तो मुंबई पल्टन्साचो लेफ्ट हँड बॅट्समॅन जाला अनेक हॉट एक चिंते कारण आशिल्ले खंडित ताका कनेक्ट जाले म्हणजे आउट करू ताका भारी कष्ट आणि असल कंडिशनान तू सेट जाला तसल बॅट्समॅन तो लायक एक विकेट उडुपी ब्लास्टर्स तांकां मेळ्ळा म्हणता खंडित लायक एक विकेट तांकां गोतसा ह्या विकेटाची इंपॉर्टन्स तस देखून फर्स्ट बॉलाकाची लायक एक कॅच ते कीपिंग आत कॉट बिहाइंड द विकेट विश्वनाथ शणाय हागे लायक लायक एक कीपिंग ते खंचे चूकी कर ताणा फर्स्ट बॉलाकाची चिराग शानबाग ಮೂಲಕ एक हॉड पेट्टू मुंबई पल्तान्स तांकां पळाला आसा जाल्यार आनी केला एक लायक बॅट्समॅन मुंबई पल्तान्स दसची वन डावन आयला आता चित्रंजन प्रभू बहुशा यवय लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅन म्हूण दिसता कौशिक शणाय लेफ्ट बाज ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈರಲ್ ಬೌಲರ್ ರನ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ दोन्ही मागशी विकेट वरची संभवशीलताई ज्याला लाईक रनिंग बिटवीन द विकेट आणि अदृष्ट हात दिनी डायरेक्ट हिट पण बॉलाका एक रन कंप्लीट केलेला असा जोडीची प्रथम रन मुंबई पल्टन्साका मिळाला असा कौशिक शणाय तिन्ही बॉल घालू का प्रसादानं फर्स्ट एक बॉल कुठून रन आउट कशाच ना एक रन धावून चंद कंप्लीट केलेला असं एक विकेट गेला ना म्हणजे प्रसाद तशी जी हार्ड हिटर असल एक पवर प्ले ओव्हर तू खंडित येता गेला स्पोर्टक जाऊन आशिल्ले बॅटिंग आमकां पळोवचें मेळटा जाल्यार एक विकेट गेला निमित्त स्वल्प जाग्रतेर प्रसाद नायक खेळता आसा लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅन आता चित्रंजन प्रभू तुमगेला येत्रा खेळता आसा बॉलिंग घालू कौशिक शणाय सद्यक लो फुल टॉस बॉल अंपायर लागी तने अपील करता सेलेक्ट बिफोर द विकेट अंपायर खंचे नकारात्मक स्पंदन ना तई नॉट आउट लेग स्टंप बाहेर येईल तसल बॉल मस्त बाहेर होत तशिला तस देखून एलबीडब्ल्यू दिवच्या जायना म्हणून अंपायर डिसिजन बारी चंद एक डिसिजन अंग तुम्ही रिप्लेंत पळेल म्हणजे खंडित तुमका लेग स्टंप बाबतच्या बाहेर होत तसल बॉल म्हणून स्पष्ट जाऊन तुमका दिसता लायक एक अंपायरिंग तई कौशिक शणाय तागेल फर्स्ट ओव्हर इनिंग्स फर्स्ट बॉल लाईक एक बॉल वापस लेग बी पडते विकेट ते अपील वापस आता बहुशा लेग स्टंप बाहेर मात्र स्वल्प हाईट आशिल्ला लेग बाईस एक एक्स्ट्रा रन आउटची स्कोर 3 रेवणू पावला 3 रन 5 बॉल अंतू तजोटूची चिराग शानबागाला एक विकेट व्हेरी इंपॉर्टंट विकेट उडुपी ब्लास्टर्स मिळालं असं 5 बॉल अंतू 3 रन मात्र पवर प्ले ओव्हर अंतू त्यांनी दिवनो एक प्रमुख विकेट आहे कळालं स्ट्राइक आता प्रसाद नायक
या ओव्हराच्या अखेरी बॉल घालू का कौशिक प्रसादाका लॉफ्ट केला प्रसादानं कच्चे फिल्डर नाते बॉल बाउंड्री वतासा 4 रन फर्स्ट बाउंड्री या इनिंग्साच्या प्रसादाल बॅटा मुखांतर पवर प्ले आशिल्ला प्रसाद एक हार्ड हिटर तागेले एक बॅटिंग प्रदर्शन ह्या सिच्युएशनांत ताणें दिवूंका म्हणाले एक प्रेशर ताका खंडित आसा एक ओव्हर मुक्ताय नंतर स्कोर 7 रनार येऊन पावला दोन्ही ओव्हर 7 ओव्हरांतू पवर प्ले असता डॉक्टर विनोद नायक हांगेल टीमा पिंक कलर जर्सींतू फील्डिंग करता आसा तांबडी कलर जर्सींतू मुंबई पल्तान्स सॉल टीमान भाग घेतील तसले या GSB प्रीमियर लीग 2023 इसवीच्या दोन्ही दिवस चलता आसा आज रात्री भितरी लीग हंताच्या प्रति एक मॅच मुक्ताय जाता फाई क्वार्टर फायनल सेमी फायनल तशीच एक थर्ड प्लेस मॅच आणि फायनल मॅच चलचा आसा लीगाचे 4 ग्रुप आशिल्ले तुमगोत आसा एक एक लांक 3 मॅच मेळता या लीग हंताचे सर्व पंद्य आज रात्री का मुक्ताय जाता लेफ्ट हँड बॅट्समॅन का लेफ्ट आर्म बॉलर 1 रन मात्र मिळता प्रसाद नायक आणि चित्रंजन प्रभू तुमगेले खेळता सची बॉलिंग कार्तिक नायक घालतास स्ट्राईक आता प्रसाद नायक दोन्ही ओव्हर चलतास दोन्ही ओव्हराच्या दोन्ही बॉल घालू का कार्तिक स्ट्राईकाक प्रसाद नायक लॉफ्ट केला बाउंड्री बतास 2 फिल्डर मध्ये तुला ना 4 रन 4 बाउंड्री डॉगजन फिल्डर आहे डीप मिड विकेट वाइडिश लॉंग ऑन डॉगजन डबिल तसल प्लेयर्स अल मध्ये तो लायक एक चंद एक शॉट वारे त्या दिकाना असा प्रसाद नायकाना चान्स पळयला लॉफ्ट कोर बाउंड्री भाई पेटोचो पळयला बहुशे सम कनेक्ट जायनी चंद एक बॉलिंग ताजोटूची चंद एक बॅटिंग प्रदर्शन दिताची 1 बाउन्स जावन बॉल उड्डून प्लेयर आल माता वेर तुला ना 4 रन प्रसाद नायकाका मेळला आसा वापस लॉफ्ट करू प्रयत्न त्याचे एरियान तो ऑफ स्टंप भायर घालून बॉल तितली सुलभ एरिया मारू दिना म्हणून कार्तिक प्रति एक बॉल हांव ट्राय करता म्हणून प्रसाद नायक आसा पवर प्ले चलता आसा दोन्ही फिल्डर मात्र सरकारा भायर आसता तुमक सकडंगे गोत आसा प्रसाद नायक फेस करता आसा कार्तिक नायकाल बॉल स्कोर 12 रन 1 विकेट काढून घेऊन 1.3 ओव्हर्स यापटी 12 चंद एक बॉल फुल लेंथ डिलिव्हरी लो फुल टॉस फुल लेंथ डिलिव्हरी खंचे रन्नाक अवकाश दीनी असल एक क्रुशल संदर्भांत पवर प्ले म्हणाल तसल ओव्हरांतू खंडिते प्रेशर बॉलर वयर आसता तसल एक प्रेशर स्थितींतू चंद एक बॉलिंग प्रदर्शन केला म्हणून कार्तिकान 4 बॉल जाला ह्या ओव्हराचे 2 बॉल बाकी आसा खंडपडी मत तसल बॉल नो बॉल सिग्नल अंपायर आला खाली ओव्हर दी वेस्ट नाही फुल टॉस ಮತ್ತೆ ವೈರೈಲ नो बॉल खंचे संदेह नाते फ्री हिट नो बॉल ओटूची फ्री हिट मेलता प्रसादाक एक पवर प्ले एक अवकाश असा तागेले का अद्भुत बॅटिंग प्रदर्शन दाखोवचा ह्या बॉलान तू पळका फ्री हिट कशी युटिलाइज करता प्रसाद म्हणून सांगून लेफ्ट करू प्रयत्न जलारी पळया कार्तिकाल बॉल ऑफ स्टंपाचे भायर येऊन फेवरेट एरियांत मारू प्रयत्न केला खंयची दिकान वारस की त्या दिकान तुची हांव मारता म्हणून सांगून जलारी ऑफ स्टंपा भायर घालनो मारचाक तितली सुलभ अवकाश दिनी लायक एक बॉलिंग कार्तिकाल ते ह्या ओव्हराचे लास्ट बॉल वरला दोन्ही ओव्हराचे प्रसाद नायका घ्यापडी ऑफ स्टंप भायर येईल बॉल अंपायरान वाईड दिनी प्रसादा निमविला इतली भायरस वाईड दिवेत नो म्हणून सांगून ना वाईड लाईना भितरी असं बॉल वाईड दिवच्या जायना अजोटूची 2 ओव्हर मुक्ताई जाला पवर प्ले 2 ओव्हर नंतर 4 रन 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट मुंबई पल्तान्स स्कोर सर नाबाशी वैरस जलारी पवर प्ले आणि आत्ताची ग्राउंड कंडिशन पळयतना तुम्ही पळयता साधारण अड्डेस घंट्यात 2 घंटे जाऊन 30 मिनिट
साधारण दोन्ही तुलाना 5 5.5 तई हे दिक्कांतू लेफ्ट साइड कमेंट्री बॉक्साचे लेफ्ट साइड लाईक वार असता त्या दिक्कांतू मस्त 6 बाउंड्री वच्चे तुम्ही काल तुरंत पळेला तश म्हणताना त्या रन हॉड काही विषय नाही म्हणून समाधानाचं उडपी ब्लास्टर्स तांकां असल एक कंडिशन आणतो आता बॉलिंग आलो डॉक्टर विनोद नायक कप्तान ऑलराउंडर उडुपी ब्लास्टर्स तुलाना खेळूक चित्रंजन प्रभू चंद एक बॉल ते डॉक्टर मामाला 1 रन मात्र मिळता अनुभवी क्रीडापटू डॉक्टर विनोद नायक GSB प्रीमियर लीगाचे फर्स्ट सीझन तुलाना GPL आणतो प्रति 1 वर्ष खेळल तसला प्लेयर डॉक्टर विनोद नायक आमगे समाजाच्या प्रख्यात जनप्रिय क्रीडापटू डॉक्टर विनोद नायक तुमगेले द्राका बॉलिंग घालतास प्रसाद नायक का लेग बाहेर दसल बॉल 1 रन आउट अवकाशाची बळका ना कीपर तुला ಸ್ವಲ್ಪ बाहेर असेल दोन्ही रन की अवकाशाची या पटकी दोन्ही रन दाविल मोंजलारी खंडित रन आउट असेल चित्रंजन प्रभून राब अंसोर करची नाका 1 विकेट गेला ಸ್ವಲ್ಪ काळ खेळी म्हणून सांगून लायक एक कॉल दिल चित्रंजन प्रभूना प्रसादाका स्ट्राइक का लेफ्ट हँड बॅट्समॅन चित्रंजन बॉलिंग आलो डॉक्टर विनोद नायक लो फुल टॉस बॉल लेफ्ट केला कॅच आउट तुम्ही पळे येता अंगतुलान तुम्ही कमेंट्री बॉक्सातून पळेला री जस्ट दाणे टच मात्र दिल्लाशे दिसता जलारी बॉल येईल स्पीड पळ्या लागी लागी बाउंड्री लाईन ता येऊन बॉल पावला तश म्हणताना आणि ಸ್ವಲ್ಪ बॉल घालारी खंडित वाऱ्या ओटूची बॉल बाउंड्री ना बाहेर होत असेल जलारी तिथली सुलभेरी डॉक्टर विनोद नायक 6 मारोक अवकाश निर्माण कोण दिना प्रति एक आमगेला लेदर बॉलर्सच्या पुरो विल्सन बॉलर्सच्या पुरो विक्की बॉलर्सच्या पुरो प्रति एक फॉर्मॅटाच्या बॉल आणतो क्रिकेट खेळ गोतशील तसल प्लेयर डॉक्टर विनोद नायक फ्लडलाईट आहे तुम्ही खेळ गोतसा दिसान तुम्ही खेळ गोतसा ग्रास अशिल आउटफील्ड आणतो खेळ गोतसा मैदान आणतोय खेळ गोतसा प्रति एक विषय आणतो अत्यंत अनुभव मिळाला इम्पॉर्टंट त्या अनुभव आणतो खेळल तसला प्लेयर डॉक्टर विनोद नायक तस देखून खंयचे सिच्युएशन अशा पुरो त्या सिच्युएशन कशी निभायसू का कशी कोरका कशी खंयची बॅट्समॅनाक कशी बॉलिंग घालका प्रति एक विचारो डॉक्टर विनोद नायक गोतसा स्कोर इन पावला 15 ना 2 विकेट 2.3 ओव्हर्स 2 विकेट खेळून घेतला मुंबई पलतास तांणी 2.3 ओव्हर्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स लेग बाहेर तसं बॉल 2 फील्डर मध्ये तुला नव्हता बॉल आउटफील्ड ಸ್ವಲ್ಪ स्लो असा दोन्ही रन नव्हता की पडका दोन्ही रन काही धावनो दोन्ही रन कंप्लीट केलेला असा लाईक एक रनिंग बिटवीन द विकेट ते संदीप कामत आणि प्रसाद नायकल मध्ये संदीपाना फर्स्ट बॉलची लेग स्टंप बाहेर येईल तसं लो फुल टॉस बॉल का लेग लावून स्कोर नो 2 फील्डर मध्ये तुला ना लाईक गॅप शॉट मारनो 2 रन नाही कंप्लीट केलेला असा जोटूची स्कोर 17 रन 17 for the loss of 2 wickets 2.4 overs दोन्ही बॉल बाकी से ओव्हराच्या भारी संधी एक बॅटिंग ते कवर ड्राइवर 1 रन मिळता 1 रन मारो प्रसादाका स्ट्राइक दिला 1 बॉलवरला हे ओव्हराच्या 3 ओव्हराच्या लास्ट अधिकृत जाऊन शिला बॉलवरला 18 रन आणि पावला संची बशी ಸ್ವಲ್ಪ पॉइंट वैरी रन रेट म्हणून म्हणता 7 ओव्हराचे पंद्याट लास्ट बॉल डॉक्टर विनोद नायक प्रसाद नायक लायकी कपिल ते अंपायर आला स्पंदन ना ते जोटूची ओव्हर मुक्ताई झाला कप्तान आला आणि कप्तान आला एक कप्तान बॉलिंग घालता आशिल्लो डॉक्टर विनोद नायक अनेक नायक प्रसाद नायक बॅटिंग करता आशिल्लो लायक एक जुगलबंदी ते लायक एक 3 ओव्हर घाला म्हणता डॉक्टर विनोद नायक हानी 3 ओव्हर मुक्ताई नंतर संची बशी वैरी एव्हरेजर खेळता आशिल्ले मुंबई का एक्झॅक्ट संची रन रेटर येऊन डॉक्टर विनोद नायक हानी पविला 3 ओव्हराक 18 रन 2 विकेट कडून घेऊन मुंबई पलतान्स आणि 4 ओव्हर बाकी वरला प्रसाद नायक नसते दोलतय टीमाक खंडित धैर्य एक लायक स्कोरारी हरतो म्हणून सांगून हार्ड हिटर बॉलाच्या तशी जी एक्सपिरियन्स
खंडित ताका येसा GSB प्रीमियर लीगा खेळलो मुंबई पल्टान्स आनी केदनी तुलान टीम दिवच्या स्टार्ट केली की तेदनी तुलाना प्रसाद नायक मुंबईन तुची खेळता आसा तशी जी मुखारच्या कमिटी सांगू का सुरेश भट मामांका प्रीतीना आमंत्रण करतास. So thank you Gopi Bhatmam. Fourth match of the day number 2 of Arch Pharma Labs GPL Utsav 2023 is going on here between Mumbai Paltans versus Udupi Blasters. Two top teams are playing against each other. Udupi Blasters captain Dr. Vinod Nayak, after winning the toss, he decided to field first, and in reply to that, Mumbai Paltans had lost their first wicket early in the innings. Chirag Shanbag, who is the backbone of the team, the icon player, has gone for duck without making any score. He was out. Smashed that very hard. One bounce over the boundary road for 4 runs. Short of length delivery, down the wicket he goes. Picked it up very nicely, and he has given complete punishment for that short of length delivery. Charging the bowler on that occasion, he has scored 4 valuable runs. This is the second round match for both these two teams. Both the teams have got 2 points in their points table. Now this match is going to be a very interesting match, really a fascinating game. This is going to be exciting match. He goes for a big one, and a very good piece of fielding there by the fielder. The ball was almost going out of the park, but great presence of mind, brilliant piece of fielding. He has stopped that ball. He has saved a couple of runs for his team. So only 2 runs have been added to the total of Mumbai Paltans team, which takes their full score to 26 on the board for the loss of 2 wickets. In fact, we are in the 4th over of the innings. Karthik Naik is the bowler to bowl the next delivery from the Arch Labs end. Ball is in the air, it could be out, but the ball is falling short in between the 3 fielders into the vacant region. Ball safely landed onto the no man's area. Misunderstanding, huge mix-up between the 3 fielders here, and fortunately the batter Sandeep Kamath survives here. He gets 2 more runs. Score now moves on to 28. Karthik Naik once again from the Arch Pharma Labs end with a long run up in the left arm over the wicket fashion. He bowls. Ball was going far away from the off stump. The batsman was thinking that it is too far from his off stump, so he just left it alone, leaves the ball to go to the wicket keeper. So dot ball to end the over. So 4 overs gone. After 4 overs, Mumbai Paltans have scored 28 runs on the scoreboard. That means they are having a run rate of exactly 7 per over, even though they lost their first wicket early in the innings. After that, Prasad Nayak is playing sensibly, and Sandeep Kamath is also playing brilliantly. After facing 7 balls, Sandeep Kamath is batting on 12, and Prasad Nayak is 11 of 11. So good partnership is going on here between these 2 batters. They are trying to build a good foundation for the rest of the team. These 2 batters are building a good platform for Mumbai Paltans. Sanket Kamath has been brought into attack now to bowl the next over of the innings. That will be 5th over of the innings. From the Puzalana end, Sanket Kamath, a right arm medium pace bowler, is ready to bowl to Prasad Nayak.
Prasad Nayak was looking for a switch hit here, but not from the middle of the bat. Ball is rushing towards the boundary ropes here and misfielding there, allowing the ball to go to the boundary ropes. That was too short of length ball, and Prasad Nayak quickly realized that it is too short of length delivery, so he goes for a switch hit. Even though it is not from the middle of the bat, he hits that one to the third man region, and some sort of misfielding there by the fielder. As a result, the ball has crossed the boundary ropes for 4 runs. 4 valuable runs have been added to the total of Mumbai Paltans, which takes their full score to 32 now. Again, it was outside the off-stump delivery. Batsman Prasad Nayak wanted to go for a switch hit, but he found complete failure in playing that one. And there was a loud appeal for caught behind by the wicket keeper. I think he was just trying to put the pressure on the umpire, but umpire says not out. Converted that into full toss. There is a fielder. There is a protection, so only single will result here. Prasad Nayak's individual score now moves on to 16. That single will bring Sandeep back on strike now. Sanket to Sandeep. Slower delivery, some kind of change in the pace of the ball. The batsman beaten comprehensively. The batsman had no clue about that ball. Surprised the batsman, misses it completely. No connection with the bat and ball. No runs resulted. Steers it down to third man region, angling the face of the bat. He just realized that there is no slip, so cuts it off down to third man. The fielder from the third man area comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. These two batters are trying to build a good foundation. They are rotating the strike, and every now and then, whenever they get some loose deliveries or full toss deliveries, they are going for big hit. So good intelligent cricket is going on here between Prasad and Sandeep. Full toss, converted that into full toss. Long chase for the fielder. Will they get 2 runs? They come back for the second. Misunderstanding there. Huge mix up there. The batter Sandeep Kamath wanted the second run, and Prasad Nayak was not at all ready. He was trying to send him back, but unfortunately Sandeep was already halfway the mark, and he has to sacrifice his wicket. So partnership has been broken here. Third wicket has gone down for Mumbai Paltans team at the score of 34 runs. Prathamesh Kamath is the newcomer at the non-striker's end. So 20 runs partnership for the third wicket between Prasad Nayak and Sandeep has come to an end now. He goes for a big one. Ball is in the air. It could be 6, and that's a mighty 6. Down the wicket goes, picked it up very nicely and hits that one to the deep mid-wicket fence for a maximum. What a magnificent shot it was. That one just went like a tracer bullet. Kaushik once again from the Arch Farm Lab Saint.
Outside the off-stump delivery. Bat is not coming onto the bat. Prasad was looking to play that shot to the offside, but misses it completely. No runs resulted. Vishwanath collects the ball behind the stumps. He goes for a big one. It could be 6. Yes, it is. Another one. Second sixer from the bat of Prasad Nayak. With the help of 2 sixers and 3 boundaries, Prasad Nayak is still there. He came as an opener and he has taken the full responsibility of this game on his shoulder and he is playing brilliantly. Prasad's individual score now moves on to 23 after facing 19 balls. 2 sixers and 3 boundaries. Full toss delivery. It was going down the leg side. Wide has been called by the umpire. That should be a wide because the ball was going down the leg side. In the limited overs matches, the umpires are very strict. Anything down the leg side will be declared as wide balls. This time that ball takes the leading edge of the bat. Wicketkeeper Vishwanath was not able to gather the ball because that one went above the head of the, over the head of the wicketkeeper. As a result, Prasad Nayak survives and he gets one more run in his individual account. So Prasad's individual score now moves on to 24 and the total scorecard of Mumbai Paltans is now 47. Full toss, ball is in the air and bowler takes the catch of his own bowling. So Prathamesh is out. Prathamesh was able to register only 6 runs in his individual account. One more wicket has now gone down for Mumbai Paltans team. Mumbai Paltans, they really need some big hits in order to accelerate their score because we are in the 6th over of the innings. 1 ball is remaining in this over and after this, one more last over will be there. Okay, I beg your pardon, it's a over, end of the over. 6 overs gone, 49 for the loss of 3 wickets. So last over to go now. Let us see how many more runs will come in the last over. Udupi Blasters is playing under the captaincy of Dr. Vinod Nayak, senior most cricketer of GSB tennis ball cricket history. Dr. Vinod Nayak, who works in the forensic department of Kasturba Hospital of Manipal, is leading from the front, playing a sheet anchor role for Udupi Blasters. Dr. Rajesh Bhakta and Prashant Baliga are the team owners of Udupi Blasters team. So they have come up with a positive frame of mind and they are playing against Mumbai Paltans in the second round match now of this GPL season 7. That was a full toss delivery. Prasad Nayak attempted for a switch it up. No runs will result. Prasad Mahale is the bowler who is operating the final over of the innings from the Puzalana end. Prasad Mahale to Prasad Nayak. He goes for a big one. Ball is in the air. It could be 6. Yes, it is. 6 number 3 from the bat of Prasad Nayak. What an effortless stroke it was. With the help of the wind, Prasad Nayak was able to clear the fence.
So after this match, Kodial Super Kings will play against Jaika Strikers of Mudbidri. I request the captain of Jaika Strikers Mudbidri to come to the commentators box for the toss. Prasad Naik once again hammered the ball onto the onside. This time there is a fielder. Sanket from the deep mid-wicket region comes across and collects the ball. Perfect throw there. Very good throw received by the wicket keeper Vishwanath. Vishwanath makes no mistake in taking off the bails. Prasad Nayak was short of his ground. So a fine innings from Prasad Nayak has come to an end now. Prasad Nayak played brilliantly. He played brilliant knock of 30 runs of 22 balls with the help of 3 sixers and 3 boundaries. And he's now moving back to the pavilion. He has given a very good start for his team. Astonishing knock of 37 runs from the bat of Prasad has helped the team to reach a respectable target here. Runs on the scoreboard is now 57. Last 3 balls are remaining of the last over. Vaibhav has come out to the center now. Left-handed batter Vaibhav will take the strike. Prasad Mahale will be coming over the wicket now. Full toss, converted that into full toss, but there is a protection, so Vaibhav will get only a single here. So 2 more balls to go of this over now. Prathamesh and Vaibhav are the 2 batters in the middle. Rahul and Vaibhav are the 2 batters in the middle. Rahul is on strike now. Rahul is ready to face Prasad Mahale for the first time. Ball wraps onto the pad. It was going down the leg side, and very good piece of wicket keeping there by Vishwanath. He was very quick, very smart, and he made no mistake in taking off the bails. So Mumbai Paltans have lost another wicket here at the score of 59 runs. So you are watching Arch Pharma Labs Limited GSB Premier League 2023 presented by Kodial Sports Association of Mangalore. Youth of GSB is the broadcast partner. Youth of GSB is hosting the live streaming of this GPL tournament in Facebook page as well as in YouTube channel. Arch Pharma Labs Limited are the title sponsors of this year's GPL Season 7. So we can see Arch Pharma Labs banner at the far range, and in the commentary box end we have got one more main sponsor, Puzalana. Short of line delivery, hammered the ball onto the onside, but there is a fielder. Sanket Kamath comes across and collects the ball. Good piece of fielding there. Meantime, very good piece of running between the wicket here. Aggressive running between the wickets. So a couple of runs have been added to the total. With those 2 runs, their score now moves on to 60 runs. That means 61 is the victory target for Udupi Blasters to win this match in 7 overs. They need a run rate of exactly 7 per over. This is not a difficult target for the team because they have got a very good batting lineup. But at the same time, as far as Mumbai Paltans is concerned, they have got some good, outstanding, clever bowlers, very experienced bowlers. So this match is now going to be a very interesting match, really a fast-hitting game, and I think it has a real close finish.
So huge discussion is going on there among the players of both the teams. Now before the innings of Udupi Blasters starts, I'm going to hand over the microphone to once again to Mr. Gopi Bhatmam, who is going to continue the further commentary of this match in our sweet mother tongue Konkani language. तवलच्या मॅच आणतो. धन्यवाद सुरेश भटमाम. तशी तवलची मॅच आणतो. वडलंके फायटर्स मुल्की आणि आभरण डायमंड्स मॅच तुम्ही पळयला. 61 रन काढू 62 रन काढू आशिल्ले. आभरण डायमंड्स विंजल त्या मॅच साधारण तशीची स्कोर. नेक्स्ट मैच कोडियाल सुपर किंग्स आणि जैका स्ट्रायकर्स मुडबिद्रे इनिंग्स मध्ये तुकेदने टॉस जावचे. टॉसाक कुडले तुम्ही स्टेजला येऊ का. कोडियाल सुपर किंग्साचे कॅप्टन येऊन पाविल आसा. जैका स्ट्रायकर्साच्या कॅप्टनाक वेट करता आसाची. जल्दीतले वगी कुडले तुम्ही स्टेजला घेऊन पाहू का. 7 ओवर 61 रन जाऊ का. 7 overs उडुपी ब्लास्टर्स नीडेड 61 रन्स. लाईक मॅच खंडितही अपास आमका पळोवचे मेळटा. तवलची मॅच तुम्ही पळयला. बाउंड्री सिक्सर्साच्या एक कन्नडान सुरीमणे म्हणताची आमचे गेल्यान पावस म्हणे तुम्ही तसर एक बाउंड्री सिक्सर्स तवलची मॅच तुमकां पळोवचे मेळला. तोपास 61 रन मार्का मोंजलारी. ओवराच्या 7 रन अंदाजू 7 रन चढ़ची 8 रन लगी लगी मारू का मोंजलारी. बॉला बशी रन चढ़ जाऊ का. अंपायर सिग्नल मैच स्टार्ट करू का. उडुपी ब्लास्टर्स तुलना दोगजन बॅट्समॅन स्ट्रायकर विवेक आणि नॉन स्ट्रायकर विश्वनाथ शणै. मुंबई पल्टन्स तुलना बॉलिंग घालू का. वेंकटेश प्रभू विवेक प्रभू का फर्स्ट बॉल या इनिंग्सच्या. फुल टॉस बॉल ऑफ स्टंप बाहेर येशील. बॉल वाईड सिग्नल फर्स्ट बॉलची ऑफ स्टंप मस्त बाहेर येशील. वाईड सिग्नल मुखांतर 1 रन ऍड झाला. उडुपी ब्लास्टर्स 61 रनाच्या टार्गेट चेस करता आसाची. दोग जणाले लीग हंताच्या दोन्ही मॅच या फर्स्ट मॅच 2 टीमही विंजला दोन्ही मॅच तुमच्या चलता मुंबई पल्टन्स आणि उडुपी ब्लास्टर्स मध्ये येतो. विवेक प्रभू लो फुल टॉस बॉल सीधा फील्डर लाता दोन आउट का डायरेक्ट हिट मारला. ಸ್ವಲ್ಪ क्लोज म्हणून अंगतुलन दूर तुलन दिसता. ज्याला लायक एक कॉल ते विवेक प्रभूला खंचे गडबीड करण्याची कवर सांगतो. ताण मारला सीधा फील्डरला हाता पविला. रन रिस्क घेऊची नका राबतू तई म्हणून विवेकान लाईक कॉल दिला विश्वनाथाका. वेंकटेश प्रभू वापासा फर्स्ट ओव्हराच्या दोन्ही बॉल घालू का. या पटी ऑफ करू सेम फील्डरला हातात बॉल सेम डिसिजन खंचे रन नाते. उडुपी ब्लास्टर्स आणि मुंबई पल्टन्स लेद्राका तुमका पंद्याट पळोवचे मेळटास. कोण आत्ता लाईव्ह टेलिकास्ट पळयता आसा की तांकां वापसा उडगास करता. चंद स्क्वेअर कट्टे फील्डर लाता तो 32 सर्कल बाहेर वचनी 1 रन मात्र मेळटा. सूरज लाता बॉल 1 रन मात्र दिला. खंचे मिसफील्ड करनी स्ट्राईक आयला. आता विश्वनाथ नॉन स्ट्रायकर आहे रे विवेक प्रभू. बॉलिंग घालू का वेंकटेश प्रभू. लो फुल टॉस बॉल स्ट्रेट ड्राइवर चंदे का शॉट खंचे रिस्क घेनाशी फील्डर आला पोझिशन पळोवन लायक एक ड्राइव केलते लॉंग ऑफ कडेन 1 रन मात्र मेळटा. उगुर स्कोर हाडूक प्रयत्न. दोन्ही ओव्हर पॉवर प्ले असता. पॉवर प्ले तो उडुपी ब्लास्टर्स डॉक्टर विनोद नायक हांनी
कोण दोग जन बॅट्समॅनाक पेटो का म्हणून आलोचन करून विवेक प्रभुक आणि विश्वनाथ शणैग पेटलेला आसा. लॉफ्ट केला सीधा कवर सांगतो 1 रन मेलता डीप कवर आतो एक फील्डर राम 2 रन धावता सची सीधा बॉल येऊन पाऊच भितरी 2 रन धावून कंप्लीट केला. वाराच्या तुम्ही खंची साइड असं म्हणून पळय येता अशान बॅट्समॅन फेवर दिला आणि फिल्डरान तशान बॉल उडयताना खंडिते वार त्या साइड आशिल्ली मिता तितली स्पीडार येना बॉल बाउंड्री लायन उडोवका जाल्यार खंडित बॅट्समॅनाक गोत आसा तितले वागे मी 2 रन येवन धावन काढेता म्हणून सांगून विवेक प्रभूला लायक एक बॅटिंग प्रदर्शन ते अपासा भारी लायक एक डिलिव्हरी गुड लाइन अँड लेंथ चंद डिलिव्हरी ते वेंकटेश प्रभूला. पवर प्ले चलता असा या 1 ओव्हर मुक्ताय नंतर खाली 5 रन दिला 61 रन मिळाली लागले की 8 रन एव्हरेज आरी. उडुपी ब्लास्टर्स त्यांनी काढू कसता जाल्यार हे ओव्हर खाली 5 रन मात्र दिवन पवर प्ले लायक एक बॉलिंग प्रदर्शन वेंकटेश प्रभून केलेलं आसा. दोन्ही ओव्हर या इनिंग्साच्या दोन्ही ओव्हर घालू का तागेला फर्स्ट ओव्हर घालू का राहुल पै उडपी गावच्या विंगड टीमा खेळला GSB प्रीमियर लीग तू हायेस्ट केलेला उडपी साइडाच्या टीमान तो चड केलेलो हे पटी मुंबई पल्तान्स तू खेळता असं लायक एक ऑलराउंडर यो पेस बॉलर लेफ्ट आर्म पेस बॉलर राहुल पै स्ट्राइकाक विश्वनाथ शणै लायक एक गुड लेंथ डिलिव्हरी लो फुल टॉस येईल लॉफ्ट करू प्रयत्न केला विश्वनाथान जाल्यार तितली सुलभ ना त्या लो फुल टॉस ह्या कंडिशन तू लॉफ्ट करचे तेवे ऑफ स्टंपाचे स्वल्प भायर येईल तसल बॉल चंद लाइन लेंथ डिलिव्हरी राहुल पै ओपास तागेल दोन्ही बॉल घालू का या फुल टॉस विश्वनाथन कसले चूकी करनी म्हणून दिसता फील्डरला तू कॅच ड्रॉप झाला कॅच ड्रॉप जाऊन 2 रन धावल्यांची कॅच ओटूची 2 रन नाही सोंडीला मुंबई त्यांनी बाउंड्री लाइन तो रब्बील कडे नाही तसल कॅच नाही आहे धावून धरू का प्रयत्न केला जलारी खंडित जाऊनची लास्ट पळयतना आता गेल्या 2 हातांत बॉल आशिल्ला लास्ट मोमेंट तो बॉल हातांतल्यान चुकला कॅच ओटूची 2 रन वरदान रुपारी उडुपी ब्लास्टर्स रंग मेळाला आसा 61 रनाच्या रन चेस करताची उडुपी ब्लास्टर्स विश्वनाथ या पटी वाव सुपर एफर्ट भारी चंद एक एफर्ट या खंडित रिप्ले पळक जाल्याची तत्तावळी हे रिप्ले पळक जाल्याची भारी चंद एक फिल्डिंग सिक्सची मोडणी केली हांग तुला पळयतना जाल्यार पळया रिप्ले तुमकां दिसता आसा अद्भुत जावन आशिल्लें फिल्डिंग भारी चंद एक फिल्डिंग ते अंपायर्स पळयता आसाची थर्ड अंपायर दिक्कान ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಂಪೈರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಳೈತಾ ಸಚಿ ರಿಪ್ಲೇ ಅಂತೂ ಈ ತುಮಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತುಮಕ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ತುಮಕ ಕಲ್ತಾ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನವರು ಯಾವುದೇ ಬಾಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ 2 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 2 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ತಾ अद्भुत जावनशील फील्डिंग तुम्ही पळयत रिप्ले तू कितली चंद फिल्डिंग केला प्लेयरान म्हणून सांगून तशीची असल फिल्डिंग तुमका इंटरनॅशनल मॅचांत पळोवचे मेळटा. आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे क्रीडापटू तसल एक फिल्डिंग असल संदर्भात केला म्हळ्यार खंडित सगळ्यांक एक खुशी विषय स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट दाखयताची आम्ही खंयची टीम आसा बरो तसल एक फिल्डिंगाक आम्ही सगळ्यांनी सपोर्ट करूंक जाता. विश्वनाथ शणैला चंद एक शॉट ते बैटिंग करताना खंडित 6 म्हणून केला लास्ट मोमेंटाक
सेव्ह केलेला असता राहुल पै विश्वनाथ शणे रेडी जायनी म्हणता स तिथली वगी तू मुखार राहिला बॉल घालूक ಸ್ವಲ್ಪ पळ्या म्हणून सांगून विश्वनाथन रबीला स राहुल पै का स्कोर तुमका डिस्प्ले दिसता स 1.3 ओव्हर्स 9 विदाउट लॉस लॉफ्ट केला विश्वनाथन यापटी वारारी बॉल यापटी आउट विश्वनाथाना वारसील साइड अंतू मारूक प्रयत्न केला जलारी टॉप एज लागला लेकिन तशी बॉल वचनी खई बॅट लागू का की ते लागनी टॉप एज जावनु बॉल 30 यार्ड्स भितरीची वारे रशिला फिल्डरान कंचे चुकी करण्याची चांग कॅच धरताची उडुपी ब्लास्टर्सच्या प्रमुख विकेट विश्वनाथ शणै मुखांतरा कळून घेतला उडुपी ब्लास्टर्स त्यांनी तशी लायक विकेट मिळला मुंबई पलतास जोटूची 9 रन नाका एक विकेट गेला 1.4 ओव्हर्स 9 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट 61 रन 61 रन्साच्या चेस करता असताची उडुपी ब्लास्टर्स त्यांनी विवेक प्रभू एक साइड असतात 9 बॅट्समॅन आईला कौशिक शणै यांनी विवेक प्रभू दोन्ही ओव्हराच्या पॉवर प्ले या पॉवर प्ले तो दोन्ही बॉल वरला सरासरी 9.75 एव्हरेज आरी रिक्वायर्ड रन रेट आता राहुल पै यापुढे फर्स्ट बॉलाची कॉट बिहाइंड द विकेट आउट फर्स्ट बॉलाची आउट जाऊन कौशिक शणे मागशी बतासा बहुशा पॉवर प्ले तो हांव काय पुणी कोर का म्हणून निर्धार घेऊनची फर्स्ट बॉलाची लॉफ्ट करू प्रयत्न केला जाल्यार ऑफ स्टंप मस्त बाहेर असेल तसल बॉल लायक एक बॉलिंग ते राहुल पैला अद्भुत जावन आशिल्लें बॉलिंग प्रदर्शन हे ओव्हरान तो दिला ताणे राहुलान दोन्ही ओव्हर 1.5 ओव्हर्सान तो हे ओव्हरान तो दोन्ही प्रमुख विकेट काढू राहुल पैला अद्भुत बॉलिंग प्रदर्शन मुंबई पलतान तुला नमका पळोवचा मेळटा आसा आता स्ट्राइक का दोन्ही विकेट मक्षी वतना विकेट उरोका तशीची मॅच एक अंतर येऊन रब्बो का म्हणाला जबाबदारी आसची कोणाक म्हळ्यारी टीमाच्या कॅप्टनाक त्या कॅप्टनान स्वतः जबाबदारी घेऊन त्या जबाबदारी हाव निभायसिता म्हणून येऊन सांगून आता 2 डाऊन नंतर बॅटिंग स्वतः डॉक्टर विनोद नायक हांनी आयल्याची डॉक्टर विनोद नायक आता 9 बॅट्समॅनांना आउट जातरी स्ट्राइक घेता असा बॉलिंग राहुल पै एक टाइमारी राहुल पै आणि डॉक्टर विनोद नायक या GSB प्रीमियर लीगात एक टीमान खेळाल तसला दोग जण प्लेयर आता ऑक्शन बेस झाला निमित्त विरुद्ध टीमान तो खेळ का झाला अनिवार्यता बॉलिंग का राहुल पै बॅटिंग का डॉक्टर विनोद नायक राहुल पैना वापसा बैट्समैन रेडी झाला की पळेनी सीधा धाव नैलोची हैट्रिक बॉल राहुल पै का डॉक्टर विनोद नायक कशी गलती राहुल पै म्हणून तक गोतस केदने ओटू खेळची तानी एक टीमान तू उडुपी टीमान तानी खेळचा दोन्ही ओव्हर मुक्ताय झाला हंगा दोन्ही ओव्हर नंतर स्कोर 9 रन ग्राउंड ऑन तशिल्यांका रिव्हर साइड एक LED डिस्प्ले दिसतास तंतु तुमका स्कोर बॉल पुरई तुमका थंय दिसला असल्यारी लाईव्ह कोण youthofgsb यूट्यूबर पळयता आसा की तांका डिस्प्लेन तो प्रति एक विचार कोण बॅटिंग करता आसा कितली बॉल कितली रन जाला कोण बॉलिंग करता आसा स्कोर कितली जाला लाईव्ह तुमका पळोवचा मेळटा आसा तंतु मध्येन तो आम्ही कमेंट्रीन तो तुमका स्कोर सांगूका प्रयत्न करता आसताची 61 रन्साच्या टार्गेट चेस करता आसा उडुपी ब्लास्टर्स लागी 8 रन एवरेजार काडकाशिला तर रिक्वायर्ड रन 10 रन्नार येऊन पावला 10 रन्ना बशी ಸ್ವಲ್ಪ वैरियस म्हणेता करंट रन रेट 4.50 रिक्वायर्ड रन रेट 10.30 दोन्ही ओव्हर पॉवर प्ले मुक्ताय झाला बॉलिंग अलवायला सूरज प्रभू बॅटिंग का विवेक प्रभू लेफ्ट केला जलारी बाउंड्री लाईनला वचन एक बॉल एक पिच जाऊन एक रन मात्र मिळता
एक रन आउटूची 10 रनणार येऊन पावला. दोग जना उडुपी ब्लास्टर्सचे अनुभवी क्रीडापटू डॉक्टर विनोद नायक आणि विवेक प्रभू तुमगेल्या तर खेळता तशी जी अद्भुत जावन आशिल्ल्या बॉलिंग प्रदर्शन फिल्डिंग प्रदर्शन दिताचे मुंबई ह्या एक रोमांचनकारी जावन आशिल्ले पंद्याटांत तांगेले एक अस्तित्व दाखयता आसा. आत्ता संदर्भारी खंयची टीम वैरी म्हूण सांगूक जायना. बहुशा रिक्वायर्ड रन रेट 10 रन वयर आसा जाल्यार उडुपी ब्लास्टर्सांत लायक बॅट्समॅन आसाची मुंबई पल्तान सदांनी कशी ह्या मॅच डिफेंड करून घेताची म्हूण पळोवका. डॉक्टर विनोद नायक आकाश लायक एक कवर ड्राइव थंय 1 रन मात्र मेळटा. लॉंग ऑफ आशिल्लो तसले फिल्डर आला हातांत बॉल 1 रन मात्र मेळटा. 1 रन आउटूची स्ट्राईक विवेकाक डॉक्टर मामन दिलेला आसा. 2.2 ओव्हर्स 1 रनाक 2 विकेट. उडुपी ब्लास्टर्स विवेक प्रभू वाऱ्याच्या कंडिशन पळयता आसा कशी खेळत या सिच्युएशनांत म्हणून सांगून सूरज प्रभू विवेकाक लॉफ्ट गोल पळयता बॉटम एज लागून बॅट लागून 1 रन मेळ्ळा. विकेट किपर मागशी धांवन वताची 1 रन कंप्लीट केला. 1 रन आउटची स्कोर 12 रनारी येऊन पळयला आसा. 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स 2.3 ओव्हर्स. सूरज ह्या पटी मुंबई पल्तानचा टीम खेळता आसा. डॉक्टर विनोद नायक काका ऑफ स्टंप भायर येयला तसले बॉल 1 रन काणो. बहुशा डॉक्टर विनोद नायक हांणी एक सायडा वाचूं का म्हणाले एक जबाबदारी घेताची खेळता आसा जे सिच्युएशनांत खंयची सिच्युएशनांत कशी खेळ का म्हूण तांकां खंडीत गोत आसा. आनी एक सायड विवेक प्रभू आसा. विवेक प्रभून कशी खेळ का म्हूण डॉक्टर विनोद नायक हांणी मार्गदर्शन खंडीत दिला ताका. पळोवका सूरज प्रभू विवेक काका लॉफ्ट केला फिल्डर आला अत्तांत ह्या पाटी बाउंड्री लायला लागी ಸ್ವಲ್ಪ वैरी बॉल गेला जाल्यार खंडीत 6 आशिल्ल्या जाल्यार पेट तितली पावन ह्या कंडिशनांत लॉंग ऑफ बील तसला फिल्डर आला सीधा हातांत बॉल लायक एक कॅच थंय संदीप आला. विवेक प्रभू आउट जावन उडुपी ब्लास्टर्साच्या 3 विकेट आता पडला आसा. 2.5 ओव्हर्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. उडुपी ब्लास्टर्स रन रेट होगरोगोर चढता आसा. 10 रनार आशिल्ला आता 11 रन 11.5 रन येवन पावला. वरला 25 बॉल्सांतू 48 रन्स जावका. 25 बॉलांतू 48 रन जावका. 25 balls 48 runs required for victory. उडुपी ब्लास्टर्स तांकां असाध्य म्हणाल्या खंडितयना. डॉक्टर विनोद नायक हांणी पळोवन आसा पळय तुमी फुडली मॅच 2 ओव्हराक 22 रन जावक आशिल्ले 22 जावक आशिल्ले त्या वेळार कोणय उडुपी ब्लास्टर्स विन जाता म्हणून सांगना आशिल्ले जाल्यार डॉक्टर विनोद नायकाले त्या ओव्हराक 3 6 आवटूची मॅच कशी गुंडायला डॉक्टर विनोद नायकान हांणी फुडली मॅचान तुमी पळोवन आसा पुरा तांणी आसता दोलते कसले सांगू जायना. क्रिकेटांतू खंडितय अनिश्चितते खेळो. सुरेश प्रभू चंदेक डेलिव्हरी तय लो आयिल तसल बॉल बाउन्स जायनी बॅट्समॅन लेखील तितले हाजेवटूची 3 ओव्हर मुक्ताय जाला. 3 ओव्हर मुक्ताय नंतर स्कोर 13 रनारी रबील आसा. 3 विकेट कळून घेवन वरला 24 बॉल्सांतू 48 रन्स. आता फर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड रन रेट 12 रनार येवन पावला. 8 रन आशिल्ले 9 रन जाले 10 रन जाले 1 रन जाले. आता रिक्वायर्ड रन रेट 12 रनार येवन पावला. खंडिते असाध्य म्हणाले विचयना जाल्यार प्रमुख जावन आशिल्ले 3 विकेट कळून घेतील मात्र उडुपी ब्लास्टर्स तांगे एक ಸ್ವಲ್ಪ चिंते विषय जाल्यार मुंबई तांकां गोत आसा. डॉक्टर विनोद नायक यांनी ते क्रीजार आसकी आमी खंयचे एक ओव्हर कॉन्फिडन्सार खेळू जायना म्हणाला विचारू मुंबई पल्तान्स तांकां गोत आसा. 4 ओव्हर घालूक आता राहुल पै वापस गेला इनिंग्सात 2 बॉल घालूक. क्लीन बोल्ड डॉक्टर विनोद नायक आउट जावन मागशे वता हॉड एक पेट्टू म्हणत उडुपी ब्लास्टर्स तांकां राहुल पै डैली मला म्हणके हांणी 2 जन प्लेयर्सान ओटू गेलचे उडुपीन तू एका टिमान खेळचे तांणी भायर GSB
पंद्याट अंतू राहुल पै हंका कशी घालका डॉक्टर विनोद नाईक हंका गोतसा राहुल पैले का गुरु म्हणून म्हणता डॉक्टर विनोद नाईक प्रति एक हंतांतो राहुल पै कशी बॉलिंग घालका म्हणून एक गुरु ना शिष्याक सांगिल म्हणकेची राहुल पैने या संदर्भ राहुल पैना डॉक्टर विनोद नाईक हंकाची तांगेल बॉलिंग प्रदर्शन दाखयताची मिडल स्टंप आपण चंदेक बॉल तो खंयचे हॉड बॅट्समॅन असल्यारी लायक बॉलराक गौरव दिवक जाता केलोपटी लायक बॉल कितले हॉड बॅट्समॅनाक आउट जावन मागच्यो तशें करता तसले एक लायक बॉल राहुल पै पळाला आसता जोडूची एक हॉड एक पेटू उडपी ब्लास्टर्स तांकां हॉड एक सफलता मुंबई पल्तास नाका 4 रनाक 4 विकेट आता काढून घेतला उडपी ब्लास्टर्स तांणी स्ट्राईका केला आता दामोदर राहुल पैला बारी चंद एक बॉल ते बॅट्समॅन म्हणताच वाईट दिवे येता म्हणून सांगून अंपायर म्हणताच ना लाईना भितर सावपळताच ना म्हणून सांगून नॉन स्ट्रायकर वाईट दिल्ला अंपायरान पुरस्कार केला या अपिलाक वापस तसले एक डिलिव्हरी ह्या पटी लाईना भितरी राहुल पै तगेला दोन्ही ओव्हर घालतास या इनिंग्स अंतू चंदेक बॉलिंग प्रदर्शन ह्या मॅच अंदर दोलताई राहुल पैन दिला दामोदर कामत खेळतास राहुल पैल बॉल शॉर्ट फाइन लेगाचा फिल्डर बोशा तयार नाशिलो तका राहुल पैन रबैल एक पटी बॉल शॉर्ट फाइन लगार एक फिल्डर तुमका पळोवचा मेळतास अपासा शॉर्ट फाइन लागला येईल तसल फिल्डर लागीची बॉल एक रन तंतु मध्ये काणू संपूर्ण केला 14-15 रन रेन पावला स्कोर 3.3 ओव्हर्स राहुल पै स्ट्राईक करता कार्तिक नायक यापटी लेग स्टंप बाहेर येईल तसल बॉल अंपायर म्हणतास वाईड म्हणून सांगून असल एक फॉर्मेट गेम आणतो लेग स्टंप बाहेर येईल आणि खंडिते वाईड अंपायरान कसले चूक करते खंडिते वाईड आशिल्ला त्या वाईड दिताचे एक रन ऍड झाला आ जोटूची 16 रन रेन पावला उडुपी ब्लास्टर्स फील्डर असते एक रन मात्र मिळता डीप फाइन लिगा फील्डर लागी मारलो एक रन मात्र दिला राहुल पैना भारी चंदेक बॉलिंग तगेला या इनिंग्स अंतू आमका पळोवचा मेळतास राहुल पैला तगेला दोन्ही ओव्हर घालतास यो भारी चंदेक बॉल पळया एक रन मात्र 12 रन वैरी काढू असा एक रन खंडिते मुंबई पल्तान्स तांका चिंतेक कारण दिना उडुपी ब्लास्टर्स वैरी मात्र खंडिते प्रेशर वर्ता वत्ता रिक्वायर्ड रन रेट ओगरोगोड चढता असा लॉफ्ट केला सिक्सर वापस तावळी धरला फिल्डर रनाची धोरूक तशी धोरू प्रयत्न केला ज्याला ह्या पटी कोणा जलरी दोरू साथ दिना आशिल्ला एक 4 फीट बाउंड्री लाइन आबशी भाईरीची बॉल गेला कोणाके दोरू साथ दिना तिला एक 6 मुखांतर स्कोर 4 ओव्हर अंतू 24 येऊन पावला वर्लाला 18 बॉल्स अंतू 37 जौका 18 बॉलाक 37 रन जौका पुळका उडुपी ब्लास्टर्स फुल मैच मनकेची हार्ड हिट कोरनो मैच कंचे क्षण अंतू गुंडैत की मुंबई पल्तान्स ह्या सिच्युएशन अंतू तंगेलेक विंजवचे लक्षण वयच्यान मेलनोटಕ್ಕೆ म्हणून कन्नडान सांगताचे दिसता सजलारी क्रिकेटान कसले सांगू जायना पळका मुंबई पल्तान्स कशी खेळता तशी जी उडुपी ब्लास्टर्स वरला 3 ओव्हर अंतू कशी कमबॅक करता म्हणून पळका जलारी आणि 3 ओव्हर आम्ही राखू का जाता मुखारचे कमेंट सांगू का श्रीयुत सुरेश भट हांका प्रीतीना आमंत्रण करतास
Thank you, Gopi Bhatmam. So everything is good going for Mumbai Paltans team at the moment. They are in a driver's seat now. 24 runs on the scoreboard. Udupi Blasters after losing 4 wickets. Only 3 more overs to go now. 37 more runs required. This is not an easy target because Mumbai Paltans team have got few clever bowlers. So this is going to be a tough task now for Udupi Blasters. What a great comeback by the players of Mumbai Paltans. They have come all the way from Mumbai. This time that should be a no ball. And umpire says it is a no ball. So no ball plus 2. Totally 3 runs will be added to the total here. And on top of that, there will be a free hit delivery. So this is going to be a very interesting now. Can he take the advantage of that free hit delivery? Will he be able to go for a maximum? So here is a golden chance for the batter to free his arms now. Prathamesh will bowl to Damodar Kamath. Damodar Kamath attempted for a switch hit. Ball is in the air. But since it is a free hit delivery, there will not be any damage for the batter here. The batter Damodar is not happy with that. On that occasion, he goes for a switch hit, goes for a reverse shot, but not a fully controlled stroke, not from the middle of the bat. He couldn't take the advantage of that free hit delivery. So only single resulted here. With that single, the scorecard of Udupi Blasters now moves on to 28 for the loss of 4 wickets. Karthik Nayak and Damodar are the 2 batters in the middle. Karthik will face to Prathamesh now. Prathamesh from the Puzalana end. Straight to the fielder there. There is a protection. Before the fielder connects the ball, the batsman had got ample time to pick up a comfortable single, but there is no possibility of going for the second run. He will have to satisfy with only a single here. Short of leg delivery, batter wanted to go for a big hit, hammered the ball onto the onside, but once again not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke. He played that shot with the loose hands, not much of power behind that shot, not from the middle of the bat. So he will have to satisfy with only a single here. Score moves up to 30 now. Some change in the field placement is going on here for this right-handed batter. Prasad Nayak is doing his job as the wicket keeper there, standing quite close to the wickets. Full toss. Converted that into full toss, but he couldn't take the advantage of that juicy full toss. Only single will result here. Udupi Blasters will have to look for big hits now. They desperately need boundaries and sixers in order to come back into this game. But the bowlers of Mumbai Paltans are not giving any chance for the batters to free their arms. The batsman attempted for a switch hit. Once again, he found complete failure in playing that one. No runs resulted. Dot delivery there by bowler Prathamesh. Score still remains on 31 for the loss of 4 wickets. In fact, we are in the 5th over of the innings now. Batters go for a big one. Ball is in the air. It could be a catch. But the ball falling into the vacant region safely landed into the no man's area. There was a long chase for the 2 fielders. And meanwhile, they get 2 more runs here. So there's the end of the over from Prathamesh. So after the completion of 5 overs, Udupi Blasters are 33 for the loss of 4 wickets. "28 more runs required for Udupi Blasters to win this match in the remaining 2 overs. 12 balls remaining, 28 runs required. That means they need a run rate of exactly 14 per over.
After this match, the next match will be played between Kodial Super Kings versus Jaika Strikers of Mudbidri. Arch Pharma Labs Limited are the title sponsors of this GPL Utsav 2023. So from the Arch Pharma Labs end, bowler is ready to bowl. First ball is a dot delivery there. No runs resulted. That ball beats not only the batsman but also the wicket keeper, and some sort of misfielding there by the fielder as well. As a result, they completed the second run. Prasad Nayak played a brilliant knock of 37 runs for Mumbai Paltans team. Batter goes for a big one. It could be 6. Yes, it is. GPL sixer, this time from the bat of Karthik. Score jumps up to 41 now. 61 is the target. That means they are 20 runs away from their victory here. Only 9 balls remaining. 20 more runs required for Udupi Blasters to win this match. They need sixers now in order to come back into this game. That ball kept very, very low, surprising the batsman. The ball keeping low. Batsman had no clue about that ball. Misses it completely. Ball went straight to the wicket keeper's hand. Prasad Nayak collects the ball behind the stumps and he does the rest of the job. Ball pitching right in the block hole. Batter wanted to go for a big hit, but the ball is not coming onto the bat. Ball hitting the legs of the batsman. So leg bye has been signaled by umpire Sriniket. So one more extra run has been added to the total of Mumbai Paltans team. Udupi Blasters team, which takes their full score to 42 now. 61 is the victory target, and in reply to that, at the moment, 42 runs have been scored by Udupi Blasters team. Last ball to go of this over now. Suraj from the far range. This time the ball is going directly into the throats of the fielder, and fielder made no mistake, caught it beautifully. Deepesh Shanai, the fielder standing at a deep square leg region, converted that into an easy catch. So Udupi Blasters have lost one more wicket here at the score of 42 runs. 61 is the victory target, and in reply to that they have scored 42 runs and they have lost their fifth wicket here. So last over to go now. 19 runs required for the victory. Mahesh Pai is the bowler to bowl the final over of the innings for Mumbai Paltans team. Satish Naik is the newcomer. Left-handed batter will be joining. "19 runs required, but only 6 balls are remaining. After this match, yet another interesting match will be played between Kodial Super Kings versus Jaika Strikers of Mudbidri.
I request the 12th man of both the teams to come to the commentator's box soon after this match to assist our scorer. Mahesh Pai boss this one. Batsman attempted for a switch hit here, but he found utter failure in playing that one. Ball is not coming onto the bat, so no runs with result. Score remains on 42. 42 with 5 wickets down. Once again the ball is in the hands of the bowler Mahesh Pai now. The meantime watch Mahesh Pai for the second time in this over. Converted that into full toss, but there is a fielder at mid-on. They're looking for the second. I think that's all over for the batsman. Satish Nayak will have to move back to the pavilion here. Very good piece of fielding there by the fielder Vaibai Pai, standing at long on region. He was very quick, collected the ball and threw it very quickly to the bowler's end. Satish Nayak was looking for the second run. He was rushing towards the danger end, and unfortunately he has to lose his wicket now. 6th wicket has now gone down for Udupi Blasters, and they are now 43 for the loss of 6 wickets. Last 4 balls to go of this final over of their innings. Sanket Kamath has come out to the center. He's in the non-striker's end now. Karthik Nayak will take the strike. He goes for a big one, and I think that will clear the fence. Yes, it is. He attempted for a switch hit, and perfectly connection between the bat and ball there. The ball has gone out of the boundary ropes for a maximum. So 6 valuable runs have been added to the total of Udupi Blasters. Score moves on to 49. That should be a wide because it was going far away from the leg stump. So that brings up 50 for Udupi Blasters. 11 runs required in the remaining 3 balls. Can he go for one more maximum here? This is going to be interesting. Well, he goes for a switch hit here, but beaten comprehensively. The pace deceives the batsman, ball betrays the batsman and directly into the wicket-keeper's baggage. So 2 balls to go, 11 runs required for Udupi Blasters to win this match. On that occasion, he goes for a switch hit again. They come back for the second. There could be chance of run out, but the throw was not quite good enough. It was a wideish throw, far from the wicket keeper. As a result, they get 2 more runs here, and I think all the doors are completely closed for Udupi Blasters now. They can't do much at this moment. 52 runs they have scored, and now last ball to go. They are 9 runs short of their victory. Here is the final delivery of the innings. So with that, Mumbai Paltans have won the match comfortably against Udupi Blasters. What an amazing, magnificent and deserving victory for the team. A great victory for Mumbai Paltans. They have won both the matches which they have played in this particular season. So they have got 4 points in their points table. They are in a topmost position here. Even though they have lost their first wicket of Chirag Shanbag early in their innings, a great piece of batting shown by Prasad Nayak, the backbone of their team, which has helped them to
reach a respectable target, and they have pulled a sensational victory over Udupi Blasters team. So within a short while from now, we'll come to the presentation ceremony for the man of the match award of the previous game, and after that we'll be having a match between Kodial Super Kings versus Jaika Strikers of Mudbidri. And once again, I request the 12th man of both teams to come to the commentators box to assist our scorer. So it's time for us to announce the man of the match award. So the man of the match award goes to none other than Prasad Nayak, who played a brilliant knock of 37 runs with the help of 3 sixes and 3 boundaries. So may I request Mr. Prasad Nayak to come to the presentation area to collect your man of the match award from our organizers. And meanwhile, the players of Kodial Super Kings are in the middle having a huge discussion. Jaika Strikers of Mudbidri will be playing against Kodial Super Kings of Mangalore team. So once again, the 12th man of both the teams are requested to come to the commentators box as early as possible. Your presence is required here urgently, so wherever you please come to the commentators box immediately. And for further commentary, I'm going to hand over the microphone to Mr. Sukumar to proceed the further commentary in our state language, that will be in Kannada. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುರೇಶ್ ಸರ್. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂಕಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡಗಳ ತಲಾ ಓರ್ವ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ತಲಾ ಓರ್ವ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ನಾವು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ.
ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್, ನಾನ್ ಶೇಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಶೇಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಾನ್ ಶೇಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2, ಆರಂಭಿಕ 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಒಬ್ಬ ಡಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3-4 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್, ಶೇಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. 5ನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಈಶ ಥರ್ಡ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರ ಥ್ರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯವಿತ್ತು. ರನ್ಔಟ್ ನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 1 ರನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೂಟರಕ್ಷಕ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ. 1 ರನ್ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 4 ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಾರಿ, ಆದರೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಓವರ್, ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಎಸೆದಂತಹ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 5 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 5, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ 2 ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಗಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಶೇಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿತ್, ಶಿವಾನಂದ ಶೇಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತವೇ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ. ಶೇಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ್, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ, ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1.2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂತ ಎಸೆತಗಾರ, ಆದರೆ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಟ್ಟಿದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಶಿವಾನಂದ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡು, ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಡೆಲಿವರಿ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್, ಆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲಾಟದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 4ನೇ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿವಾನಂದ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರಿದಾಗ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಮಿಸ್ ಐ ಹಿಟ್ ಅನ್ನುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ
4ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದಂತ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ನೇರವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದಂತಹ ಶಿವಾನಂದ್ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಟ್ಟಿದಾಗ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 4ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಟ್ಟುವ ಬರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಮಂಜುನಾಥ್ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಮಂಜುನಾಥ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರು ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಗಿರೀಶ್ ಇದೀಗ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿನ ಮೇಲಂಚಿಗೆ ಬಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡು 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನತ್ತ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯರಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಇದೀಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್. ಬಹುಶಃ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಗಿರೀಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ದೇವದಾಸ್ 2nd ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ 5 ಚೆಂಡು 6 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಗಿರೀಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸತತ 2 ವಿಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಗಳಿಸಬಲ್ಲರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗಿರೀಶ್ ಟು ದೇವದಾಸ್. ಈಗಾಗಲೇ 11 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 6ರಂತೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಜೈಕರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಗಳಿಸಬಲ್ಲರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಥ್ರೋ ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಎಡವಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 5.5ರಂತೆ 11 ರನ್ನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. 1.2 ಓವರಿಗೆ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 4 ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಅದ್ಭುತ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದೀಗ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣೇಶ್ ಪುಜ್ಲೋನ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಇದೀಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಜ್ಲೋನ ಕಡೆಗಿಂದ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣೇಶ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. 5 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ 3ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವೈಫಲ್ಯ. ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ 2 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೂರವನ್ನ ಕ್ರಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯರಾದಾಗ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13. ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 6ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2.1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್. ಗಣೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಬಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್
ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಇದೀಗ 3ನೇ ಬಾರಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 14. ಈಗಾಗಲೇ 2.3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗಣೇಶ್. ಶೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ದೇವದಾಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 4ನೇ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಶೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸ್. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಾರ ಗಣೇಶ್ 4 ಎಸೆದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3ನೇ ಓವರ್ನ 4 ಎಸೆದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 15. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಟು ಬಾಲ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 2.5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 15. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರಿದಾಗ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಾಲ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಬಾಲ ಆ ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದ ಕಾರಣ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿದಾಗ ಹರಿ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಂತ ದಾಳಿಗಾರರು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಗಣೇಶ್, ಆ ಬಳಿಕ ಗಿರೀಶ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣೇಶ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆದಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 15 ರನ್ನಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 5ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ 15 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಿರೀಶ್, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮೂಲಕ ಸುಲಭ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 1 ರನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16. ಈಗಾಗಲೇ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಎಸೆತಗಾರರು ಇದೀಗ ಗಣೇಶ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾದಾಗ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗಿರೀಶ್ ಟು ಕೇದರ್. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3.2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಮಧ್ಯ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಜೊತೆಯಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂಡವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಕೇದರ್ ಮತ್ತು ದೇವದಾಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ
19ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3.4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಿರೀಶ್, ಶೇಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸ್, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಓಡಾಟ. ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಡಾಟದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಲಾ ಒಂದರಂತೆ 5 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಈ ಜೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡುವಂತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 23 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೈಕರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರಿದಾಗ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆತ 1ಕ್ಕೆ 1ರಂತೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಬಾರಿ ಖೇದರ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 4ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 20 ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 5ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್, ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಣವ್. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಮುಂದಿನ 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸ್. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ರನ್ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 21ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಂಡಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಸತತ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 1ರಂತೆ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಸೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ವೈಡೀಶ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ. ರನ್ಔಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 23ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಜಾಗವನ್ನು ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಕ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 24ರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಒಂಟಿ ಮತ್ತು ಅವಳಿ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 24 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್.
ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸುಲಭವಾಗಿ 1 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಂಡಿಗರು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವೈಫಲ್ಯವಿತ್ತು, ರನ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ್. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ದೇವದಾಸ್ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯವಿತ್ತು. ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತೆ 25. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆದ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಣವ್. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1 ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಎಲ್ಲ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಲಾ 1ರಂತೆ 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 26. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತದ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ 20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 45-44 ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಕಂಡಂತ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 60 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆನ್ನತ್ತುವಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಆದೇಶ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 6ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಸೆಗಾರ ಆದೇಶ್. ಶೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ್. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಣವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ದೇವದಾಸ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇವಲ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎಸೆಗಾರ ಆದೇಶ್ ಬಟ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಕೂಡ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಗಟ್ಟಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 4 ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ನೇರ ಥ್ರೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮೂಲಕ 1 ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಬಳಿಕ ತ್ರಿವಳಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮೂಲಕ 2 ಇತರ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 29ರಲ್ಲಿದೆ. 5.1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29. ಸರಾಸರಿ 6ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾದಂತಹ ದೇವದಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 11 ಎಸೆದ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ? ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಕಿಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ್ ಭಟ್ ತನ್ನ ಒಬ್ಬರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಸಂಬಿತು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪು. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. ಈಗಾಗಲೇ 6ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 30ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ 6ರ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ 2ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ದೇವದಾಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕಿಳಿದ್ರು. 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೆಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಂಡವನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವಂತಹ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಇದೀಗ 3ನೇ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ವೈಡಿಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ನೋಟ. ಸುಲಭವಾಗಿ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಡಾಟ. 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 32ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5.3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ದೇವದಾಸ್ರವರ ಜೊತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಜೊತೆಯಾಟ. ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದೇಶ್ ಭಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶೇಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವದಾಸ್ 4ನೇ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ವಂಚಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 33ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5.4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33. ಇನ್ನು ಕೂಡ 8 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಬಹುದು ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಆದೇಶ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ದೇವದಾಸ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿ ಆರ್ಕರ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33. ಈಗಾಗಲೇ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 33 ರನ್ನಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇರದ ಕಾರಣ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶೇಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಆಶುತೋಷ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶ್ ಭಟ್, ಶೇಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೇವದಾಸ್. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 7 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 33 ರನ್ನಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಶುತೋಷ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ಗಾಗಿ, ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 34. ಸರಾಸರಿ 6ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಷ್ಟೇ ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಎಸೆತಗಾರರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಅದು ಶಿವಾನಂದ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯರಾದಾಗ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಶೇಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತದ ಆಟ ಬಾಕಿಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ. 2 ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತದ ಆಟ ಬಾಕಿಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎಸೆತಗಾರ ಗಣೇಶ್. ಶೇಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಶುತೋಷ್, ನಾನ್ ಶೇಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್. ಅಂತಿಮ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಬಾಕಿಗಿದೆ. 34 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಶೇಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿತ್ತು. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆದ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ,
ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸವಾಲನ್ನೊಡ್ಡಿದಂತಹ ದಾಂಡಿಗರು 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 36. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 36. ಕನಿಷ್ಠ 42-45 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಂದಿನ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ 45 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದ್ದಾಗ ಎದುರಾಳಿ ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 36ರಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ರೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಡೆತ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆರಂಭಿಕ 3 ಎಸೆತ 3 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದೀಗ 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗಣೇಶ್. ರೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸ್ ತನ್ನ ಓವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 37 ರನ್ನಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಆದೇಶ್ ಭಟ್. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ಈ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಆದರೆ ಗಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆದ ಕಾರಣ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಆದೇಶ್ ಭಟ್ ರವರ ಕೈ ಸೇರಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಪತನವಾಗಿದೆ. 37 ರನ್ನಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಿಮ ಡೆತ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 37. ಈಗಾಗಲೇ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್, ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನಾದರೂ ಸಿಡಿಸಬಲ್ಲರೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿದೆ. ಇದೀಗ 5ನೇ ಬಾರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 38ರಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣೇಶ್ ತನ್ನ ಒಬ್ಬರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟ್ ನ ಮೇಲಂಚಿಗೆ ಬಡಿದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ನ ಕೈ ಸೇರಿದಾಗ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 7 ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಇರಾದೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಕಾರಣ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಇರಾದೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಸೆತಗಾರರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್, ಆ ಬಳಿಕ ಗಿರೀಶ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಣವ್, ಆದೇಶ್, ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 38 ರನ್ಗಳನ್ನ 39 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಗಿದೆ. 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 39 ರನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಬಹುದು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಅಥವಾ 38 ರನ್ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾ ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಎಸೆತ 1ಕ್ಕೆ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. 1-2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಬಹುದು. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿಗಿನ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ
ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಗೋಪಿ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So thank you, Sukumar. 17th match of Arc Pharma Labs GPL Utsav 2023 is going on here between Kodial Super Kings versus Jaika Strikers of Mudbidri. 39 is the victory target for Kodial Super Kings to win this match. Both the teams are sailing on the same boat. We can't say exactly which team will win this match because both the teams have got 2 points in their points table. So let us see who is going to win this match to get 2 more points. So this match is now going to be a very interesting match, really a fast-hitting game, and I think it has a real close finish now. The 2 openers for Kodial Super Kings are already in the middle. Ramesh and Srinath are the 2 openers. Lot of responsibility on these 2 openers now. They should play with cool mind. 5.6 is the required run rate. This is not a very difficult target for the team, but only thing is, in the power play session, these 2 openers will have to try to steal as many runs as possible. First 2 overs will be mandatory power play overs. That means during the power play session, they need to look for some big hits in order to accelerate their score. So everything seems to be ready here. We have the green signal there by umpire Rajaratna, and here is the first hit of the first over now. The opener bowler will be Shivanand. A right arm medium fist bowler is going to operate the first over of the innings now from the Puzalana end. The left-handed batter is on strike, and at the non-strikers end, right-handed batsman Ramesh and Srinath are the 2 openers. For this left-hander, 4 men on the onside and 5 on the offside. 2 fielders are outside the 30-yard circle, 1 in the long on, and there is 1 fielder in the deep mid-wicket. And on the offside, all the fielders are standing inside the 30-yard circle. So Shivananda, the all-rounder player of Jaika Strikers Mudbidri, is all set to bowl now. So here is the first delivery of the first over now. Shivananda to Srinath. He goes for a big one. Couple of bounds over the boundary ropes for 4 runs. The fielder just became a spectator here. Ball wins the race. Short of length delivery. Pitching down the leg side. The batter Srinath picked it up very nicely, and he has given a nice treatment for the bowler here. Welcome boundary from the bat of Srinath for Kodial Super Kings. Good improvisation in the bowling. This time ball was pitching outside the off-stump. Batsman just glides the ball to the offside, gently pushing the ball to the gully region, and he gets a single here. That single will bring Ramesh on strike now. Right-handed batter Ramesh will take the strike. A good combination here between these 2 opening pairs. Left hand and right hand combination. Again, the bowler Shivanand is making some change in the field placement here for this right-hander. Meanwhile, we can see 4 fielders on the onside for the right-handed batter Ramesh and 5 on the offside. The meantime, the bowler flicks the ball onto the onside, but not from the middle of the bat. The batter just played the shot in front of the square leg umpire, almost near the square leg region, and he gets a single here. With that single, the batsman is straight away off the mark. Ramesh Pai has opened his account, and Srinath is back to strike now.
Again short of line delivery, but this time straight to the fielder. If it's a direct hit, the batsman could have been in trouble. Direct hit has not happened. Good understanding there. Aggressive running between the wicket. That was a risky run, but at the end, these two batters were very quick and they have completed a single here. One more run has been added to the total of Kodiak Super Kings, which takes their full score to 7. Without any loss, over number 1 is in progress. Shivananda from the Puzzalana end. Room outside the off stump, crashing drive to the offside, played that shot with the back foot, and the ball has almost going to the boundary ropes, very close to the boundary ropes. The fielder was able to stop that ball, and meanwhile 3 runs have been taken here. Once again, a very good running between the wicket here, aggressive running between the wicket, and this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So 3 more runs have been added to the total of Kodiak Super Kings, which takes their full score to 10. Bit of expensive over there by Archit in the first over of the innings. Short of line delivery, goes for a big one. One bounce over the boundary ropes for 4 runs. No chance for any fielder to stop that ball. Treated the ball on merits. No risk taken. No need of running for that, because the timing was good and the placement was perfect. Excellent hitting shot there by the batter. So very expensive over there by Shivananda. He has considered 14 runs in that first over. During the power play over, Kodiak Super Kings openers have taken the advantage of that fielding restriction and they have given a good start. These two openers are dominating right from the word go. Srinath is batting on 10 of 4 balls and Ramesh Pai is batting on 4 after facing 2 balls. So Srinath, with the help of 2 boundaries, he's on 10 now. A good partnership is going on here between these two batters. These two batters are trying to build a good foundation for the rest of the team. They are building a good platform for Kodiak Super Kings team. And Jaika strikers of Mudbidri team desperately need wickets now. Picking up wicket is key. If they can pick up 1 or 2 wicket in this second over, definitely they can come back into this game. Let us see what strategy the bowler will adopt now. Kodiak Super Kings, they just need 25 more runs in the remaining 6 overs. Change in the bowling position here. Pradyumna has taken over from Shivanand. So Pradyumna will bowl the second over of the innings and he will be operating his over from the Arch Pharma Labs Limited end. Arch Pharma Labs Limited are the main title sponsors of this GPL Utsav 2023, and our one more sponsor is Puzzalana. We can see the Puzzalana banner in the commentary box end. So the commentary box end is called as Puzzalana end. We can see some colorful banners, advertising boards, colorful flags all around the ground. Very hot sunshine here today at Sahyadri College Stadium. Pradyumna with a long run up, he balls and the ball has crossed the boundary road for 4 runs. Short of line delivery there by Pradyumna, and the batter played a brilliant shot and he got a boundary here. एक announcement, एक red color car KA19M J1207 ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡಕ ವಾಪಸ್ ರಿಪೀಟ್ करता KA19M J1207 रेड कलर कार इमिडिएटली ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡಕ म्हणून रिक्वेस्ट करता सती. आणि थोडे वेळाने बोटिंग क्लोज जावचे आसा, सो कोणाक बोटिंग करूक इश्ट की जल्दीतले बेगीन त्या बोटिंग झोनाक वचूक आणि
थोडे वेळानं बोटिंग झोन क्लोज जावचे आसा. So 19 runs on the scoreboard now for Kodial Super Kings, and we are in the second over of the innings. Pradyumna for the third time now making some change in the field placement again. Devdas Nayak, the icon player of Jaika Strikers, is making the change in the field placement again and again because he knows the situation, because this is a very crucial and important game for them to qualify for the next round and in order to get 2 points. With a long run up, Pradyumna balls. Batsman just taps the ball to the offside region. This time he will have to satisfy with only a single. There is no possibility of going for the second run, so he just settled for a single here. With that single, the score now moves on to 20. So Kodial Sports Association of Mangalore are organizing this GSB Premier League 2023 for the 7th time. They have been organizing this GPL tournament, and we are in the 7th season of this GPL 2023. He goes for a big one, and that has gone out of the park here. That one just went like a tracer bullet. What a magnificent shot it was. So with the help of that wind, the batter goes for a big one. Down the wicket he goes, picked it up very nicely, and he has given complete punishment for the bowler Pradyumna. Charging the bowler on that occasion, he has scored 6 valuable runs. Pradyumna is looking very expensive here. Already he has conceded 12 runs in this over in 4 balls. Loud appeal for leg before the wicket. Loud shout there by the bowlers as well as by the fielders and the wicket keeper. But umpire Rajeshwar says not out, so no damage done. Another run has been added to the total of Kodiak Super Kings, which takes their full score to 27 without any loss, without losing any wickets. These two batters are dominating right from the word go here. We are in the second over of the innings and only 1 ball to go of this last over now. That's a very, very fine delivery, and I think he's out. The ball takes the leading edge of the bat, and wicket keeper Shivanand makes no mistake, caught it beautifully. First wicket goes down for Kodiak Super Kings now at the score of 27. So you are watching Arch Pharma Labs Limited GPL GSB Premier League 2023 presented by Kodial Sports Association Mangalore. Youth of GSB Worldwide are the broadcast partner. So Youth of GSB is hosting the live broadcast of this tournament, so people from all corners of the world can watch each and every matches of this GPL tournament. 16 different teams are participating in this particular tournament, and the winners of this tournament will fetch a cash prize with an attractive trophy, and at the same time the runners-up team will also get cash prize along with the runner-up trophy. And not only this, along with this there will be some individual prizes like best batsman, best bowler, man of the series and man of the match. The man of the series player will be awarded with attractive Suzuki Eminis bike, which is being sponsored by Pi Sales Suzuki. Rajesh has been introduced here to bowl the third over of the innings. Operating is over from the Puzalana end. Crashing drive to the offside, played that shot to the cover point region. Long chase for the fielder. They come back for the second and completed the second run as well. Once again, a very good running between the wicket here. 2 fielders were in a row, and meanwhile these 2 batters have completed the second run. Couple of runs have been added to the total of Kodial Super Kings, which takes their full score to 29 now. 29 with 1 wicket down. The man out is Srinath for 11. Ramesh and Ganesh are in the middle. Ganesh Nayak Kota is the icon player of Kodiak Super Kings. He's at the non-strikers end. A all-rounder player of Kodiak Super Kings. He's the backbone of their team. Last year
He had got that attractive Gixxer bike as a man of the series player. This time he goes for a big one. Ball is in the air. It could be 6 and it is. Yes, it is. Six valuable runs from the bat of Rajesh. I beg your pardon. Ramesh is the batsman who's on strike. He's batting on 29 runs after facing 9 balls. This is the second sixer from the bat of Ramesh. With the help of 2 sixes and 1 boundary, Ramesh is batting on 23. This time he goes for a switch hit here and ball has crossed the boundary road for 4 runs. एक अनाउंसमेंट मारुति विटारा ब्रेजा मळल कार नंबर KA19MJ1207 जलतित्ल ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡಕ ಅಜ್ಜೆ ಓನರ್ ಮಕದಿಸ್ತ ಸುಧೀರ್ ಕಾಮತ್ ಮೋಣು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಕಾಮತ್ ಮಾರುತಿ ವಿಟಾರಾ ಬ್ರೀಜಾ कार नंबर KA19MJ1207 ದೈಕೋರ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡಕ. So Kodiak Super Kings have won the match. What an amazing, magnificent and deserving victory for the team. They have pulled a sensational victory over Jaika strikers of Mudabidri, and they have got 2 points in their points table now. And within a short while from now, we'll be having the presentation ceremony for the Man of the Match award. And also the next match will be now played between the Deadly Panthers of Kodial versus Team Malsi. The 12th man of both the teams are requested to come to the commentator's box to assist our scorer. So it's time for us to announce the Man of the Match award. The Man of the Match award goes to Girish Pai of Kodial Super Kings, who picked up 3 wickets, 2 overs, no maiden, 11 runs, and he has picked up 3 wickets. So Mr. Girish Pai is requested to come to the presentation area to collect your Man of the Match award. So Mr. Girish Pai of Kodiak Super Kings will collect the Man of the Match award from our chief guest. So congratulations Girish Pai, and best of luck for the rest of the tournament, and thank you very much sir for presenting the Man of the Match award.
ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಶಿ ತಂಡ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಶಿ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂಥ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ದಂಡನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ 4 ಓಟಗಳು. ನಾಗೇಶ್ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ 4 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದತ್ತ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. 4 ಓಟಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದ ಮುಖೇನ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಲಗೂಟದಿಂದ ತೀವ್ರ ಹೊರ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ, ವೈಡ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶ್ರೀನಿಕೇತ್. 1 ಓಟ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 5, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಮತ್ತೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕವರ್ಸ್ ಮೂಲಕೇನ ಆಡುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈರುಬರ ದಾಳಿ ಕೂಡ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ನಾಗೇಶ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ಓಟ, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 6. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಶಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ತಂಡವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಇದೀಗ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಶಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಪುಂಡಲೀಕ್ ಪೈ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈರುಬರು ದಾಳಿ ಕೂಡ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಯತ್ನ, ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತನ್ನ ವೈದ್ಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8. ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಶಿ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಎಸೆತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು, ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡಿಗೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ದಂಡನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಇದನ್ನ ತೃತೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ
ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡಿಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಇದನ್ನು ತೃತೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023ರ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಈ ಒಂದು GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲೇ ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ತಾನು ಎಸೆದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 9 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನಾಗೇಶ್ ಬಾಳಿಗ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು, ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟದ ಅವಕಾಶ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯ ಆಟ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಅರ್ಥ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮತ್ತೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿರುವಂಥ ದಾಂಡಿಗ ನಾಗೇಶ್.
ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಾಳಿಗ, ಹೆಸರುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧೀಂದ್ರ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲಗೂಟದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರ ಉರುಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ನಿರ್ಣಾಯಕರು. ಒಂದು ಓಟ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 11. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟ. ಈ ಬಾರಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಆಡುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಈರುವರು ದಾಂಡಿಗರು. ಸೊ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 11. ಕ್ಷಮಿಸಿ 12 ಮೊತ್ತ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಜಾರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತೇಲಿ ಬಿಡುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈರುವರು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇವಾಗ 14. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಗೂಟದಿಂದ ತೀವ್ರ ಹೊರ ಉರುಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಚೆಂಡು ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓಟದ ಮುಖೇನ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿರುಸಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಪುಂಡಲೀಕ್ ಪಾಯ್ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈರುವರು ದಾಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ತಟ್ಟಿ ಮಟ್ಟು ಆಡುವ ಯತ್ನ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರು. ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯ ಓಡಾಟ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ 17 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂಥ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಹಾಗೂ ನಾಗೇಶ್ ಬಾಳಿಗ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟ, 1 ಬೌಂಡರಿಯ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ 7 ಓಟದಿಂದ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಾಳಿಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 3ನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಪುಂಡಲೀಕ್ ಪೈ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಜಲಾನ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪುಂಡಲೀಕ್ ಪೈ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿರುವಂಥ ದಾಂಡಿಗ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಂಡಲೀಕ್ ಪಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಪೈಗೆ 4 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಆನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ
ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪುಂಡಲೀಕ್ ಪಾಯ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈರುವರು ದಾಳಿಗಳು ಕೂಡ ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಓಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 18ಕ್ಕೆ 1. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡುವ ಯತ್ನ, ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಂಡಿಗ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಪಾಯ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುಜಲಾನ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಗೇಶ್ ಗೆಸಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತೇಶ್ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಯಾಚನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಅನಂತೇಶ್. ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬಂದಂತ ನಾಗೇಶ್ ಪಾಯ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಪಾಯ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಪುಂಡಲಿಕ್ ಪಾಯ್. ಈ ಒಂದು ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19. ಮತ್ತೆ ಪುಂಡಲೀಕ್ ಪಾಯ್ ತನಗೆ ದಕ್ಕಿದಂಥ ಉದ್ದರಿಯ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದಕ್ಕಾಗಿ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣಾಯ್. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಂಡಲೀಕ್ ಅವರ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ಓಟದ ಮುಖೇನ ವಿಘ್ನೇಶ್ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 21ಕ್ಕೆ 2. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಿನ ಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಬಡಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡ. ಪುಂಡಲೀಕ್ ಪಾಯ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣಾಯ್. ಹೊಡೆಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣಾಯ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣಾಯ್ ಈಗಲೇ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 3 ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡ 22 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 3 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನುಳಿದಂಥ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ
ಎಸೆತ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಸರ್. Hello, check. Hello, check. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. जीपीएल 2023 में बैठे तमाम दर्शकों को और जीएसपी समाज के उन सभी बंधु भगिनियों को अजय राज का सादर प्रणाम. और इस क्रिकेट श्रृंखला में अब तक जो संघर्ष चला है वो काफी लाजवाब रहा है. इस मैच में डेडली पैंथर्स एक बड़ा लक्ष्य बनाने की ओर जा रहा है. स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन तैनात विघ्नेश उस छोर से ये गेंद पुंडलिका गेंद को लेकर तैयार हुई. ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर थी, जाने दिया. पुंडलिका ने गेंद को अंपायर की तरफ देखा और बहुत जोर से उन्होंने गुहार लगाई. अंपायर को बाध्य होना पड़ा इस अपील को देखते हुए कि इस गेंद को वो वाइड करार दें. वाइड के इस रन के साथ रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 30 पर, माफ कीजिएगा कुल रन संख्या 23 पर 3 विकेटों के नुकसान पर 23 for 3. जबकि सुदिंद्र गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं और स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन विघ्नेश ने गेंद को उछाल दिया. जबरदस्त स्ट्रोक है और विघ्नेश इसी के लिए जाने जाते हैं. वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद हवा में पंछी की तरह लहराती हुई गई बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए जीपीएल का जबरदस्त सिक्सर. ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर की गेंद. विघ्नेश जैसे बैट्समैन को लेंथ में अगर आप ज्यादा गेंद को कर दो, हाफ वॉली दे दो, तो मानो कि आपने छक्के को आमंत्रित किया है. क्या जबरदस्त स्ट्रोक उन्होंने घुमाकर लपेटकर स्विंग के साथ एक अच्छा बैकलिफ्ट है. गेंद को घुमाकर वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया 6 रनों के लिए. उस छोर से दोबारा सुदिंद्र गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं. ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी. इस बार विघ्नेश ने जाने दिया, अंपायर की तरफ देखा ही नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि अंपायर इस गेंद को वाइड करार देंगे. इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 30 पर. कैमरामैन कैप्चर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जो हवा में तैरता हुआ एक इंसान अगर कहिए तो कोई गलत ना होगा. क्या सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है. और पैरासेलिंग जिसे कहते हैं, कमाल का दृश्य. बोट से एक मोटा रस्सी जिसे कहते हैं वो झूल का रेस बार हवा में गगनचुंबी स्ट्रोक है और फील्डर गेंद के नीचे मिड विकेट के पास आ गए. उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया, पहले आगे निकल आ गए. गेंद उनके पीछे की तरफ गई, फिर पीछे की तरफ थोड़ा सा झुककर उन्होंने अपने आप को गिरा ही दिया, लेकिन गेंद उनके हाथ में नहीं आई. बैट्समैन बाल बच गए और विघ्नेश किस्मत लिखा कर आए हैं. क्या बात है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. जबरदस्त प्रयास, लेकिन विघ्नेश जैसा बैट्समैन अगर बच जाए तो निश्चित तौर पर गेंदबाजों के लिए नाक में दम कर सकता है, सरदर्द बन सकता है. ऐसे में रनों का लेखा जोखा आपको बता दूं, कुल मिलाकर 32 रन्स बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर 32 for 3. विघ्नेश 9 के व्यक्तिगत योग पर खेल रहे हैं. सुदिंद्र जो कि अब तक 18 रन्स वो खर्च कर चुके, माफ कीजिएगा, ये उनके कोटे का दूसरा ओवर है. ओवर विकेट, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद बीट कर गई और विघ्नेश ने दोबारा अंपायर से अपील जोरदार की है, गुहार लगाई, लेकिन अंपायर ने इस बार कोई संकेत नहीं किया. बिल्कुल पत्थर से बने रहे अंपायर. उन्होंने इस गेंद को बिल्कुल लीगल करार दिया. टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद हवा में थोड़ा सा फ्लेट होकर हवा में तैरती हुई विकेट कीपर के हाथ में जाकर समा गई. रन अभी भी 32 पर है. सुदिंद्र एक अग्नि परीक्षा से जूझ रहे हैं, जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, क्योंकि सामने विघ्नेश भट्ट बल्लेबाजी कर रहा है. विघ्नेश शर्मा, माफ कीजिएगा, एक और गेंद ऑन साइड की दिशा में घुमाकर खेलने का प्रयास, चूक गए. आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था. गेंद की पिच काफी पीछे गिरी थी, लगभग बैक ऑफ लेंथ से थोड़ा सा आगे, और अगर गुड लेंथ से थोड़ा पीछे कहें तो गलत ना होगा. उस गेंद को खेलने के लिए थोड़ा आगे निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. जबकि सुदिंद्र गेंद को लेकर तैयार. शानदार दृश्य है. शाम का बेहतरीन मौसम, 5:05. आर्चा फार्मा लैब्स के दिशा से गेंद को लेकर सुदिंद्र दोबारा तैयार हो रहे हैं. उनकी गेंद लंबे दौड़ के साथ.
ये गेंद फुल टॉस थी, ऑन साइड पर पुल कर दिया, कैच हो सकता था लेकिन एक और कैच बैट्समैन विघ्नेश का छूट गया। आज किस्मत लिखा कर आए हैं विघ्नेश, दूसरा मौका हो सकता था, फ्लैट शॉट था, वाइडिश मिड ऑन मिड विकेट माफ कीजिएगा, जहां पर फील्डर थे वो आगे की तरफ झुक गए, घुटनों को नीचे ला दिया, कैच करने का प्रयास हाथ से छूट गई और अपने एक लंबी सांस लेते हुए विघ्नेश अपने क्रीज पर पहुंच गए। 2 और रन खाते में जोड़ लिए हैं, किस्मत बिल्कुल धनी है किस्मत के विघ्नेश। उस छोर से ये गेंद बैकफुट पर गए, इस बार थोड़ा सा मेरिट पर खेला, गेंद को देखा कि टप्पा खाकर बाहर की तरफ निकल रही थी, कट भर किया गेंद को, 1 रन लेने का अवसर है विघ्नेश के पास। इस एक के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है, कुल मिलाकर संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 4 पर। आप देख रहे हो 4 जीपीएल 2023 4 ओवर के समाप्ति पर 35 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। विघ्नेश 1 के व्यक्तिगत योग पर माफ कीजिएगा, विघ्नेश चुनाई 12 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और विघ्नेश के, हालांकि दोनों बैट्समैन इत्तेफाक से विघ्नेश हैं, 1 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुधींद्र का ये ओवर समाप्त हो चुका है। कैमरामैन अपने काम को शानदार तरीके से अंजाम कर रहे हैं, कभी दर्शकों को कैप्चर कर रहे हैं, कभी उच्च आकाश में दूर पंछियों को, और उसके अलावा जो पैरासेलिंग दिखाई पड़ रहे हैं, बीच बीच में कभी कभी आपको ऊंट भी दिखाई पड़ेगा जो राजस्थान से मंगाया गया है खास तौर पर जीएसपी के समाज के लिए, उन बंधु भगिनियों के लिए, कि उसका भी वो एक तरह से मजा उठाए कि ऊंट की सवारी क्या होती है। ऐसे में खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, सारे फील्डर्स शायद मंत्रणा कर रहे हैं कि आखिर अब गेंदबाजी का जिम्मा किसे सौंपना होगा। कप्तान ने निर्णय ले लिया है, 11 नंबर के जर्सी में इस छोर से गेंदबाज आ रहे हैं, पुंडलिक आ रहे हैं आक्रमण पर। तो विघ्नेश ने 12 के व्यक्तिगत योग पर 7 गेंदों का सामना किया, भारी मजबूत शरीर के धनी है और इस छोर से राउंड विकेट। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और इस गेंद को जाने दिया विघ्नेश ने, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक गए। अंपायर श्रीनिकेत जी ने अपने अंदाज में हमारी तरफ घूमकर संकेत किया कि वाइड है। 1 रन के साथ रन बढ़कर अब 36 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। पुंडलिका गेंद को लेकर, ये गेंद स्टंप्स के सीट पर थी, थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बल्ले को तिरछा करते हुए खेल दिया बैट्समैन ने। अच्छा स्ट्रोक है, चतुराई भरा स्ट्रोक, जब तक फील्डर डीप से आकर गेंद को उठा लें। 1 रन आसानी के साथ दोनों बैट्समैन पूरा कर चुके हैं, रन बढ़कर 37 पर 37 for 3, जबकि बाएं हाथ का बैट्समैन विघ्नेश के अब स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। इस छोर से पुंडलिका राउंड विकेट विघ्नेश के लिए, और घुमाकर ऑफ स्टंप के पूरे बाहर आकर गेंद को खेलने के प्रयास में चूक गए, शायद गेंद पैरों से टकराई है। जी हां, अंपायर ने कहा कि लेग बाय है। 1 और रन के साथ रन बढ़कर 38 पर 3 विकेटों के नुकसान पर 38 for 3। अब दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चल रहा है, गेंदबाजों को थोड़ी सी परेशानी, लेकिन विघ्नेश डट कर मुकाबला कर रहे हैं। राउंड विकेट, शॉट ऑफ लेंथ थी और देखा परखा, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को धीरे से पुश पर कर दिया। दूसरा रन चुराने के लिए बल्ले को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए आगे निकलना चाहते थे, देखा कि फील्डर झपट रहा है गेंद के ऊपर, अपने आप को रोक लिया विघ्नेश, और विघ्नेश के ने सिर्फ 1 रन से खुश हो गए और रन कुल मिलाकर बढ़कर 39 पर 39 for 3, जबकि पुंडलिका का आक्रमण जारी। राउंड विकेट फजल छोर से ये गेंद हवा में खेल दिया, टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। फील्डर ने बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर थोड़ा सा हवा में झूलते हुए तैरते हुए गेंद को अंदर की तरफ ढकेला है। अंपायर थोड़ा सा समय ले रहे हैं, श्रीनिकेत थोड़ा सा आश्वस्त होना चाहते हैं, तो जी हाँ, स्क्वायर लेग पर जाकर वो अंपायर से बातचीत करेंगे कि आखिर ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई या नहीं। बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन जिस तरह से स्ट्रोक खेला गया था प्रशंसनीय, दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद को निकाल दिया था, बेहतरीन स्ट्रोक था और रिप्लेसमेंट के साथ खेला गया। रन अभी आपको नहीं बताएंगे, फील्डर्स थोड़े से रुके हुए हैं। दोनों अंपायरों ने संकेत किया कि वो तीसरे अंपायर को जिम्मेदारी सौंपे, ताकि ऐसा बाद में कहा ना जाए कि अंपायर की तरफ से एक तरह से कहा जाए, एक तरह से आमतौर पर होता है, उंगली उठाई जाती है, तो ऐसा अवसर ही नहीं देना चाहते दोनों अंपायर। इसीलिए उन्होंने कहा कि तीसरे अंपायर कैप्चर किए दृश्य में कैमरा में देखकर वो बिल्कुल निर्णय निकाले कि आखिर ये बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई है या नहीं।
लेकिन प्रयास बहुत जबरदस्त था, क्योंकि बाउंड्री लाइन के बाहर जब गेंद गई हो तब हवा में तैरते हुए पंछी की तरह अंदर की तरफ धकेलना निश्चित तौर पर आसान काम नहीं है। बहुत शानदार तरीके से गेंद को अंदर की तरफ धकेल दिया है, लेकिन अब अंपायर क्या निर्णय निकालते हैं देखने वाली बात है। शानदार दृश्य जीपीएल उत्सव में एक ऐसी क्रिकेट श्रृंखला, ये पूरा बड़ा पैकेज है, एक धमाकेदार पैकेज जिसे कहते हैं क्रिकेट श्रृंखला। साथ साथ आपको अलग अलग एंटरटेनमेंट का साधन देखने को मिलेगा जीएसबी के समाज के उन सभी बंधु भगिनियों के लिए, उन सारे परिवारों के लिए जो हर साल जीएसबी में अपना योगदान देते हैं। दूर नेत्रावती का छोर, शांत ठंडी हवा बह रही है, उसके अलावा जो नेत्रावती में शांत होकर शीतल पानी जो बह रही है वो संकेत करिए कि वातावरण बहुत मुक्त है, शांत है। और उसके अलावा ध्वज दिखा रहे हैं कि हवा बहुत अच्छी चल रही है। दूर उस छोर मैदान के दूसरी छोर पर ऊंट इधर उधर से जीएसपी के परिवारों को ले जा रहा है। और उसके अलावा अगर उसके मन में शंका हो रही है कि बार बार मुझे इधर से उधर क्यों ले जाएगा। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो घुड़सवारी है, और पानी में दूर आप देख रहे हैं नाव की सैर कर सकते हैं, पैरासेलिंग का उपयोग भी कर सकते हैं, और बहुत कुछ है। किड्स जोन रखा गया है, 14 साल के अंदर के जितने सारे बच्चे हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, सारे फील्डर्स बड़े उत्सुक होकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्या चौका रोका गया है नहीं। ड्रोन हवा में बिल्कुल मैदान में उतर गया है। एक आधुनिक पंछी का ये एक आधुनिक तकनीक से बना हुआ है। आज आधुनिकता कितनी आगे बढ़ी है कि कहीं अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है, कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस बीच अंपायर राजरत्ना जी ने कहा कि 4 रन, शानदार 4 रन खाते में जोड़ लिया है, क्या बात है। कमाल का स्ट्रोक विघ्नेश के का खूबसूरती के साथ ऑन साइड की दिशा में प्लेसमेंट के साथ खेला गया स्ट्रोक। इस चौके के साथ कुल रनों का लेखा जोखा आपको बता दें, जबरदस्त प्रयास था। भले ही वो चौका गया हो, लेकिन उस प्लेयर को कहना होगा कि उन्होंने जो कमाल का प्रयास किया है उसके लिए हैट्स ऑफ कहते हैं। विघ्नेश के 5 के व्यक्तिगत योग पर खेल रहे हैं। पुंडलिका पई गेंद को लेकर दूर वाले छोर से, जी नहीं, फजल छोर से वो गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। राउंड विकेट उनकी अगली गेंद विघ्नेश के लिए। कुल मिलाकर रन बन चुके हैं 43, 3 विकेटों के नुकसान पर। शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। पुंडलिका तैयार, 11 नंबर के जर्सी में उनकी गेंद, राउंड विकेट, दोबारा उछाल दिया, एक और जबरदस्त स्ट्रोक। इस बार फील्डर को मौका नहीं मिलेगा कि वो प्रयास करें। गेंद गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए, जबरदस्त जीपीएल का सिक्सर। क्या जबरदस्त छक्का है। डीजे अभी मौजूद नहीं है, अगर वो कहीं पर है तो कृपया आ जाएं, शानदार धुन को बजाएं। कमाल का स्ट्रोक, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी। विघ्नेश के ने उस गेंद को घुमाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछाल दिया 6 रनों के लिए। राउंड विकेट पुंडलिका की गेंद, एक और बार उछाल दिया, कैच होगा। फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को आसान बनाकर दिखा दिया, आसान सा कैच बनाकर दिखा दिया। इसी के साथ बैट्समैन विघ्नेश के आउट हो गए। इस बार प्लेस नहीं कर पाए ठीक तरह से। जो शॉट सिलेक्शन था, घुमाकर ऑन साइड पर खेलते तो बात बनती, लेकिन कुछ ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी गेंद और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेलने के प्रयास में हवा में गई, कैच कर लिया गया। शानदार कैच के साथ ही ये विकेट जो कि गिर चुका है विघ्नेश के का। रन संख्या आपको बता दें, 3 विकेटों के नुकसान पर 49 रन बन चुके हैं। 49 for 3, छठा ओवर प्रगति पर है। और आज इस मैच में टीम मालसी के कप्तान ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया और योजना जो बनाई उसमें कुछ ज्यादा हद तक उनको सफलता हाथ नहीं लगी है। 4 विकेट्स जरूर गिरे, लेकिन रनों पर जिस तरह से वो अंकुश लगाना चाहते थे वो ज्यादा कुछ नहीं बना। अब तक 49 रन बन ही गए हैं। इस ओवर के पश्चात 1 ओवर शेष बचा रहा है, तो क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। पुंडलिका गेंद को लेकर, हालांकि उनका ओवर मुझे लगता है कि समाप्त हो चुके हैं, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, यानी कि 2 ओवर शेष बचे हैं। 12 गेंदों का खेल शेष बचा है। 12 गेंद में और कितना कुछ होगा। दूर वाले छोर से आर्च फार्मा लैब्स लिमिटेड बैनर छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज वार्म अप कर रहे हैं। अनंत पई दूर वाले छोर से आ रहे हैं।
आर्च फार्मा लैब्स लिमिटेड बैनर छोर से, और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर अभी मुझे लगता है कि गौतम पै स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। जी हाँ, विघ्नेश शनय स्ट्राइक एंड पर हैं। 14 के व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जबरदस्त स्ट्रोक लगाने में वो सक्षम हैं, उसी के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन क्या इस बार गेंदबाज रोक पाएंगे? उस छोर से गेंद ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर थी। पुंडलिका बिल्कुल शेर की तरह इधर उधर टहल रहे हैं। उन्होंने देखा अंपायर की तरफ, थोड़ा आधे अधूरे मन से घूमकर देखा, अंपायर ने कोई संकेत नहीं किया, गेंद को लीगल करार दिया उन्होंने। रन सभी 49 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। अनंत पै की गेंद, ओद विकेट, आक्रामक तरीके से उछालना चाहते थे लेकिन गेंद की लाइन थोड़ी छोटी रह गई है। बैक ऑफ लेंथ थी, टप्पा खाने के बाद शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ जिसे कहते हैं, थोड़ा नीची रह गई और उसको थोड़ा ऑन द अप खेलना चाहते थे। बल्ले का सिरा लगकर गेंद गई, रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। ओद विकेट, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और मानो विघ्नेश बस इंतजार कर ही रहे थे। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने गेंद को कोसों दूर खेल दिया दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए। जबरदस्त सिक्सर, जीपीएल का छक्का। उस छोर से ये गेंद दोबारा उछालने का प्रयास, ऑन साइड की दिशा में घुमाकर खेलना चाहते थे लेकिन 1 रन लेने का मौका, जी है, सिर्फ 1 रन मिलेंगे। स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई और वो गेंद जो शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, एक तरह से ऑफ ब्रेक जिसे कहते हैं, टप्पा खाकर अंदर की तरफ आती हुई, बैट्समैन को बिल्कुल पुरस्कार ही दिया गया था, उसको बिल्कुल आक्रामक तरीके से उछाल दिया 6 रनों के लिए। अब स्ट्राइक एंड पर गौतम आ चुके हैं। 56 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। यह गेंद फुल टॉस थी, उछाल दिया, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं। उन्होंने लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बहुत लाइटली लिया और इस वजह से गेंद उनके हाथ से छूट गई। अच्छा मौका था, गेंद को एकाग्रित होकर देख रहे थे लेकिन फिर अंतिम क्षणों में थोड़ा सा ढीलापन दिखा दिया जिसकी वजह से गेंद उनके हाथ से छूट गई और जीवन दान मिला बैट्समैन को। फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछालने के प्रयास में कैच दे बैठे थे लेकिन क्या छूट गया, जीवन दान मिला बैट्समैन को। उस छोर से गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बीट कर गया इस बार, अच्छा खासा स्पिन का मिश्रण था, फिरकी लेती हुई गेंद घूमकर अंदर की तरफ आई। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 6 ओवर के समाप्ति पर 58 रन 4 विकेटों के नुकसान पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स स्कोर इज ऑन 58 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आप देख रहे हो शानदार जीपीएल उत्सव 2023। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। अनंतेश पै गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं और पारी का आखिरी अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। सामने वाले छोर पर एक जांबाज बल्लेबाज विघ्नेश शनय 21 के व्यक्तिगत योग पर 13 गेंदों का सामना किया, जबरदस्त आक्रमण कर रहे हैं। राउंड विकेट ये गेंद विघ्नेश के लिए ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, अंपायर ने वाइड करार दिया श्रीनिकेत जी ने और 1 रन खाते में और लेने का जोड़ने का अवसर मिलेगा। विघ्नेश घूमकर गेंद को स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन उसको देखते हुए अनंत ने गेंद को कुछ ज्यादा बाहर कर दिया और उसमें वो खुद फंस गए क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा बाहर गई। राउंड विकेट ये गेंद इस बार ऑन साइड की दिशा में अच्छा स्ट्रोक करने का इस्तेमाल किया, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद गई, उन्होंने गेंद को उठा लिया। अच्छा मौका था कि वो गेंद को उठाकर नॉन स्ट्राइक हैंड की दिशा में थ्रो कर पाते लेकिन हुआ यूं कि बैट्समैन जिस तरह से गेंद को खेल चुके थे उस गेंद को मिड विकेट में फील्ड करने के लिए बैट्समैन को दोनों घुटनों को नीचे झुकाना पड़ा, फिर उठकर गेंद को जब तक वो थ्रो कर पाते बैट्समैन विघ्नेश क्रीज में पहुंच गए। राउंड विकेट ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, क्या अच्छा स्पिन का मिश्रण था लेकिन अंपायर ने कहा कि वाइड है। अच्छी लेग ब्रेक कर रहे हैं, गेंद लेग स्टंप के ज्यादा बाहर लाइन थी, घूमकर फिरकी लेती हुई स्पिन होकर अंदर की तरफ आई लेकिन फिर भी लेग स्टंप के बाहर रही, इस वजह से अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया है। इस छोर से गेंद घुमाकर गेंद को खेल दिया फील्डर के दिशा में, इस बार नहीं बचेंगे और इसी के साथ बैट्समैन आउट हो गए।
गौतम भाई आउट हो गए और मुझे लगा कि शायद विघ्नेश हैं, जी नहीं, गौतम भाई ने स्विच हिट करने का प्रयास किया और फील्डर की दिशा में गए, कैच कर लिए गए। इसी के साथ एक और विकेट का पतन हो चुका है। गेंद स्पिन होकर अच्छे लेंथ के साथ टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछल कर आई, उसको ऑन दी अप घुमाकर खेल दिया बैट्समैन ने और फील्डर की दिशा में गई, जो लगभग कवर डीप में मौजूद थे, उन्होंने गेंद को बहुत आसानी के साथ कैच कर लिया। तो इस कैच के साथ ही विकेटों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 5 पर। 61 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। आखिरी ओवर प्रगति पर है। कीर्तन स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और अनंतेश पै गेंद को लेकर तैयार। उनकी गेंद मात्र एक रन अब तक वो खर्च कर चुके, 3 गेंद फेंक चुके हैं और अभी भी वो कोई कसर नहीं रखना चाहते हैं, इतना लाइटली नहीं लेना चाहते हैं बैट्समैन को। इस वजह से बार बार फील्डिंग में वो परिवर्तन करने के पश्चात तैयार हो रहे हैं। जो लाइन लेंथ वो कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। स्पिन बहुत ज्यादा कराते हैं इस छोर से। उनकी गेंद राउंड विकेट, ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उछाल दिया, कैच हो सकता है, कोई फील्डर उस ओर मौजूद नहीं है। स्क्वायर लेग डीप में गेंद गई है, फील्डर ने गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर स्प्रिंग की तरह उछलकर अपने टोपर गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया। लेग अंपायर ने, हालांकि स्क्वायर लेग के अंपायर ने उंगलियों को उठाते हुए कहा, इस अपील को स्वीकार करते हुए कि बैट्समैन आउट हो गए हैं। एक और विकेट गिरा, क्रीज से रह गए, जल्दबाजी में दूसरा रन चुराने के प्रयास में 7वें विकेट का पतन हो चुका, माफ कीजिएगा 6ठा विकेट गिर चुका है। तो एक और विकेट का पतन आप देख रहे हो जीपीएल उत्सव 2023। डीजे जी हाँ, तो तीसरे अंपायर की ओर संकेत किया गया है। दोनों अंपायर ने आउट पहले कह दिया, लेकिन फिर शायद कहीं शंका शुभा न रहे बैट्समैन और फील्डरों के बीच में, और इस वजह से उन्होंने जिम्मेदारी तीसरे अंपायर को सौंपी है कि आखिर वो बता दें कि मामला क्या है। और इस वजह से दोनों तीसरे अंपायर इस वक्त कैप्चर किए गए दृश्य को देख रहे हैं और फिर पता लगेगा। कैमरामैन अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। नदी छोर पर ऊंट की सवारी को दिखा रहे हैं, दर्शकों का हुजूम, उनका झुंड, उनकी तादाद दिखा रहे हैं, और जो दर्शक ऊंट की सवारी कर रहे हैं वो बड़े मजे ले रहे हैं। एक छोटा सा नन्हा सा बालक, उसके अलावा एक बड़ा डॉल आप देख रहे हैं। तो कैमरामैन अपने तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि क्या अच्छे अच्छे दृश्य वो कैप्चर कर सकते हैं जो जीएसबी के इस श्रृंखला को 4 चांद लगा सकते हैं। शानदार प्रयास। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ और अंपायर मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्या बैट्समैन क्रीज में पहुंच गए या रह गए। तो आउट होने के पश्चात एक और गेंद, जिसको पलटकर खेलने का प्रयास, फील्डर गेंद के ऊपर आ गया, 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। तो आउट का संकेत हालांकि हुआ है और रन्स 64 पर, विकेटों के नुकसान पर 64 फॉर 6, जबकि मुझे लगता है कि शायद कुछ एक गेंदें बची हैं। राउंड विकेट, अनंतेश की गेंद, ये गेंद फुल टॉस थी, थोड़ा सा आगे निकल गए, खेलने के प्रयास में मिस कर गए और फुल टॉस गेंद को मिस कर गए। अंपायर ने कहा कि भाई है 1 रन और मिलेंगे, रन्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हालांकि वैसे भी बड़ा विशाल स्कोर खड़ा होने जा रहा है। आखिरी गेंद को लेकर अनंतेश तैयार हो रहे हैं, बहुत कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे हैं, बिल्कुल अंकुश सा लगा रखा है। इस बार लॉफ्ट किया है गेंद को, हवा में तैरती हुई लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, फील्डर के हाथ में, उनके झोली में चली गई। इसी के साथ एक और विकेट का पतन, एक और विकेट गिरा और ओवर समाप्त हो चुका है। रिप्ले में भी देखा जा सकता है, राउंड विकेट ये गेंद, बैट्समैन थोड़ा सा स्टेप आउट कर गए, गेंद को उन्होंने आक्रामक तरीके से हाफ वॉली पर लेकर उछाल दिया। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जो फील्डर थे उन्होंने
गेंद को कैच कर लिया खूबसूरती के साथ। इसी के साथ एक और विकेट का पतन और 7वां ओवर समाप्त हो चुका है। तो 7 ओवर की समाप्ति पर 65 रन 65 फॉर 6 यानी कि जीत का लक्ष्य 66 इज द टारगेट। और डेडली पैंथर्स 66 रनों को बनाता है तो किस तरह से अगर नहीं बनाता है तो किस तरह से, ये देखने वाली बात होगी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और इस वक्त मैं समझता हूं कि इस वक्त अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं आगे के विवरण के लिए हमारे साथी कमेंटेटर सुकुमार जी को अनुरोध करता हूं कि वो कृपया कन्नड़ में विवरण सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ಹಲೋ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಜಯ್ ಸರ್. ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 66 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಸೆದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲು ತಂಡ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು 65 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಇರಾದೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲು ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. 7 ಓವರಿನಲ್ಲಿ 66 ರನ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 20-25 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದೇ ಆದಲ್ಲಿ 66 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆನ್ನತ್ತಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಿ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ GPL ಉತ್ಸವ್ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಬ್ರಾಟ್ ಯು ಬೈ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಇದೀಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಇರಬಹುದು, ಒಂಟೆ ಸವಾರಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೋಟಿಂಗ್, ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇದೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು 6 ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಇದೀಗ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನಾಟದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ 2 ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಿದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಘ್ನೇಶ್, ತಂಡದ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ. ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು, ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗರು ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಟ್ಟುವಂತಹ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಂತಹ ದಾಂಡಿಗ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ದೂರವನ್ನ ಚೆಂಡು ಕ್ರಮಿಸದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಾಶಾದಾಯಕರಾಗಿ ದೈವಿಕ್ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 66 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ
ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ ತಂಡ. ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ತಮಗಿದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಗೆಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಬರನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಒನ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 41 ಎಸೆತ ಬಾಕಿಗಿದೆ. 66 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಗುರಿ ಇದೆ. ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಇನ್ನುಳಿದ 11 ಎಸೆತಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಆದರೆ ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಸಂಬಿತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಪು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ. 1 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಇದೀಗ 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶೇಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ, ಆರಂಭಿಕ ದಂಡಿಗ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದಂತ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 4 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 4. ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ರೋಪ್. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿತ್ತು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 8. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂಡ ಚೇತರಿಕೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದಂತಹ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲೇ 9 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿ 66 ರನ್ ಬೆನ್ನತ್ತುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲು ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಡಿಪ್ ಸ್ಕ್ವಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೋರ್ವ ವೈಡೀಶ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಇದೀಗ ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಆನ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬಲಿಷ್ಠ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸಂಬಿತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆತನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪು. ಎರಡನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ 1 ರನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2 ಅಂಕಿಯತ್ತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 10 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸಂಬಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ, ಸತತವಾಗಿ 2 ಅಗಲ ಎಸೆತ. ತನ್ನ ಲಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಎಸೆತ ಕೂಡ ಅಗಲ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ರನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 66 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸುಲಭ ಅಂಕಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮಾಲ್ಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ, ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ 6. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ 66 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು 66 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನತ್ತಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 6. 2 ಎಸೆತ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದಂತಹ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಮುಖೇನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಾಗುವಂತಹ ಸಮಯ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಎಸೆತ, 2 ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದಂತಹ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023ರ ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 6 ಅವಕಾಶವಂತೂ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 14 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 23ರಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1.3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಆರಂಭವಂತೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ, ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು 6. ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ದಂಡಿಸಿದಾಗ 2ನೇ ಓವರಿನ 3ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ. ತನ್ನ ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 5ನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಫ್ ಸಂಬಿತ್ತು. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಪು. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸೆತಗಾರ ಅನಗತ್ಯ ಅಗಲ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆದಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವತ್ತ 1.3 ಓವರ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 30 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕೂಡ ದಿಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನತ್ತುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2. ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆಯಾಡಿದಂತ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯು ಮಿಸ್ ಐ ಹಿಟ್ ಅನ್ನುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇತ್ತು. 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ತಂಡವನ್ನ
ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ್ರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡಬಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಟಿನ ಮೇಲಂಚಿಗೆ ಬಡಿದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರಿದಾಗ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ತಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತಹ ಪುಂಡಲೀಕ ಪೈ ಕೇವಲ 5 ಎಸೆತಗಳನ್ನ 6 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಬಾರಿ ಪುನಿ. ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತಹ ಪುಂಡಲೀಕ ಪೈ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತು ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ ಪುಂಡಲೀಕ ಪೈ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಬಳಿಕ ತಾನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲು. ಆದರೆ ಆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತಹ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಪುಂಡಲೀಕ ಪೈ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಕೂಡ 1 ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆನ್ನತ್ತುವತ್ತ ಮುನ್ನೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ ತಂಡ ಅಂತಿಮ 30 ಎಸೆತದ ಆಟ ಬಾಕಿಗಿದೆ. 30 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಗಿದೆ. ಎಸೆದ 1ಕ್ಕೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಸಂಬಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ 5 ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳಿಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡದಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗರು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಆದರೆ 3ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 37ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 29 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಗಿದೆ. 27 ಎಸೆತ ಬಾಕಿಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಘಟ್ಟದತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೇರುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 4ನೇ ಬಾರಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸಂಬಿತ್ತು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ದುಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ ತಂಡದ ಓರ್ವ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಇದೀಗ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ, ನೇರವಾಗಿ
ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಟ್ಟಿದಂತಹ ಪುನೀತ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ ತಂಡ. 30 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 30 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2.5 ಓವರಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 37 ರನ್ನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 25 ಎಸೆತ 29 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಗಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ 1.5 ಓವರ್ ಎಸೆದು 10 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಾಗ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ರಜತ್ ಶೆಣೈ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 29 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 25 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ ಬ್ಯಾಟಿನ ಕೆಳ ಅಂಚಿಗೆ ಬಡಿದಂತ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಎಸೆತ ಬಾಕಿಗಿದೆ. 28 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಗಿದೆ. ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ ತಂಡ. ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನವಿದು, ಬಲು ದೂರದ ಬೌಂಡರಿ ಇರುವ ಕಾರಣ 1 ಅಂಕವನ್ನ 2 ಅಂಕವನ್ನ 3 ಅಂಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1-2 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 1-2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಬಳಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀ ಹಿಯರ್. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ 24 ಎಸೆತ 28 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಆರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೆಗ್ ಬಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ, ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 4 ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 28 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದಂತ ಎಸೆತಗಾರ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ರಜತ್ ಇದೀಗ ನಿರಾಶಾದಾಯಕರಾಗಿ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಕಾರಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಡವಂತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡಿಗೂ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಗೂ 4 ಅಂತರವಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡಬಿದಂತಹ ರಜತ್ ಇದೀಗ ನಿರಾಶಾದಾಯಕರಾಗಿ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇದೀಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅನಂತೇಶ್ ಪೈ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 28 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. 23 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಬಲಿಷ್ಠ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. 4 ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಆನ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅನಂತೇಶ್ ಪೈ. ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಆದರೆ ಪುರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂತಿಮ 8 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಅನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಪುಂಡಲೀಕ ಪೈ, ಆದರೆ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನ ವಂಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಯಾವ ರೀತಿ 30 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 30 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಾಲ್ ಅಡಿ ಹೊಡೆತ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 27 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಗಿದೆ 20 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ ತಂಡ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ 20 ಎಸೆತ 27 ರನ್ ವಿಜಯದ ಗುರಿಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಂಬಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 1, ಕಬಳಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ 1. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಅಪ್ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತಿಮ 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 4. ಪ್ರಥಮ 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 36 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಳಿಕದ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 4. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 40 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತ 26 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಗಿದೆ. ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 8.67 ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ 3 ಓವರಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು, ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ. Hello, check. Mic testing 1 2 3 check. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. और जिस तरह से रन्स बने हैं, एक तरह से कहना होगा कि बैट्समैन जानते हैं कि जब आपके सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य हो तो किस तरह से शुरुआत करनी होगी, और उस प्रयास में अच्छे खासे रन्स बनाए गए. 40 रन्स 4 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर शेष बचे हैं. 18 गेंदों का खेल शेष बचा है. और इक्वेशन आपको बता दें, 18 गेंदों में रनों की जो दरकार है कुल मिलाकर 26 रनों की दरकार. बैकफुट पर गए, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को उन्होंने थोड़ा सा अपरकट के अंदाज में गेंद को खेल दिया. क्या शानदार स्ट्रोक है. फील्डर गेंद का पीछा करते रह गए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर दम तोड़ गई और यह 4 रन. शानदार जीपीएल का चौका. बाईस रनों की दरकार, 17 गेंदें शेष बची हैं. क्या कमाल का स्ट्रोक. गणेश ने बहुत जल्दी गेंद को पहचान लिया. शॉर्ट ऑफ लेन थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा रूम मिला, पीछे हट गए, पोजीशन बना ली और जिस अंदाज में स्ट्रोक खेला बिल्कुल काबिले तारीफ. बहुत जल्दी एक तरह से अपने फुटवर्क का इस्तेमाल किया, पीछे पैर को ले गए और शरीर का संतुलन बनाया. और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक तरह से ऊपर के क्लास के जो बल्लेबाज बैट्समैन बल्लेबाजी करते हैं उस अंदाज में गेंद को उन्होंने अपर कट के अंदाज में बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को लगभग गली डीप के दिशा में कट कर दिया 4 रनों के लिए. 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर गणेश कामत बिल्कुल खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं. 14 रन वो बना चुके हैं. 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जबकि नागेश बालिगा एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं और 17 नंबर के जर्सी में थोड़ा सा वार्म अप करने के पश्चात दोबारा तैयार हो रहे हैं. विकेट, उनकी गेंद बैकफुट पर गए, एक और करारा स्ट्रोक है. क्या शानदार स्क्वायर कट था, लेकिन इस बार प्लेस नहीं कर पाए. फील्डर की दिशा में गई, जो पॉइंट में डीप में मौजूद हैं उन्होंने गेंद को रोक लिया. सिर्फ 1 रन लेने का मौका मिलेगा बैट्समैन को और इस 1 रन के साथ गणेश कामत बढ़कर पहुंच चुके हैं 15 पर. 45
गणेश नायक माफ कीजिएगा, 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। यह गेंद उल्टे हाथ से गेंद को खेल दिया, हवा में कैच हो सकता है, 2 फील्डर गेंद के नीचे आ गए और एक ने गेंद को कैच कर लिया। दूसरे की तरफ थोड़ा सा तेवर बदलते हुए देख रहे हैं कि आखिर एक कैच पकड़ रहा है तो दूसरे को आने की आवश्यकता नहीं है। शानदार कैच, इस कैच के प्रायोजक थे जीपीएल उत्सव 2023। डीजे स्मिथ अगर मौजूद हैं तो कृपया वो तैयार हो जाएं शानदार धुन बजाने के लिए। अभी समय है, दस्तूर है और एक तरह से दर्शकों की तादाद काफी संख्या में है, तो निश्चित तौर पर शानदार धुन अगर बजेगी तो वातावरण चकाचौंध हो जाएगा। रोहित शर्मा जी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बता दें आपको 45 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इक्वेशन आपको बता दें, गेंदें जो बची हैं इस ओवर में अभी 3 गेंदें शेष बची हैं, यानी कि कुल मिलाकर और 15 गेंदें शेष बची हैं, 21 रनों की दरकार है। 21 रन टू गेट इन रिमेनिंग 15 बॉल्स। शाम के 6 बजने में अभी कुछ मिनट बाकी हैं। सूरज दूर आंखों से ओझल होने की ओर जा रहा है। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो डीजे 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 स्मिथ, हेलो चेक, माइक ऑपरेटर कृपया जल्दी आइएगा प्लीज, माइक ऑपरेटर। हेलो चेक, हेलो चल, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो। ये गेंद ऑन साइड की दिशा में, गेंद को हवा में खेल लिया, स्क्वायर लेग पर फील्डर बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच और इसी के साथ एक और विकेट का पतन है। संघर्ष अभी जारी है, क्या जबरदस्त खेल चलता हुआ। और जिस तरह से आपने देखा शरीर के थोड़ा सा नजदीक आई थी, इतना समय नहीं था, स्थिति में नहीं थे कि गेंद को घुमाकर खेल पाए और इस प्रयास में कैच दे बैठे। स्क्वायर लेग पर फील्डर ने थोड़ा सा पीछे की तरफ अपने आप को ले जाकर गेंद को कैच कर लिया और एक विकेट का पतन हो चुका है। तो शानदार खेल चलता हुआ, फील्डर जो कि अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि अभी रोमांच बचा हुआ है। थैंक यू। 66 रनों का लक्ष्य जिसका पीछा माल से जो कि कर रही है टीम माल से, और ऐसे में जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, 6 विकेट्स गिर चुके हैं, 49 रन बन चुके हैं, यानी कि 50 का आंकड़ा छूने में भी एक और रन की दरकार है। इस छोर पर जो कि रामकृष्ण के आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, 2 रन, हालांकि 1 रन वो अब तक दे चुके हैं। 49 for 6। उस छोर से गेंद इस बार खेलने का प्रयास, चूक गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर नहीं है। क्या जबरदस्त क्षेत्ररक्षण है। ऑफ साइड पर अगर देखा जाए तो 3 खिलाड़ी दायरे को घेर कर खड़े हैं, थर्ड मैन शॉट में है, पॉइंट में एक खिलाड़ी मौजूद है, कवर में एक खिलाड़ी तैनात है। तो इस क्षेत्ररक्षण के साथ दूर वाले छोर से रामकृष्ण गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर सुरेंद्र तैयार। दूर वाले छोर से यह गेंद
ओवर विकेट, बहुत अच्छी गेंद, बीट कर गई बैट्समैन को, बिल्कुल स्लॉट से थोड़ा सा आगे गिर गए, उसको जड़ से निकाल कर खेलने के प्रयास में चूक गए, इतना समय न मिला कि गेंद को वो खेल पाए। पहले ओवर में मात्र 2 रन देकर एक शानदार विकेट अर्जित किया था। यह गेंद घुमाकर खेलने का प्रयास, पैरों से टकराई, विकेट कीपर झपट पड़ रहे हैं गेंद के ऊपर, लेकिन लेग बाय के रूप में 1 रन लेने का अवसर। तो रामकृष्ण बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस रन के साथ रन्स बढ़कर पहुंच चुका 50, यानी कि 50 अप, 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया। शानदार रनिंग है टीम मालसी, जिन्होंने 50 रन पूरे कर लिए। 16 और रनों की दरकार उनको इस मैच को जीतने के लिए, और गेंदों और रनों के बीच में आंख में चोली का खेल चलता हुआ इस वक्त इस छोर पर विनोद कामत स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और रामकृष्ण की गेंद, क्या होगा? विनोद कामत अभी अपना खाता नहीं खोल पाए हैं, उनके लिए शायद थोड़ा सा समय लेने का अवसर हालांकि है भी नहीं है। ये गेंद ड्राइव करने का प्रयास, बल्ले का निचला सिरा लेकर गेंद गई, ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाए, बिल्कुल शॉट मिड विकेट की दिशा में। गेंदबाज ने खुद फॉलो थ्रू में आकर गेंद को उठा लिया। इसको देखते हुए दोनों बैट्समैन ने तेज कदमों के साथ 1 रन को पूरा कर लिया। 51 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, और 15 रनों की दरकार है। इस ओवर के पश्चात सिर्फ 1 ओवर बचा रहेगा, यानी कि अभी 8 गेंदें शेष बची हैं और 15 रनों की दरकार है। 8 गेंदों में 15 रन, चौके छक्के निश्चित तौर पर चाहिए मालसी को इस मैच को जीतने के लिए, जबकि डेडली पैंथर जबरदस्त प्रयास कर रहा है। उद विकेट गेंद, और बहुत अच्छी गेंद थी, बैट्समैन गेंद को खेलने का सफल प्रयास कर गए। गेंद घूमकर फ्लोट होती हुई स्टंप्स पर आकर इस तरह से गिरी मानो कोई जादू किया गया हो। यू मिस मी, आई हिट यू, कमाल की गेंद, और इसी के साथ बोल्ड हो गए। क्या अद्भुत गेंद थी, बैट्समैन बिल्कुल बीट हो गए। गेंद को आक्रामक तरीके से उछालने का प्रयास, फ्रस्ट्रेशन था क्योंकि किसी भी हालत में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना था, उस प्रयास में बीट हो गए, बोल्ड हो गए, और ज्यादा सेट भी नहीं हुए थे, खाता भी नहीं खोला था, बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए बैट्समैन, और उसी के साथ विकेटों की संख्या बढ़कर 7 पर पहुंच चुकी है। डेडली पैंथर्स बिल्कुल उस खूंखार चीते की तरह, पैंथर की तरह प्रयास कर रहा है। शानदार गेंदबाजी चल रही है। रामकृष्ण दूर वाले छोर से तैयार हुए, उनकी गेंद ओवर द विकेट, बैट्समैन को आक्रामक तरीके से उछालने का प्रयास, इस बार चूक गए, ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर बिल्कुल एक कोण बनाकर निकल गई, और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 6 ओवर के समाप्ति पर 51 रन बन चुके हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। 51 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 6 गेंदें बची हैं और 15 रनों की दरकार है। क्या मालसी बना पाएगा? टीम मालसी के जितने समर्थक है, चाहने वाले, उम्मीद करते हैं कि ये 2 बल्लेबाज कुछ आक्रामक स्ट्रोक खेलकर दिखा दें कि मालसी में वो दमखम है, वो प्रतिभाशाली टीम है, इतनी कमजोर नहीं है कि इतने आसानी से हार मान जाए। जबकि डेडली पैंथर्स हमेशा की तरफ से खूंखार हैं, उस खूंखार चीते की तरह जो अपने नाम के मुताबिक शानदार प्रयास करते हैं गेंदबाजी में। उन्होंने आज बिल्कुल अद्भुत गेंदबाजी की है। हालांकि कुछ गेंदबाज पिट गए, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो अच्छा कमबैक उन्होंने किया। अब आखिरी ओवर में 15 रनों की दरकार है। ऐसे में इस छोर पर गेंदबाजी के लिए हरिप्रसाद आक्रमण पर आ रहे हैं, हमसे दूर जाने के लिए तैयार। फुजोलना बैनर छोर से, फुजोलना एंड से वो गेंदबाजी करेंगे। 2 साइड स्क्रीन लगाए गए हैं, एक बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे जो साइड स्क्रीन है, जो काले रंग का होता है, जिसको साइड बैट्समैन को करने के लिए जब बैट्समैन इस छोर से बल्लेबाजी करें, और इस छोर पर कमेंटेटर बॉक्स के बिल्कुल बगल में एक साइड स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है। इस छोर से ये गेंद, हरिप्रसाद की गेंद, लॉफ्ट करने का प्रयास आक्रामक तरीके से मिस कर गए, ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेंथ में ज्यादा थी, लेकिन बीट होने के पश्चात अंपायर की तरफ संकेत किया विनोद ने, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया, दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। शानदार प्रयास है, कमाल की फील्डिंग का प्रयास किया, और इस शानदार फील्डिंग को हैट्स ऑफ कहना होगा। आज डेडली पैंथर्स के खोखार चीते बिल्कुल छाए हुए हैं। कमाल की फील्डिंग है। कीर्तन ने दौड़कर जैसे ही गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीचे रह गई, ऐसा लगा कि फील्डर मिस कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने झुककर गेंद को अंदर की तरफ ढकेल दिया, खुद लुढ़क कर बाहर की तरफ जाकर गिर गए और अपना सब कुछ झोंक दिया, चौके को बचा लिया। और अब आपको बता दें, कुल मिलाकर
13 रनों की दरकार है और गेंदें बची हैं चार। जी हां, इस बार आक्रामक तरीके से उछालने के प्रयास में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 1 रन लेने का अवसर। 3 गेंदें शेष बची हैं, 13 रनों की दरकार है, 13 रनों की दरकार। इन शॉट अगर कहें तो 2 जबरदस्त छक्के की जरूरत है और हरिप्रसाद गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर प्रताप, ये गेंद प्रताप के लिए उछालने का प्रयास कर गए, मिस कर गए। विकेट कीपर ने जल्दी गेंद को उठा लिया। नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में खुद चल कर आ रहे हैं, बैट्समैन को लौटने पर मजबूर किया उन्होंने। तो अब सिर्फ औपचारिकता बची है। डेडली पैंथर्स ने कब्जा बना लिया। 2 गेंदों में 12 रनों की दरकार है। और विकेट, ये गेंद लॉफ्ट करने का प्रयास मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। हरिप्रसाद दोनों हाथों को ऊपर कर गए। विकेट कीपर ने भी हौसला दिखाया, जानते हैं कि मैच उनके कब्जे में आ चुका है, जीत के दहलीज पर वो खड़े हैं। सिर्फ 1 रन का 1 गेंद बचा हुआ है। इस 1 गेंद को लेकर हरिप्रसाद तैयार हुए। दोबारा उन्होंने बीट किया, स्लो ऑन थी डिलीवरी। इसी के साथ डेडली पैंथर्स ने इस मैच को जीत लिया। कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी उन्होंने की। बहुत बहुत अभिनंदन, शानदार प्रयास उन्होंने किया। मेनी कांग्रेचुलेशंस। और टीम मालसी जिन्होंने अच्छा प्रयास किया, आखिरी दम तक वो लड़ते रहे। लेकिन क्रिकेट में अक्सर किसी एक को जीतना है तो किसी एक को हारना पड़ता है और इसीलिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ। आपके इस प्रयास के लिए हैट्स ऑफ कहते हैं। और इससे पहले आगे नया मैच शुरू, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाए। माइक्रोफोन पर आगे का विवरण सुनाने के लिए सुरेश बिट जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया जिम्मेदारी को संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद। Well, it's time for us to announce the Man of the Match award. The Man of the Match award goes to Vignesh Shadai of Deadly Panthers. So I would request Mr. Vignesh Shadai to come to the presentation area to collect your Man of the Match award from our chief guest. Vignesh scored astonishing knock of 22 runs with the help of 2 sixers. And also in his spell of 2 overs, he just conceded 11 runs and he has picked up 2 important wickets. So Vignesh, if you can please come to the presentation area and collect the Man of the Match award from the chief guest. So within a short while from now, we'll be having one more match which will be now played between Veera Venkatesh Warriors versus Auburn Diamonds of Udupi. So for the further commentary of this match, I'm going to hand over the microphone to Mr. Sukumar to continue in Kannada language. Thank you, sir. Hello. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲು ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಸಿ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 22 ರನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಓವರ್ನ ಎಸೆದು 11 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲು ತಂಡದ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಮ್ಮಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್. ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳಿಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪುಜಲೋನ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ರೋಪ್. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಸುಲಭ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚೆಂಡನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಪದ್ಮನಾಭ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಬೌಂಡರಿ ಗಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ. ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡು, ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ. ಸತತವಾಗಿ 2 ಎಸೆತ, 2 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ 2 ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇತ್ತು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು, ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು. ಆ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 2 ಬೌಂಡರಿ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 8 ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಡಿಸಬಲ್ಲರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್, ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಪು. ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ 3 ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಎಸೆದ್ರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಓವರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ. ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ನ ಮೇಲಂಚಿಗೆ ಬಡಿದಿತ್ತು. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಿಯತ್ತ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಿಂದ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ವಿನಾಯಕ್, ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗ ವಿನಾಯಕ್. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಡಾಟ, ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ, ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 11ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 4 ಎಸೆದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ. ಶೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ ಎದುರಿಸಿದ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ 9 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಾಗ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ 12 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ವಿನಾಯಕ್ ಶೈಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ, ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ನೋಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ದುಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ರನ್ಗಳನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಲ್ಲೇ ತಣ್ಣೀರೆರಚಿದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು 18 ರನ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವತ್ತ ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಶಣೈ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ
ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರ ಶೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ವಿನಾಯಕ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆದ ನಿಧಾನಗತಿಗೆ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 1.1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನಂತ ಶೆಣೈ ತನ್ನ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಶೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ನಂಬರ್ 2 ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ. ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 1 6 ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ 6 ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರು ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 24ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶೆಣೈ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 6. 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 2 6 ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಪದ್ಮನಾಭ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಇದೀಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 6 ನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಿಡಿಸಬಲ್ಲರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 6 ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸತತವಾಗಿ 2 6 ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ 30ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1.4 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು 22 ರನ್ಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 6. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು, ಸರಿಯಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ 6 ದಾಖಲಾದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 36ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯು ಮಿಸ್ ಐ ಹಿಟ್ ಅನ್ನುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೌಲರ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬೀಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 28 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಸುಂದರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 6 ಮತ್ತು 2 ಬೌಂಡರಿ ಅಡಕವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 36. ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 18ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಂತಹ ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಇದೀಗ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ ಅವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 50-55ರ ಒಳಗಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಷಣ್ಮುಖ್. ಶೈಕಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ವಿನಾಯಕ್. 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 6 ನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ 7 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿನಾಯಕ್. ಶೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖ್. ಯುವ ಆಟಗಾರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ವಿನಾಯಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ.
ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 1+6 7 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 44ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವೇ ಹೈ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕ್ಷಮಿಸಿ 43ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿನಾಯಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 80-90ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದೆ ಆಬರನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಷಣ್ಮುಖ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 8 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಷಣ್ಮುಖ್ ಟು ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ. ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದಂತಹ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಷಣ್ಮುಖ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಾಗ 2.3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 45. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಂತಹ ಆಬರನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಶೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ಶೆಣೈ ಶೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4ನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಫಲ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿಗಿದೆ 3ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತ ವಿನಾಯಕ ಶೆಣೈ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಕೂಡ ವಂಚಿಸಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 46ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಷಣ್ಮುಖ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ 13 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಷಣ್ಮುಖರವರ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಆಬರನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್. 50 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಆಬರನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ 4 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೋಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ GPL ಉತ್ಸವ್ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಬ್ರಾಟ್ ಯು ಬೈ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಮುಂದಿನ 4 ಓವರಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಇವರನ್ನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So thank you, Sukumar. Hello and welcome back to this Sahyadri College grounds. So good evening, everybody. This is Suresh speaking the microphone. Welcome all of you to this Sahyadri College ground here at Mangalore. This is the Arch Pharma Labs GSB Premier League 2023 limited overs tennis ball floodlight cricket tournament is being conducted by Kodiak Sports Association of Mangalore.
So 16 different teams are participating in this particular tournament, and the winners of this tournament will fetch a cash prize with the attractive trophy, and at the same time the runners-up team will also get cash prize along with the runner-up trophy. And not only this, along with this there will be some individual prizes like best batsman, best bowler, man of the series and man of the match. The man of the series player will be awarded with attractive Suzuki Avenis bike, which is being sponsored by Pi Sales of Suzuki. Meanwhile, the match is going on here between Veera Venkatesh Warriors versus Auburn Diamonds. Auburn Diamonds are in a very good position so far throughout the tournament. They played brilliantly. They have won both the matches which they have played. This is a third round match for their team. And at the same time, as far as VV Warriors is concerned, they played 2 matches so far and they have lost both the games. And this is the last round match for VV Warriors. So some kind of discussion is going on there among the umpires. So I think so very cool atmosphere here today at Sahyadri College Stadium. Crowd is more than expected. We can see some colorful banners, advertising boards, colorful flags all around the ground. And we are thankful to those who have supported us in giving these kinds of banners. We are also thankful to our donors who made this tournament a grand success. And we hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future also. Bowler from the far end converted that into full toss, crashing drive to the offside. Tremendous shot over the extra cover. There is a protection. The fielder from the extra cover region comes across and collects the ball. But before the fielder collects the ball, there is ample time for both these two batters to cross over for an easy single. So one more run has been added to the total of Auburn Diamonds, which takes their full score to 53 now. 53 with 1 wicket down, and we are in the 4th over of the innings. The man out is Padmanabha for 28. Padmanabha played astonishing knock of 28 runs with the help of 3 sixes and 2 boundaries in his innings. So what a great start he has given, dominated right from the word go. So Padmanabh has set a good foundation for the rest of the team, and he has set a very good platform here. Anand Shanai, the bowler, a tall man from the far end, from the Arch Pharma Labs Limited end. In the right arm round the wicket fashion, he bowls slower delivery, bit of variation in the pace of the ball. The pace deceives the batsman. Batsman had no clue about that ball, so no runs resulted here. End of the over number 4. So after the completion of 4 overs, it is 54 for the loss of 1 wicket, and you are watching GPL Utsav 2023, brought to you by Kodial Sports Association of Mangalore. Youth of GSB is hosting the live broadcast of this tournament, so people from all corners of the world can watch each and every matches of this GPL tournament. This is the 7th season of GSB Premier League cricket tournament, which is very well organized by Kodial Sports Association of Mangalore. The final match will be played tomorrow evening at around 8 o'clock, and after the final match we have got grand presentation ceremony over here. Some of the chief guests will be presiding over the function tomorrow, so we'll have to wait and see which team is going to become the champions of this tournament to lift this attractive GSB Premier League 2023, sponsored by Arch Pharma Labs Limited. Arch Pharma Labs are the title sponsors of this GPL tournament. We can see the Arch Pharma Labs end on the far end, and our one more sponsor is Puzalana. On the commentators box end we have got a end banner. Puzalana are the main sponsors of this tournament. So floodlights are on now. Left-hander is on strike. The ball is in the hands of the bowler Lakshmi Shah. With a short run up, he will be bowling in the round the wicket fashion for this left-handed batsman. Almost all the fielders are standing very close to the boundary ropes on the onside, because he's a good timer of the ball, one of the hard hitter of the ball. He can hit the ball, he can smash the ball all around the ground here. He goes for a big one. Ball is in the air. It could be out as the fielder is underneath it, and he's out.
So that was a short of length delivery. He goes for a big one, but didn't get the line of the ball properly. Not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. He played that shot with the loose hands. Not much of power behind that shot. As a result, the ball was quite high in there for a while, and the man standing at mid-wicket region, making no mistake, caught it beautifully. So one more wicket has gone down now for Auburn Diamonds. Second wicket has fallen down at the score of 55 runs. LED screen operator ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಳಾರ ಅಂಕ ಮಂಗ್ಳು ಯಾ 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 ಯಾರೆ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಕೊರಿಯಾ ಟುಗೆದರ್ ಯಾ 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 ಯಾರೆ ಕುಳಾರ ಅಂಕ ಮಂಗ್ಳು ಯಾ ಯಾ ಯಾ. So Vinayak is the man there who is back in the pavilion after playing a brilliant knock of 24 runs with the help of 2 sixes in his account. So Surendra and Vivek are the two batters in the middle now. Off. So Vinayak scored 18 runs in his individual account. So Surendra, the icon player of Auburn Diamonds, is still there, batting on 6 runs with 1 boundary in his innings. And Vivek Nayak Kota is the newcomer, all-rounder player of Auburn Diamonds. He's on strike now. Ball wraps onto the pad, loud appeal there. That should be out, and umpire's finger goes up. He has no hesitation in raising his finger there. So one more wicket has now gone down for Auburn Diamonds. Wickets are falling like a pack of cards. So this is a match between Veera Venkateshwara Warriors versus Auburn Diamonds. Veera Venkatesh Warriors captain, after winning the toss, he had decided to field first, and in reply to that, Auburn Diamonds have now scored 55 runs after 4.3 overs. So everything is good going for the team. Still plenty of wickets in hand. They need to look for big hits now in order to accelerate their score. Lakshmi Shah, the successful bowler, is ready to bowl now with a short run up from the Puzalana end. Full toss delivery, converted that into full toss, but couldn't make use of that juicy full toss. Just flicks the ball onto the onside, played that shot near the square leg umpire, and meanwhile they get a single here. So single to Purushottam, and that single will bring the dangerous batsman Suri Sastana on strike now. Surendra Pai Sastana is the icon player of Auburn Diamonds, leading from the front, playing a sheet anchor role here. This time, that's a very, very fine delivery, pitching right in the block hole, and the batsman played it defensively forward, giving full respect to that delivery, not for runs. He played almost a test cricket forward defensive stroke there, so no runs resulted. Dot delivery there by bowler Lakshmi Shah. We come back to Lakshmi Shah as the next delivery. To Surendra Pai, ball chipped up in the air, but into the vacant region. Ball safely landed into the no man's area. Fielder from the long on region comes across and corrects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. So single to Surendra, single in the last ball of the over to keep it in the strike. That's the end of the over number 5. So after the completion of 5 overs, Auburn Diamonds are 57 with 3 wickets down.
So 2 more overs to go now. We'll have to wait and see how many more runs they will be able to score in the remaining 2 overs. And as far as VV Warriors is concerned, they need wickets now. If they can pick up 1 or 2 wickets in this over, they can put some pressure on the opposition side. Change in the bowling position here. Who is the new bowler? Sujit Baliga is the new bowler to bowl the 6th over of the innings, and he will be operating his over from the far end, that is from the Arch Pharma Labs end. The 2 umpires officiating for this match are Harish Padil and Rajeshwar. He goes for a big one, ball is in the air, it could be 6, and the ball has gone directly in the throats of the fielder. Fielder standing at long on region makes no mistake, caught it beautifully, almost very close to the boundary ropes. He has converted that into an amazing catch. So, big wicket has gone down now. Surendra Pai departs. So second day of this GSB Premier League 2023 cricket tournament is going on here. For the 7th time, Kodiak Sports Association are organizing this most prestigious cricket tournament for GSB Samaj Bandhavas. We will have to really appreciate the effort and hard work put by Kodiak Sports Association, because it's not an easy task to organize such a biggest cricket tournament. So under the leadership of Mangal Padi, Naresh Shanai, Chetan Kamath and Naresh Prabhu, all along with the other teammates of Kodiak Sports Association, we are seeing a fantastic cricket tournament, 3 days of cricket festival, cricket carnival, a mega cricket extravaganza here at Sahyadri College grounds. Room outside the off stump, crashing drive to the offside, tremendous shot to the cover point region, long chase for the fielder there. They come back for the second and they completed the second run as well. So couple of runs have been added to the total of Auburn Diamonds, which takes their full score to 59 on the board. After 5.2 overs, it is 59 for the loss of 4 wickets. Only 10 balls are remaining in their innings now. Vikram Prabhu is the newcomer, one of the hard hitter of the ball. Vikram Prabhu in the previous game against Walalanke Fighters, he played astonishing knock. Meantime, the ball is in the air and straight to the fielder standing at long on region. Vikram Prabhu wanted to go for a big hit, but didn't get the line of the ball properly, not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke. He played the shot with the loose hands, not much of power behind the shot. As a result, the ball was quite high in there for a while, and the man standing at long on region makes no mistake, caught it beautifully. So one more wicket has gone down now for Auburn Diamonds. Vikram departs. So this is a match, third round match from Pool C. In Group C, we have got 4 teams: Auburn Diamonds, Walalanke Fighters Mulki, Pearl City Cricketers Putturu and Veera Venkatesh Warriors. Auburn Diamonds are in topmost position in their points table. They have won both the matches which they have played, and this is the third match for their team, and everything is good going for their team at the moment. Whereas the Walalanke Fighters have played 2 matches and they have won one match. They lost their second match against Auburn Diamonds this afternoon. And at the same time, Pearl City Cricketers of Putturu, they played 2 matches and they have also lost 1 match. So that means they have got 2 points in their points table and they are in a third position. Whereas Veera Venkatesh Warriors of Mangalore team have lost both the matches. Sujit Baliga from the far range bowls this one to the right-handed batter Vignesh Prabhu.
Room outside the off stump, crashing drive to the offside. Tremendous shot over the extra cover region. Long chase for the fielder there. Will they get the second run? Yes, they completed the second run as well. Very good running between the wicket here. Aggressive running between the wicket. Good understanding between the two batters, Vignesh Prabhu and Purushottam. And this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So a couple of runs have been added to the total of Auburn Diamonds. Once again played that shot to the offside region, gently pushing the ball to the offside, just giving the touch and going for a cheeky single here. So single in the last ball of the over to keep it in the strike. That's the end of the over number 6. So after 6 overs it is 62 for 5. So Auburn Diamonds have got a run rate of more than 10 per over. Last over to go now. Let us see how many more runs will come in this last over. The ball is in the hands of the bowler Rakshit, who is going to bowl the final over of the innings, and he will be operating his over from the Puzalana end. From the commentator's box end, Rakshit bowls. Full toss delivery, converted that into full toss, but couldn't make a use of that juicy full toss. Just taps the ball to the onside region, played that shot elegantly to the long on. The fielder from the long on region comes across and collects the ball. Meanwhile, these two batters gets only a single here. The meantime, we watch Rakshit for the second time in this over. That's a very, very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper. So no possibility of any run there. The ball pitching onto the off stump and batsman not getting the line of the ball. On that occasion, wicketkeeper Anand Shana collects the ball behind the stump, so no runs taken. Down the leg side, and this time straight to the fielder at short fine leg region. The fielder makes no mistake, caught it beautifully. So Purushottam is out. 63 for the loss of 5 wickets, Auburn Diamonds. So only 3 overs are remaining in the final over of the innings. एक टू व्हीलराच्या की मेळ्ळाला सर रजिस्ट्रेशन काउंटरा वचून ते कलेक्ट करूयत लॉस्ट जालेल्यान. Clever bowling there, intelligent bowling there by the bowler. The ball, the base deceives the batsman. Ball betrays the batsman and directly into the wicketkeeper's baggage. Rest of the job is done by the wicketkeeper. He returns the ball back to the bowler. Ball is in the hands of the bowler. Again, similar delivery. The batsman is finding some difficulty in facing his deliveries. So no runs resulted. Rakshit is bowling in the right spot. Some kind of change in the pace of the ball. As a result, the batsmen are finding some difficulty in facing his deliveries here. That's almost an Yorker length delivery pitching right in the block hole, and the batsman had no clue about that ball. So that's the end of the innings. So after the completion of 7 overs, Auburn Diamonds have scored 63 runs. That means now 64 is the victory target for Veera Venkatesh Warriors to win this match in 7 overs. This is not an easy target for Veera Venkatesh Warriors, because as far as Auburn Diamonds is concerned, they have got some experienced, outstanding bowlers. So the batsmen of Veera Venkatesh Warriors will have to really work very, very hard now
from the beginning, they should go for big hits. As we all know, first 2 overs will be mandatory power play overs. During the power play session, they need to try to steal as many runs as possible. And the batsmen will have to play with cool mind. They should not lose any wickets early in the innings. Both the openers will have to build a good foundation for the rest of the team. They need to build a good platform. Only then I think Veera Venkatesh Warriors can give a good fight for their opposition side, Auburn Diamonds. Auburn Diamonds is one of the hot favorite team of this year's GPL tournament. They have won both the matches which they have played. Meanwhile, a huge discussion is going on there among the players of Auburn Diamonds. Their fielders are slowly entering into the ground to set their field placement, and also the 2 openers of Veera Venkatesh Warriors are already also slowly marching towards the track. And before the innings of Veera Venkatesh Warriors starts, it's time for us to change the commentary language. So I'm going to hand over the microphone to one of the most experienced professional cricket commentator, Mr. Ajay Raj, who is joining with me in the commentators box. Mr. Ajay Raj has represented a national level cricket tournament also. So I'm going to call Mr. Ajay Raj to proceed the further commentary in our national language in Hindi. Thank you very much. हेलो चेक हेलो थैंक यू सुरेश भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए खेल का टेम्पो बढ़ाते हैं और लक्ष्य जो कि 64 रनों का ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, खेलने के प्रयास में जाने दी। अंतिम क्षणों में विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। वीर वेंकटेश टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला और अब 64 रनों का वो पीछा कर रहे हैं। दोनों बैट्समैन तैयार हो चुके हैं। ये गेंद फजल एंड से इस बार थोड़ा सा लोअर फुल टॉस थी, ऑन साइड की दिशा में खेलने का असफल प्रयास, हालांकि सफल हो गए। बल्ले का निचला सिरा देकर गेंद को खेल दिया। 1 रन के साथ ही रनों का बनना शुरू हो चुका है और फ्लडलाइट की दूधिया रोशनी मैदान पर फैल चुकी है। दूधिया और सुनहरी रोशनी, शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे आकाश अंधेरों में डूबता जा रहा है, दर्शकों की तादाद बढ़ती जा रही है और टिमटिमाने लगे हैं दूर दूर जो लाइट्स हैं। ये गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद, बीट कर गए बैट्समैन को। जोरदार अपील कर रहे हैं गेंदबाज, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। बिल्कुल स्लो आर्म डिलीवरी थी, टप्पा थोड़ा सा धीमी गति से आई। अंतिम क्षणों में बैट्समैन थोड़ा सा घुटनों को पीछे झुकाकर रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन ऐसे में थोड़ा बीट हो गए। रन लेने का जो अवसर था हालांकि नहीं है, 1 रन बगैर किसी नुकसान के। श्रीनिवास की गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, अंपायर ने कहा कि वाइड है। इस वाइड के रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 2 पर बगैर किसी नुकसान के। लक्ष्य 64 रनों का, गेंदे कुल मिलाकर 42 है। 42 गेंदों में 64 रनों को बनाना है और विकेट। गेंद बहुत अच्छी गेंद, इस बार बीट कर गई बैट्समैन को। घुमाकर थोड़ा सा ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से मिस कर गए। पुल करना चाहते थे गेंद को, इतना विश्वास नहीं था क्योंकि अनुमान पूरा सही नहीं निकला। गेंद शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, जिसकी वजह से जो ऑन द अप खेलने के प्रयास में बीट हो गए। ये गेंद क्या कमाल की गेंदबाजी कर रही है। इस बार टप्पा खाकर गेंद स्विंग होकर गई और इन स्विंगर के अंदाज से बैट्समैन गेंद को खेलने के प्रयास में थोड़ा सा दूर रह गए और इस वजह से संपर्क नहीं हो पाया। रन अभी भी वहीं पर सेट है। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर दायरे के अंदर खड़े हैं। ये गेंद बैकफुट पर गए, प्लेस करना चाहते थे, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। पॉइंट पे जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनके पास गेंद गई, उन्होंने गेंद को रोक लिया, लेकिन रोकते समय उनका शरीर थोड़ा सा आगे की तरफ झुक गया, घुटनों को
को झुकाना पड़ा। इसको देखते हुए दोनों बैट्समैनों ने तेज कदमों के साथ रन पूरा कर लिया है। अगले मैच के लिए दोनों टीमों के कप्तानों से अनुरोध करता हूं कृपया टॉस के लिए तैयार हो जाए। जल्दी कमेंटेटर बॉक्स के बगल में जो बड़ा मंच रखा है, बड़ा मंच बनाया गया है, वहां पर आए टॉस के लिए। रन्स आपको बता दें कुल मिलाकर 4 पहले ओवर के समाप्ति पर, जबकि लक्ष्य है 64 रनों का। और ऐसे में क्या कुछ होता है। टॉस जीतने के पश्चात वीर वेंकटेश वॉरियर्स जिन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि योजना अच्छी जरूर थी, लेकिन गेंदबाज काफी खर्चीले साबित हो गए, जिसकी वजह से 63 रन जो कि बना लिए आबरण डायमंड्स ने, और उसका पीछा करते हुए पहले ओवर के समाप्ति पर मात्र 4 रन जो कि अब तक बनाए गए हैं। प्रसाद 2 के व्यक्तिगत योग पर, दीपक कामत ने अभी अपना खाता नहीं खोला है। प्रसाद स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। विवेक नायक दूर वाली छोर से ये गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ करने के लिए बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं। जिस तरह से विवेक की ये गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हालांकि सीम नहीं है तो होता है जिस तरह से लेदर में होता है, लेकिन अच्छा मूवमेंट मिला उस छोर से। गेंद इस बार ड्राइव किया बहुत खूबसूरती के साथ, पॉइंट में जो सीध में जो रेखा जाती है उस दिशा में गेंद गई। जब तक फील्डर गेंद को समेट पाते, 1 रन तेजी के साथ दोनों बैट्समैन पूरा कर चुके हैं। रन बढ़कर पहुंच चुका है 5 पर, कोई क्षति आघात अभी नहीं हुआ है। दीपक कामत अभी स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। प्रसाद 3 रन बना चुके हैं। 7 गेंदों का वो अब तक सामना कर चुके हैं। अंदाजा लगाइए कि गेंदें कितनी अच्छी आ रही हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन पूरी तरह से हाथ खोल नहीं पा रहा है, आक्रामक स्ट्रोक्स लगा नहीं पा रहा है। मैंडेटरी पावर प्ले में शुरुआत में अगर आक्रामक स्ट्रोक्स लगते हैं तो बात बन जाएगी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा। बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में खेल चल रहा है। गेंदबाज बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। विवेक नायक दूर वाले छोर से, आर्च बैनर छोर से कर रहे हैं। उनकी गेंद बहुत अच्छी गेंद, दोबारा बैट्समैन को बीट कर गई। स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, पिछले पैर के घुटने को थोड़ा सा झुका दिया, गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए। खड़े खड़े थोड़ा सा गेंद को खेलने का प्रयास किया, जिस वजह से मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। ओद विकेट लगातार एक और बार माफ कीजिएगा चूक गए। इस बार पिछले गेंद के मुकाबले में लेंथ ज्यादा थी, लेकिन थोड़ा बल्ला विलंब से चल गया, जिसकी वजह से संपर्क नहीं कर पाए। रन अभी भी 5 पर है। तो मानसिक तौर पर अगर कहा जाए तो विवेक नायक ने बढ़त हासिल कर ली। वो बिल्कुल विश्वास के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। उस चोट से उनकी गेंद इस बार फुल टॉस से ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेल दिया। मिड विकेट डीप में गई, प्लेस नहीं कर पाए पूरी तरह से। सिर्फ 1 रन लेने का मौका मिलेगा बैट्समैन को। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 6 पर, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। सिंगल्स में अगर रन्स बनते हैं तो निश्चित तौर पर बात नहीं बनेगी, और इस वजह से दोनों बैट्समैन प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो आक्रामक स्ट्रोक कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं। श्रेय जाता है गेंदबाजों पर। वो छोर से ये गेंद, एक और अच्छी गेंद। विवेक नायक पता नहीं कहां से अच्छी अच्छी गेंदों को ढूंढ कर डाल रहे हैं। गेंद गुडलैंड स्पॉट से घूमकर थोड़ा सा ऊपर उठी और टप्पा खाने के बाद हवा में फ्लोट होकर अच्छा मूवमेंट उसको मिलता है, बाहर की तरफ निकल गई। विकेट कीपर गेंद को गैदर कर चुके हैं। सफलता हाथ लगती है, प्रशंसा बनती है, देश विदेशों में सराहा जाता है। इस वजह से क्रिकेट श्रृंखला जो कि हर साल नए कीर्तिमानों को बना रही है। इस छोर पर तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए गेंदबाज सुरेंद्र तैयार है आक्रमण पर, और रन्स मात्र 6 बन चुके हैं 2 ओवर के समाप्ति पर, यानी कि 12 गेंदों में 6 रन्स मात्र बने हैं। 5 ओवर शेष बचे हैं, 30 गेंदों का खेल शेष बचा है। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन दीपक कामत तैयार हो रहे, 1 रन बना लिए, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जबकि सुरेंद्र भाई शानदार गेंदबाज गेंद को लेकर तैयार हुए। उनकी गेंद को लॉफ्ट कर दिया, कैच हो सकता है। फील्डर बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। एक बेहतरीन कैच। इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। बैट्समैन माफ कीजिएगा, पहला विकेट गिर चुका है और बैट्समैन आउट होकर डगआउट की दिशा में बढ़ रहे हैं। रिप्ले में देखा जा सकता है ये गेंद एक अलग अंदाज में सुरेंद्र गेंद करते हैं, और इस गेंद को घुमाकर खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद हवा में ज्यादा ऊंची गई, और शानदार कैच के साथ ही ये विकेट गिर चुका है, जो सुरेंद्र ने शिकार प्राप्त कर लिया। डीजे अगर मौजूद हो तो बिल्कुल तैयार रहिए शानदार धुन बजाने के लिए हर चौके छक्के और विकेट के पश्चात। स्मिथ तो खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। शानदार प्रहार है
लगभग शाम ढल चुकी है, 6:55 और धीरे धीरे आकाश अंधेरों में डूबता जा रहा है। फ्लड लाइट की रोशनी में नहाता हुआ मैदान, शानदार दृश्य है और ऐसे में सुरेंद्र आक्रमण पर तैयार है। एक अलग अंदाज है, एक अलग शैली है गेंदबाजी की सुरेंद्र की। थोड़ा सा साइड एक्शन के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह से श्रीलंका के मालिंगा करते हैं, लगभग थोड़ा सा उस अंदाज में उनकी गेंद। ये गेंद इस बार जड़ से निकालकर गेंद को खेल दिया मिड और लेग स्टंप के ऑफ स्टंप के सीध पे थी, जिसको खेल दिया जड़ से निकालते हुए मिड ऑन डीप में गेंद गई। सिर्फ एक रन लेने का मौका मिलेगा बैट्समैन को। रन बढ़कर 7 पर पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। प्रसाद 3 पर हैं, 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जबकि दत्तेश प्रभु 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुरेंद्र पे आक्रमण पर जारी, एक शिकार प्राप्त कर चुके हैं, एक और शिकार की तलाश। ओवर द विकेट उनकी गेंद दिशा से भटक गई, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी। हालांकि संभावना थी, अंपायर ने कहा कि नो बॉल है। जी हाँ, समय लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नो बॉल है। तो नो बॉल के इस रन के साथ बैट्समैन को 1 रन तो पुरस्कार में मिल ही जाएंगे। उसके अलावा अंपायर ने हाथ ऊपर उठाकर जो संकेत किया गोल गोल, उसका मतलब है कि फ्री हिट का अवसर है बैट्समैन के पास। गेंद को लेकर सुरेंद्र तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर घुमाकर प्लेसमेंट के साथ खेल दिया है। क्या कमाल का स्ट्रोक है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई और शायद ही मौका मिले इस गेंद को रोकने का, और ये 4 रन। कमाल का जीपीएल चौका। प्रसाद इंतजार कर रहे थे कब उनको मौका मिलेगा। शॉट ऑफ लेंथ थी, शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, थोड़ा सा पीछे हट गए, गेंद को बहुत जल्दी जज कर गए, परख लिया और पलक झपकते ही बैकफुट पर अपने शरीर के संतुलन को बनाया, घुमाकर एक अच्छे स्विंग के साथ गेंद को पुल किया उन्होंने स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की दिशा में। हालांकि फील्डर मौजूद थे, 2 फील्डरों के बीच में से मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद को पुल किया 4 रनों के लिए। शानदार चौके के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 12 पर। वो छोर, इस छोर से ये गेंद बैकफुट पर गए, शॉट ऑफ लेंथ, इस बार थोड़ा सा पंच के अंदाज में गेंद को खेल दिया, कवर क्षेत्र में गेंद जा चुकी है। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर, 1 रन के साथ रन बढ़कर 13 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। सुरेंद्र पे 2-3 बार उनकी गेंदें दिशा से भटक गई। लाइन और लेंथ बहुत जरूरी है। जब साइड एक्शन से गेंदबाजी हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये आपको बिल्कुल आश्वस्त होना पड़ता है कि आपकी गेंदें लाइन पर आ रही है। स्टंप्स का लाइन बहुत जरूरी है, वरना अगर दिशाहीन गेंदें रहीं तो बैट्समैन के फेवर में सब कुछ निकल सकता है। ऐसे में दत्तेश प्रभु स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, सिर्फ 1 रन बनाकर, जबकि अब तक 7 रन खर्च कर चुके हैं 4 गेंदों में सुरेंद्र पे। 1 विकेट बहुमूल्य उन्होंने अर्जित कर लिया और गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। मिट्टी को रगड़ने के पश्चात खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, सारे फील्डर से एकत्रित होकर हालांकि एक अपना प्लेसमेंट बना रहे हैं इधर उधर जागते हुए, और सुरेंद्र पे तैयार। उनकी गेंद फुजलोना एंड से, जबकि दत्तेश प्रभु स्ट्राइक लेने के तैयार। उनके लिए गेंद ऑफ स्टंप के सीध पे थी, लाइन पर थी, जिसको हाफ वॉली पर लेकर थोड़ा सा तिरछा खेल दिया, मिड विकेट में वाइडिश डीप में गई। जब तक फील्डर गेंद को संभालते दायरे के पास जाकर 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। सिंगल से कुल मिलाकर रन बढ़कर 14 पर पहुंच चुका है। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। लक्ष्य है 64 रनों का। अंदाजा लगाइए कि अभी कितना लंबा फासला तय करना है। ओवर द विकेट सुरेंद्र पे की गेंद, अच्छी गेंद, बीट कर गए बैट्समैन को, ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली, थोड़ा सा खेलने के प्रयास में बीट हो गए और सुरेंद्र पे कमर पर हाथ रखते हुए देख रहे हैं कि आखिर किस तरह से बच गए बैट्समैन। और अद्भुत और अनोखा और अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। गेंद घूमती हुई फिरकी लेती हुई स्टंप्स पर जाकर लगी, लगभग स्पर्श किया, गिल्लियां थोड़ी सी चमक उठी, लेकिन भाग्य चमक उठा बैट्समैन का, वो बच गए क्योंकि गिल्लियां नीचे नहीं गिरी और इस वजह से बैट्समैन बाल बाल बच गए। और इसको देखते हुए गेंदबाज, विकेट कीपर, अंपायर आपस में एक तरह से गुटरगू कर रहे हैं कि किस तरह से ऐसा कुछ हुआ। ऐसा बहुत हालांकि बहुत रेयरली देखने को मिलता है, होता ही नहीं है, कम से कम ऐसा तो कभी देखने को मिला ही नहीं। गेंद स्टंप्स को एक महीम सा स्पर्श करती हुई निकली, गिल्लियां थोड़ी सी टिमटिमाने लगी, लेकिन फिर गिल्लियां नीचे नहीं गिरी, जिसकी वजह से बैट्समैन बच गए। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर शेष बचे हुए हैं। मुझे लगता है कि समय है सुरेश भट्ट जी को बुलाने का, और इस मैच के पश्चात जो दर्शक कोंकणी में विवरण सुनना चाहते हैं, जिस तरह से कल हमने प्रयास किया था, सुरेश भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि
जीएसपी समाज की जो मातृभाषा है कोंकणी और भारत की राष्ट्रभाषा जो हिंदी है, दोनों का समावेश हो जाए और शब्दों का लेन देन हो जाए। और उस प्रयास में प्रयास करेंगे कि दर्शकों का मन थोड़ा सा हल्का हो जाए, एंटरटेनमेंट मिले, कुछ मिर्च मसाला लगाकर इस क्रिकेट श्रृंखला को कुछ और बनाने का प्रयास करें। ये गेंद ऑन साइड की दिशा में घुमाकर खेलने के प्रयास में चूक गए पूरी तरह से। गेंद ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर थी, शफल किया, बाहर आ गए, लेकिन इतना कुछ परिश्रम करने के बाद भी संपर्क नहीं कर पाए। रन अभी भी 14 पर है। विवेक नायक कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। उनकी गेंद इस बार हवा में खेल दिया, ऑन द अप खेला गया स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, पंजों पर उछलकर, टो पर उछलकर उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन हो चुका है। बैट्समैन डगआउट की दिशा में बढ़ रहे हैं। रिप्ले में देखा जा सकता है पिछली गेंद जिस तरह से इत्मीनान से दौड़ते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, ऑन द अप थोड़ा सा गेंद को लपेटे में लेकर घुमाकर ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे और गेंद फील्डर की दिशा में जो लॉन्ग ऑन पर मौजूद थे उनके पास गई, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच। ढोल नगाड़ों का बंदोबस्त किया गया है, बजने शुरू हो चुके हैं। कुछ देर पहले भोपू बज रही थी और अब एक और बैट्समैन जो कि मैदान पर उतर चुका है। 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और चौथा ओवर जो कि इस वक्त प्रगति पर है। विवेक नायक शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक ये गेंद इस बार लेग स्टंप के सीध पर थी, क्या शानदार गेंदबाजी है, एंगल डिलीवरी थी, टप्पा खाने के बाद हालांकि थोड़ा सा शायद ये गेंद लेग स्टंप को उसके आसपास थी जिसको जड़ से निकालते हुए खेल दिया बैट्समैन ने। रन लेने का अवसर नहीं है। रन अभी भी 14 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। विवेक नायक मुश्किल से 2-4 कदम निकालते हैं और अच्छा खासा मिश्रण होता है स्पिन का उनका। उस छोर से उनकी गेंद, ये गेंद पलट कर स्विच हिट करने का प्रयास, रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर नहीं है। तो हमारे मुख्य अतिथि जिनका स्वागत ढोल नगाड़ों से किया जा रहा है, क्या बात है। उस छोर से गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर थी, मिस कर गए और विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो 4 ओवर के समाप्ति पर 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर तो मेडन विकेट रहा। शानदार गेंदबाजी विवेक नायक ने की है। 1 विकेट, हालांकि कोई रन उन्होंने खर्च नहीं किए। और इससे पहले के आगे 5वां ओवर शुरू, माइक्रोफोन पर आगे का विवरण सुनाने के लिए सुरेश भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया आगे बढ़े और जिम्मेदारी को संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you Ajay Raj ji. Welcome back to this Sahyadri College ground. So we have seen the first maiden over of the tournament. The bowler Vivek Nayak Kota, he has not considered any runs in that over. Very productive over for Auburn Diamonds. Anil Shena has been brought back into attack now. Flicks the ball onto the onside, stepped out very quickly. They look for the second, there could be a chance of run out. Meanwhile, the batsman, non-striker wanted the second run, but the striker was trying to send him back, rightly sent back by him. So no damage done. Only single has been added to the total of VV Warriors, which takes their full score to 15. So everything is good going for Auburn Diamonds. They are slowly marching towards the victory to register their 3rd victory in this tournament. Meanwhile, he goes for a big one, attempted for a switch hit, but not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke. As a result, the ball was quite high in there for a while. And meanwhile, there was a long chase for the fielder. The ball safely landed into the no man's area. It falling into the vacant region. Fielder comes across and collects the ball, and 2 runs have been scored here. Couple of runs have been added to the total of VV Warriors, which takes their full score to 17 now. Changing the pace of the ball. Slower delivery. Batsman played their shot through the covers, played their shot to the cover point region. The fielder from the deep cover point region comes across and collects the ball and threw it very quickly to the wicket keeper. Meanwhile, before the throw reaches the wicket keeper, there is ample time for both these 2 batters to cross over for an easy single here.
That's a very, very clever bowling there by the bowler, but it was going far away from the off stump. So umpire was very strict. Umpire Rajesh were turning around, stretching his arms and giving a wide signal here. So one more extra run has been added to the total of Veera Venkatesh Warriors. Wanted to go for a big hit, but not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke. Ball takes the leading edge of the bat down to the fielder at silly mid off region. The fielder comes across and collects the ball. Meanwhile, these two batters will have to satisfy with only a single here. There is no possibility of going for the second run. We are in the 5th over of the innings. This is a match between Veera Venkatesh Warriors. This time the batsman goes for a big one. Couple of bounce over the boundary road for 4 runs. Welcome boundary for Veera Venkatesh Warriors. Crashing drive to the offside. Tremendous shot over the extra cover region. Lovely cover drive. Handsome looking cover drive. He found the gap there and no need of running for that because the timing was good and the placement was perfect. Excellent cricketing shot there by the batter Gurudutt. With those 4 valuable runs, their score now jumps up to 24. Again, room outside the off stump. There is a fielder. This time they will get only 2 runs here. The fielder comes across and collects the ball. So a couple of runs have been added to the total of Veera Venkatesh Warriors. That's the end of the over number 5. So after the completion of 5 overs, Veera Venkatesh Warriors have scored 26 runs. Chasing a target of 64 runs. At the moment, they have scored 26 runs and they have lost 2 important wickets also. 3 more overs to go now. Gurudutt Kini is batting on 9. Prasad is batting on 10. I beg your pardon, only 2 overs are remaining. Another 38 runs required for Veera Venkatesh Warriors in the remaining 12 balls. Auburn Diamonds are in upper hand now. Already they have lost both the games which they had played in this tournament. They have come up with a positive frame of mind. Surendra Pai Sastana is the skipper, icon player of the team, leading from the front, playing a sheet anchor role here, and he has been brought back into attack now. From the far end, that is from the Arch Pharma Labs in limited end. That's a bad start for this over. He starts off with a wide delivery. That should be a wide, no doubt about the delivery because the ball was going down the leg side. In the limited overs matches, the umpires are very strict. Anything down the leg side will be declared as wide balls. Score moves up to 28 for the loss of 2 wickets. Surendra Pai from the far range. That ball keeping very, very low, surprising the batsman. That's a beauty of the bowling. Fantastic, perfect delivery there by Surendra. The batter had no clue about that ball and he misses the line of the ball. That ball keeping very, very low, uprooting the off stump. So Veera Venkatesh Warriors have lost their 3rd wicket here at the score of 28. So Suri Sastana has picked up that important wicket. After this match, yet another interesting match will be played between Team ABNG Bantwal versus Mumbai Paltans. Suri once again continues. Anand Pai is the newcomer. Anand Shanai, a tall man, punched the ball onto the onside and he straight away off the mark, he opened his account. That single will bring Prasad on strike now. Prasad is batting on 10 of 14 balls. He's ready to face Suri now. And he's clean bowled once again, similar delivery and similar result here. Fantastic, perfect delivery there by Surendra. The batter had no clue about that ball. The ball pitching right in the block hole. The ball kept very low at the last moment.
and batsman had no clue about that ball, beaten comprehensively, and the ball hitting the middle stump. So one more wicket has gone down now for Veera Venkatesh Warriors, and they are in trouble now. Fourth wicket has fallen down at the score of 29. Auburn Diamonds are in a driver's seat now, slowly marching towards the victory to get two more points in their points table. They are in a topmost position in Group C. So in the next match, Team ABNG will play against Mumbai Paltans. The news from the center is Mumbai Paltans captain has won the toss and he has decided to bat first. That's a very, very fine delivery, pitching right in the block hole, and the batsman played it defensively forward, giving full respect to that delivery, not for runs. So no runs resulted, dot delivery there by Surendra. Surendra is bowling exceptionally well. Down the leg side, ball wraps onto the pad, but it was going down the leg side, so wide has been signaled by umpire Harish Padil. So one more extra run has been added to the total of the team Veera Venkatesh Warriors, which takes their full score to 30 now. Leg by has been signaled, so 30 runs on the scoreboard. Down the leg side, that should be a wide. The ball was going far away from the leg stump. Surendra Pai is finding some difficulty in maintaining a line and length. He has to improvise his bowling now. We come back to Suri once again. Crashing drive to the offside. He played the shot over the head of the fielders. Long chase for the fielder there, and the ball wins the race. That was a tremendous shot over the extra cover region. Lovely cover drive, handsome looking cover drive by the batter. 4 runs have been added to the total. With those 4 valuable runs, their score now jumps up to 36 on the board. 36 for the loss of 4 wickets. 6 overs gone, so last over to go now. Veera Venkatesh Warriors are 28 runs short of their victory now. Padmanabh Pai Kota, the opener batsman of Auburn Diamonds, played an astonishing knock of 28 runs, and after that 16 valuable runs from the bat of Vinayak has helped their team to reach a respectable target of 64 runs. And at the moment, the batters of Veera Venkatesh Warriors are struggling here. This time Anand Shana goes for a big one, and that's a mighty 6. Short of length delivery, down the wicket goes, picked it up very nicely and hits that one to the deep mid-wicket fence for a maximum. 6 valuable runs from the bat of Anand Shana. Anand Shana is one of the hard hitter of the ball. He can hit the ball, he can smash the ball all around the ground. A tall man. He's on strike now, and he has given complete punishment for the bowler, charging the bowler on that occasion. He has scored 6 valuable runs. Another 22 more runs required, but only 5 balls remaining now for VV Warriors. So terrific atmosphere here today at Sahyadri College ground. Crowd is more than expected. Tomorrow being a final day, we can expect a huge crowd. So over will continue. Vikram Prabhu bowled only 1 ball in that over. So Ravindra Nayak will bowl the remaining 5 balls.
Ravindra Nayak has taken over from Vikram Prabhu. So he will bowl the second ball of the over now from the Puzalana end. Ball wraps onto the pad, hitting the legs of the batsman, shuffling across the stumps. Anant Shenai wanted to go for a big hit, but the ball is not coming onto the bat. Single has been added to the total of VV Warriors. Score now moves on to 43. So next match will be played between Team ABNG versus Mumbai Paltans. And his clean ball, that was a full toss delivery. Batsman shuffling across the stumps, wanted to go for a big hit, but the pace deceives the batsman. Ball betrays the batsman, defrauds the batsman, and directly to the middle stump, uprooting the middle stump. So VV Warriors are in deep trouble now, and they are already lost their hopes. All the doors are completely closed for VV Warriors. For the first time, VV Warriors have taken part in this GPL tournament. One of the oldest team of Mangalore has crowned many number of prestigious tournaments. So under the ownership of Anant Rai, they participated in this particular tournament, but they have lost all the matches which they have played here. So Auburn Diamonds, everything is good going for their team. They are slowly marching toward the victory to get two more points in their points table here. Short of line delivery, ball is going directly to the fielder, but fielder fumbles. The fielder was not in a position to keep his eyes on the ball. So fortunately the batsman survives. It is one bounce over the boundary ropes for 4 runs. But this will not definitely help VV Warriors because only formalities are left out now. Far away from the off stump. Wide has been signaled. So only 2 balls are remaining. 16 runs required. They need 16 more runs in the remaining 2 balls. He goes for a big one, this time straight in the throats of the fielder. Good presence of mind by the fielder, and you can't do anything whenever you have got fielders with such a good presence of mind. The fielder caught it beautifully. He kept his eyes on the ball, and finally he has converted that into an amazing catch. So VV Warriors have lost another wicket here. Last ball to go of this final over of the innings now. The team owners of Auburn Diamonds are really happy here. They are really enjoying because they have won all the matches which they have played. Last year they came till the semi-final round. This time that's the end of the match. So what an amazing, magnificent and deserving victory for Auburn Diamonds. They have pulled a sensational victory over VV Warriors. Unfortunately, VV Warriors are out of this tournament now. So what a great victory for Auburn Diamonds, and Auburn Diamonds are in the topmost position in Pool C. So within a short while from now, we'll come to the presentation ceremony of the Man of the Match award. And after that, soon after that, we'll be having a match which will be played between 2 hot favorite teams. Mumbai Paltans will play against Team ABNG Bantwal. Mumbai Paltans captain, after winning the toss, he has decided to bat first. And meanwhile, I request the 12th man of both the teams to come to the commentators box as soon as possible to assist our scorer.
Well, it's time for us to announce the Man of the Match award. The Man of the Match award goes to Padmana Pai Kota of Auburn Diamonds. So I request Padmana Pai to come to the presentation area to collect your Man of the Match award from our chief guest. Hello, check. Hello. So GPL watch करतसच्या सकड विवर्सांक वापस एक पटी वेलकम बैक. आर्च फार्मा लॅब्स GSB प्रीमियर लीग 2023 च्या दोन्ही दिसाच्या मॅच जावचार आसा. टीम ABNG वर्सेस मुंबई पल्टान्स. टॉस विन जावन मुंबई पल्टान्साच्या कॅप्टनान सुरवेक बॅटिंग चूज केला. तस जावन टीम ABNG सकड प्लेयर्स फील्डर्स ग्राउंडाक एंटर जावन तांगेल फील्डिंग पोजिशन राबून फील्ड प्लेसमेंट सेट करता आसती. तशीच मुंबई पल्टान्स डॉक्टर ओपनर्स ग्राउंडाक देविल आसती. चिराग शानबाग आणि प्रसाद नायक ओपनर बॅटर्स जावन लेफ्ट हँडेड बॅटर चिराग शानबाग नॉन स्ट्रायकर एंडान तो तशींची राईट हँडेड बॅटर प्रसाद नायक क्रिसा वॉक करता आशिल्ले म्हणजे मस्त एक एक्सपेक्टेशन्स दवरून घेतला ह्या दोग जण ओपनर्सान मुंबई पल्टन्स टीमाच्या ह्या दोग जण ओपनर्सा वयरी. सो कशी तांणी खेळलो खंयची म्हणजे स्टार्ट तांगेल टीमाक दिता ती पळोवका. सो आमगे टू कमेंट्री बॉक्सान जॉईन जाता ती मिस्टर अजय राज. सो अजय राज मॅच स्टार्ट जाता मुंबई पल्टन्स आणि टीम ABMG मध्ये. सो कशी कोण ह्या मॅच विन जावचे म्हणून तुमगेल्या प्रेडिक्शन. थैंक यू सुरेश भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद. निश्चित तौर पर एक अच्छा संघर्ष देखने को मिलेगा मुंबई पल्टन्स और टीम ABNG के बीच में. और दोबारा उसी शब्दों से मैं दोहरा दूं कि जो डिजर्व करता है वही जीते. लेकिन पिछले 2 मैचेस से ऐसा लग रहा है कि मुंबई पल्टन्स बाजी मार रहा है. उनके लिए टॉप एक तरह से टॉप ऑन द टॉप पूल बनने के लिए ये मैच बहुत जरूरी है. मुझे लगता है कि अगर वो जीत पाए तो निश्चित तौर पर टॉप पर आ सकते हैं. उसके अलावा ABNG ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है. उनके खेमे में भी अच्छे बैट्समैन और गेंदबाज मौजूद हैं. तो कांटे की टक्कर है. उम्मीद करते हैं कि बहुत नेल बाइटिंग फिनिश हो. सूरज जी, तवळचे मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड घेतील प्लेयर पद्मनाभ पाय कोटा दयकोरनो प्रेझेंटेशन एरियाक येवन मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड कलेक्ट करका चीफ गेस्ट वेट करता आसती. पद्मनाभ काय इफ यू कॅन कम टू द प्रेझेंटेशन एरिया टू कलेक्ट युअर मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड. सो अजय राजी अद्भुत जावन आशिल्ले दिसू लायक एक क्रिकेट पळोवचेक सह्याद्री कॉलेजाचे हे ग्राउंड कंप्लीट ग्रीन जावन दिसतास. लायक एक पिच्च तशींची लायक कंडिशन्स बॅटर्सांक आणि बॉलर्सांक क्रिकेटाक एक अनुकूल वातावरण हांगा सृष्टी जाला म्हणून येतं. जी हाँ, प्रकृति के गोद में बसा हुआ ये मैदान निश्चित तौर पर. इसलिए मैंने एक कवि के हैसियत से कहूं कि इस मैदान को मैंने बिल्कुल ईडन गार्डन का खिताब दिया है. मैंगलोर में सबसे शानदार सबसे अच्छा खूबसूरत मैदान अगर कहा जाए तो बिल्कुल सह्याद्री महाविद्यालय का ये मैदान है. कांटे की टक्कर है. उम्मीद करते हैं कि शानदार खेल देखने को मिले. सुरेश जी, बहुत जबरदस्त खेल चल रहा है. सो फर्स्ट ओवर घालच्या चरण रेडी जाला. पुजलोना एंड दकुनो क्रीसर वेट करतस लेफ्ट हँडेड बॅटर चिराग शानबाग लेग स्टंप तकून मस्त बाहेर गेलेला बॉल खंडित जावन वाईट जाऊ का खंयचे डाऊट ना. अंपायर श्रीनेकतान वाईड बॉल डिक्लेअर केला. खंयचे आर्ग्युमेंट ना आशिल्ले बॉलराला इथं म्हणतात सिच्युएशन गोतस लेग स्टंप तकून बाहेर वता आशिल्ले. टीम ABNG या एक मॅच
खंडीत जावन क्रुशियल जावन आसता इम्पॉर्टंट जावन आसता हे मॅच विन जाल्ली म्हण जाल्यार खंडीत तांकां 2 पॉयंट्स मेळटा वेरॅज मुंबय पल्टन्स ऑलरेडी तांणी दोनूय मॅच खेळिल्ली आसा ती तांणी दोनूय मॅच विन जाल्ली ती सो आमगे वाटो कमेंट्री बॉक्सांत आसा ती टीम मैनेजर मुंबईचे प्रशांत पुराणिक वेलकम यू सर। जी हाँ, स्वागत है प्रशांत पुराणिक जी का। और बहुत ही बड़ा शानदार प्रदर्शन उनके टीम ने किया। ये गेंद इस बार फुजुल ऑन एंड से इस बार लेग स्टंप के बाहर थी, गेंद को थोड़ा सा ग्लांस करना चाहते थे, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए। फाइनल क्षेत्र में फील्डर गेंद का पीछा करते हुए गेंद को रोक चुके हैं, लेकिन अंपायर ने इस दौरान जी हाँ हाथों को फैलाया, कहा श्रीनिकेत जी ने कि ये वाइड गेंद है, वाइड के और दौड़ को मिलाकर कुल मिलाकर 2 रन्स खाते में जोड़ लिए गए, रन्स बन रहे हैं। तो एबीएनजी ने मुझे लगता है कि इस पूरी टोटल कुल मिलाकर 4 रन्स बन चुके हैं। एबीएनजी ने मुझे लगता है कि श्रृंखला में अभी तक एक भी जीत शायद अर्जित, एक जीत उन्होंने अर्जित की है और उनके लिए महत्वपूर्ण है कि इस मैच को वो जीते, जबकि मुंबई पल्टन्स ने दोनों मैच में बाजी मार ली है। तीसरा मैच वो बना रही है, एक तरह से निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है जिस तरह से उनका विश्वास दिख रहा है कि वो टेबल में टॉप होना चाहते हैं। सो खंडित एक मॅच स्टार्ट जाता आशिल्ले कोण विन जाता म्हणून सांगू जायना, आतां प्रेडिक्ट करूं जायना। दोन टिमांक चान्सेस इक्वल आसा, दोन्ही टिमांत लायक प्लेयर्स आसा ती। सो पळोवया कोण हे मॅच विन जावन 2 पॉयंट्स तांगेल्या पॉयंट्स टेबलान तो घेता ते म्हणून। प्रसाद नायक एक हार्ड हिटर ऑफ द बॉल म्हणून येत मुंबय पल्टन्साचे एक विस्फोटक बॅट्समॅन, तशींच नॉन स्ट्रायकर एंडांत आसा आनीक लेफ्ट हँडेड बॅटर चिराग शानबाग आयकॉन प्लेयर मुंबय पल्टन्साचे। पद्मनाभ पाय दयकोरनो प्रेजेंटेशन एरिया येवका, पद्मनाभ पाय आबर्न डायमंड्स मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड कलेक्ट करका वापस सांगता आसा ती। चीफ गेस्ट वेट करता सांगा दयकोरनो खंय असल्यार प्रेजेंटेशन एरिया येवन तुमगेल्या मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड कलेक्ट करका म्हणून तुमगेल्या रिक्वेस्ट करता आसा। क्या शानदार स्ट्रोक है, ऑन साइड की दिशा में घुमाकर गेंद को स्विंग किया, गेंद हवा में काफी दूर रही लेकिन कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था। जब तक वो गेंद को फील्ड करते हुए थ्रो कर पाते, बैट्समैन के पास इतना समय था कि वो कुछ रनों को बटोर लें। चिराग शानबाग और प्रसाद नायक की अगर बात करें सुरेश भट्ट जी, एक स्ट्रॉन्गेस्ट पैर है पूरी श्रृंखला में अगर किसी ओपनर को देखा जाए। दोनों राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन चलता है और दोनों बैट्समैन बहुत सक्षम है, बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। खंडित जावन मुंबई पल्टन्स एक अस्त्र म्हणून येता, दोग जणे बॅटर्स, दोग जणे बॅकबोन्स। फुडली 2 मॅचांत चिराग शानबागान तागेले एक्सपेक्टेशन्स म्हणजे खेळू जायन ताका तितले एक लायक परफॉर्मन्स येनी, खंडित जावन ह्या एक मॅचांत तो कमबॅक करता म्हणून म्हगेला अभिप्राय। सो पळोवया कशी तो खेळता म्हणून एक हॉड एक टार्गेट सेट करचे प्लॅन करून दोग जण ओपनर्सांक आयिल्ली आसा ती। वापस एक फावटी बॉलर रेडी जाला, पुजलोना एंड दोकून सुमार एक 7-8 इंच दूर देखून धांवन येवन अंपायर क्रॉस करून गेल्यार बॉल लायक एक बॉल जस्ट टॅप केल्ले ऑन ऑफ सायडाक, बॉल वता थर्ड मॅनाक डावन टू थर्ड मॅन देखून आशिल्ले फिल्डरान येवन बॉल फील्ड करचे फुडें 2 बॅट्समॅनांनी 1 रन धांवन कंप्लीट केलेलो आसा। सो प्रसाद नायक मेळ्ळा 1 रन। सो टोटल स्कोर जाल्ल्यात 4 खंयचे विकेट 6 रन जाला, खंयचे विकेट कडवून घेना अशी। 4 गेंदें अब तक फेंकी जा चुकी हैं और 7 रन्स बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। चिराग शानबाग स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, 7 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। करेक्शन देखिए थोड़ा सा, और जी हाँ 7 रन बन चुके बगैर किसी नुकसान के। चिराग शानबाग स्ट्राइक एंड पर एक छोर से चरण की गेंद लंबी दौड़ के साथ फुजलाना एंड से ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, थोड़ा सा रीच करने का प्रयास किया, बल्ले का सिरा देकर गेंद को महिम सा स्पर्श होने दिया। जब तक शॉर्ट थर्ड मैन में फील्डर गेंद को फील्ड कर पाते, दोनों बैट्समैन ने तेज कदमों के साथ 1 रन को चुरा लिया। सूरज जी मुझे लगता है कि रनों की भूख दोनों बैट्समैनों में दिखाई पड़ती है, मात्र आक्रामक स्ट्रोक नहीं, मेरिट पर भी खेलते हैं, थोड़ा सा टैकल करते हैं, सिंगल्स बटोरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मैदान का मिजाज शाम के पश्चात किस तरह से बदल जाता है। खंडित जावन अजय राजे फर्स्ट 2 ओव्हर्सांक पवर प्ले जावन आसता, ह्या पवर प्ले सेशनांत जल्दीतले रन्स स्कोर करूं पडोका दोग जण ओपनर्सान म्हळ्यार तांणी हॉट शॉट मारचे प्रयत्न करका, बाउंड्री 6 आयली म्हण जाल्यार खंडित कयता तांगेल्या टिमाक एक प्लस पॉयंट्स जाता। येदोळ ते खंयचे बाउंड्री पळोवचे मेळ्ळी, पळोवया ह्या दोन्ही ओव्हर तांकां प्रोडक्टीव ओव्हर जाता की म्हणून। बाउलिंगांत चेंजीस जाला, दोन्ही ओव्हर घालूंक आर्च फार्मा लॅब्स एंड देखून बॉलर रेडी जाता। आदित्य आर्च फार्मा लॅब्स एंड देखून राइट आर्म मीडियम फेस बॉलर ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಪರೇಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಸ್ಕೋರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ।
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. सो आदित्य बॉलिंग रेडी जातस एक लॉंग रन अप घेवन दोन्ही ओव्हर घालचे. बहुशः आदित्य ABNG टीमाचे बॉलिंग ब्रह्मास्त्र म्हणून येतं तो आर्च फार्म लॅबचा एंड दोकून रेडी जाला. तशींची क्रीसर वेट करतस लेफ्ट हँडेड बॅटर चिराग एदोलत एक बॉल फेस करून एक रन कान खेळतस. तशींची प्रसाद नायक नॉन स्ट्रायकर एंडारी 5 बॉल फेस करून 3 रनारी खेळतस. राउंड द विकेट जावन बॉलिंग घालचे प्रयत्न करतस बॉलर आदित्य. लेफ्ट हँडेड बॅटराक 4 फिल्डर्स ऑन साइड आणतो. तशींची 5 फिल्डर्स ऑन साइड आणतो, 4 फिल्डर्स ऑफ साइड आणतो. यापुढे चिक्के शॉट जावन आशिल्लो बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप पडला बॉल एक ड्राइव्ह करचे प्रयत्न केला. बॅट आणि बॉल मध्ये कंचे समकट कनेक्शन येनी आजी मध्ये बारीक लायक रनिंग बिटवीन द विकेट एग्रेसिव्ह रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणून येतं असले रनिंग बिटवीन द विकेट जावको जाता. आजी मध्ये एक शॉट म्हणून डिक्लेअर केला अंपायरानं. तो एक रन मात्र ऍड जातस मुंबई पल्टन्स टीम अंतू. टीमाच्या वट्ट स्कोर जाल्ल्यात 10 विदाउट एनी लॉस. एक लायक एक स्टार्ट दिवचे प्रयत्न करत ती तांगेल्या टीमाक एक लायक फाउंडेशन घालचे प्रयत्न करत ती दोग जण बॅटर्स चिराग शानबाग आणि प्रसाद नायक खंडित जावन एक लायक प्लेटफॉर्म घालका जाता. अजय राजी जी हाँ, दोनों बैट्समैन इस वक्त मेरिट पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं. पिछले दिन से कहीं ना कहीं उन्होंने सीख ले लिया है कि पिच का मिजाज किस तरह से बदल जाता है और इस वजह से वो प्रयास कर रहे हैं कि सिंगल्स को बटोरें, थोड़ा सा लय प्राप्त कर लें, मोमेंटम मिल जाए, फिर आक्रमण कर किया जा सकता है. उस छोर से गेंद को आदित्य जो कि आज फार्मा एंड से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं. राउंड विकेट वो गेंदबाजी करेंगे दाएं हाथ के बैट्समैन को. इस बार थोड़ा सा पीछे हटे, गेंद को धीरे से कट करने का मौका था. अच्छा प्रयास, लेकिन फील्डर गेंद के ऊपर जल्दी झपट गए और सारे फील्डर्स नजदीक खड़े हैं. एक तरह से चक्रव्यूह सा रचाया गया है. सारे फील्डर जानते हैं, ABNG के कप्तान जानते हैं कि अब दोनों बैट्समैन क्या पैतरा इस्तेमाल कर रहे हैं. इस वजह से इनफील्ड में फील्डर बहुत सतर्क हो गए. सिंगल्स को रोकने का उनका प्रयास है. रन्स 11 पर बन चुके हैं जबकि कोई विकेट क्षति अभी नहीं हुई है. प्रसाद नायक 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, चिराग 4 पर खेल रहे हैं. उस छोर से ये गेंद उल्टे हाथ से स्वीप किया, गेंद को बढ़िया स्ट्रोक है, एक रन लेने का अवसर मिलेगा. सिंगल्स दोनों बैट्समैन ज्यादा जोर दे रहे हैं और सुरेश भट्ट जी, मुझे लगता है कि जब भी बैट्समैन में रनों की भूख दिखाई पड़ती है निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं रास्ता बना ही लेते हैं. हांगा प्रसाद नायक रिवर्स शॉट करचे प्रयत्न करतस बट ताका समजावन एक टायमिंग्स मेळतना बॉल मिडल ऑफ द बॅट करेक्ट जातना तशें जावन खाली एक रनान ताणें संतुष्ट जावका जाता. खंडीत जावन ह्या दोग जण बॅटर्सान जल्दीतले रन्स स्कोर करूं पडोका इथे म्हणारी अन्य दोग जण खेळ्ळी म्हणून जाल्यार इथे खंडीत तांगेल्या टीमाक एक प्लस पॉइंट्स जाता. वापस आदित्य सकरदंडे आयकॉन प्लेयर तांगेल्या टीमाचे बॉलिंग घालतस. ह्या फाटी बहुशः डायरेक्ट हिट जाल्यार एक डॅमेज जावं चान्स आशिल्ल्या हाजे मध्ये ओव्हर थ्रो जाला, बॅकअप ना आशिल्ल्या अजोटूची अनेक रन एक्स्ट्रा रुपारी ऍड जातस. 2 रन मेळ्ळा मुंबई पल्टन्स टीमाक. सो 2 रन ऍड जाल्ल्या स्कोर बोर्ड ऍड जातची स्कोर बोर्डांत वट्ट स्कोर दाखयतस 12 रन्स विदाउट एनी लॉस. खंयचे विकेट कळवून घेना अशी 12 रन केला. आय बेग युअर पार्डन 13 रन्स 13 रन जाला. या फाटी स्टीयर केल्ल्या ऑफ सायडांतू बॉल वतस थर्ड मॅनाक दोकून फिल्डरान येवन बॉल फील्ड केल्या बट अजी पयस फुडें 2 बॅट्समॅनाक 1 रन तावन कंप्लीट करचे भरपूर टायम आशिल्ले. सो आरामसर 1 रन कावन कंप्लीट केला. अजोटूची दोन्ही ओव्हर कंप्लीट जाला. दोन्ही ओव्हर कंप्लीट जाता आशिल्ले म्हणके मुंबई पल्टासाचे वट्ट स्कोर जाला 14. जी हाँ, 14 रन्स 2 विकेटों के नुकसान पर, माफ कीजिएगा बगैर किसी नुकसान के 14 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स. करेक्शन. ढोल नगाड़ों से हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है और क्या शान की बात है और बड़े गर्व की बात है. मुख्य अतिथि जो कि इस वक्त पधार चुके हैं उनका हृदय से स्वागत. ड्रोन से कैप्चर किया जा रहे हैं दृश्य, कैमरामैन साहब को दिखा रहे हैं. 14 रन्स बगैर किसी नुकसान के तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है.
अद्भुत जावन आशिल्लो दिसू अजय राजी कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन आनी 7 वर्सां एक टूर्नामेंट करता GPLच्या 7च्या एडिशन सो ऑल डिफरंट टीम्स एक टूर्नामेंटान तो पार्टिसिपेट करता सो खंयची टीम विन टूर्नामेंट विन जावन जी चॅम्पियन्स जाता ते पळोवका पायच्या दिसाक रात्री 8 गंटेक ह्या टूर्नामेंटाच्या फायनल मॅच जावचे आसा सो विन जाल्ल्या टिमाक कॅश प्राइज तशींच एक अट्रॅक्टिव्ह प्रेस्टिजियस GSB प्रीमियर लीग ट्रॉफी मेळची आसा तशींच रनर अप टीमाक रनर अप ट्रॉफी वटूची कॅश प्राइज तशींच मॅन ऑफ द सिरीज प्लेयराक एक अट्रॅक्टिव्ह सुझुकी एव्हेनिस बाईकय मेळचेर आसा पाई सेल्स सुझुकी आनी स्पॉन्सर केलेल्या एक अट्रॅक्टिव्ह 2 व्हीलर बाईक खंडित जावन आमी हॅट्स ऑफ म्हणून कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन इतली एक ग्रैंड सक्सेसफुल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करूक। जी हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर और इस बीच गेंद को लॉफ्ट किया थोड़ा सा जब तक कि फील्डर गेंद को उठाकर विकेट कीपर के दिशा में थ्रो कर पाते बैट्समैन तेज कदमों के साथ रन को बटोर चुके हैं 15 रन बगैर किसी नुकसान के 7वां साल जो कि इस क्रिकेट श्रृंखला लगातार 7 साल से बना रहे हैं और सफलता की एक तरह से कहना चाहिए कदम चूम रही है। हर साल कुछ नया कुछ बड़ा बनाने का उनका प्रयास और हर साल उनको फीडबैक जो मिल रहे हैं बड़े अच्छे और इसी वजह से मुझे लगता है कि उनका हौसला बढ़ता है और आने वाले सालों में कुछ और अच्छा बनाने का प्रयास। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा खेलने का प्रयास आधे अधूरे मन से कुछ नहीं हुआ। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर नहीं, रन अभी भी 15 पर हैं मगर किसी नुकसान के। रन काफी धीमी गति से बन रहे हैं सुरेश, मुझे लगता है कि दोनों बैट्समैन थोड़ा सा डिफेंस ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से आक्रामक स्ट्रोक कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं और रन बहुत शिथिलता से बन रहे हैं। खड्डीजವರು अजयराजे फर्स्ट 2 ओव्हर अंतू पॉवर प्ले सेशन अंतू डॉग फील्डर्स मात्र त्या एक 30 इयर्स सर्कला भायर आसता ती तो सो एक हॉड एक टार्गेट सेट करचे प्लॅन करून आयली ती बट आतां चिक्के रन्स ड्रायड अप जाला 15 रनार तांगेल स्कोर राबला आमी आतां 3 ओव्हर चलतर 7 ओव्हराची मॅच पळोवया बरल्या ओव्हर्स अंतू कितली रन तांणी काडू खंयची म्हणजे टार्गेट तांगेल्या ऑपोजिशन साइड टीम ABNG दिता ती म्हणून पळोवया। जी हाँ, लाइटली हर मैच को नहीं लेना चाहिए, बहुत विश्वसनीय तरीके से योजनाबद्ध तरीके से खेल का प्रदर्शन होना चाहिए। इस छोर से गेंद को लेकर तैयार हुए, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद और रोहिश के गेंद को जाने दिए, अंपायर की तरफ देख रहे हैं। बैट्समैन प्रसाद ने शायद नजरों से अपील की लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज कर दिया, वो भी नजरों से। ओद विकेट रोहिश की गेंद, उनके सामने प्रसाद नायक 4 के व्यक्तिगत योग पर उन्होंने गेंद को उछाल दिया है, गगनचुंबी स्ट्रोक है, गेंद जाकर बादलों से बात करके आ गई और स्क्वायर लेग में फील्डर ने गेंद को कैच कर लिया है। शानदार कैच के साथ ही एक बहुमूल्य विकेट गिर चुका है, प्रसाद नायक आउट होकर लौट गए, बहुत बड़ा विकेट है। सूरज जी क्या कहते हैं? खंडित जावन मुंबई पल्तासाचे हॉड एक विकेट ABNG मेळ्ळालो टीम ABNG चे बॉलर सक्सेसफुल बॉलर म्हणून या एक इम्पॉर्टंट विकेट मुंबई पल्तासाचे बॅकबोन ट्रम्प कार्ड जावन आशिल्लो प्रसाद नायक विकेट पडला हांगा सो तबलची मॅचांत प्रसाद नायक टॉप स्कोरर जावन आशिल्लो तागेल विकेट मेळ्ळी म्हणून जाल्यार त्या खंडित जावन तांगेल टीमाक एक प्लस पॉइंट जावन आसता। सूरज जी मैं समझता हूं कि अभी भले ही आपका जिस तरह से आपने कहा कि बड़ा विकेट गिरा लेकिन अभी एक छोर पर अगर देखा जाए तो एक बड़ा बैट्समैन अभी मौजूद है, चिराग शानबाग, जो कि अपनी टीम की आन बान शान को बचा सकते हैं। बड़ा लक्ष्य देने के लिए उनका प्रयास अभी जारी रहेगा। पिछला स्ट्रोक अगर आपने देखा हो, शफल किया बैट्समैन ने, ऑफ स्टंप के बाहर आ गए, गेंद स्टंप्स के सीध पर थी, थोड़ा सा ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक, बॉटम हैंड का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, इस वजह से गेंद ज्यादा ऊंची गई, वरना मुझे लगता है कि वो क्लियर कर सकता था। खंडित जावन अजयराजे ताजे मागशी पॉवर तितली ना आशिल्ल्या तशें जावन बॉल मस्त वयर गेल्ला सो फिल्डरान लायक करून त्या कॅच कोरनो तागेले विकेट काडलेले आसा। आतां चिराग शानबाग तागेले नॅचरल गेम ताण केले जाता, मस्त रेस्पॉन्सिबिलिटी आयला चिराग शानबागाल वयरी तावळच्या फुडली 2 मॅचांत ताण तागेले तितली परफॉर्मन्स दाखोवचे जाय न्ही सो ह्या एक ताका रायट मोमेंट राइट चांस मिलना म्हणून या मैचान तो कम बैक करूक। ABNG का प्रयास कि वो विकेटों को लगातार प्राप्त करें क्योंकि वो जानते हैं मुंबई पल्टन्स एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप के साथ उतर चुका है। तो इस छोर से गेंद को रोहिश दोबारा लेकर तैयार हो रहे हैं, फजल एंड से उनकी गेंद लंबाई में ज्यादा थी, इस बार गेंद को धीरे से पुश कर दिया और विकेट कीपर जी नहीं नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया गया है। कवर की दिशा में जो फील्डर नजदीक खड़े थे उनके पास स्ट्रोक खेला गया, हल्के हाथ से उन्होंने गेंद को उठा लिया, लेकिन इसके बावजूद एक रन नाक के नीचे से निकालना इसे कहते हैं। सुरेश जी, मुंबई पल्टन्स टीम तुमकां पुरे गोत्तशिल म्हणजे फुडल्या 6 सिजनांत खेळतस 7 सीझन या 7 सीझन 6 सिजनांत त्यांनी पार्टिसिपेट केलेल्या फर्स्ट पटी त्यांनी खेळलो ॲज चॅम्पियन्स गेलेले टीम तशींची
येदोळते दोन्ही पटी GSB टायटल विन झालेला एक टीम म्हणत मुंबई पल्टान्स दुराचे मुंबई शहरी देखून येऊन प्रतिवर्ष अंग येऊन अंगा टीम खेळतस म्हणारी खंडित जाऊन तांकां आमी हॅट्स ऑफ म्हणून कची जाता. क्या बात है, बहुत बढ़िया. और मुंबई पल्टन्स अपने उस खिताब को जारी रख रहा है. 2 बार विनर्स रह चुके हैं और एक बार तीसरे स्थान के हकदार बने. शानदार प्रयास उनका, निश्चित तौर पर वो डिजर्व करते हैं. अच्छी स्ट्रेंथ है उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में, और कप्तानी बहुत जरूरी है जो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि किस गेंदबाज को कौन से समय पर कहां पर लगाना है, किस एंड से लगाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है. सुरेश जी. आदित्य सकरदंडे बौलिंग रेडी जल्ला आर्च फार्म लॅब्स एंड दोकुनु टीम ABNJच्या आयकॉन प्लेयर आदित्य सकरदंडे एक लेफ्ट आर्म मीडियम फेस बॉलर मूलतः मुंबई टीमाच्या प्लेयर यापटी टीम ABNJ तो खेळतस. सो आदित्य सकरदंडे खंडित जाऊन गोतस अजय राजी या दोघे बॅटर्स कशी बांधून गलका म्हणू. जी हाँ, बड़े शानदार गेंदबाज माने जाते हैं. बड़ा बोलबाला है उनका आदित्य साखरदंडे. भला कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो इनके नाम को नहीं जानता है. शानदार गेंदबाजी करते हैं और बड़े रफ्तार के साथ लाइन और लेंथ पर अच्छी काबू रखते हैं, और जिस तरह से स्विंग का मिश्रण करते हैं वो कमाल का होता है. और इस वजह से दोनों बल्लेबाज के प्लस और माइनस को वो जानते हैं. नाजुक नफ्स को पकड़ने का उनका प्रयास है. क्या होता है वापस सुमार एक दबार है जे दूर दुखून अंपायर क्रॉस करून गेल्यार बॉल लायक एक बॉल ऑन साइड मारचे प्रयत्न केला, बट मिडल ऑफ द बॅट करेक्ट जारी दोन्ही रन प्रयत्न करत असती. आज मध्ये दोन्ही रन धावन कंप्लीट केला. बारी एक लायक रनिंग बिटवीन द विकेट, एग्रेसिव रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणून येतो. क्या बात है सुरेश जी, बहुत बढ़िया है. और दोनों बैट्समैन जानते हैं कि अगर आक्रामक स्ट्रोक से रन्स नहीं बनते हैं तो कुछ और युक्ति की जा सकती है. इस वजह से सिंगल को 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं. फील्डर थोड़ा सा पीछे खड़ा था, उसको देखते हुए जैसे वो ढीले पड़ गए, दोनों बैट्समैनों ने अपने पहले रन को ज्यादा तेजी के साथ आनंद फानन में पूरा किया. दूसरा रन आसान बना लिया. दूर वाली छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज आदित्य साखरदंडे तैयार हो रहे हैं. आर्च जो कि आर्च फार्मा लैब्स की दिशा से गेंद को लेकर एंड से गेंद कर रहे हैं. उनकी गेंद इस बार फ्रंट फुट पर ड्राइव किया. बहुत बढ़िया स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर डीप में गेंद जा चुकी है. दूसरा रन आसानी के साथ बना लेंगे. क्या बात है, तीसरा रन लेने के लिए भी मन बना रहे हैं, लेकिन जोखिम भरा हो सकता है. सिंगल को 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं. ड्रोन कैमरा से कैप्चर किए गए दृश्य आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर. क्या शानदार दृश्य देखा जा रहा है. सो अजय राजी एक अद्भुत जेवण असेल दिसू. आज ही पायी 3 दिसू एक क्रिकेट फेस्टिवल म्हणून येतं. क्रिकेट कार्निवल मेगा क्रिकेट एक्स्ट्रा वेगन्स सह्याद्री कॉलेजाच्या ग्राउंडांतू कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन खंडित जावन आम्ही एक हॅट्स ऑफ म्हणका त्या जनाक मंगलपाडी नरेश शेणाय, चेतन कामत, नरेश प्रभू तिथले नयशी सगळे तांगेले एंटायर टीम कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाच्या एंटायर टीम असले एक हॉट नमुन्याचे एक बिगेस्ट क्रिकेट टुर्नामेंट GSB समाज बांधव खातीर करतात म्हणल्यार कंटिन्यूस जावन 7 वर्ष दोकुनी करत असती. बार एक ग्रैंड सक्सेस जावन चलत रस ये टूर्नामेंट. क्या बात है, निश्चित तौर पर ये गेंद ड्राइव किया, गेंद को कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया. 1 रन लेने का अवसर. बिल्कुल सही बात, और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत में कि ये त्रिमूर्तियां हैं. अगर 3 मूर्तियां मिल जाती हैं तो कुछ भी अनहोनी को वो होनी बना देते हैं. नरेश शनाई जी और चेतन कामत और नरेश प्रभु बिल्कुल अनहोनी को उन्होंने होनी बना दिया. शुरुआत में एक आसान सा एक छोटी क्रिकेट श्रृंखला बनाई थी, फिर धीरे धीरे पैमाना बढ़ गया, योजना बनाई, साथ में इतने सारे लोग मिल गए GSB समाज के, और एक बड़ी क्रिकेट श्रृंखला बनाने में वो सफल हो गए. और ये 7वां साल जो कि सफलता की चरम सीमा पर चल रहा है. ये गेंद लॉफ्ट किया, गेंद को बढ़िया स्ट्रोक, सिंगल को 2 में कन्वर्ट किया, और इन दोनों रनों के साथ रन्स बन रहे हैं शानदार तरीके से. आता मी पळयत असत वापस बॉल आदित्य सकरदंडेल हातास नेक्स्ट बॉल घालूक वापस मागशी वतस. आर्च फार्म लॅब्स एंड देखून क्रीसारी वेट करतस राइट हँडेड बैटर दीपेश इंडिविजुअल स्कोर 4 तशींची प्रसाद खेळतस. चिराग ओपनर बॅट्समॅन जावन आयलो. हाजे मध्ये चिक्के वारेर आशिल्ल बॉल कॅच जावं चान्सेस आशिल्ले, बट मिस जाल्लो. डेस्परेट एफर्ट म्हणून येता फिल्डराला. हाजे मध्ये लायक एक जीवदान मेळ्ळा हांगा बॅट्समॅनाक. सो 2 रन धांवन कंप्लीट केला. 2 रन मेळटस मुंबय पल्टन्स टीमाच्याक. सो ओवर कंप्लीट जाला. 4 ओवर कंप्लीट जाता आशिल्ले म्हणजे मुंबई पल्टन्स टीमाच्या वट्ट स्कोर जाला 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. आउट जालो बॅट्समॅन म्हळ्यार प्रसाद नायक
ह्या एक इनिंग्सांत खाली 4 रन मात ताण केलेले तशींची क्रीसारत खेळत ती चिराग शानबाग आणि दीपेश इंडिव्हिज्युअल स्कोर जाल्ले 6 तशींची ओपनर बॅट्समॅन लेफ्ट हँडेड बॅटर आयकॉन प्लेयर चिराग शानबाग खेळत 1 रनारी पळोव्या वरल्या आणि 4 ओव्हरांतू 4 ओव्हर कंप्लीट केला वरल्या 3 ओव्हरांतू त्यांनी कितली रन करतात म्हणून. तो शानदार खेल चल रहा है और ड्रोन कैमरा से कैप्चर किया गया दृश्य बिल्कुल आकाश की ऊंचाइयों से मैदान को दिखाया जा रहा है. क्या शानदार दृश्य है, कमाल की बात है. और जिस तरह से सुरेश भट्ट जी, मुझे लगता है कि एक मुद्दा जो कि बाकी रह गया, आपने देखा शुरुआत में जब मुंबई पल्टन्स कल मैच के लिए आई थी, शुरुआत में आक्रामक स्ट्रोक खेलने का उन्होंने प्रयास किया, विफल रह गए. लेकिन ताबड़तोब कप्तान ने योजना बनाई कि उनको अगले मैच में क्या योजना बनानी होगी, क्योंकि पिच का मिजाज बदल गया है. आक्रामक स्ट्रोक्स आसानी से नहीं लगते हैं, मेरिट पर खेलकर सिंगल्स को 2 में कन्वर्ट किया जा सकता है. आज पूरी उनकी योजना उसी पर चल रही है और आसानी के साथ वो डबल डिजिट के साथ बड़े लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. खंडित मेरिट ऑफ द बॉल खेळची पडता एक परफेक्ट क्रिकेटिंग प्ले म्हणून येतं सेन्सिबल क्रिकेटर चिराग शानबाग त्यांच करतस तागेल नॅचरल गेम कॅप्टन्सी रोल हांगा खेळतस मस्त एक रेस्पॉन्सिबल इनिंग्स चिराग शानबागाल वयर मस्त जबाबदार आयल्यात इथे म्हळ्यार प्रसाद नायक वग्गी आउट जावन तागेल्या विकेट लॉस जाल्यार मुंबई पल्तान्साक आतां अन्य 2 जण बॅट्समॅन लायक कोण खेळतस ती लायक एक फाउंडेशन गावची प्रयत्न करतस ती लायक प्लॅटफॉर्म दितस ती हाजे मध्ये टीम ABNG या एक पार्टनरशिप हांगा ब्रेक वर्क जाता खंडित जावन या पार्टनरशिप ब्रेक जाली म्हणून जाल्यार तांकां एक लायक कम बैक मिलता म्हणून म्हाका दिसतस. वेरी वेल सेड, बिल्कुल सही कहा आपने. अगर विकेट मिलता है, भागीदारी टूट जाती है, पार्टनरशिप टूट जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ABNG बंटवाल रास्ता बना लेगा. लेकिन इस वक्त दोनों बैट्समैन कहीं ना कहीं विश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए पार्टनरशिप बना चुके हैं, खिचड़ी पका रहे हैं और रन्स कुल मिलाकर 26 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है. दीपक शनय 6 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, चिराग शानबाग 12 पर और चरण कामत आक्रमण पर तैयार हैं. इस छोर से जो कि फजल एंड से चरण गेंद को लेकर तैयार हुए, लंबी दौड़ के साथ उनकी गेंद, ये गेंद और इसको जाने दिया इस गेंद को और दीपेश शनाय ने गेंद को जाने दिया. अंपायर की तरफ देखा, अंपायर ने हमारी तरफ घूमकर कहा कि वाइड है. अतिरिक्त के खाते में 1 और रन की बढ़ोतरी, रन बढ़कर पहुंच चुका 27 पर 1 विकेट के नुकसान पर. अजयराजी म्हाका दिसतस आतां ह्या टायमार ह्या एक क्रुशियल गेमान बॉलर्सान मस्त एक तांगेल्या हाय प्रायोरिटी दिवका जाता बॉलिंगाक वाईड दिली म्हणजे जाल्यार खंडित तांगेल्या टिमाक एक मारक जाता खाली रन्स मात्र ऍड जायना तांकां एक एक्स्ट्रा बॉल घालका जाता आसता. तशें जावन बॉलरान परफेक्ट डिसिप्लिन लायनार बॉलिंग घालका जाता. विकेट टू विकेट बॉलिंग घाली म्हणजे जाल्यार खंडित तांगेल्या टिमाक एक लायक विचार म्हणून येतं. बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, क्योंकि अगर लाइन और लेंथ सटीक नहीं रहा, अतिरिक्त रन अगर बने तो गफलत हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी सिंगल्स और डबल्स बन ही रहे हैं. ये उसमें कहीं ना कहीं और ज्यादा दबाव को बना लेगा और बड़ा विशाल स्कोर जो कि खड़ा हो सकता है. इस वजह से ABNG के गेंदबाजों को सोचना होगा, कप्तान को सोचना होगा कि कौन से गेंदबाज को वो किस वक्त इस्तेमाल में ला सकता है. इस छोर से ये गेंद जो कि चरण गेंद को लेकर तैयार हुए, उस छोर पर चिराग शानबाग स्ट्राइक एंड पर थोड़ा सा आक्रामक तरीके से गेंद को खेलने का प्रयास किया, बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई, 2 के लिए दौड़ना चाहते हैं, स्ट्राइक एंड की दिशा में थोड़ा विलंब से थ्रो आ गया. 2 रन तेज कदमों के साथ दोनों बैट्समैनों ने पूरा कर लिया. क्या बात है, अंडरस्टैंडिंग हो तो बिल्कुल इस तरह से दोनों बैट्समैन दीपेश और चिराग शानबाग मानो इतनी जबरदस्त तालमेल के साथ बल्लेबाजी और रनिंग बिटवीन द विकेट्स चुरा रहे हैं कि गेंदबाज और फील्डरों के ऊपर दबाव सा बन गया है. रन्स बनकर 30 पर 1 विकेट के नुकसान पर बन चुका है. अजयराजी ओपनिंग बैट्समैन जावन येईल चिराग आनीक एक क्रीसार आसा. आतां मी 5 ओव्हरार आसा ती 14 रन काण खेळतस. चिराग शानबाग तांगेल्या टिमाक एक लायक एक फाउंडेशन घालचे प्रयत्न करतस. ह्या फुडें लायक एक कवर ड्रायव्ह, एक्सलंट कवर ड्रायव्ह म्हणत, बट थंय एक प्रोटेक्शन आशिल्लें मित्र. 1 रन मात मेळटा. दोन्ही रन प्रयत्न केला, हाजे मध्ये रनआउट जो चान्स पळोवक अंपायर डिसिशन कसं येत म्हणून हाजे मध्ये अंपायरान 3rd अंपायराक रेफर केला.
जी हाँ बिल्कुल। और शायद बैट्समैन ड्रैग करते रहे, थोड़ा सा रह गया या नहीं पता नहीं। अंपायर हालांकि आश्वस्त होना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने तीसरे अंपायर की तरफ संकेत किया कि वो जिम्मेदारी को निभाएं। लेकिन बहुत अच्छा खेल देखने को मिला। एबीएनजी के सारे फील्डर्स अब बिल्कुल सतर्क हो गए हैं, फुर्तीले से हो गए हैं। वो जानते हैं कि दोनों बैट्समैन ना के नीचे रन निकाल रहे हैं। इस वजह से उन्होंने इस हथकंडे को रोकने के लिए अपने आप को बिल्कुल फुर्ती के साथ फील्डिंग में सब कुछ झोंकने का प्रयास किया है। और जिस तरह से आपने देखा दोबारा सिंगल को 2 में कन्वर्ट करने का जो प्रयास था, उसको रोकने के लिए उन्होंने थ्रो कर दिया और आधे पिच तक पहुंचे हुए चिराग दोबारा लौट गए और मात्र 1 रन लेने का उनका वो मंसूबा पूरा हुआ। दूसरा रन शायद न मिले, रनआउट का मौका बहुत नजदीकी मामला लग रहा है। दोनों अंपायर इस वक्त खड़े हैं, सारे फील्डर्स हालांकि कुछ बैठे हुए थके मांदे दिखाई पड़ रहे हैं। इस दौरान जितने सारे मुख्य अतिथि यहां पर पधारे हैं उनका हृदय से स्वागत करते हैं। और उस बात पर आते हैं सुरेश भट्ट जी, जिस तरह से आपने कहा कि त्रिमूर्तियों ने जिस तरह से क्रिकेट श्रृंखला बनाई, शुरुआत में जब क्रिकेट श्रृंखला जीपीएल बनी थी तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पर बनी थी, तब थोड़ी सी प्रशंसा मिली। लेकिन सोच का दायरा बढ़ गया और धीरे धीरे बड़ी बड़ी क्रिकेट श्रृंखलाओं को बनाने की योजना बनाई और उसमें सफल हो गए। और सफलता अब तक 7वां साल जो कि इस वक्त चल रहा है। सो थर्ड अंपायर डिसिजन आउट म्हणून आयला। एक हॉड एक विकेट मेळ्ळा हांगा टीम एबीएनजी फ्रस्ट्रेशन फॉर मुंबई पल्तान्स म्हणून येता। तांगेल्या टीमाच्या बॅकबोन चिराग शानबाग आउट जावन रनआउट जावन हांगा पेविलियनाक मागशी वतस दोन्ही विकेट पडला एट द स्कोर ऑफ 30 रन्स फॉर मुंबई पल्तान्स टीम। 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले दोनों बल्लेबाज विश्राम करने के लिए गए, निकल चुके हैं डगआउट की दिशा में। चिराग शानबाग का विकेट बहुत बड़ा था, बहुत जरूरी था। वो अगर क्रीज पे रहते तो निश्चित तौर पर मानसिक तौर पर प्रेशर बना लेते गेंदबाजों के ऊपर, उनकी मौजूदगी खलल ले आ सकती थी। लेकिन दूसरा रन चुराने के प्रयास में थोड़ा सा आगे बढ़ गए और स्ट्राइक एंड पे बैट्समैन ने दीपेश ने पहले हाथ तो किया था, फिर वो वापस लौट गए और चिराग को वापस लौटना पड़ा। लेकिन थोड़ी सी देर हो गई और वो क्रीज से रह गए और आखिरकार बैट्समैन आउट होकर पवेलियन लौट गए। खंडित जावन लायक एक रिकवरी केल्या चिराग शानबागन मागशे येवचे क्रीस येवचे पडलेले हाजे मदीं लायक एक फिल्डिंग पळोवचें मेळ्ळें टीम एबीएनजीचे। मस्त क्लोज जावन अशें डिसिजन तशें जावन अंपायर श्रीनिकेतन खंयचे रिस्क घेवचे प्रयत्न करली, ताणें डायरेक्ट थर्ड अंपायर रिव्यू केले। थर्ड अंपायर टेलिव्हिजन स्क्रीनान तो वापस डिफरंट एंगल्सान पळोवन आउट म्हणून डिक्लेअर केला। आजोटीचे दोन्ही विकेट पडला। ह्या फाटी लायक एक शॉट बॉल सीधा वतच बाउंड्रीला बारी 4 रनाक बारी एक लायक शॉट आशिल्ल्या चिके शॉट जावन पडल्यार बॉल लायक कोण पिक केल्ल्या ऑन सायडा मारल्या, खंयचे फिल्डर नातील जाग्यार मारल्या, बॉल गेले सीधा बाउंड्री लायनार तकून भायरी 4 रनाक 4 वैल्यूएबल रन्स मेळटस मुंबई पल्तान्स टीमाक। क्या कमाल का स्ट्रोक था, बेहतरीन टाइमिंग के साथ, प्लेसमेंट के साथ विकेटों को थोड़ा सा कवर किया, शफल किया, मिडल और लेग स्टंप के लाइन पर थी और थोड़ा सा ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक था। पुल किया गेंद को घुमाकर स्विंग के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अब दबाव थोड़ा सा हट गया। 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर चरण आक्रमण पर तैयार हुए। ओवर विकेट उनकी गेंद, इस बार एक और अच्छा स्ट्रोक और थोड़ा सा विकेटों के ऊपर, हालांकि लाइन के ऊपर आ गए और ऑफ द टोज गेंद को फ्लिक करने का प्रयास था जिसमें बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई। 1 रन लेने का अवसर। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो 5 ओवर के समाप्ति पर यानी कि 30 गेंदों में 36 रन बन चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। चरण कामत का ये ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर्स बचे हुए हैं। सूरज जी, आपको क्या लगता है कि बचे हुए 12 गेंदों में कितने रन बन सकते हैं? अजय राजे खंडित जावन हांगा वरल्या 2 ओवरांत जलतीतली रन्स स्कोर काडू पडोवका म्हळ्यार बाउंड्री 6 आयली म्हणजे तांगे टीमाक खंडित जावन प्लस पॉयंट्स जावन आसता। एटलिस्ट एक उण्यान म्हळ्यार 50 रन पुढे मार्काची जाता। आतांचे प्रोजेक्टेड स्कोर पळयले म्हणजे जाल्यार तांगेले प्रोजेक्टेड स्कोर 50 म्हूण म्हाका दिसतस। 36 रन्स जाला, 2 ओवर बाकी आसा। आत्ता कसं करता म्हळ्यार दीपेश शेनाय सेट बॅट्समॅन 12 रनार खेळतस। सो नवे बॅट्समॅन आयला संदीप कामत जलतीतले स्ट्राइकत दीपेश शेनायक दिवका जाता। बिल्कुल सही योजना है। संदीप कामत अभी भी आए हैं, ज्यादा स्ट्राइक का मौका उनको दें तो निश्चित तौर पर बात बन सकती है। लेकिन क्या माइंडसेट है संदीप का, क्या योजना बनाकर आए हैं, ये अलग बात है। संकल्प के साथ अगर वो उतरे हैं कि डेथ ओवर्स में आक्रमण करेंगे तो शायद बात बिगड़ेगी।
लेकिन बांध कर रखना बहुत जरूरी है। 2 ओवर्स एबीएनजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस ओवर्स में अगर वो रनों को रोकते हैं तो बात बनेगी, वरना मैं समझता हूं कि अगर बड़ा लक्ष्य बना तो फिर बैट्समैन ऊपर आने वाले समय में जो कि प्रेशर पड़ सकता है। दूर वाले छोर से ये गेंद वेंकटेश गेंद को लेकर तैयार हुए, उनकी गेंद फटबॉल पर खेलना चाहते थे, बीट हो गए और हल्की सी यहां निकली। अंपायर ने इस अपील को बिल्कुल नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि लेग बाय के रूप में 1 रन लिखा जाना चाहिए। इस एक के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 37 पर, 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और अनुमान जिस तरह से पर कल भी सुरेश भट्ट जी ने प्रेडिक्ट किया था कि 50 के ऊपर रन्स बनेंगे, वैसा ही हुआ। और अगर ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं मुंबई पल्टन्स थोड़ा सा अपर हैंड हासिल कर सकता है। हल्के हाथ से गेंद को धीरे से पुश बर कर दिया, ज्यादा स्ट्रोक के पीछे ताकत नहीं लगा पाए, हालांकि जानबूझकर खेला गया स्ट्रोक था। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई, 1 रन लेने का अवसर, रन बढ़कर 38 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 38 फॉर 2, छठा ओवर प्रगति पर है। सिंगल से काम चला रहे हैं दोनों बैट्समैन। दीपेश स्ट्राइक एंड पर थोड़ा सा घूमकर खड़े रहते हैं, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, पीछा किया, फिर जाने दिया गेंद को, जानते थे कि गेंद दिशाहीन है। अंपायर ने सहमति दी, उन्होंने हाथों को फैलाया, कहा कि वाइड है। सोचना होगा गेंदबाज वेंकटेश को कि ये वो क्या कर रहे हैं। अंतिम क्षणों में गेंदों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। उस छोर से उनकी अगली गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को बल्ले का सिरा भर दे दिया, अच्छा स्ट्रोक है और पॉइंट की दिशा में गेंद गई। 1 रन लेने का अवसर, इस एक के साथ रन बढ़कर 39 पर 2 विकेटों के नुकसान पर सिंगल्स बन रहे हैं। अभी कोई आक्रामक स्ट्रोक्स नहीं लग रहे हैं सुरेश जी। सो सर्व ओवर संची ओवर चलतर 3 बॉल जाला आणि 3 बॉल बाकी वेंकटेश पै बॉल आता वेंकटेश पै हाता वेंकटेश पै शॉर्ट रन अप घेऊन बॉलिंग घालतस। अंपायर क्रॉस करून गेल्यार बॉल यापटी फ्लिक केले, ऑन साइड आणतो, 2 रन मेळत की पडोका, 2 रन प्रयत्न करतस ती आज मध्ये 2 रन धावन कंप्लीट केला। डायरेक्ट हिट जाला पडोका ना वेल होम, क्रीसा येऊन पोविलस, बॉल येऊन स्टंपा लक्ष पुढे राइट टाइमार बैट्समैन येऊन क्रीसा येऊन पावला, तशें जावन लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट हांगा 2 जण बॅटरां मध्ये पळोवच्या मेळ्ळी वापस। कंडापटी फास्ट धांवली ती, सुरवेरन मस्त फास्ट धांवली ती, तशीच 2 रन ताच्या काही फास्ट धांवन 2 रन हांगा कंप्लीट केला मुंबई पल्टन्स टीमाच्या। सो 2 रन ऍड जाल्ले, 2 रन ऍड जावन तांगेल्या स्कोर बोर्डांत आतां दाखयतस वट्ट स्कोर 42 आणि 2 बॉल बाकी वेंकटेश पै बॉल घेवन वापस आर्च फार्मा लॅब्स एंड दखून क्रीसार फेस करू रेडी जल्ला राइट हँडेड बॅटर संदीप कामत। वेंकटेश सो संदीप या पटी ऑफ स्टंप करून मस्त बाहेर आशिल्ल्या, खंडीत जावन वाईट जावकची, खंयचे वाईड ना, खंयचे डाऊट ना, खंयचे प्रॉब्लेम ना आशिल्ले अंपायराक। अंपायर हरीश पडिलान वाईड म्हणून डिक्लेअर केल्या, 1 अतिरिक्त रन ऍड जातस टीमाच्या स्कोरांतू। नेक्स्ट बॉल घालूक वेंकटेश राइट हँड बॅटराक, या पटी एक अपील येयल्या लेग बिफोर द विकेटाक, पाया लागील बॉल बॅटा मेळ्ळी। सो बॅट्समॅना बीट जावन विकेट किपराला गेल्या, आज मध्ये 1 रन लेग बाय रुपार मेळतस, अनेक रन ऍड जाल्ले अतिरिक्त स्कोरांतू। टीमाच्या वट्ट स्कोर जाल्ले आता 44, 44 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। कडे ओव्हर आणि बाकी साजी नंतर संची ओव्हराच्या लास्ट बॉल घालूक वेंकटेश पाय लायक एक शॉट क्रॅशिंग ड्राइव म्हणून येतो ऑफ साइडांतू, एक हँडसम लुकिंग कवर ड्राइव, बट 1 रन मेळता ते प्रोटेक्शन आशिल्ल्या फिल्डरान येवन बॉल फील्ड कोच पयस पुढे 1 रन मात्र काडूक टायमिंग्स आशिल्ले बॅट्समॅनाक। सो ओव्हर नंबर 6 कंप्लीट जाला, 6 ओव्हर कंप्लीट जाता अशें म्हण की मुंबई पल्टान्साचे वट्ट स्कोर जाल्लात 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अजय राजी लास्ट ओव्हरस खंडीत जावन एक बाउंड्री 6 आत आयली म्हूण जाल्यार त्या मुंबई पल्टान्स टीमाक एक लायक एक प्लस पॉइंट, लायक एक विचार म्हणून येतं। जी निश्चित तौर पर कहना होगा कि आखिरी ओवर बचा हुआ है और ऐसे में दोनों बैट्समैन कहीं ना कहीं योजना बना रहे होंगे कि आक्रामक स्ट्रोक्स लगाए जाएं। आखिरी ओवर पादान पर है, प्रगति पर, जो कि शुरू होने वाला है। और ऐसे में दोनों बैट्समैन, एक छोर पर संदीप कामत खेल रहे हैं, दूसरे छोर पर दिपेश जो काफी जम चुके हैं। और दिपेश शोनाई पर ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि अब गेंद उनको काफी साफ साफ दिखाई पड़ रही है, पिच का मिजाज भी उन्होंने पढ़ लिया है। गेंद और बल्ले के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, जो कनेक्शन होता है, वो अच्छा मिल चुका है। तो अब जरूरी है कि वो थोड़ा सा हाथ को खोलें। जबकि दूसरी और टीम एबीएनजी बंटवाल के कप्तान पर जिम्मेदारी है कि इस आखिरी निर्णायक ओवर को कौन से गेंदबाज को सौंपते हैं। इस छोर से
सात्विक आक्रमण पर आ रहे हैं और फुजलाना एंड से वो गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। हमसे दूर जाते उनकी गेंद शॉट ऑफ लेंथ ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया गेंद को, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए पूरी तरह से। दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई, दूसरा रन तेज कदमों के साथ पूरा कर लिया। दीपेश जानते हैं कि सिंगल को 2 में कन्वर्ट करना है, भले ही चौका छक्का न निकले। इन 2 रनों के साथ रन्स अब बढ़कर 47 पर। तो धीरे धीरे जो प्रेडिक्शन आपने किया था सुरेश भट्ट जी ने कि 50 तक तो पहुंच ही जाएंगे, और साइकोलॉजिकली कहें या फिर अगर मनोवैज्ञानिक रूप से कहें तो बढ़त हासिल कर सकते हैं। विकेट ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, जाने दिया गेंद को, बहुत जल्दी पढ़ लिया दीपेश शनाई ने। देखा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर है, थोड़ा सा विकेटों को कवर कर लिया, शरीर को लाइन से हटा दिया, अंपायर की तरफ देखा, अंपायर ने सहमति दी, हाथों को फैलाकर कहा कि वाइड है। इस वाइड के रन के साथ रन बढ़कर 48 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी मुझे लगता है कि और 5 गेंदें शेष बची हैं और फुजलाना से सात्विक की अगली गेंद शफल किया, ऑन साइड की दिशा में घुमाकर खेलने का प्रयास, बीट हो गए। ऐसा लगा कि शायद गेंद बहुत दूर जाकर निकल गई है, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर ने बहुत जादूगरी के साथ गेंद को गैदर कर लिया। लाईक एक बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पडायला बॉल बॅट्समॅन कंप्लीटली बीट जाल्लो, बॅट आणि बॉलामध्ये खंयचे कनेक्शन ना, सो बॉल सीधा गेले विकेट किपरार हातांतू। सो ह्या एक बॉल जाल्ला डॉट बॉल, वापस बॉल हातास सात्विक आल्या, सात्विक फुजलाना एंड करून बॉलिंग करतो। सो ह्या फाटी शॉर्ट जावन गेल्या बॉल चिक्के वारेर आशिल्ले, बट नो मॅन्स एरिया वचून बॉल लँड जाल्ले। आजी मध्ये 2 फील्ड बॅट्समॅनांमध्ये एक ह्यूज मिक्सअप अजोटूची मुंबई पल्टन्साच्या अनेक विकेट पडला। क्या बात है, शानदार फील्डिंग, और दोनों बैट्समैन आपस में तालमेल खो गए। एक और विकेट का पतन हो चुका है। हालांकि मुझे लगा कि आवश्यकता नहीं थी इतने जोखिम भरे रन की, उसके बजाय अगर आक्रामक स्ट्रोक खेला जाता तो बात बन सकती थी। जैसा कि आप रिप्ले में देख रहे हैं, ओवर द विकेट ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर पटकी हुई गेंद थी, उछल कर आई, थोड़ा सा बैकफुट पर गए, गेंद को हवा में खेल दिया, फील्डर की दिशा में गेंद गई, उन्होंने गेंद को उठा लिया और तुरंत थ्रो कर दिया। दोनों बैट्समैन एक छोर पर रह गए और गिल्लियां उड़ा दी गई। इसी के साथ एक और विकेट का पतन हो चुका है। रन 48 पर, यानी कि 2 रनों की दरकार है 50 का आंकड़ा छूने के लिए, और 50 का आंकड़ा जैसे ही छू लेगा मुझे लगता है कि मुंबई पल्टन्स कहीं ना कहीं उनका विश्वास बढ़ेगा और फिर आक्रामक स्ट्रोक्स लग सकते हैं। दीपेश शनाई गेंद बल्ले को थाम कर तैयार हुए हैं और उनके साथ एक और नया बैट्समैन जो कि मैदान पर उतर चुका है, प्रथमेश कामत आ चुके हैं। दीपेश स्ट्राइक एंड पर हैं, प्रथमेश स्ट्राइक एंड पर है, माफ कीजिएगा, प्रथमेश जो कि स्ट्राइक एंड पर, दीपेश नॉन स्ट्राइक एंड पर है, जबकि गेंद को लेकर इस छोर से सात्विक तैयार हो रहे हैं। सात्विक और प्रथमेश के बीच में क्या होगा? प्रथमेश ने मिट्टी को रगड़ते हुए पसीने को दूर कर दिया, स्टांस बिल्कुल थोड़ा सा खुला हुआ है। इस छोर से सात्विक की गेंद प्रथमेश के लिए, ओवर द विकेट ये गेंद आक्रामक तरीके से गेंद को प्लेसमेंट के साथ पुल कर दिया। क्या कमाल का स्ट्रोक है, बेबी साइज स्ट्रोक है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई है 4 रनों के लिए। कमाल का जीपीएल का चखा। आइए सूरज भट्ट जी, क्या कमाल का स्ट्रोक था, विश्लेषण जरूर है, डिस्क्राइब करना जरूरी है। थोड़ा सा ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक, जैसा मैंने आपको बताया। प्रथमेश माइंड सेट करके आ चुके हैं कि आक्रामक स्ट्रोक खेलना है, पूरी तरह से गेंद के ऊपर आ गए, लाइन पर आ गए, गेंद को घुमा कर खेल दिया, वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई 4 रनों के लिए। चिक्के शॉर्ट जावन गेल्या बॉल सात्विकानं लायक कोण पिक केलाय, ऑन साइड मारलाय, खंयचे फिल्डर ना आशिल्ले, सो बॉल सीधा गेले बाउंड्री लाइन कोण बारी लायक एक टायमिंग लायक आशिल्ले, प्लेसमेंट परफेक्ट आशिल्ले। प्रथमेशान ताण खेळलेल्या फर्स्ट बॉलाची व्हेरी फर्स्ट बॉल फेस केलेला तुझी ताण 4 रन काढलेला असं। नेक्स्ट बॉल घालूक सात्विक फेस करतस प्रथमेश, या पटे वापस उभार मारला, बॉल वाऱ्यार असं, आजी मध्ये कॅच जेव चान्स असं, आजी ओटूची प्रथमेश आउट। सात्विकाक या एक विकेट मेळ्ळा हांगा कडे ओव्हरांतू। मुंबई पल्टान्साच्या टीमाचे वोट स्कोर जाल्ला 53 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। थैंक यू डीजे। तो चित्ररंजन प्रभु आ रहे हैं स्ट्राइक एंड के दिशा में, लंबे कद काठी वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बिल्ट है,
53 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आखिरी ओवर प्रगति पर है, आखिरी गेंद शेष बचा है बल्कि, और सात्विक ने अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि अब तक 8 रन वो खर्च कर चुके हैं, 1 विकेट वो अर्जित कर चुके हैं, लेकिन उस चौके के अलावा कोई और ज्यादा रन उन्होंने नहीं खर्च किए। और चितरंजन स्ट्राइक एंड पर रहे, बाएं हाथ के बैट्समैन ने थोड़ा सा ओपन स्टांस है, बल्ले को थाम कर तैयार हुए। सात्विक फुजोलना एंड से गेंद को लेकर योजना बना रहे। 75 नंबर के जर्सी में क्या कुछ होता है, अच्छा संघर्ष। आखिरी गेंद पर क्या होगा, क्या सात्विक बैट्समैन को रोक पाएंगे या फिर चितरंजन आक्रमण करेंगे। ये गेंद ड्राइव करने का प्रयास, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, उठा लिया, और इस दौरान बैट्समैन आगे निकल गए। इसी के साथ स्टंप उड़ाते हुए रन आउट कर दिया बैट्समैन को। एक और विकेट का पतन हो चुका है, बैट्समैन आउट हो गए। तो इस प्रकार 7वां ओवर समाप्त हो चुका है। DJ. सो हांगा फर्स्ट इनिंग्स एंड जाला. आता हाजे नंतर स्टेज प्रोग्राम इनॅग्युरल फंक्शन आहे जावचेर आसा. सो ताजे इनॅग्युरल स्टेज प्रोग्राम जातरी टीम ABNGच्या इनिंग्स स्टार्ट जाता. तो हाजे मध्ये चिके वेळ ब्रेक आसा. सो आता 54 इज द टार्गेट. अजय राजी कशी दिसता तुमकां टीम ABNG हें टार्गेट चेस करून जाता की इथे म्हळ्यार म्हाका दिसता कसं म्हळ्यार मुंबई पल्टन्स तो लायक एक्सपिरियन्स प्लेयर आसा. टीम ABNG नवेच एक टीम अभिजित शेनाय म्हळ्यार एक प्लेयरान म्हळ्यार एक ओनरान बंदिलेले एक टीम फर्स्ट टाइम त्यांनी पार्टिसिपेट करता आसा ती. सो हें एक टफ टास्क दिसता म्हणून म्हाका दिसता आसा. सूरज जी, मुझे लगता है कि ABNG के कप्तान को थोड़ी सी योजना बनानी होगी डगआउट में बैठकर कि शुरुआत के माइंडेड पावर प्ले बहुत जरूरी है, उसके अलावा मेरिट के ऊपर खेलना जरूरी है। कुछ ओवर्स में पहले अच्छे खासे रन्स वो बनाएं, मेरिट के ऊपर सिंगल्स को बटोरें, स्ट्राइक रोटेट करें, अगर लूज गेंद पर वो आक्रमण करते हैं। शुरुआत के 2-3 ओवर्स बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें अगर रन्स बनाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद रन को चेस किया जा सकता है। उसके अलावा निश्चित तौर पर मुंबई पल्टन्स की गेंदबाजी में काफी स्ट्रेंथ है। खंडित जावन अजय राजे फर्स्ट 2 ओवर्स पॉवर प्ले जावन आसता. त्या एक पॉवर प्ले ओवर्सान तूं ओपनर बॅट्समॅनान जल तितले रन्स स्कोर केल्ली म्हणून जाल्यार ते खंडितकय तांगेल्या टीमाक एक लायक प्लस पॉयंट जाता. सो पळोवया कोण हे मॅच विन जावन 2 पॉयंट्स तांगेल्या पॉयंट्स टेबलांत घेता म्हणून. टीम ABNG हें एक क्रुशियल अँड इम्पॉर्टंट मॅच म्हणून येता. इथे म्हळ्यार तांणी 2 मॅच एदोळते खेळलो, एक मॅच मात्र विन जालेला. सो हे मॅच विन जाल्ली म्हणून जाल्यार खंडितकय तांणी एक लायक एक पोजिशना वचून पावता ती. वेरॅज आमी मुंबई पल्टन्स पळयली म्हणून जाल्यार 2 मॅच तांणी खेळली ती एदोळते, दोन्ही मॅच विन जाली ती. तशें जावन तांणी एक लायक सेफ पोजिशनांत आसत म्हणून म्हाका दिसता. ABNG को जीतना बहुत जरूरी है, मस्ट विन गेम मुझे लगता है। उसके अलावा मुंबई पल्टन्स टेबल टॉप बनना चाहता है, दोनों अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेगा, लेकिन जीतेगा वही जिसके लिए लिखा गया होगा, जो डिजर्व करेगा। आइए समय बताएगा कि कौन मैच जीतने वाला है। छोटा सा अंतराल, उसके बाद में वापस लौटते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोंकणी और हिंदी में जो समावेश करते हुए शब्दों का लेन देन किया गया वो सारे दर्शकों को पसंद आया। निश्चित तौर पर आपके फीडबैक की जरूरत है और कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा लौटते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उल्लास ಒಟ್ಟು ಮೆಲ್ತನ್ ಯೋ 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 ಯೋರೆ ಎತ್ತಾನ ಸೋಡಿ ಹೆಚ್ಚನ ಯೋ ಯೋ ಯೋರೆ ಉರ್ಗಾಸು ಬಾರಿ ಬತ್ತನ್ ಯೋ 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 ಯೋರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೇಲ್ಯ ಟುಗೆದರ್ ಯೋ ಯೋ ಯೋರೆ ಮಾರಿ ತು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಯೋ 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 ಯೋರೆ ಕುಳಾರ ಅಂಕ ಮಂಗಳೂರ ಯೋ ಯೋ ಯೋರೆ ಒನ್ ಟು ಯ ಖುಷಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB है worldwide platform for better life GPL world kitle wonder visoru jaina hai nava yo 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 yore etana sodi hechana yo yo yore ullasu ottu meltan yo 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 yore etana sodi hechana yo yo yore urgasu bari vattan yo 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 yore cricket खेल्या together yo yo yore kulara amka manglu yo 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 yore enjoy Korea together yo yo वर्ल्डाच्या नंबर 1 GSB इव्हेंट आर्च फार्मा लॅब्स GPL उत्सव
Title sponsor Arch Pharma Labs Limited. Powered by Puzzolona, Auburn Jewelers, Smart Bazaar, Liz Montagens India, Medak Dragon Private Limited. Associate sponsors Saraswat Cooperative Bank Limited, SR, DBS Trade Link and Advisors Private Limited, Biceps, Bodas, Silent Shores Resort and Spa, Jayalakshmi, Bijay Mangalore, Aruna Masalas, Yajamana, FinPower. Aponu gevnu yore tanka vargi, aponu gevnu yore tuwa vargi. GSB mana mele lagi lagi, yeah yeah. Gamat ratri palle gauji masti. Come on, come on, come on, guys. Dakaya, dakaya, talent right. Happy weekend, enjoy Korea. Dorke, 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 amme. Mama no mayero yeya tummi. Amchi gaile ekade media. Yo, 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 re. Etana sodi echana. Yo, 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 re. हॅलो चेक सेकंड इनिंग्स आताचे आरंभ जावचार आसा त्या जत्तरी आमी स्टेज प्रोग्राम कंटिन्यू करचाची गेस्टान देखून स्टेजार बैसून मॅच पळोवंक म्हण आमी रिक्वेस्ट करून घेता आसाची लाईट एक 7 ओव्हर्साची मॅच देखून तुम्ही आमगेलो टासाच म्हण आमी लेखताची हॅलो चेक जल तितले वगी दोन टिमांनी ग्राउंडार दिवंक म्हण आमी निमून घेता आसाची सेकंड इनिंग्स जल तितले वगी तुम्ही चलासून दिवं का ಲೈವ್ನವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರರ್ हॅलो लाईव्ह स्कोरर यू आर रिक्वेस्टेड टू एक सन चेंज आपास सर आमगेले स्टेज प्रोग्राम आम्ही फर्स्ट करतायची गेस्ट राखूच नाका म्हणून सांगून 10 मिनिट भितर एक प्रोग्राम सन प्रोग्राम करून मागीर इनिंग्स आरंभ करताची म्हणून तशें प्लेयर्स देखून ग्राउंडार असो वयता आम्ही एक 10 मिनिटाचे सनाची स्टेज प्रोग्राम करून त्यानंतर आम्ही कंटिन्यू करताच
हॅलो चेक माईक चेक. आर्च फार्मा GPL उत्सव 2023 चे एक सभा कार्यक्रमात जावचार आसा. आमगेले मस्त गेस्ट स्टेजावर येऊन बसल्याची देखून आणि कोणी सकल असला रे तुम्ही येऊ का आमकां हांगा कोण दिसना देखून तुम्ही येऊन आमगेलो टू जॉईन जावका म्हणून निमगे आसा. राघवेंद्र भक्तांना हांगा आशिल्लो तुम्ही असला रे देखून स्टेजार येऊन जॉईन जावका म्हणून निमगून घेता आसा. GPL उत्सव 2023 दोन्ही दिसाची काली मस्त जनाक आमी पळयला आजी मस्त जन येवन हांगा जॉईन जालेले आसाची. वेदिके वयरी आमकां मस्त रितीरी सपोर्ट केलेले आसाचे आजी भारी खूश जाता. आर्च फार्माचे अजित अण्णा आमगेलो आसा. पुजलोना ग्रुपाचे हांगाचे आसाची तांकांय आमी मस्त आभारी इत्याक म्हळ्यार मस्त रितीरी त्यांनी आमकां सपोर्ट केलेलो आसा. आभरणा देखून सुभाष अण्णा महेश अण्णा हांकां ह्या संदर्भार आमी मस्त धन्यवाद दितासी. त्यांनी नाव सांगतना देखून कोणी असल्यार येवन वेदिके वयर जॉईन जावका म्हण निमगून घेता आसा. तशीच रिलायन्स स्मार्ट बाजाराचे राजेंद्र कामत अण्णा देखून तुमी येद्रा येवन बैसका रिक्वेस्ट करता सर. राजेंद्र अण्णा येद्रा बैसका म्हणून निमगून घेता. लिस्मॉन्टिजन्साचे संजीव प्रभू अण्णा असल्यार देखून वेदिके वयर येवका. मेडेक ड्रॅगनाचे दीपक अण्णा हंग्यो आईस्क्रीमाचे संकीर्ण पै आमगेलो आसा. SR ग्रुपाचे जयंत प्रभू अण्णा. अरुण मसालाचे अनंतेश प्रभू अण्णा. आमगेलो टू मोगाचे वासण्णा वासदेव कामत हन्नी आसाची. श्रेया स्वीट्साचे रमेश मलिमाम. सुधीर भटमाम. गजानन ग्रुपाचे गुरुप्रसाद कामत हनी देखून वेदिके वेरी येवन जॉईन जावका. तशेंच श्रेया स्वीट्साचे रमेश मलिमाम तुम्ही देखून वेदिके वेर जॉईन जावका म्हणून निमगून घेता आसा. भारत पिढीचे सुब्राय पै माम तशेंच श्रद्धा पै आणि मंजुनाथ आमगेलो आसाची तुमकां स्वागत. तशेंच कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे शिवण्णा तुम्ही देखून वेदिके वेर येवका. तशेंच आमकां संपूर्ण विंगड विंगड रितीरी सहकार दिवचे तसले हनुमंत कामत तुम्ही वेदिके वेर जॉईन जावका. तशेंच राघवेंद्र कुडवा तुम्ही वेदिके वेर येवका म्हणून निमगून घेता आसा. नॅचरल आईस्क्रीमाचे रघुनंदन कामत माम तुम्ही आसाची. कामत कॅटरर्साचे सुधाकर माम. रघुवीर भंडारकर अण्णा. रंगनाथ भट सर. सुरेश कामत सर. तशेंच नित्यानंद पै माम आमगेलो टू पूरा आसाची. श्रीदेवी कॅशूचे रंगनाथ भट माम. सुरेश कामत माम. तशेंच पूरा मस्त जनाला नाव. तशेंच संध्या फ्रेश दोकून आसाची. अश्विनी तुम्ही आसाची तुमकां स्वागत मोगान करता आसा. जगण्णा आसा. अशी वेदिके वेरी तुमकां पूरा जाणां काय मोगान अपास स्वागत करता. आज वेदिके वेरी आमी हे सभा कार्यक्रम म्हणून केलेलो नाही. इनॉग्रेशन म्हणून केलेलं नाही. आज एक इम्पॉर्टंट पर्सनाक आमी हे संदर्भात फेलिसिटेशन करूं का तांकां मोगान एक आमगेले तर्फेन थँक्स सांगू का म्हणून एक कार्यक्रम केला. ताका पुरो तुमी जॉईन जाता तशें जावन ताजे काही फुडें तुमकां पुरा आमगेले तर्फेन एक व्हड थँक्स दिवच्याक आमी मोमेंटो दिवचे मुखांतर थँक्स दिताची. आमगेले कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे मंगलपाडी नरेश शेणै. नरेश प्रभू. चेतन कामत हांणी येवन एक एकल्यांकाची मोमेंटो दिवचे मुखांतर धन्यवाद सांगता. तशेंच तांकां हार्टी वेलकम म्हणका म्हण हांव निमगून घेता आसा. देखून वेदिके वेर येवन तुमी हांगा दुखूनची आरंभ करया. प्रथम जेवन जयंत अण्णाक हांगा दुखून स्टार्ट करया.
जयंत नाक मोमेंटो देखो म्हणाव निमगून घेतलं सर. चेतन कामत नरेश प्रभू तुम्ही वेदिकेवर येऊ का म्हणाव निमगून घेतलं सर. आमगेलो गणेश कामत मामय असे तुमकां मोगान अपास स्वागत करता. आमगेलो छाया कामत हनी असाची हांकाय मोगान स्वागत कोरनो या संदर्भेरी धन्यवाद सांगतास. तशेच आमकां उत्तर कन्नड कुमटा सायडाक मस्त एक हेल्प करचे म्हळ्यार ते योगेश अण्णा तुम्ही वेदिकेवेर असाची तुमकां मोगान अपास स्वागत दितास. आम्ही या वर्सा मोमेंटो एक विशेष रितीर केला. आम्ही मस्त कस्टम्स विंगड विंगड कडेन पळयताची. आम्ही प्रति एक पंता कोणालागी उल्लोन जत्तरी एक देव बरें करो म्हणल्यार भारी छंद असता म्हणून हे एक सेंटेन्स आमगेल प्रति एक कॉन्वर्सेशन जातरी आम्ही सांगका म्हणल्यार एक इनिशिएटिव्ह आम्ही ह्या संदर्भेरी ह्या वर्सा GPL अंत घेता आसाची. स्वाम्याने प्रति एक पंत उलयतना आमकां आशीर्वाद करतना देव बरें करो म्हणटा आशिल्ली. तशें जावन आमी गॉड ब्लेस यू पुरा म्हणटाचे इंग्लिशान. देव बरें करो म्हणल्यार एक वर्ड आमगेले GSB फॅमिलींतू प्रति एकल्या लागी उलयतना आनी मुखारी खंडीत येवका म्हणल्यार एक आशी आमगेल तंडाचे मंगलपाडी नरेशणे हांकां एक हे इनिशिएटिव्ह मस्त येत रावचुका प्रति एकल्यान आमचे गेल्यार उरलो न्हू धन्यवाद सांगतना आमी बाय टाटा थँक्यू पुरा म्हणटाची. त्या पुरा वर्ड्स सोडून देव बरें करो म्हणल्यार भारी लायक जाता म्हणल्यार एक इनिशिएटिव्ह आमगेले हगूर हगूर हे फ्रेस आरंभ जावन मुखारी होड फ्रेस जावन कंटिन्यू जावो म्हणल्यार एक आशी कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन यूथ ऑफ GSBचे आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड GPL उत्सवाचे आज हे स्टेजार आनीक मस्त गण्य लोकांनी येवचे आशिल्ले तांणी फाय आमकां जॉइन जाताची येवन जाल्यार आज ह्या संदर्भेरी आमगेलो मस्त जन जॉइन जाल्याची तुमकां पास हांव मोगान धन्यवाद दितास. आनी तुमी आमकां विशेष रितीर सपोर्ट केलेलो मस्त जन आसाची. हांगा चेरडूआ वाटू किड झोन अंत आसा बरो बोटिंग झोन लागीं आसा बरो जो हांव वेदिकेर येना हांव तांकां सपोर्ट करचे मात्र म्हणून तुमी थंय खंयचो बैसून आसा बरो दय कोरून तुमी तशें लेखना तिले वेदिकेवेर येवका म्हणून आमी मोगान आपास आपास तुमगे लागीं निमगून घेता आसाची. आता वेदिके वैरी आम्ही वर्स एक इन्स्पायरिंग पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर म्हणून सिलेक्ट करताचे. लास्ट इयर दिलेले TV मोहनदास पै मामाक तांणी केलेले विविध क्षेत्राचे पळोवन एक सन्मान यांच वेदिकेवेर जाता. हे वर्स जाता अशें आमगेले मोगाचे मुंबईचे DBS आशा पुरो अवतार आशा पुरो मेडॅक ड्रॅगन आशा पुरो असले कंपनी नाव सांगता चमकल्यार खंडापटे कंपनी आसा मस्त जनाक उद्योग सृष्टी जालेलो आसा. तशें जावन दीपक शणै वाशीक ह्या वर्साचे इन्स्पायरिंग पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर अवॉर्ड दिता आसाची. जोर चप्पाळे मारचे मुखांतर तांणी करचे काम आनीकय भारी ग्रँड रितीर जावो चांग रितीर जावो म्हणून ह्या संदर्भात आमी विश करता आसाची. देखोरनो दीपक अण्णान येद्रा येवन चेरार बैसुका तशेंच आमगेले पुरा गेस्टान येवन जॉइन जावका तांकां सन्मान करतना तुमी येसुका म्हूण हांव निमून घेता.
दीपक अण्णा मलगड्याला इधर हांव बैसाना और अब्बूनोची सन्मान घेता म्हणून जावनो आजी दीपक अण्णा का एक विषय तुमका सांगची जाला रे कोविड टाइमार सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्टानं हेल्थ इन्शुरन्स करताना 50,000च्या इन्शुरन्स स्कीम हेल्थ इन्शुरन्स 2,000 कुटुंबाक कोर्ण दिलं तसं एक मनीष म्हणारी त्या दीपक शणै वाशी जोर जाऊन क्लॅप्स तुम गेले या मात्र नाही कोविड संदर्भेरी कोणालाही घराक रेशन उणी जावच्या नजा म्हणाले एक इनिशिएटिव्ह घेऊन तेव्हाही मस्त काम केलं तसं दीपक शणै वाशीक आईच्या या सन्मान तुमका एक उदाहरण देऊचे जाला रे सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्टाका मस्त सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्टाका मस्त रिक्वेस्ट येत असता एक रिक्वेस्ट आयला कसं म्हणा रे आनु अम्मा दोग जण काही हुशार ना तंगेल दुवे काही हुशार नातील तर आम्ही एक व्हिडिओ घाललाय युथ ऑफ GSB रे तुमका कसं नाही कॉन्ट्रीब्युशन करू असला रे तुम्ही करीत म्हणून त्या संदर्भे रे फर्स्ट कॉल येऊन सगळे कुटुंबाक हांव पळून घेवच्या रेडी आसा म्हणले का दीपक शणै वाशील एक स्टेटमेंट आमको पूरा जना काही मोटिवेट कर का तसल एक मुवमेंट आजी आमगेल समाजाची इन्स्पायरिंग पर्सनॅलिटी जेव्हा दीपक शणै वाशी म्हणल खातीर हे अवॉर्ड आम्ही दिता आसाची जोर क्लॅप्स येयला रे तांकां पावता तशीच आमगेलो तो यजमानाचे पैमाम आसा ते करून तुम्ही जॉईन जाऊ का तुमका गोतशील बरी हॉनररी डॉक्टरेट दीपक अण्णाक मेळ्ळालो आसा डॉक्टर दीपक शणै हांकां APJ अब्दुल कलाम युनिव्हर्सिटी अँड रिसर्च सेंटर देखून हॉनररी डॉक्टरेट मेळ्ळा असल काम आनी काही मुखारी मस्त जत सुका आणि आमगेल समाजाक मस्त तनगेले प्रोत्साह मेळका असल पूरा मेळका जाल्यार एक काम केलेलं एप्रिशिएट कर का म्हणलें एक इनिशिएटिव्ह सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन यूथ ऑफ GSB चे आजी तुम्ही पूरा सेरवल्याची म्हळ्यार मस्त वर्ष देखून सपोर्ट करचे अशे दीपक शणै वाशी हांकां एक जोर क्लॅप सपास आयला रे कांय चुकिना म्हणून हांव ह्या संदर्भेर लेखता देखोर न्हू आमगेल पूरा गेस्टान बैसुका तुमगेल सीटारी म्हणून हांव अपास निमगून घेता आसा ये एक सन कार्यक्रम जावन आशिल्ले तपास मॅच आरंभ जावचार आसा सेकंड इनिंग्स देखून पूरा गेस्टान स्टेजारी बैसून तुम्ही मॅच पळोवन मागीर आमी गेस्टाक VIP डायनिंग झोनाक घेवन वता आसाची देखून तितले ते तुम्ही मॅच एन्जॉय करका म्हणून आमी रिक्वेस्ट करून घेता आसाची मॅच आरंभ जावचे फुडें हांव तवळेची दीपक अण्णाला एक रिक्वेस्ट केलेले दीपक अण्णा माईक दिता म्हळ्यार नाका नाका काम मात्र म्हणटा जाल्यार इतले पुरा सांगता एक 2 उत्तर दीपक अण्णान उरलो का म्हणून हांव निमगून घेतास सकड कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन आर्च फार्मा लॅब्स GPL उत्सव आयलेल्यांक सर्वांकय हांव हांगा धन्यवाद समर्पण करता आनी हांगा वेदिकेर बशिल्ले सर्वय मलगड्यांक म्हगेले भवस्पूर्वक धन्यवाद तुमी म्हगेल पाटी मला हांव चेअर दवरता नाका म्हणलें त्या म्हळ्यार म्हाका ह्या सिट्युएशन कशी फेस करता म्हूण कळ्ळी आनी इन्स्पिरेशन पर्सन ऑफ द इयर वेदर आय डिजर्व म्हळ्यार म्हाका हें योग्य तसं की ना मगोत ना कसं नाही असल्यार सर्व मलगड्याला आशीर्वाद म्हणटाना ते मनानी ते घेवचे एक आनंद म्हाका
हांगा हे वेदिकेर म्हाका मेळतर आसा ते मात्र न्ही हे संदर्भेरी म्हाका रेकग्नायज कोर न्हू आनी हे एक इन्स्पिरेशन पर्सन ऑफ द इयर अवॉर्ड दिलेल्याक हांव सर्वय यूथ ऑफ GSB असो कोडियल स्पोर्ट्स असोसिएशन आनी तांगेले ओट्टोशील सर्वांनी तांगेले कमिटी मेंबर्साक हांव धन्यवाद समर्पण करता आनी हे पूर्ती कितले इन्स्पिरेशन हे म्हाका दिलेलें की ते पुराय म्हगेले हरी आनी गुरूक समर्पण आनी म्हगेले हाऊस बाबसूक हांव हे हांगा समर्पण करता म्हाका हे अवॉर्ड फंक्शन आसा म्हणटा तांणी एक 10 दिसा 15 दिसा फुडेंच म्हगेले निमगुच्या सूर केले कसन केला कसन नाही म्हणून म्हाका ताजे जवाब म्हाका समज दिवचे कळनी म्हळ्यार फिलॉन्थ्रोपिस्ट एक्टिविटी कसन केला हांव म्हळ्यार फिलॉन्थ्रोपिस्ट एक्टिविटीज आमी केन्नाय अशी हांव केल्लेली ना म्हगेले घर कडेन एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट आशिल्लो आतां म्हगेले मदें ना तो म्हगेलो आनो आमी साना विशय घरकड दुखून शिकचे म्हळ्यार चॅरिटी बिगिन्स एट होम तशीच घरकड जेवचे विशय आतां आमगेले म्हगेले अन्नान आज येताय तागेला म्हळ्यार आमगेला आसून आमी दिवचे ते एक व्हड विशयूय न्हय म्हणचे हांव केन्नाय आशिल्लें तूं तुकून कान दिवच्याक ते म्हगेल्या अन्नाला शिकू का म्हळ्यार हांव म्हगेल्या अन्नाला शिकिलो म्हळ्यार तागेला कसन अशें की किंचीत रुपार आसल्यार तो सगळे कान दिवन येत आशिल्लो त्या प्रमाण ही इज माय व्हेरी मच इन्स्पिरेशन इन माय लायफ वेर आय हॅव टू थँक हिम हे ऑपॉर्च्युनिटी हांव घेता हांव थँक करूंक ते मात्र न्ही आमगे वेदिके बशेल सर्वांनी हांव तांकां पळोवन इन्स्पायर जाल्लो आसा हाजी म्हळ्यार अशीची ह्या स्टेजार अशी पावच्याक साध्य ना कोणाच्यानी म्हळ्यार एक स्टेप वयर सोडका जाल्यार ते आमी मुखार पळोवक आतां आमगेल मुखार कोण आसा म्हणून इतली महान हस्ती मदें तूं म्हाका एक अवकाश देवान दिलेल्याक हांव ताका पुनरपी धन्यवाद समर्पण करता अनेक विशय सांगता आशिल्लो म्हणजे जाल्यार आमगेल मदें ताजी आर्च फार्मा लॅब्स एज अ टायटल स्पॉन्सर जावन आसा ती श्री अजित कामत ही इज my second and one and only even today the inspiration who is like a backbone for me you know one should learn from him which I am म्हळ्यार मस्त आमी कश्ट पळयला आसता पुरो मात ते कश्ट फेस कोर न्हू हांव हांगा सगळे युथांक हांव रिक्वेस्ट करची कसन म्हळ्यार फर्स्ट आमी आमगेले भितर घेवका कसं म्हळ्यार पेशन्स एट दीस वेरी मोमेंट वी आर टोटली विथ वी डोंट हॅव एनी पेशन्स त्या पेशन्स एक आतां धरले म्हणजे जाल्यार आमी खंयचेय विशय आमी अचीव करूं म्हळ्यार एक साधन तुमी मेगेल रुपार पळोवं येता बिकॉज कश्ट आमी सकाळी पळयलेलो आसा मात त्या कश्टा नंतर सूखय मेळटा देव दिता तशें जावन आमगेले यूथ ऑफ GSBचे पुनरपी हांव तांकां धन्यवाद करता इथं म्हळ्यार हांव लास्ट एक घंटे फुडें आमगेले इंटरव्यू करतना हांव सांगिल्लें आसा म्हळ्यार हें एक प्ले एक क्रिकेट शे सूर जावन आतां एक निज रुपारी उत्सव शे सूर जाल्लो सांगा ते आमगेले आमचे गेले आनी तूं सगळे वर्ल्डान तूं फर्स्ट टायम जेवचे आनी तूं भिन्नाभिप्रायूय ना आनी कोणेय भिन्नाभिप्राय दवरचे प्रयोजन ना तांतूं म्हळ्यार आमी कसन पळय आतां हांव कसनय काम केल्यार तांतूं एक 10 नेगेटीव कमेंट आसता 90 चांग कमेंट आसता आमी 10 नेगेटीव कमेंट पळोवया मागीर 90 तांगेले आमी इन्स्पिरेशन घेवन मुखार वचा ह्यांचे हांव यूथ ऑफ GSB आनी कोडियल स्पोर्ट्स असोसिएशन सांगून घेवचे इथं म्हळ्यार असल काम ह्या लेवलार करचे असाध्य म्हळ्यार हे सगळे वॉलंटियर हांगा राबोवन आज पुरा हे सर्वय फिलॉन्थ्रोपिस्टाक हे म्हगेले इन्स्पिरेशनल अवॉर्ड हांव तुमकां समर्पण करता इथं म्हळ्यार हे हांगा आशिल्ले सगळे इन्स्पिरेशन म्हाका इथं म्हळ्यार ना जाल्यार तुमी कोणेय ना जाल्यार आमच्यान जायना सो वॉट एवर देवान दिलेले आमी देवाक पुनर आमी समाजाक वापस दिवका आमच्यान सान कितले जाता तितले करत वचा आनी हे मुखारसूनय हे कार्यक्रम चंदरीतीर जावका म्हणून हांव देवाला मागून आज म्हाका हांगा वेदिकेर सर्वांनी म्हाका इन्स्पायर करून इन्स्पिरेशन ऑफ द मॅन म्हणून दिलेल्या अवॉर्डा खातीर पुनरपी हांव सर्वां लागीं धन्यवाद समर्पण करता आनी म्हगेले 2 उतर हांगा राबयता हलो ठीक धन्यवाद दीपक अण्णा तशीच आनी एक 2 ओव्हर मॅच पळोवन जातरी हांगाशिल्ले चीफ गेस्टाक आमी VIP झोनाक घेवन वता तशेंच तुमगेले फॅमिली मेंबर्स पूर जाणांक थंय आमी वचा तशेंच ताचे फुडें यजमान पैमाम आसाची तांकां एक मोमेंट दिवका म्हूण हांव संदेश कामत हांगे लागीं नेमून घेता आसा So welcome back to this Sahyadri College grounds. So 54 is the victory target for
Team ABMG to win this match against Mumbai Paltans. First over has been bowled. Atul Prabhu was Rahul Pai was the first bowler. He has considered only 4 runs in that first over. Now Suraj is the bowler to bowl the over from the Puzalana end. Batsman played that shot to the offside region, wanted to crash the ball through the covers, but not from the middle of the bat. So he will have to satisfy with only a single here. So single to Aditya. Aditya Sakardande is the icon player of Team ABNG. Left-handed batter Aditya is on strike now. And at the non-strikers end, we have got Charan, who is batting on 1. Here is the next delivery. Gently pushing the ball to the offside, just giving the touch for going for a cheeky single there. If it's a direct hit, the batsman could have been in trouble here. Very, very good running between the wicket here. Aggressive running between the wicket. Fortunately, direct hit has not happened. So direct hits are always dangerous. Meanwhile, the batter gets a single here. Aditya Sagardande gets a single, and with that single, their score now moves on to 7. Right-handed batter Charan is on strike now. He goes for a big one, paid the shot into the vacant region. Ball is rushing towards the boundary ropes here. Cuts it off. Very, very good piece of fielding there by the fielder. Almost playing like a football. Cuts it off at the last moment, very close to the boundary ropes. Otherwise, the ball would have been crossed the boundary ropes here. So only 2 runs have been added to the total here. So he has saved a couple of runs for his team here. Over number 2 is in progress. 54 is the target for Team ABNG against Mumbai Paltans. Suraj from the Puzalana end bowls this one to the right-handed batter. Crashing drive to the onside. Played all along the carpet, straight down the ground. He played the fielder from the long on region, comes across and corrects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. That single will bring left-handed batter Aditya Sakardande back on strike now. Aditya Sakardande is the captain of Team ABNG. He has to play a captaincy role here. Captaincy knock. Just taps the ball to the offside, just glides the ball, giving the touch and going for a cheeky single, and he gets a single here. So power play is completed. Team ABNG were able to score only 11 runs in the first during the power play session. So field will be spread out now. 54 is the target, and at the moment it is 11. So after this match, at another interesting match will be played between Royal Challengers of Ballambettu versus UK Ekadash Saraswat. Meanwhile, I request the captains of both the teams to come for the toss. Please contact with the organizers. Change in the bowling position here. Let's see who is going to bowl the next over. The bowler will be bowling from the Arch Pharma Labs Limited end. Rahul Pai is the bowler. This is the second over of his coach. Left arm medium face bowler. In the left arm over the wicket fashion he bowls. Very good running between the wicket here. Before the fielder collects the ball, these two batsmen were very quick and they have completed the run comfortably here. Single has been added to the total. With that single, their score now moves on to 12. Over number 3 is in progress. 54 is the target. 12 at the moment without losing any wickets. So Team ABNG Bantwal will have to look for big hits now. If they can pick boundaries or sixes, definitely they can come back into this game. Whereas Mumbai Paltans bowlers are not allowing the batsmen in going for big hits here. He goes for a big one, and this has gone out of the park here. What a magnificent shot it was. He goes for a switch hit on that occasion. Connected, picked it up very nicely, and that has gone out of the boundary ropes for a maximum. So 6 valuable runs from the bat of Charan. Charan is looking very dangerous now. He is on fire. He is in a terrific form. Charan, the opener batter, will have to play his natural game now. That was a short of the delivery. Batsman stepped out very quickly and picked it up very nicely, and he gets 6 valuable runs for his team, Team ABNG.
Suraj is the bowler. He has to improvise his bowling now. I beg your pardon. Rahul Pai is the bowler. This is the second over of his Kocha, and we are in the third over of the innings. Rahul Pai from the far range. That's a clever bowling there, intelligent bowling there, good improvisation in the bowling, good comeback by the bowler. The pace deceives the batsman, ball defrauds the batsman and directly into the wicketkeeper's baggage. Rest of the job is done by the wicketkeeper. Prasad Naik is doing his job as the wicketkeeper there, standing well behind the wickets. Once again, the ball is in the hands of the bowler Rahul Pai. He's back to his bowling mark now. Down to third man, straight to the fielder there. So no runs resulted. Dot delivery there by Rahul Pai. Rahul Pai is bowling with such a good line and length that he is not giving any room for the batters to play here. This is the second over of his quota. In the first over, he had considered 4 runs. And now 2 more balls to go of this over now. Goes for a switch hit, loud appeal there, loud appeal for leg before the wicket, and umpire Harish Padil has no hesitation in raising his finger there. His finger goes up, so first wicket goes down for team ABNG. Mari tu boundary sixer, Kulara amka manglura, one two ya khushi sakar. Youth of GSB hai walwai, platform for better life. GPL world kitle wonder, bisoru jaina hai lava. Etana sodi hechana, Ulasu ottu meltan, Etana sodi hechana, Ulasu parivattan, Cricket kelya together, Kulara amka manglu, enjoying So Korea Rahul Pai is a very successful bowler who has picked up that important wicket. Charan is already back in the pavilion after making 11 runs in his individual account with the help of 1 sixer in his innings. He is back in the pavilion. It's a big blow for team ABNG. They have lost their vital wicket here. And to replace him, the new batsman now joining is Siddesh Ramani. Siddesh Ramani, basically a player from Mumbai. He had played for Mumbai Paltans last year, and this year he's playing for team ABNG. So lot of responsibility on this batsman Siddesh Ramani now. Charan is also a batter from Mumbai. He had represented Mumbai Paltans last year. So last ball to go of this over now. Rahul Pai for the last time. Runs on the scoreboard is 19 with 1 wicket down. The man out is Charan for 11. Aditya, the opener batsman, is still there, and he has to play with cool mind. They can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact now. So 3 overs gone. After 3 overs, runs on the scoreboard is 19. Suraj has been brought back into attack. This is the second over of his quota. In the first over, Suraj had conceded 7 runs. And now he's bowling from the Puzalana end. Ball is in the hands of the bowler Suraj. For the second time, he will bowl. And the man on strike is Aditya Sakaradande, the captain of team ABNG. Icon player of team ABNG, Aditya Sakradande, is ready to face Suraj now. He's all set to face. Ball wraps onto the pad. Once again, loud appeal there. Loud shout by the bowler. But umpire Sriniket says not out because I think it is from the bat. So it's a bat and pad, so no damage done. Single has been added to Aditya Sakardande's account. With that single, their score now moves up to 21.
We come back to the bowler. Chipped up in the air, ball falling into the vacant region to the no-man area. The fielder from the long-on region comes across and collects the ball. But before the fielder collects the ball, there is ample time for both these two batters to cross over for an easy single here. So one more run has been added to the total of Team ABNG, and their score now slowly moves on to 2-2. 22 for the loss of 1 wicket after 3.3 overs. Punched the ball onto the onside, hammered the ball to the mid-wicket region, but not a fully controlled stroke, not from the middle of the bat. He played the shot with the loose hands, not much of power behind that shot. As a result, the batter Aditya Sakradande will have to satisfy with only a single here, and that single will bring Siddesh Ramani back on strike now. Siddesh Ramani is batting on 3 and Aditya is on 8. Played elegantly to the mid-on. Only single will result here. So these two batters are trying to concentrate more on singles because they have lost first wicket early in the innings. Charan was the man out. Now they can't afford to lose any more wickets. They must keep the wicket intact. Flicks the ball onto the onside. Good piece of fielding by the fielder, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. So that's a good over there by Suraj. So Suraj has completed his quota of 2 overs, no maiden, and he has conceded 13 runs. So he has not picked up any wicket. 13 runs in his quota of 2 overs. So 4 overs gone. Runs on the scoreboard is 25 for the loss of 1 wicket. That means 29 more runs required in the remaining 3 overs. 18 balls remaining, 29 more runs required. So everything is good going for Mumbai Paltans team at the moment. They are in a driver's seat. But anything may happen here. We can't say exactly until and unless the final over is being bowled, because Team ABNG still has got a chance. Only thing is they will have to go for big hits now. Definitely boundaries and sixers will help them to reach this respectable target of 54 runs. Will they be able to take the advantage of the bowling now? Venkatesh Prabhu has been brought into attack now, and he will bowl the over number 5 from the far end, that is from the Arch Pharma Labs Limited end. Arch Pharma Labs are the main sponsors, title sponsors of this GPL Utsav 2020-23, and our one more sponsor is Puzalana. Youth of GSB Worldwide is the broadcast partner. Live streaming is going on in YouTube channel of Youth of GSB Worldwide. Meanwhile, bad start for this over. He starts off with the no ball. So 1 + 1, 2 runs have been added to the total here. No ball has been signaled there by umpire Harish Padil. Okay, free hit has been applied here. Can he take the advantage of this free hit delivery? Will he be able to take the advantage of that ball? This is going to be very interesting now. Venkatesh will bowl to Siddesh Ramani. He goes for a big one. Ball is in the air. It could be a catch, and fielder collects it. Meanwhile, since it was a free hit delivery, there is no danger at all for the batsman. He is safe. There was not much of power behind that shot. As a result, the ball was quite high in the air for a while. So only single will result here. Score now slowly moves on to 28 for the loss of 1 wicket. After this match, Royal Challengers of Balambettu team will play against UK Ekadash Saraswat. UK Ekadash Saraswat is a team from Uttara Kannada district.
Most of the players are from Kumta, Honnavar, Ankola. So they will play against RCB. Very, very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicket keeper. So no possibility of any run there. The ball pitching on the off stump and the batsman not getting the line of the ball. On that occasion, wicket keeper collects the ball neatly. So no chance of getting any score over there. Score still remains on 28. Ball is in the air. There is a fielder, but ball falling just short of man at long off region. It was in the air for a while, but no danger at all for the batsman. The ball has safely landed into the vacant region, just in front of the fielder at long off. So one run is resulted here with that single. The score of team ABNG slowly moves on to 29. Again, no ball has been signaled here. Bowler Venkatesh is finding some difficulty during his bowling run-up. He has to improvise his bowling because not only the runs are added, but also they should bowl one more extra delivery here, and also the opposition side will get a free hit chance. So this is going to be interesting now. Can he take the advantage of this free hit delivery? Ball was going down the leg side. Batsman Aditya Sakradande is not happy with that. He's very disappointed. He couldn't take the advantage of that free hit delivery because it was going down the leg side. There is no connection between the bat and ball. And meanwhile, they get a single here. With that single, the scorecard of Team ABNG slowly now moves on to 32. In fact, over number 5 is in progress now. Converted that into full toss. Played all along the carpet. Straight down the ground he played. There is a protection. The fielder from the long on region comes across and corrects the ball. Meanwhile, they get only a single here. Just a single in the last ball of the over to keep it in the strike. That's the end of the over number 5. After the completion of 5 overs, it is 33 on the board. That means 21 more runs required in the remaining 12 balls. The captain of Royal Challengers Balambettu is requested to come for the toss. The captain of UK Ekadash Saraswati is already with us. He is waiting for you. So we request the captain of Royal Challengers Balambettu to come for the toss immediately. So wherever you, please come as soon as possible. Mahesh Pai has been introduced here to bowl the 6th over of the innings, and he will be operating his over from the Puzalana end. So come from the commentator's box end, Mahesh Pai is all set to bowl the 5th over. 12 balls to go, 21 more runs required for Team ABNG to win this match. Abhijit Shana is the owner of that Team ABNG. For the first time, they are taking part in this GPL tournament. A team from Bantwal, having all youngsters. Meanwhile, flicks the ball onto the onside. Will they get the second run? No. Good piece of fielding there by the fielder. So he will have to settle with only a single here. 20 more runs required in the remaining 11 balls. So everything depends on Aditya Sakradande now. The captain of Team ABNG, Aditya Sakradande, has to look for big hits now. If they can pick 1 or 2 boundaries or sixes in this over, definitely the things will change and they can come back into this game. Meanwhile, that ball kept very, very low. Surprised the batsman. The batsman, Aditya Sakradande, had no clue about that ball. Misses it completely. There is no connection with the bat and ball. And the rest of the job is done by the wicketkeeper, Prasad Nayak, standing very close to the wickets. He's doing his job as a wicketkeeper.
Meanwhile, couple of runs have been added to the total of the team ABNG, and their score now moves on to 36 on the scoreboard. 54 is the victory target, and we are in the 6th over of the innings now. 9 balls to go, 18 runs required. Ball is in the air. It could be out as the fielder is underneath it, and he's out. The batsman Aditya Sakardande wanted to go for a big hit, converted that into full toss, goes for a big one, but didn't get the line of the ball properly, not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke, not much of power behind the shot. He has lost his complete rhythm there. As a result, the ball takes the leading edge of the bat, and it was in the air for a while, and the man standing at long on region, making no mistake, caught it beautifully. So fine innings from Aditya Sakardande has come to an end now. A big blow for team ABNG, and they are in big trouble now. Team ABNG are really losing their hopes here. Everything is good going for Mumbai Paltans team. At the moment, Mumbai Paltans are in driver's seat now. So once this match finishes, there will be a cracker show outside the ground. So a match end jalal mankechi tumka cracker show procha melta groundaच्या बाहेरी crackers show असं त्यामुळे तुम्ही enjoy करू का म्हणून तुम्हाला request करतो असं. So bowler Mahesh Pai will bowl the next ball. Outside the off-stump delivery, beaten comprehensively. The batsman was thinking that it is too far from the off-stump, so just leaves it alone, left the ball to go to the wicket-keeper, and wicket-keeper does the rest of the job. No runs resulted. Dot delivery there by Mahesh Pai. Last ball of the 6th over. Once again, he goes for a big one. Ball is in the air. There is a fielder, and I think the fielder was not able to stop that ball, and the ball has crossed the boundary ropes here. But we'll have to wait for umpire decision whether it's a boundary or sixer. Almost very close to the boundary of the fielder. Two fielders were in a row. They were trying to take the catch, and we'll have to check in the television screen in the replay. Third umpire will review it. So it is one bounce over the boundary ropes for 4 runs. Four runs. So score moves up to 40. That means last over to go now. 14 runs required in the remaining 6 balls. So 14 runs required in the last over. Prasad Nayak will bowl. Very experienced bowler, almost like a spin bowler. Prasad Nayak will bowl from the far end. And Prasad Nayak is making some change in the field placement for this right-handed batter. In the next match, UK Ekadash Saraswat will play against Royal Challengers of Ballambettu team.
12 more runs required, only 5 balls remaining. Meanwhile, batsman played their shot elegantly to the deep mid-wicket region, but this time he will get only a single here, not more than a single. So he has to satisfy with only a single here. 4 balls remaining, 11 runs required. Can he go for a big hit now? Will he be able to go for a maximum? Prasad Nayak is all set to bowl the third ball of the over. And the man on strike is now Venkatesh. Clever bowling there, intelligent bowling there by Prasad Nayak. Ball takes the leading edge of the bat, and there was a loud appeal for caught behind, and umpire Harish Padil says he's out. So batter Venkatesh has to move back to the pavilion here. One more wicket has gone down for Team ABNG. So this was a crucial and important game for Team ABNG. They are playing in the second round. So Mumbai Paltans team owners are really happy now, enjoying this cricket here. They have won all the matches what they have played in this tournament. Now 2 balls remaining, 11 more runs required. That means they need 2 sixers. Sri Krishna is on strike. He goes for a big one. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. So 11 runs were required, and now we'll have to wait and see whether it is a boundary or sixer. Well, the umpire has given it to the third umpire to review it in television screen. So third umpire will review in the television screen from different angles, and he will check whether it's actually a boundary or a sixer. So 11 run was required, and meantime the batter goes for a big one, and the fielders were not able to stop that ball. Some kind of misunderstanding between the two fielders there. Meanwhile, the ball has crossed the boundary ropes, but we have to check whether it's a boundary or sixer. So this is going to be very interesting now. 11 runs was the required runs in the 2 balls. Meanwhile, this is a very, very close one. Not sure whether it's a boundary or sixer. Let us see what the decision will come from the third umpire.
So next match will be between UK Ekadash Saraswat versus RCB Royal Challengers of Balambettu. I request the 12th man of both the teams to come to the commentator's box to assist our scorer. Meanwhile, third umpire is reviewing the decision in the television screen here. And the decision from the third umpire, it's a boundary. It's 4 runs, not a sixer. That means 4 runs have been added to the total. They need 7 runs in the remaining. In the only one ball is remaining, 7 runs required. And if they hit one more sixer, the scores will be level. Match will end up with the tie. So let us see what is going to happen now. Last ball to go, 7 runs required for Team ABNG. Sri Krishna, the hard hitter of the ball, is on strike. Prasad Nayak bows this one to Sri Krishna. Very good piece of bowling there by Prasad Nayak. That ball kept low and Sri Krishna was not able to make any contact with the ball. As a result, Mumbai Paltans have won the match comfortably against Team ABNG. What an amazing, magnificent and deserving victory for the team. They have pulled a sensational victory over here. In fact, it's a great victory for Mumbai Paltans team. They have played 3 matches in this GPL season 7 and they have won all the 3 matches. So they have got 6 points in their points table and they are in a topmost position in their pool here. And within a short while from now, we'll come to the presentation ceremony to present the man of the match award of the previous game, and also the next match will immediately start, which will be played between Royal Challengers of Balambettu versus Uttara Kannada Ekadasha Saraswat. And I request once again the 12th man of both teams, wherever you, please come to the commentators box immediately. And meanwhile, I have got Mr. Satish and Gopi with me in the commentary box, who is going to continue the further commentary in English language, as well as Mr. Gopi will continue the commentary in our national language, that will be in Hindi. So very warm welcome to you, both of you, sir. Thank you very much, Suresh Bhaji, and good evening, everyone. Welcome back once again for the prestigious GS Premier League 2023. Meanwhile, before going to the next match, I request once again, it's a man of the match award. We'll be going to present it for the previous match, and a man of the match which goes to one who really batted very, very well under the very difficult condition for the batter, and he scored a most of the runs. In the sense, Deepesh Shenai scored 17 valuable runs. So that is just as a man of the match. I request Deepesh Shenai of Mumbai Paltans, please come and collect your man of the match award from our chief guest. So congratulations, Deepesh Shenai, and as well as congratulations for Mumbai Paltans for winning their all 3 matches of the league, and they grab the places the top in the points table. Now we are coming back to the next match, and a very good match. Royal Challengers Balambettu versus Uttara Kannada Ekadash Saraswat, and here is the players. I request the 12th man of Ekadash,
please report here immediately. I request the 12th man of RCB, Royal Challengers Balambetto extra player. Kindly request you to report here immediately. Royal Challengers Balambetto extra players. Kindly request you to report here immediately. So once again, it's going to be a fantastic match, and wait and see. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ RCB ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು RCB ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್. So after winning the toss, captain of UK Ekadash Saraswat elected to field first so that opening batters of their opposition, we are just waiting for the opening batters of opposition RCB. Please send your opener batter. At the same time, please send your extra player towards our commentary box. I request the captain of RCB, please send your opening batters. Umpires are waiting for you. The opposition team is waiting for you. So what a fantastic scenario of this cricket ground. You can see it in the big screen. That is a beautiful view of this cricket ground from drone camera. Outstanding view. You can't get better than this, the cricket ground. It's nevertheless, it's almost looks like an international cricket stadium out here in this most beautiful Adyar cricket ground here in Sahyadri cricket ground here in Adyar. So now our respected MLA Vedivas Kamath sir arriving here in this cricket ground. So warm welcome for MLA Vedivas Kamath
for this prestigious cricket tournament, GPL, GSP Premier League 2023, season 7 of this cricket tournament. The Royal Challengers Balambetu versus UK Ekadas Saraswat. It's a very interesting match. It's definitely going to be one of the high voltage match of this day. It is of this day night match, because both the teams, out of 2 matches, they won 1 match each. So that winning team definitely going to chance here to qualify. So that it is definitely going to be one of the best match, a do or die match between these 2 teams. After winning the toss, captain of Ekadas elected to field first, so that opening batters of Royal Challengers Balambetu are in the middle. And opening batters, Shashank and Ratan. And straight away, signal came from umpire. Viraj is giving... Viraj, this time, what a shot, what a start. It's going to be a fantastic stroke there from the left-hand batters. The intention is very clear that he will going after the bowler. What a magnificent struck. Just I want to see it in a replay. Short pitch delivery, batsman just climbing on it and pulls that one handsomely down to deep backward square leg for a huge 6. So Fuzulona GPL 6er, the first ball of the innings. It's definitely going to be electrifying start for the over. Shashank hitting that 6. And the Royal Challengers definitely, they came in a different frame of mind, the positive frame of mind. The first ball itself, you can imagine that kind of strategy implemented by these opening batters. Again, nicely come back here by the bowler. Just seeing that the batsman is so good in pulling the ball. He can't do the mistake bowling a short pitch delivery. And Ashlesh Nayak straight away ball little bit the delivery, which is just moving from the good length spot away from the left hand batters and keeping the batsman quiet. Good comeback bowlers from the bowler's point of view. Ashlesh Nayak again bowling away from us. Right on over the wicket again, the short pitch delivery batsman going for the full shot. This time didn't got enough bat onto that. That's why the ball went very slowly towards the deep backward square leg region for an easy single. With that single score moves on to 7 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Of course, the 7 overs game definitely is going to be very, very important to see that. The 7 overs game, only 2 hours going to be a power play. And straight away deep long on and deep mid wicket to the fielders are the deep, saving the boundaries. This time again, nice looking drive towards the deep cover point region. They're running hard, looking for the second, but they're going against that because the fielder is very quick to run back. Of course, quite understandable. Even the ball went in the gap, but ball which is not traveling, ball is not really traveling because of the grass and wetness of the grass. Little bit that ball is slowing down, so that opportunity for the fielder in the ring to run back to field that one. Just a single, and it is just actually you can see it in the drawn camera. The covering that was beautiful view of this cricket of this match might be that was a little bit disturbing the concentration of the batter ball because the drawn camera came very close to the batter, and again right arm round the wicket drives straight to the hands of fielder. This looks like going to be opportunity, hard opportunity for the fielder at a short. In fact, it was a silly mid-off, and because the batsman drives that one pretty hardly, so that fielder actually has got the fraction of second to react to that catch. And of course, after hitting that hands of the fielder, ball might be missing the stumps. If the ball were going to hit the stumps, it looks like the batsman is out of the crease. And definitely going to be a disaster for the batter. Again, inside out ticketing stroke, beautifully played is down to deep cover point region. Again, they're running hard. Again, they're looking for the second, but going against that one, diving attempt there from the batter to save his wicket. Everything is happening in this match. Everything is happening in this match because both the teams knows that this is going to be a very crucial match. They desperately wanted to win the match if they wanted to get the place in the next round. So first over completed, after completion of over number first, it's a 10 without loss of any wicket. It's a 10 on the board without loss of any wicket, and it looks like the bowling change from a little bit correction. The second over we're going to start, and the last over of the power play. A very good positive start came for
RCB, the first over itself, got 10 runs but good comeback, the bowler's point of view. After that 6, Ashilesh bowled well, keeping the batsman quiet. Just 10 runs conceded in that over, but it's a too good over in this condition. Atul bowls to Shashank. Shashank this time going for the little correction. Ratan Kamath going for the full shot. Little bit short pitch delivery, but not short pitch enough to go for the full shot, and missed it completely. Ball just missing the bat and hitting the leg. And scoreboard is 10 little correction for the without loss of any wicket. Atul Prabhu balls. Batsman tries that one right in the gap between the bowler and the short mid wicket. Before the short mid wicket fielder to run towards his left to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. 11 without loss of any wicket. Different bat and ball game when you're coming to the under floodlight. It's so difficult condition for the batter to get some good score, big score. And that's why it's absolutely bowlers dominated game after the floodlight which is switched on. And the morning it's definitely going to be some entertainment cricketing strokes played all around the ground by many of the players. But in this condition it's going to be a different technique required. This time full toss to the batsman, driven that one down to mid-wicket region. And once again they settle for the single. With that single, scoreboard moves on to 12 on the board without loss of any wicket in the over number second in progress. Slowly and steadily these two batters try to get some partnership going. So important in any format of a games, whether it's a 7 overs or 10 overs format of games, the partnership is so important. This time coming down the track, lovely shot, beautifully driven down to deep extra coverage, and the ball running down to deep extra cover boundary for 4 runs. What a shot that one, absolutely fantastic. Just inside out cricketing stroke. Just look at the way that he is hitting the ball. Just getting his front foot out of the way of the line of the delivery, and getting the placement is so good. You know exactly, there is no protection has been given in the deep in the offside region. It's quite deliberately. Ratan Kamath played it down to deep extra cover, lofted deep extra cover stroke. This time once again try to beautiful. That's one on the outside. There's a chance of run out in the non-strikers end, but no one there to collect the throw from the fielder. It's so difficult, isn't it, for the bowler after bowling is very almost coming in the follow through. It's very difficult for him to run back to collect the throw from that short fine leg fielder. But anyhow, the batters completed a single. It's really going to be a good start here for RCB, and it's a 17 for the loss without loss of any wicket in the over number second in progress. Atul again, right above the wicket, going for the full shot, not quite getting hold of that one properly, but no problem whatsoever as far as a single is concerned. Both the batters completed that single. One more productive over which is comes to an end after completion of over number 2. It's 18 without loss of any wicket. Both the opening batters, Ratan Kamath as well as Shashank, they really got a flying start for RCB. This fantastic atmosphere out here in the most beautiful Sahyadri College cricket ground here in Adyar. Absolutely jam-packed stadium. It never looks like it's going to be a cricket going on. It's absolutely a festival atmosphere, isn't it? Everyone enjoying the game of cricket, and why not? Because today is a weekend and everyone got their own time, and they're not bothered about that spending a time in this most beautiful venue, enjoying the game of cricket of this most prestigious GSP Premier League 2023, which is proudly organized by Kodial Sports Association, Mangalore. And tomorrow will going to be a decider day of cricket, and wait and see which team will going to become the champion. As per the record of this cricket tournament is concerned, the Mumbai Paltans, the one team, are becoming the champion twice. And wait and see, after getting a good start, will Mumbai Paltans will going to get the place in the final or not. But competition is on. Each and every team, definitely they came into this tournament with a dream of touching a very beautiful and attractive GPL trophy. This time, who's that one? He's on fire, but ball is in the hands of the deep wicket fielder. Once it looks like when Ratan Kamath to hoisting it over, everyone thought it's going to be one more 6 here. But all in sudden we can see that was a slower one there from the bowler. That's why the batsman not really getting that much of timing enough to get the distance. He got elevation but fails to get the distance. Fielder is underneath it. Deep mid-wicket fielder completed the catch. Wicket number first is back into pavilion. And this is the right time for Ekadas to bounce back, to tighten up the screws.
Shashank's innings comes to an end, but he's tried his level best, isn't it? He played a good innings, the small cameo, but very effective, especially in the power play overs. He got 1-6 and scored a valuable double figure 10 runs for his team. And replacing him is a new batsman just walking towards the middle. One more experienced campaigner for the side, Sridhar, the very tall. Then he is now get ready to face Akshay Bhatt, successful bowler. Akshay Bhatt, left arm, round the wicket balls, beautifully bowled. Appeal for leg before wicket. Umpire saying not out because the bowler looks like coming right in front of umpire. The might be is coming in right in front of umpire. It's very difficult for big umpire to judge whether the ball is going to hit the stumps or not. But leg by which is signalled with the addition of that single, score moves on to 19 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Akshay Bhatt again bowling with a short run off away from us. Now little bit changes in the field. He's not really satisfied with the field set. There is a deep mid wicket and deep long on the 2 fielders outside the circle. Short fine leg is there. The 1 fielder is at a short almost in a silly mid on. There is a short extra cover backward point, short cover point, deep long off. This time improvising quite beautifully down to deep for, oh my goodness, is the maximum. This is a huge one. This is a biggie. Just look at that one. Nothing wrong with the line of the delivery, but batsman, how far he across the line of the delivery. This is a present cricket, isn't it? This is a present cricket, 360-degree cricketing stroke you can witness in this JPL. The slow over one attempted by the bowler, and batsman has got a plenty of time to judge that slow delivery, and he got a lot of time to go back, rock back, just using the deftness of the crease. Plays it beautifully down to deep fine leg for a youth 6, and score jumps into 25. Again, the batsman plays it down to deep. Little correction down to third man region for a single. With that single, score moves on to 26 for the loss of 1 wicket. Beautifully driven down to deep long on region. Sridhar is a very, very experienced campaigner. You know exactly the kind of the batting required when the batsman is settled down in the middle. In the other end, his job is to pick the single, and he gives a strike as much as possible to this man. Ratan Kamath is looking pretty good. This time full toss lofted, but the fielder is underneath it. Ajay completes the catch. That's a huge wicket here for the team. Ekadash, absolutely, it's a big fish in the net. The man who is looking very dangerous, but not really able to use that full toss. It's absolutely, it was a low full toss. In fact, a full toss in the sense it's not an easy full toss. The batsman is really making a mistake that is really not getting the placement right. He's just choosing that deep long off fielder. So one more wicket is back into Pebble, and it's a 27 for the loss of 2 wicket in the over number 3, which is completed. So what a excitement turn around. This match is definitely going to be a very interesting match. But RCB's intention is so clear is that they wanted to get good runs here. They wanted to get a good runs, and at the same time, Ekadash, they also wanted to win the match. If they wanted to win the match, they need to restrict the flow of the runs. And in this condition, 27 runs in 3 balls, definitely going to be a huge one. They're going exactly 9 runs per hour. Absolutely good going, but losing a wicket of the settled batsman Ratan, looks like it's going to be a chance here for the fielding team to tighten up the screws. One more single added to total as the batsman quite nicely turns that one down to square leg region for a single. With that single, score but moves on to 28 for the loss of 2 wicket. Right arm balls going for the cut shot. Ball went towards the third man. There's a chance of run out there. Ball just missing the stumps, and the batsman Sridhar survives. Very risky run, but risk is a part of cricket. But when you're playing that 7 hours of format games, you need to take some kind of risk if they wanted to get going. They know exactly they need to win this match, so they're not missing any chance to get the runs, quick runs. 29 for the loss of 2 wicket. Deepak Badal.
Again, Sridhar cuts that one very nicely down to backward point region. The fielder there in the deep backward point region, almost in unorthodox, not in the inside the circle, but middle of that circle, not in the deep, not inside the ring. Between that, the fielder is stationed so that the batsman got a plenty of time to complete the single. 30 for the loss of 2 wicket. Deepak Badal, right on over the wicket. The interesting kind of paddle shot taken, played there by the batter in the negation. Deepak Kamath picked up a single. It's a very decent over there from Deepak Badal. Compared to the last 3 overs, this is a much better over where he bowled some good line and length. Now Sridhar will go into face next delivery. Right arm over the wicket balls. Tried to york the batsman. Negotiated very well by Sridhar in the negation. Just watching the ball in the last moment and plays it down to deep long on region for a walkable single. With that single, score moves on to 32 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. This time tries that one uppishly but quite safely in the negation. Not really getting that much of timing behind that drive. And luckily that ball didn't carry to the fielder. One more over completed. 6 came from that over. All the deliveries, they got runs. This is a really strategy, the game plan implemented by both the batters. And good going here for team RCB. And even they lost the toss, asked by the opposition to bat first. They're just exploiting the condition of the power play very well. And they got a fantastic start. And now they got a 33 runs after completion of 4 overs. 3 overs remaining of their innings, and wait and see how much runs they will going to get, and wait and see what kind of target Ekadash will going to get. Change in commentary box here. The first time today, I would like to invite my friend Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. And Gopi, it's a very good start, isn't it? In this condition, 33 in 4 overs, definitely is a good start here for RCB. And it is more than anything else, Gopi, it's a do or die match for both the teams. And of course, both the teams wanted to do before die. Exactly, सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, और दे वांटेड टू डू बिफोर डाई. और जहां तक सवाल है, इस वक्त दोनों टीमों के लिए ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है. रॉयल चैलेंजर्स बलम्बेट्टू और यूके एकादश सारस्वत के लिए इस बार गेंद को उछाला था. गेंद पहुंची इस वक्त उन साइड पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जब तक फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर. और जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, दोनों टीमों के लिए ये मैच बेहद जरूरी यहाँ पर बन चुका है. ये गेंद इस बार ऑफसाइड पर, ऑनसाइड पर गेंद को कलाइयों के सारे फ्लिक कर दिया इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर. जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. It's 36 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. 7 overs per side to be played and still 2 overs to go after this one. और जहां तक का सवाल है गेंदबाजी का, अतुल प्रभु, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया इस वक्त मिड विकेट के ऊपर से. गेंद स्पेक्टर लपकने में सफल, बेहतरीन तरीके से फील्डर डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर. और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछाला था, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं. देखिए किस तरह से हुआ था. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. और गेंद इस वक्त पहुंची काफी ऊंची, डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर जो खड़े हुए थे, आखिरकार गेंद को उन्होंने लपका और अपना संतुलन नहीं खोए उन्होंने, और सीमा रेखा के अंदर इस कैच को सफलतम लपकते हुए ये विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं. ड्रोन कैमरा जो कि लहराता हुआ इस वक्त टीवी मॉनिटर पर दिखाई देता हुआ. और जहां तक सवाल है इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बालम्बेट्टू तो एक बेहतर प्रगति करता हुआ, लेकिन अब एन मौके पर एक विकेट यहां पर गिर चुका है. और देखना यह है कि आने वाले बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं. तो मैच नंबर 21, 21st मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट, GSB प्रीमियर लीग 2023, GPL 2023, which proudly presented by Kodial Sports Association Bangalore, broadcast partner Youth of GSB Worldwide. और जहाँ तक सवाल है, क्रिकेट का त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है, फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट, इस सुंदर से विशाल से हरे भरे सह्याद्री कॉलेज मैदान पर. और आज इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन, और इस देर रात पर यहाँ पर इस वक्त संघर्ष जारी है दोनों टीमों के बीच. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ. गेंद को इस वक्त पहुंचते हुए एक्स्ट्रा कवर के दिशा में कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक. 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पर स्ट्राइकर रन पर थ्रो पहुंचा, नॉन स्ट्राइकर रन पर थ्रो पहुंचा, और इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. Still a couple of runs added to their total, and with that couple of runs the scoreboard moving up to 38 for the loss of 3 wicket. Good going on here for them. और जहां तक सवाल है स्ट्राइकर रन का, तो कृष्णा कामत इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद ड्राइव किया एक बार फिर से स्क्वायर ऑफ द विकेट. रन के लिए दौड़ पड़े, थोड़ी सी मिस फील्ड, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन यहां पर
प्राप्त कर चुके हैं। फटाके यहाँ पर फूटते हुए रंग बिरंगी और इस मैदान को और भी रंगीन यहाँ पर बनाते हुए, और जैसा कि मैं पहले भी चंद लम्हों पहले फरमा चुका, फेस्टिवल एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, त्योहार का माहौल यहाँ पर छा चुका है। और निस्संदेह पुजलोना GPL उत्सव एक शानदार प्रगति करता हुआ यहाँ पर, और 16 प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही है और 16 टीमें 4 गुटों में इस वक्त बांट दी गई है, और इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है। तो फटाके अभी भी मैदान पर फूटते हुए आकाश तले, और निस्संदेह इस वातावरण को और भी रंगीन यहाँ पर बनाते हुए। तो कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल बाकी, 2 overs left in the innings, 39 for the loss of 3 wicket। और घने अंधेरों को चीर कर ये फटाके जो कि रंग बिरंगी रंग यहाँ पर बिखराते हुए, और निस्संदेह एक सुंदर सा माहौल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस GSB प्रीमियर लीग 2023 के अंतर्गत। तो इस वक्त दर्शकों से मैदान भर चुका है, और इस वक्त देर रात होने के बावजूद, रात के ठीक तरह से कहा जाए तो 9:30 यहाँ पर बज चुके हैं। इट्स ऑलरेडी 9:30 in the evening, in the night, and a fantastic atmosphere we are just watching right from here। और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है, और नेत्रावती नदी के तट पर स्थित ये मैदान सह्याद्री कॉलेज डियार का ये सुंदर सा हरा भरा मैदान कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह है, और यहाँ पर एक और बेहतरीन मशहूर श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई GSB प्रीमियर लीग 2023 के नाम पर GPL 2023, GPL उत्सव इनफैक्ट 2023। तो मैदान पर जो लगाए गए मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है किस तरह रंग बिरंगी इस वक्त पटाखे यहाँ पर फूट रहे हैं आकाश तले, और इस मैदान की शोभा को और यहाँ पर बढ़ाते हुए। इस मैच के बाद दूसरा मैच, अगला मैच खेला जाएगा। The 22nd match of this tournament will be played between Malpe United versus Rising Star Mangalore. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately. Please get ready for the next match. In fact, I request all the players of these two teams to please get ready for the next match, 22nd match of this tournament. Meantime, the match is now progressing here between Royal Challengers Balambettu versus UK Ekadash Saraswat.
राइट, रंग बिरंगी फटाके इस वक्त आकाश तले फूटने के बाद और यहाँ पर एक बार खेल फिर से पुनरारंभ होता हुआ और स्कोर है इस वक्त 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है. 5 overs completed 39. The present run rate is now progressing here for them is exactly 7.80 runs per over and still they got 7 wickets kept intact. तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो छठा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ. 6th over starts in their innings और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए हमसे दूर वाले चोट से गेंदबाज दीपक का बादल इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद कट किया इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद. नॉट क्वाइट मिडली गेट एट द लास्ट मोमेंट बट ही गेट्स इन अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर. अंडर दिस कंडीशन, इन हालातों में ये स्कोर एक बेहतर स्कोर इस वक्त कहलाएगा क्योंकि मैदान पर जो कि नमी इस वक्त मौजूद है, ड्यू इस वक्त गिर रही है और मैदान लगभग गीला हो चुका है. तो आउटफील्ड या इनफील्ड में रन गेंद उतनी आसानी के साथ नहीं दौड़ रही है और बल्लेबाजों के बल्ले पर भी गेंद आसानी के साथ नहीं आ रही है. तो यहाँ पर कट किया बैकफुट पर जाने के बाद खूबसूरती के साथ बैकवर्ड थर्ड मैन पर गेंद पहुंची. 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. तो इस वक्त एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देते हुए बल्लेबाज और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो अगली गेंद के लिए तैयार. फुल टॉस गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त गेंद की लाइन के पीछे आते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में. नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 42 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 42 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. और फिर से एक बार गेंदबाज किया गेंद. फुल टॉस गेंद को स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ. फाइन इस बार गेंद जाती हुई डीप फाइन की दिशा में और जब तक डीप थर्ड मैन से फील्डर दौड़ कर आए गेंद को थ्रो करे. बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 44 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. जबकि उनकी पारी का छठा ओवर यहाँ पर प्रगति पर. 6th ओवर इन प्रोग्रेसिंग along nicely for Royal Challengers Palambittu and once again the bowler bowls full toss, turns it away this time, swept it refined down to a deep backward square. In fact he gets on a single for that stroke और इस 1 रन के साथ फिर से स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 45 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. रन से आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए और बल्लेबाज गेंद को इस वक्त सही तरीके से खेलते हुए ड्राइव किया. फॉलो थ्रू में इस बार ऑफ साइड पर हाफ स्टॉप अपने हाथ जरूर उड़ाए थे लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटी और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके. It's 46 for the loss of 3 wickets. 6 overs have been bowled and still in overall calculation it's going to be last over remaining in the innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस अंतिम ओवर में रॉयल चैलेंजर्स पालमबेट्टू के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते यूके एकादश सारस्वत के खिलाफ. तो इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा जा रहा है. गेंदबाज जो कि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त दीपक का मत सामना करने के लिए तैयार जबकि कृष्णा का मत नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद. डीप अप मिड विकेट थोड़ा सा आगे तैनात. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ठीक है सीमा रेखा के पास मौजूद. 5 खिलाड़ी सीमा रेखा के पास तैनात. 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. और जहां तक 20 गज के दायरे के अंदर के फील्डिंग के नजरिए का सवाल है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद. कवर पॉइंट शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट मिड विकेट. इस बार गेंद को स्कूप किया. गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे फील्डर. अंतिम क्षण में गेंद तक वो पहुंचे एक टिप्पा खाने के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद को जब तक वो कलेक्ट करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. सिर्फ 5 गेंदें अब उनके पारी में बाकी. और जहां तक सवाल है स्ट्राइकर एंड का तो इस वक्त कृष्ण का मत स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार. प्रसन्ना की गेंदों का दाहिना तो ओवर द विकेट. फुल टॉस गेंद को ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में. नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज काफी आगे दौड़ा है और आसान सा रन आउट इस वक्त होता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पर. और इसी के साथ ये विकेट नंबर 4 यहाँ पर गिर चुका है रन आउट के रूप में. और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था. गेंद को इस वक्त ड्राइव किया था. ड्राइव करना चाहते थे ऑफ साइड पर लेकिन गेंद गई बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद बैक टू द बॉलर की दिशा में और इसे बिना देखे रन लेने की हड़बड़ाहट इस वक्त बल्लेबाज ने दिखाई और आखिरकार भुगतान उन्हें करना पड़ा अपना विकेट गंवाने के बाद. चौथा विकेट यहाँ पर गिर चुका है. 4th विकेट डाउन. इट्स 48 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट विद जस्ट 4 बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स. और नंबर 6 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर कृष्ण का मत सामना करने के लिए तैयार. प्रसन्ना इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. विशाल
किनी का आगमन यहाँ पर हो चुका है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था। दाहिना तो पर विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंचे, एक रन मिलेगा और इस एक रन के साथ बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं। स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ और आखिरकार एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है, कुल मिलाकर 49 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 दैट लास्ट इन प्रोग्रेस। एक बार फिर से प्रसन्न गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार सामना करने के लिए तैयार। विशाल लक्किनी, ये गेंद प्रसन्ना की ऑफ स्टंप से बाहर, खूबसूरती के साथ गेंद के एक्स्ट्रा कवर पर इस वक्त स्कूप कर दिया है ऑफ द बैक फुट, लेकिन वहां पर फील्डर थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करे और थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट he rocked on the back foot and just punched it away through the offside at the last moment and finds the gap very well between long off and extra cover, and because of that he's got a couple of runs for that, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर 51 रनों पर पहुंच चुका है। एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद, इस बार ओवर पिच गेंद थी, गेंद को इस वक्त तक खेलना चाहता ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और आखिरकार गेंद जब तक शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 52 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज प्रसन्ना तैयार, जबकि कृष्ण कामत सामना करते हुए उनकी पारी की अंतिम गेंद का। तो इस बीच रनअप में कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और इस वक्त कवर पॉइंट के फील्डर को थोड़ा सा आगे इस वक्त बुला लिया गया है 20 गज के दायरे के अंदर, और अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, फुलर लेंथ गेंद थी, गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि पूरी तरह गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर Royal Challengers Palambettu, and they started well, progressed well, and finally finished well with 52 in 7 overs, and they set a victory target of UK Ekadash Saraswat is 53, and 53 have scored in their stipulated 7 overs, and as far as the required run rate is concerned, they have to score with a required run rate of 7.58 runs per over with the help of 10 wickets. The present equation shows for them for UK Ekadash Saraswat. 53, quite difficult under this condition, but not impossible. If they batted bravely, it would have been possible for them, and let's see what will happen in their innings. Their innings starts with just short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक खुद मेरे साथ गोपी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा जब यहाँ पर पारी की शुरुआत होगी यूके एकादश सरस्वत की। तो अब वक्त है एक ब्रेक है, और वक्त है इस वक्त डीजे क्रिकेट खेले टुगेदर यो 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 रे मारी तू बाउंड्री सिक्स यो 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 रे पुलार आमका मंगळुरा यो 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 रे वंदूया खुशी सत्ता खया 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 सम खया खया खा ಒಂಗೋಳು ಪೋಂತ ನೈಂಚೆ ವಾರಂತು ರೆಸಿಪಿ ನವಿ ನವಿ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟಂತು ಹಳು ಹಳು ದೇವೈತು ಪೊಟ್ಟಂತು ಯೆ ಯೆ ಜಿರೈ ಪೋಂತ ಪೋಂತ ಸಂತಂತು ಸಮೋಸ 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 ವೈರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ರಕನು ಮಾರಿ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಹೂಲಾ ಹೂಲಾ ಶಮೈ 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 ಬತ್ತಿ ಸರೈ ಪಿಯವ ಕ್ಯಾಬೇಜ ಬುತ್ತಿ ಕೂಲ ಕೂಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ यो 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 तुवा खरतान सोडी अच्छना यो 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 रे उल्लास ಒಟ್ಟು ಮೆಲ್ತನ್ यो 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 रे येतान सोडी अच्छना यो 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 रे उर्गासु बारी बತ್ತನ್ यो 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 रे क्रिकेट खेले टुगेदर यो 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 रे मारी तू बाउंड्री सिक्सर यो 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 रे कुलार अंक मंगळूरा यो 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 रे वन टू या खुशी सत्ता youth of GSB
worldwide. Platform for better life. GPL world kitli wonder. Visoro jaina hennava. Yo 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 re. Yetana sodi yechana. Yo 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 re. Ulasu ottu meltan. Yo 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 re. Yetana sodi yechana. Yo 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 re. Ulasu parivattan. Yo 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 re. Cricket play together. Yo 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 re. Kulara amka manglu. Yo 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 re. Enjoy Korea together. Yo 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 re. Listen the GPL together. अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का बोले की मस्ती में हम बम बोले बम बम बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे बोले के नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा बोले के सहारे बोले के नाम के दीवाने हुए हम फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर धन्यवाद डीजे। तो यहाँ पर पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई और इस वक्त रन बनाने हैं कुल मिलाकर 53 रन जबकि 42 गेंदों में और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त मौजूद गिरीश पंडित और दीपक बादल और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। श्रीधर पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा गेंद स्टंप्सों पर टकराई और इसी के साथ पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में यह विकेट यहां पर गिर चुका है। मुझ पे चढ़ा है बस भोले का रंग हर कण में हर क्षण में है भोले मेरे संग लेके तेरा नाम भक्ति में तेरी ही रहा हूँ सब कुछ छोड़ के शक्ति में तेरी जी रहा हूँ लेके नाम भोले का हूँ निहाल मन में ना है कोई ख्याल भोले में मैं मगन हूँ वो जानता है सबका हाल वस्तुओं के टोले में कोई सारे तो पहले गेंद पर यहां पर विकेट गिर चुका है। गिरीश पंडित कॉन्साइड पर गेंद को उछालना चाहता करारा प्रहार करना चाहता लेकिन गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद और बल्ले के बीच में बल्ले और पैर के बीच में अंतर छोड़ते हुए इस गेंद को उछालना चाहता और गेंद उस अंतर को चीरती हुई सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराए। विकेट यहां पर गिर चुका है। पहली गेंद पर विकेट गिर चुका है। शून्य पर अपना पहला विकेट यहां पर खो चुका है और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। एक यूके एकादश सारस्वत इस वक्त शून्य पर पहला विकेट खो चुका है। नए बल्लेबाज द नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। अजय प्रभु इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और देखते हैं वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ताइनात राउंड द विकेट। ये गेंद इस पर बैकफुट पर गई गेंद हल्के से पुश किया रन के लिए दौड़ पड़े शॉर्ट कवर पर थोड़ी सी मिसफील्ड और जब तक गेंद को दोबारा फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस और अगली गेंद में क्या होता है ये अब आपको अंग्रेजी में जानकारी देंगे मेरे काबिल दोस्त माइक्रोफोन पर सतीश को मैं बुलाना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। Well, thank you very much, Gopi. So, it's a big total, each total in front of Ekadas, 52 to win this match. And they need to get good start from the
opening batters, but unfortunately they lost their first wicket in the first over. Sridhar away from us, right arm over wicket balls, beautifully balled. Sridhar just using his height very well and hitting the ball in a right spot and getting some extra pace, and batsman almost catched in the crease and no question of any run. Sridhar, one of the most experienced campaigner, having have got experience of playing plenty of matches for his team, especially in this GPL. Again, Sridhar right arm over the wicket balls. This time inside out, lovely shot, plays it deep into the deep cover point, deep extra cover region in fact, and before the fielder from deep long off region to run across his left to field the ball. Again, the ample time for the batter to complete the couple of runs. Fantastic cricketing stroke actually, the perfect cricketing stroke to play in the power play overs, just inside out cricketing stroke, making a little bit room to play the shot, nicely coming under the need of the pitch of the delivery, and he got a couple of runs here. 3 for the loss of 1 wicket. Sridhar again away from us. Right arm over the wicket balls. This is a very good strategy implemented by the batters, just moving here and there, just wanted to disturb the concentration of the bowler, and Sridhar might be thinking about to ball that around the legs of the batter, but by doing that he's just lost his concentration over the line, ball outside the line of leg stump, and wide call by umpire. So with that, extra scoreboard numbers on to 4 on the board for the loss of 1 wicket, chasing 53 to win this match. Of course, just talking about the importance of winning this match for both the teams, this is going to be a must-win match for both the teams. Again, Sridhar, right arm over wicket balls. Defensive play, appeal for leg before it is gone. The umpire is raising his finger. That's one the reason behind is that the batsman shuffled across the line of the delivery. But this time Sridhar know exactly where to pitch the ball. Just look at that one, batsman almost right in front of middle stump, isn't it? Once you miss the ball, that your back leg definitely in front of middle stump. So Deepak Badal back into pavilion with a fantastic, intelligent delivery there from Sridhar. You know exactly what the batsman will going to do here. And after seeing the previous deliveries, the batsman shuffled across the line of the delivery to get some improvising cricketing stroke. And then Sridhar repeats the ball in the right area, and the batsman missing it completely, and umpire not missing the opportunity to raise his finger. The wicket number 2 is back into pavilion. It's a 4 for the loss of 2 wicket in the over number first in progress. Good start here for RCB. But it's not a good start. It's absolutely shackling start here for team Ekadash. Again, copybook style of defensive stroke. Plays it down. It's chance of run out. Direct it. And now umpire definitely going to ask for the third umpire to get the judgment of this run out. And wait and see. Will it going to be a chance once again here for the fielding team? If it is a batsman is out of the crease, definitely going to be a more trouble for UK Ekadash Saraswat. They doesn't want to lose the wicket in this condition, because not only they wanted to get the big runs, at the same time the wickets are really tumbling here in the first and second over itself. It's a 4 for the loss of 2 wicket. They doesn't want to see the 4 for the loss of 3 wicket, and but umpire will going to decide here. The third umpire will going to decide here whether the batsman short of a crease or not. And everyone's eyes definitely what could be the decision of this run out. The supporters of Ekadash doesn't want to see that the third umpire will go into give the out. At the same time, the supporters of RCB, they desperately wanted to see that one more wicket here put more trouble for the opposition team. And altogether, the fantastic cricket tournament is progressing here in this most beautiful venue, GSP Premier League 2023. Meanwhile, we are coming to the match. So not out, which is a call. Not out, which is a call. Batsman is safe. Now next match, Rising Stars Mangalore versus Malpe United. And Rising Star captain waiting for the captain of Malpe United. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. Not out, which is called from umpire, third umpire, Ajay Prabhu and Atul Prabhu. Wait and see. The big A's in the pack. Can they able to do the trick here for team
Ekadash needed one good partnership. Not only they wanted to get the partnership, but at the same time, they need to see the acceleration, which is very important. The acceleration of run rate. Here is a Deepak Kamath again from the far end. Right arm over the wicket. Short pitch delivery. That point. You're talking about the acceleration. Here you go, the acceleration. Ball running down to the final boundary for 4 runs. This is what you need to see. The brave and gutsy batting, which is really required here for the Ekadash. And batsman Ajay Prabhu going back and pulls that one down to deep fine leg boundary for 4 runs. Just a little bit short pitch delivery, and batsman got all the time in the world to judge that short pitch delivery. There is no fielder in the deep in the fine leg region. The placement is so good in dedication there from Ajay Prabhu. And he got a very important boundary for his team. Again, shuffled across the line after delivery. Tried to repeat that one, but this time a bowler is too intelligent. Seeing that batsman again going for the same shot, is not really settled the batsman for the pull shot. He's just following the batsman and bowling that very good line ball, just going over the top of the stumps, and there is no chance at all for any run. 8 for the loss of 2 wickets. Again pulls that one just over the top of the infield, down to mid-wicket region. This time definitely they were coming back for the second before the fielder from the deep mid-wicket region to returns the ball towards the non-strikers, and again the ample time for the batter to complete the couple of runs. 10 for the loss of 2 wickets. It's a do-or-die situation here for both the teams. After getting a good score of 52 runs by RCB, maybe dreaming about the victory here, but I think UK will not going to give up this match cheaply. They will definitely going to fight hard for the victory. Ajay Prabhu is on strike. Driven nicely, like a placement straight to the hands of fielder, mix up, opportunity of run out, and wicketkeeper missed it. Ajay Prabhu dealing with some luck here. After he drives the ball went straight to the hands of extra cover. Of course, there is no chance at all for any run, but Atul doesn't know about that. He drives the ball, going for the single, fumble from the fielder, returns the ball to the hands of wicketkeeper, and wicketkeeper completely missed that throw from the fielder. Lucky escape for Ajay Prabhu. Can he able to convert that life into good innings? Absolutely need to do that if his team is wanted to get the victory. Atul and Ajay Prabhu have to play the innings of their life. Lofted, but I don't think we're going to get the distance, but he's kind of fielder, and he taken a wonderful catch. The one more wicket is back into pavilion. What we are talking about, the partnership is so important, and now partnership not really coming up. So what a fantastic catch taken there by Preetan down at mid-off. Once it looks like the batsman Ajay Prabhu hoisting it over. Looks like he wanted to go over the top of the infield, but he didn't really got that much of timing enough. Not really coming to the pitch of the delivery. Even though he got a life, but he really fails to convert that life into beginnings. Unfortunately, after getting a good score, he's back into pavilion. 10 for the loss of 3 wickets. This is not the scoreboard what the fans of Ekadash want to see. The much better than that. But unfortunately, wickets are falling. Runs are very hard to combine against the disciplined bowling performance of RCB. Deepak Kamath. So far, he conceded a boundary, conceded some runs, but he able to bounce back with the wicket. New batsman walking towards the middle, Akshay Bhatt. Wait and see how Akshay Bhatt. One more ace in the pack. Lot of ace in the pack in the batting department of Ekadash. One more A. Akshay Bhatt replacing Ajay Prabhu. Deepak Kamath. Final time in this over. Having some fielding changes. One fielder now going towards the deep backward square leg region. One at deep mid wicket. There is no deep long on. There is a mid on. One fielder is stationed at short extra cover point, backward point, and gully. Cuts that one very nicely. Good piece of fielding there by Shader.
Absolutely good stop, isn't it? Diving to his right, got a hand onto that. It's not so easy, isn't it? When you are so tall, it's not so easy to dive. And Sridhar done a great job. Just like I mentioned about Sridhar, is experienced campaigner for the side. Absolutely good effort there from the fielder. That kind of effort will going to lift the spirit of other players. And that's what I need to have such kind of commitment from the fieldsman. So one more over completed after completion of over number 2, chasing 53 to win this match. 11 for the loss of 3 wicket. So for the next match, toss which is completed, toss which is on by Rising Star, and they elected to field first against Malpe United. 42 runs required, remaining 30 balls. Nothing much worried about the run rate required, but they are really worrying about, they are not having a subtle batsman in the middle. Atul Prabhu just a new batsman, just arrived to the crease. Akshay Bhatt also is a new batter. And that's why it's going to be so important for the chasing team. One of the batsmen have to play long innings, the big innings. And that's definitely going to be a key here if they are Ekadash want to win this match. So no change in bowling. Looks like Sridhar will going to continue from the commentary box end. And in front of him, right-hander batsman Akshay Bhatt. Get ready to face the next first delivery of Sridhar. Right arm over the wicket. Delivers. Nicely turns at 1-1 to square leg region. Of course, quite dangerously played. Little bit shuffled across the line of the delivery. The same thing has happened to his partner when he was tried to flick that off his legs against a delivery which is pitched on the middle stump. But luckily that the batter has got a bat onto that. Otherwise, it's going to be one more opportunity for the leg before wicket. And 12 for the loss of 3 wickets. Sridhar again back to his bowling mark. There's a fine leg, square leg, deep backward square leg, deep long on, long off, deep extra cover, short mid up cover point, short fine leg. Here is Sridhar, right arm over wicket. Batsman cuts that one very nicely between the cover point and the back point region. Before the cover point fielder just rushing towards the ball, ample time for the batter to complete the single. Both the batsmen actually they need to rebuild the innings. But question raising here is that not only they need to keep the wickets in hand, need to get the partnership going. At the same time, they need to keep eye on the required run rate, which is really climbing up in each and every economical overs. Sridhar bowling away from us. Right arm over wicket balls. So nothing much do with the delivery. Left the ball, rightly so. White call by umpire. This is all runs are the bonus run where Ekadash team will going to enjoy. But at the same time, just like what after that ball is gone wide, batsman just thinking about why not I missed it, the ball can go for the big shot. Using that wide ball, converting that into the big shot. They need to be, because they're really asking run is climbing up. Sridhar again bowling right arm over the wicket balls. This time again well pitched up the delivery. Good extra bounce here for Sridhar. Quite understandable because he's using his height very high, very well. Just forcing the batsman onto the back foot. So that batsman able to pick the single down to backward point region. That brings Atul Prabhu into strike now. He's batting on 1 and he's facing Sridhar. Sridhar right arm over the wicket, cuts that one, beautiful shot. Absolute technical and classical shot there from Atul Prabhu. Everything is perfect in that cut shot. Just going back and seeing the line and length of the delivery, and plays it quite beautifully down to deep cover point region for a single. With that single score, moves on to 16 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Run rate required is really climbing upward to 8.54 runs per over. Sridhar again, right arm over wicket balls. Again, that ball going to be a wide, little margin for error. Any ball which is pitched outside the line of leg stump, umpire will not going to miss the opportunity to signal the wide. This is the second wide of this over. And 17 for the loss of 3 wickets. Slowly and steadily, these batters really trying their best to get some partnership here. Sridhar again, right arm over the wicket balls. Off the back foot, cuts that one straight to the hands of fielder. No question of any run, rightly so. Both the batters are not interested for the run because of that ball is went straight to the hands of a backward point region. Each and every dot ball will go and create the problem for the chasing team. So 25 balls remaining. They need to get another 36 runs to win this match. Again,
flicks it on one of his legs down to square leg region. With that single, scoreboard numbers on to 18 on the board for the loss of 3 wicket. Over number 3, which is comes to an end. Chasing 53 to win this match and searching for the right track. UK Ekadash Saraswat are 18 for the loss of a 3 wicket. Now, straight away coming back to the equation. 4 overs remaining. That means 24 deliveries remaining, excluding wides and no balls. And in that 24 runs, they have to get another 35 runs to win this match. So straight away asking run rate is climbing up now to 8.75 runs per over. And in this condition, and dew factor will going to be a big factor for a chasing team. And they're always going to be a difficult task. But not impossible. In cricket, anything is possible. There is no word called can't in cricket. But you need to implement the strategy of knocking the T from can't, then you can. And that was always required from the batters of Ekadash. Need to fight back. Need to fight back. For that, they needed one big over. A good over. Productive over is badly required. This time, driven that one straight down the ground, down to deep, straight long on region. And they're coming back for the second. And they made it quite comfortably in the end. A good placement there from Akshay Bhatt. He plays it quite nicely over the top of the bowler. Straight down the ground, as straight as an arrow. And best place to get a couple of runs here. Again, a good attempt there from the short mid-on fielder. Diving to his left to stop the ball. But ball is just missing his hand and ball went towards a deep long on region. 21 for the loss of 3 wicket. In the over number 4 is in progress. Again, chip that one over the top of the infield. Excellent placement. Again, they're coming back for the second. And a throw coming from the deep. It's not that quick enough. Not quick enough. But the batsmen are quick enough. But unfortunately, one shot call by umpire. This is always going to be disaster, isn't it? When you are running hard to complete that couple of runs and umpire calling one shot, that means it's going to be disaster. The batsman only getting a single for that. A very good placement there from Akshay, but unfortunately, his partner is not reaching the crease, and that's what umpire observing and saying that is one shot. 22 for the loss of a 3 wicket in the over number 4 in progress. Absolutely, it was electrifying atmosphere out here in this most beautiful Sahyadri cricket ground here in Adyar. And here is the next one, right arm over the wicket, balls, nice returns that one down to square leg region. He picked up a single here. It's from the bat, little bit across the line of the delivery. Atul Prabhu plays it now nicely down to square leg region for a single. 23 for the loss of 3 wicket. 5 runs conceded in 4 deliveries. Again off the backward, plays it down to cow point region. They're going for the quick single, chance of run out there, and it's going to be a chance here for the third umpire to decide. Because whenever there is a direct hit, umpire definitely doesn't want to take any risk. The field umpire straight away asking for the third umpire to give the decision. Now once again it's going to be a very, very close one. So whenever there is a direct hit, almost we can see that 75% of result going in favor of a fielding team. But here we are wait and see. The decision whether going to be the against the fielding team. Wait and see. It's definitely going to be a very good piece of fielding by the fielder. Not only pick the ball very well, but at the same time releasing the ball quickly to the stumps. And the bails are off, and at the same time wait and see whether the batsman is safe or not. Of course, the UK Ekadash Saraswat doesn't want to lose wicket here. Already they lost the 3 wickets. Not only they wanted to get the partnership going, but at the same time they needed some acceleration of run rate. 53 always going to be a big total to chase down, but not impossible. Just look at that one and replay. Going for the backward cut. Not out, which is a call from umpire. The batsman is safe. The batsman is safe here. And they've got a single for that. 23 for the loss of 3 wicket in the over number 24 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Deepak Kamath so far he bowled 1.5 deliveries and conceded 13 runs and picked a wicket here. I request the fielding team to make it fast, just like we are already mentioned that 35 minutes need to complete your 7 hours quota. So after this, another 3 matches to be played.
Yesterday also the match ended exactly in the late night 2:15, and today is the day night number 2 of this cricket tournament. Tomorrow going to be a decider day, final day of this prestigious cricket tournament, GPL 2023, in the name of GPL Utsav, proudly organized by Kodial Sports Association, Mangalore. From the far end, right above the wicket, beautifully plays it down to deeper cow point region. Again, excellent piece of fielding there by the fielder. Really good one indeed. Not really let the batter to come back for the second. And athletic work done by the fielders. So one more over completed after completion of over number 4. Chasing 53 to win this match. Still searching for the right track. UK Ekadas 24 for the loss of 3 wicket. And in remaining 25 and remaining 3 overs, 18 balls, they have to get another 28 runs to win this match. So Gopi, just welcome back once again. Now as the condition is definitely going to be a more difficult here, isn't it? 28 runs which is required run, and remaining delivery is 18. And just coming back to the equation, Gopi, and the difference between run and ball exactly the 10. And under this condition, Gopi, the 10 difference is always going to be a big difference. If you wanted to reduce that difference, one productive over is badly required for Ekadas if they wanted to win the match. Absolutely, Satish. एब्सोल्युटली सतीश, जैसा कि आपने कहा इस वक्त 18 गेंदें बाकी है, 28 रन चाहिए और इस फासले को घटाना है तो निस्संदेह अंडर दिस कंडीशन वन गुड ओवर बैटली रिक्वायर्ड टू गेट बैक इनटू दिस मैच फॉर द बैट्समैन ऑफ एकादश। और जहां तक सवाल है, इस वक्त मैदान पूरी तरह गीला हो चुका है, नमी जो कि मैदान पर इस वक्त फैल चुकी है, आउटफील्ड जो कि वेट हो चुकी है और गेंद खुलकर ट्रैवल इस वक्त नहीं कर रही है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा 28 रन 18 गेंदों पर बनाना कुछ हद तक चुनौती भरा यहाँ पर साबित हो सकता है। देखते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। और एक दिलेर भरी बल्लेबाजी, गट्सी बैटिंग जिस अंग्रेजी में कहते हैं, इस वक्त उन्हें इस मैच में वापस ला सकता है। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त यार रतन का मत्ता अतुल प्रभु सामना करने के लिए तैनात ऊपर द विकेट। ये गेंद बैकवर्ड पर गए, कट किया गेंद को, देखिए गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। इन फैक्ट 17 balls to go in their innings and 27 more runs now they have to score for victory। अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाह चुके, गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और विकेट कीपर के पैरों पर टकराने के बाद जब तक शॉट फाइन लेग पर फील्ड हो, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रन। 27 for the loss of 3 wickets in the over number 5 in progress। फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, तैनात ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हैं, फुल टॉस, इस बार मौका, लेकिन विकेट कीपर इस मौके को गंवाते हैं। लेकिन यहाँ पर इशारा हो चुका है नो बॉल का और रनआउट के लिए इस वक्त मांग की गई है और इस वक्त बल्लेबाज खुद पेविलियन की ओर लौटते हुए और तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई थी अंपायर द्वारा, लेकिन बल्लेबाज ने इशारे से कहा जी हाँ मैं आउट हूं और इसके साथ ही वो पेविलियन की ओर इस वक्त पधारते हुए तो विकेट यहां पर गिर चुका है और विकेट नंबर 4। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। रियली टेस्टिंग टाइम कंटिन्यू हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ एकादश। और जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का तो 26 रन और चाहिए विजय के लिए। 26 more runs now they have to score for victory in remaining 16 deliveries in fact। So इस वक्त नए बल्लेबाज का इंतजार है, खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है, देर रात इस वक्त हो चुकी है, लगभग सही तरह से कहा जाए तो 10:15 इस वक्त बज चुके हैं, 10:15 और यहाँ पर आउट इज द कॉल फ्रॉम एंड दैट इज द विकेट is now fallen 27 for the loss of 3 wicket। और जहां तक सवाल है इस वक्त देर रात होने के बावजूद काफी मात्रा में दर्शक इस मैदान के इर्द गिर्द मौजूद और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा जैसा कि मैं पहले भी कह चुका, एक त्योहार भरा माहौल, फेस्टिवल एटमॉस्फेयर मैदान पर छा चुका है इस GPL 2023 मेगा श्रृंखला के अंतर्गत GPL उत्सव के नाम से जो जाना जाता है, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन मंगलूर ने। GSB प्रीमियर लीग 2023 के नाम पर सुंदर से विशाल से सह्याद्री अड्यार के हरे भरे मैदान पर
ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए। और जहाँ तक नए बल्लेबाज का सवाल है तो बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पधारते हुए और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार स्ट्राइकर एंड पर, जबकि नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है नॉन स्ट्राइकर एंड पर अश्लेष नायक, जबकि अतुल प्रभु सामना करते हुए। यह गेंद उछाला कदमों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन स्ट्रोक में ज्यादा दम नहीं और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर दौड़ कर आए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक नहीं पहुंच सके और आखिरकार बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का। ऐसा करना पड़ेगा यूजिंग हिज फीट, जस्ट कम्स डाउन द ट्रैक एंड जस्ट वांटेड टू लॉफ्ट दैट वन ओवर द लॉन्ग ऑफ एरिया, नॉट सक्सीडेड, नॉट क्वाइट मीटिंग एट द लास्ट मोमेंट और गेंद हवा में उछली टॉप एज पर टकराने के बाद, लेकिन भाग्यशाली रहे कि लॉन्ग ऑफ फील्डर के आगे गेंद टिप्पा खाते हुए 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद को इस वक्त ड्राइव कर दिया बैकफुट पर जाने के बाद और जब तक गेंद को लॉन्ग ऑफ पर फीड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रन इस वक्त चाहिए एकादश को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए टीम एकादश सारस्वत के बल्लेबाज रन बनाने की हर तरीके की कोशिश, हर तरीके का प्रयास करते हुए। ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त वाइड लगाओ पर दूसरे रन के लिए इस वक्त मांग करते हुए, लेकिन दूसरे रन के लिए आवाज देते हुए, लेकिन नहीं मिलेगा दूसरा रन। वहां पर फील्डर गेंद को फील्ड कर चुके हैं और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। 21 रन और चाहिए, 13 गेंदें बाकी, 21 टू गेट इन रिमाइनिंग 13 डिलीवरीज। और इस ओवर में अंतिम बार रतन कामत अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त जगह बनाते हुए लॉन्ग ऑफ पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। 1 run added to the total. Over has been completed. 5 was completed. 33 for the loss of 4 wicket. Still the batsmen of Ekadash Saraswat still searching for the right track. It's 33 for the loss of 4 wicket. 20 required exactly in remaining 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. And the required run rate is now gone up to exactly 10 runs per over. 10 रन प्रति ओवर के औसत से इस वक्त रन बनाने हैं 20 बचे हुए 2 ओवर में। और जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है तो कम से कम एक चौके या छक्के की इस वक्त सख्त जरूरत है एकादश सारस्वत को इस मैच में कम बैक करने के लिए। अगला मैच, जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, Malpe United will takes over Rising Stars Mangalore in the next match, and because of that I request all the players of these 2 teams to please get ready for the next match. Match number 22nd of this tournament is now coming up. So news is here from the center that the captain of Rising Star after won the toss he elected to field first against Malpe United in the next match. And that match is now coming up loud exclusively right after this match. So back to this game, the battle is now continuing here. 20 required in remaining 12 deliveries. और गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए। तो फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए और जहाँ तक सवाल है फील्डिंग के व्यू का, शॉट फाइन लेग इस वक्त मौजूद, स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन इस वक्त पीछे की ओर जाता हुआ, लॉन्ग ऑफ इस वक्त सीमा रेखा के पास तैनात, डीप एक्स्ट्रा कवर, थोड़ा सा स्क्वायर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अश्विन कामत फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, दिशाहीन गेंद और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 34 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर इन फैक्ट। और 12 गेंदों में इस वक्त चाहिए 19 रन, 19 रन टू गेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को इस वक्त छोड़ दिया बड़ी मुश्किल के साथ, देखते हुए कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है, अपने टांगों को गेंद की लाइन से अलग किया और गेंद को सीधे जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 18 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 12 बॉल्स। गेंदबाज अश्विन कामत अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। Not quite the middle of that, he's got that one, and because of that, he paid the penalty for that. Long off fielder made no mistake, and one more wicket fallen.
So Akshay Vardhaman is now dismissed. Just wanted to heave the ball over long off, has not succeeded. And the placement was too wrong, and because of that, he paid the penalty for that. One more wicket fallen. It's 35 for 5. Still, the struggling time is now continuing here for the batsmen of UK. एकादश सारस्वत नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज की ओर क्या अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। थ्रो इस वक्त पहुंच चुका है लॉन्ग ऑन फील्डर का गेंदबाज के हाथों में, और बल्लेबाज दोनों एक रन के साथ संतुष्ट हो चुके हैं और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर। 10 गेंदें बाकी है, 17 रन चाहिए, 17 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 10 बॉल्स। और फिर से गेंदबाज अश्विन कामत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑन पर, लेकिन मैंने समझता गेंद सीमा रेखा को पार करेगी और इस वक्त गेंद को लपक लिया गया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर। एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। ఎదురుతుండే కన్నులు రెండు తిప్పేస్తావే, నీ చూపుల పైన రెప్పలు వేసి కప్పేస్తావే, కనిపించని దేవుణ్ణే కన్నార్పక చూస్తావే, కన్నుల ఎదుటే నేనుంటే కాదంటున్నావే, చూపే బంగారం ఆయనే, శివల్లి మాటే మాణిక్యమాయనే, చూపే బంగారం। इस बार नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में, रन दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए डाइविंग स्टॉप इस वक्त करते हुए अपने विकेट को बचाने में सफल बल्लेबाज, और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। It's 37 for the loss of 6 wicket, 8 balls to go in their innings, 16 more runs now they have to score for victory. The equation seems to be much stiffer now for the batsmen. और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद इस बार ऑन साइड पर सफल होते हुए गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर, और जिस तरह से घास पर गेंद जा रही है उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गेंद पर घास पर इस वक्त नमी मौजूद है, ड्यू मौजूद है, और इस वजह से गेंद घास पर अपनी रफ्तार को खो देती है। और जहां तक सवाल है, इस बार एक रन न सिर्फ इस गेंद पर मिला, अगली गेंद ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता अंतिम क्षण में स्टंप्स को एक्सपोज करते हुए, चूंकि ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति 38 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 38 for the loss of 6 wickets, 6 overs had been bowled, last over remaining 15 runs to get from last over। 15 रन चाहिए अंतिम ओवर में विजय के लिए। अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही इस वक्त यूके एकादश सारस्वत को इस मैच में वापस ला सकते हैं। तो अंतिम ओवर का खेल बाकी। कृपया मैं निवेदन करता हूं सर्व खिलाड़ियों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। इस मैच के बाद 3 मैचेस और खेले जाने बाकी हैं। अगला मैच होगा मलपे यूनाइटेड और राइजिंग स्टार्स मैंगलोर के बीच में, और उसके बाद वडालंग फाइटर्स मुल्की का मुकाबला होगा पर्ल सिटी क्रिकेटर्स पुत्तूर के साथ मैच नंबर 23 में, और उसके बाद 24वें और अंतिम मैच, आज के 24वें और अंतिम मैच में उडुपी ब्लास्टर्स और जीएसबी रॉयल्स कोडियाल भिड़ेंगे रात को ठीक 1 बजे। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सर्व खिलाड़ियों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। प्लीज कंटिन्यू द मैच एज सून एज पॉसिबल। तो जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज विघ्नेश भट्ट, अंतिम ओवर शुरू होता हुआ उनके बारे में 15 रिक्वायर्ड इन लास्ट ओवर। अश्विन प्रभु इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ, और अश्विन प्रभु इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात, जबकि ऑफ साइड पर डीप एक्स्ट्रा कवर ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद। ऊपर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए थोड़े से सफल हो चुके थे अंतिम क्षण में, लेकिन न गेंद को कनेक्ट करने में सफल, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 15 रन चाहिए, 5 गेंदें। हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता नजर आता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, और फिर से एक बार गेंदबाज विघ्नेश भट्ट गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। लंबा रन अप उनका
12 से 14 कदम दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार है। ये गेंद पटकी हुई गेंद, उछाला गेंद को लेकिन ठीक तरह से उछाल नहीं पाई, जमीन के सहारे गेंद पहुंची मिड ऑफ पर और वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 39 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स मॉनिटर पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। 6.2 ओवर पूर्ण हो चुके हैं, 4 गेंदों का खेल बाकी है इस वक्त। 14 रन विजय के लिए चाहिए। 14 रन टू गेट इन रिमाइनिंग 4 deliveries with a record run rate of exactly 3.5 runs per ball और 3.5 रन प्रति गेंद के औसत से 14 रन पर आने बचे हुए 4 गेंदों में। और विघ्नेश भट्ट इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रज्वल कामत के लिए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। लंबे रन के साथ दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया। इस वक्त गेंद जाते हुए मिड ऑफ की दिशा में फील्डर वहां पर पहुंचते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इन हालातों में चौका या छक्का लगाना उतना आसान नहीं है और ड्यू फैक्टर कम्स इनटू प्ले। यहाँ पर ड्यू फैक्टर इस वक्त काम करता हुआ और यहाँ पर बल्लेबाजों को खुलकर स्ट्रोक्स खेलने में काफी दिक्कतें यहाँ पर महसूस होते हुए। और जहां तक सवाल है स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 40 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें बाकी हैं, 13 रन चाहिए। 13 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 3 डिलीवरीज और गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मीटिंग इट एट द लास्ट मोमेंट। गेंद पहुंची मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर। एंड नाउ द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन of एकादश सारस्वत। 2 छक्कों की दरकार, बचे हुए 2 गेंदों में। 2 sixes required in the last 2 deliveries. The last chance in front of the batsmen. और इस बीच गेंदबाज विघ्नेश भट्ट इस वक्त फील्डिंग में कुछ जमावट के बारे में बातचीत करते हुए, हालांकि सीमा रेखा के पास जो फील्डर है वहां पर थोड़ा सा पहरा ज्यादा बढ़ा दिया गया है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग एक फील्डर को इस वक्त तैनात किया गया है और डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान एक फील्डर मौजूद, तो वाइड ईस्ट लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच एक फील्डर तैनात और लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद और लॉन्ग ऑफ तैनात। और इस बीच गेंदबाज की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद ऑफ सबसे काफी बाहर और कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और इस बीच सही गेंद घोषित अंपायर का और इसी के साथ ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर एकादश सारस्वत के लिए सब कुछ समाप्त हो चुका है अगर इस अंतिम गेंद में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो। और 12 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट डिलीवरी, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टास्क। राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए विघ्नेश दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार चूके, दैट्स इट, 11 रन्स विक्ट्री फॉर रॉयल चैलेंजर्स। So 11 runs victory for Royal Challengers Balampettu against UK Ekadash Saraswat, and with that 11 runs victory they back the complete points. So the next match number 22nd of this tournament is now coming up live and exclusively right in front of you between Malpe United versus Rising Star Bangalore, and that match starts within just short while. Till then we are taking a short break. एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद right after the short break हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। And now it's time for break and also it's time for DJ. Thank you. धन्यवाद।
तैयार कोई मरने को, सांवली को छेड़े बाहों में आ जाए भरने को, काले गोरे से क्या मतलब, मधु मिले या फिर मठा, एक ही रट्टा देख दुपट्टा, मर्द है बिन पहनी लोटा। अंटा वाह मावा, अंटा वाह मावा, अंटा वाह मावा, अंटा वाह मावा। झूठी झूठी शान पे कोई अपना रोग दिखाता है, कोई बन के दिल वाला दिल से खेल के जाता है, एक गली ताली के ये दोनों है रे चट्टे बट्टे, Thank you, DJ. So I request extra player of both the teams, kindly request you to report here in the commentary box immediately. I request extra player of Rising Star as well as captain of Malpe United, please report it here. At the same time, now it's a time for announcement of man of the match and of the previous match, which is goes to man who really has got an explosive start from the bat, scoring just 15 runs in just 9 deliveries. It's Ratan Kamath of RCB, who's judged as the man of the match. May I request Ratan Kamath to please come here and collect your man of the match from our chief guest in our presentation dais. Ratan Kamath of RCB is judged as a man of the match of this previous match, and with that victory, they're through to the next round. It's been outstanding performance from RCB, and unfortunately, UK Ekadas, they're out of the tournament with the loss. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಇತರ ಆಟಗಾರರು, ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. United Malpe as well as Rising Star extra player, kindly request you to report here immediately in our commentary box. Malpe United extra player, please come here. At the same time, Rising Star Mangalore captain, please send your extra player. I request Ratan Kamath of RCB, please collect your man of the match for his 15 runs in 9 balls.
So time for DJ. Slow it down. जितने भी नचते ने सारे कोई नहीं हो तेरे जैसा लगदा गिर गए आसमां से तारे ना बिंदिया तू ऐसे चमका कल्ले कल्ले रहना मनु अच्छा लगदा जो भी तू कहे सारा मनु झूठा लगदा ना मेरे जैसा मिले कैरेबियन टू कच अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी ट्रैक नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच ये नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच हो आजा फटके आजा हो आजा कम हिला जा हो सारे मूड जमा जा हो मौसम ताजा ताजा सारी दुनिया में जी हिट है पंजाबी साज नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच ये नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाबी साज नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच 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 Baby, when you see me coming, yeah, you better run for cover. Cause you know when I find you, yeah, I'm gonna be your lover. Baby, when you see me coming, yeah, you better run for cover. Thank you. Cause you know when I find you, yeah, I'm gonna be your Thank you, DJ, for the entertainment and music entertainment, and thank you very much for the groundsman because they are the one. They are really making very hard work to make this the pitch and of course completing the job of marking everything. So thank you very much, the groundsman. It's done a great job for the success of this cricket tournament. And we're back to this match and match between Mumbai United versus Rising Star. Of course, Rising Star Mangalore fails to rise in this particular tournament. Out of 2 matches, they lost 2 matches and they're playing their last match. Again, the first ball, batsman going for the drive, going for the chance of run out here for the batsman in the occasion. Of course, struggling to reach his home. The fielder from the mid-on region tried to hit the stumps and the batsman got ample time to complete the single. So, Mumbai United, they're looking in a top in the points table. They won all matches they played. 2 matches they played earlier. They won the 2 matches. The victory here taking them into the top in the points table. But Rising Star, they suddenly wanted to finish their journey in this particular tournament with the 1 victory. And for that, they needed to perform very well. So from the commentary box end, bowler Gurudas. Right above wicket, full toss delivery, and batsman nicely turns that one down to mid-wicket region for an easy and workable single. With that single, Gautam Pai is off the mark, and even Varun Kini is also off the mark. Left and right combination,
And it's going to be very good when you're having a left and right combination, the opening pair. Definitely going to be handy for any team. First ball, next ball. Again, shuffled across the line and is gone. Flum in front of wicket. No doubt at all. The batsman shuffled across the line of the delivery too much. Just look at that one in replay. How far the batter is across the line. His back leg absolutely right in front of middle stump. And no hesitation there from umpire Shineket to raise his finger. And Rising Star, they really got the rising start in the first over itself. They got a wicket and Gurudas has got a wicket for his team. 2 for the loss of 1 wicket. Malpe United, after winning the toss, Rising Star elected to field first and with the game plan of restricting the opposition with the less score so that they can able to chase the runs. But picking up the 1 wickets in an over is not enough for Rising Star. They need to pick the wickets in frequent intervals, and they need to restrict the runs from the batters of Malpe United. So new batsman in is Vinayaka Pai after the dismissal of Gautam Pai. Dismissal of Varun, leg before wicket of the bowling of Gurudas. And now Vinayak Pai is a new batter in, left-hand batter. Gurudas bowls beautifully bowled outside the line of off stump. Little bit movement of the feet there from the new batter Vinayak Pai, where he was standing, tried to reach the pitch of the delivery. The feet which is not moving. Good piece of bowling there by Gurudas in the negation, bowled outside the line of off stump. Wicketkeeper behind the stump did the rest. This time nicely driven into the misfield there by the fielder at mid-off. Ball running down to deep long off region before he run back and fields the ball. Ample time for the batter to complete that couple of runs. This is what really lacking, what Rising Star, the fielding really not up to the mark in the last 2 matches as well. The fielding is one very, very important, unique part of cricket. And if you misfield, then it is going to be a frustration for the bowler. Gurudas back to his bowling mark. Experienced campaigner. Balls this time lofted, handsome looking drive, straight down the ground. 1 bounce over the row for 4 runs. Delightful cricketing stroke there from the left-handed batter. Vinayak Pai, just have a look at that on a replay in a big screen. Absolutely fantastic, up and over. One of the most delightful stroke to watch when batsman hitting over the top of the bowler. 1 bounce over the row for 4 runs. In this difficult condition, I think hitting the ball is very, very difficult. And the batsman Venkatesh, Vinayak Pai getting that one right from the middle of the bat. Of course, the ball is in the slot. And Vinayak Pai just capitalizing that one. And up and over, and scoreboard numbers on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. So first over, it's equal result for both the teams. 8 runs for the team Malpe United, 1 wicket for Rising Star. And now Aditya Bhatt came into ball. Right arm, left arm, ready for correction. Balls. This time, loose stroke, pays the penalty for that. Good catch taken at cow point. The wicket number 2 is back into pavilion of Malpe United. It's 8 for the loss of 2 wickets. DJ. Back onto pavilion after playing a loose stroke down to cow point region, and the fielder done a great job. Narasimha down at cow point region got a very good catch. Again, nicely bowled. The batsman bowler really just increasing his level of confidence after getting that wicket of
Gautam, one more good delivery, right delivery to ball to the fresh leg. Sunil is the new batter. We're going to face next delivery. Right over the wicket, cuts it one. Say to the answer fielder once again. Chance of run out in the non-strikers, and this time throw is not enough. Throw is not quick enough in the negation to stop the single to make the run out. But both the batters are so quick between the wicket to complete the single. With that single, Skoban moves on to 9 on the board for the loss of 2 wicket in the over number. Second is in progress. Aditya Bhatt seeming in from the river and Arch Formalisis Limited from the far end. Left arm around the wicket, he bowls beautifully bowled, yorking the batsman in the negation. Negotiated very well by Vinayak Pai in the negation, seeing that ball is almost coming into him in a yorker length. Tried to hit the stumps, and the batsman getting a bat under the line of the delivery. Nicely negotiated by the Vinayak Pai, and Skoban moves on to 10 for the loss of 2 wicket. Vinayak Pai, one who really opened the innings for Padu Tirupati, even in the underarm cricket as well. Here is the next one, right arm over the wicket. Just tipped that one just over the top of the infield. Again the ball running down to deep extra cover region before the fielder from the mid-off to run across to run back towards the deep extra cover region. Ample time for the batter to complete that couple of runs. With that couple of runs, Skoban moves on to triple for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. All we can see that the batsmen of Mumbai United, they desperately wanted to get some good score here. Left arm bowls, going for the pull shot down to fine leg region. Just a single in the negation because he didn't got enough bat onto that. And before the fielder from square leg to run across to his right to field the ball. Again, they completed a single. 2 overs completed after completion of over number 2. Mumbai United 13 for the loss of 2 wicket. And it's the time for DJ. Thank you. दिल धड़काए और सीटी बजाए, हाय दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे हो करके इशारे हो लड़की. Thank you DJ. Now change in bowling. Prajwal brought into attack as the icon player for Rising Star. But so far, icon player, of course, fails to contribute. And wait and see how he will going to contribute from his bowling in the final match. Of course, Rising Star, just like I mentioned earlier, they wanted to finish this journey, finish the journey in this particular tournament with the victory against Mumbai United. Prajwal just examining the field set. There's deep long off, the deep fielder from mid-on going back to deep long on. There is a wideish long on, one at deep, backward square leg, short mid-wicket, back at point, cover point, and short extra cover. Right arm over the wicket, going back and try to cut that one in the negation. But ball is very close to the body of the batter, isn't it? That's why it's very difficult for him to play the cut shot. Not only this very close to the body, but definitely it's going to be extra bounce again there from Prajwal. And the batsman completely missed out. Luckily that ball didn't got any outside edge of the bat. Prajwal again with a short run up. Now cover point fielder going back to deep cover point region because you can keep 5 fielders outside the circle after the power play. Right arm over the wicket balls. Again beautifully balled. Just posting the batsman onto the backward chance of not directed and is gone. No way. The batsman is going to survive here. Absolutely good piece of fielding there by the fielder. Not only fields the ball very well, but just look at the way that is hitting the stumps. The batsman off the backward tried to push the ball in the gap, but mid-on fielder so quick and quick enough to get the result, hitting the stumps, getting the result. Wicket number 3 is back into pavilion. After hitting that stumps, the fielder, of course, it's a very difficult, horrible time for the fielders in this condition. Very, very spongy. And because of the dew factor, it's going to be a big factor. ಸಮರ್ಥನ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮರ್ಥನ ತಾಯಿ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ.
So new batsman in is Pratik Prabhu. Pratik Prabhu is a new batter. Prajwal is got a very, very important, of course, they're not a, the wicket is not going to the account because of the run out, but he managed to pull the things back by bowling two very good deliveries. Right arm down the wicket, went for the reverse sweep, missing it completely. The first ball itself, Pratik Prabhu wanted to play the unorthodox cricketing stroke. Of course, it's not a good sign when you're playing your first delivery. Is implementing that strategy is not the good strategy, and need to middle the ball because the condition is not that much of easy for the batter. And against Prajwal's bowling, it's going to be asking for trouble. Again, nicely bowled, equally well played there by Prajwal. That's what I'm talking about. Need to eye in. If you need to eye in, you need to play some deliveries. And this time, I think Prajwal did a great job by let the ball coming into his bat, just opening the face of his bat and getting the placement down to backward point region for a single. With that single, Pratik Prabhu is up the mark and scoreboard was on to 14. Little bit correction, Vinayak Pai, little bit correction now over the left-hand batter. Pratik Prabhu is a new batsman now coming to the striker's end. Prajwal again, right arm balls, nicely plays it down to deep long on region for a walkable single. With that single, scoreboard was on 15 for the loss of 3 wicket. Vinayak Pai and Pratik Prabhu has got responsibility of getting some partnership. They lost 3 valuable wickets. Prajwal, he's also got some responsibility being the icon player of the side. Down the wicket, bounced outside the leg stump. Definitely it's going to be a wide. It's all happening in cricket because when it's a left and right combination, they need to change the line and length every time when strikes are rotated. The different line which is required. Of course, that was a good line for the right-hander batters, but being the fact that left-hand batter is on strike, that ball is going down the leg stump and wide signal by umpire. 16 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Prajwal again bowling away from us. Around the wicket delivers, nicely steers that one down to third man region for a walkable singles. With that single, score was on to 17 for the loss of 3 wicket. 3 overs completed. Good over there from Prajwal, justifying why he's icon player of the side. Just 4 runs and 1 wicket in the form of run out. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಇಲ್ಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಮರ್ಥ್ ಅಂತ ಹೆಸರು, 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಬಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮರ್ಥ್, ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಸಮರ್ಥ್. So 3 overs completed. The 4th over going to start. First ball outside the non-leg stump, going to be a wide. 1 more extra, 1 more addition. 18 for the loss of 3 wicket. Over number 4 is in progress. 4th over is in progress. And a little margin for extra deliveries, extra runs. ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಜನಾ ಅಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಿ ಇದೆ. ಸಮರ್ಥ ಅಂತ ಹೆಸರು, ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಜನಾ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಂಜನಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ in your commentary box. Appeal for caught behind, but more than the confident, just an excitement. Looks like the ball almost close to the bat, but ball almost missing the bat. Wicketkeeper behind the stump, so excited. The wicketkeeper behind the stump, Gurudas. And bowler again, Aditya Bhatt. Left arm, absolutely fantastic bowling action what Aditya Bhatt has got. Batsman off the back foot. Vinayak Pai is looking so confident, very confident, and is batting very well for his team. Scored 10 valuable runs. And 10 in this condition is always going to be a good contribution from the batter, because this is a really different condition where the bowlers are dominating. And here is again Aditya. Balls, beautiful bowling action. Again, 1 more single is added total.
And back foot cricketing stroke there from Pratik Prabhu. He picked up a single. Both the batters are doing very well. They're playing as per the condition required, not really looking for any big shot, placing the ball here and there, and getting a single, getting scoreboard moving here. The full toss delivery, swinging is that one, but he missed it completely, but umpire not missing the opportunity here. Arish Padil to signal the wide. With that wide, scoreboard numbers on to 21 on the board for the loss of 3 wickets in the over number 4 is in progress. Malpe United know exactly. They are nothing much worried about the result, but Rising Star and Bangalore, they desperately wanted one victory here. Again, nicely plays it down, steering it down to third man region for a single by Vinayak Pai. With that single, scoreboard numbers on to 22, let me correction, 22 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. So very slow cricket is going on here, and quite understandable because the bowler of Rising Stars are really bowling a very tidy line, and now one fielder is coming very close to the batter, saying that Vinayak and then Pratik picking up a single by placing the ball here and there. Now nice looking drive, almost playing that, plays it down to as per the merit of the delivery down to deep long of revision. One more over completed after completion of over number 4, searching for the right track, and team of Malpe United managed to score 23 valuable runs, and let's wait and see how many runs they will go into score in the remaining 3 overs. Before the next over going to start, it's a time for a change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language, Hindi, and it's a time for DJ as well. Dinesh Acharya is in a big screen, and he is the one umpire enjoying the game of cricket here in GPL. And Dinesh Acharya, welcome for the GPL. Thank you. ਕੁੜੀ ਬੰਗਣਾ ਦੀ ਪੈਣ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੀ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਉਹ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਪਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕੇ ਗੋਰੀਏ ਨੈਣ ਜੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ धन्यवाद सतीश। तो 5वें ओवर की पहली गेंद इस वक्त गेंद को खेल दिया था एक्स्ट्रा कवर पर, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और जहां तक सवाल है मलपे यूनाइटेड इस वक्त जोड़ चुका है 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है, और मलपे यूनाइटेड जो कि खेलता हुआ राइजिंग स्टार मैंगलोर के खिलाफ, और कुल मिलाकर 2.5 ओवर का खेल अब उनकी पारी में बाकी। गेंदबाज आदर्श किनी इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, विनायक पई इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा। इस बार गेंद छूट चुकी है, यहां पर कैच छूट चुका है। अंतिम क्षण में कुछ हद तक मुश्किल सा मौका था, लेकिन अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को उन्होंने रोका अंतिम क्षण में, और आखिरकार बल्लेबाज के पास मौका था इस वक्त 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 25 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. Still in overall calculation it's going to be 16 balls remaining in the innings, और आदर्श किनी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए प्रतीक प्रभु के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद तक पहुंचना चाहा, मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद सिली पॉइंट पर जब तक फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ तो 26 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। It's a 5th over in progress in their innings, and now once again the bowler comes आदर्श किनी for the next delivery, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार विनायक पई गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज है। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ना चाहा, स्टंप्सों पर गेंद टकराई, पैरों पर गेंद टकराई, इस वक्त अपील, लेकिन इस अपील को नकार दिया, और इस वक्त रन लेने की हड़बड़ाहट दिखाई थी बल्लेबाज ने, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए, और इस वजह से कोई
क्षति नहीं यहाँ पर। देखिए किस तरीके से गेंद लेग स्टंप पर आई थी अंतिम क्षण में और रन्स इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಪರ್ಲ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request the captains of Holalanke Fighters Mulki and Pearl City Cricketers Puttur please to be reported here for toss procedure. गेंदबाज ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को कट करना चाह चुके। अंतिम क्षण में गेंद विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया अपने दूसरे प्रयत्न में और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर करते हुए मलपे यूनाइटेड, कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा राइजिंग स्टार मैंगलोर के गेंदबाज एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए और 13 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी और फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा फुलर गेंद थी गेंद इस वक्त उनके पहुंच में नहीं आई और रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। और जहां तक रनों का सवाल है तो रन इस बीच नहीं मिलेगा। 26 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। स्कोर पोस्ट इज एट 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 5 overs had been bowled. And still in overall calculation, it's going to be 2 overs remaining in their innings. 16 franchise teams are participating in this tournament, divided by 4 pools. In this prestigious cricket tournament, GSB Premier League 2023, in the name of GPL Utsav 2023, which proudly presented by Kodial Sports Association Mangalore, broadcast partner Youth of GSB Worldwide. और ओवर इस वक्त 2 बाकी और जहां तक सवाल है और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए गेंदों का तो 12 गेंदें इस वक्त उनकी पारी में बाकी और छठा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। हालांकि रात के 11 बज चुके हैं, 11:05 यहां पर बज चुके हैं, लेकिन दर्शक अभी भी मैदान पर मौजूद, मैदान के चारों ओवर लगभग भर चुके हैं खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए। और जहां तक सवाल है आज के मैचेस का तो इस मैच के बाद 2 मैचेस और खेले जाएंगे। मैच नंबर 3 of this tournament is now coming up live exclusively right after this match between Holalanke Fighters Mulki versus Pearl City Cricketers Puttur. And after that, the last league match of this tournament and last match of tonight will be played between Udupi Blasters versus GSB Royals Kodial. So आज सारे लीग मैचेस पूर्ण हो जाएंगे। कल 4 क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा और उसके बाद सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2, उसके बाद म्यूट मैच अमेजिंग शॉट्स और मैंगलोर सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा और तीसरे स्थान के लिए, तृतीय स्थान के लिए मैच खेला जाएगा सेमीफाइनल लूजर्स 1 और सेमीफाइनल लूजर्स के 2 के बीच। और कल रात को यहाँ इस श्रृंखला का, इस मेगा श्रृंखला का मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले मैच खेला जाएगा यहाँ पर जुम्बा डांस के बाद। तो यहाँ पर क्रिकेट के एक्शंस कल आपका इंतजार कर रहे हैं आज के बाद। और अब मैच की अगली गेंद की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्कोर रुक चुका है 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो गुरदास इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, प्रतीक प्रभु सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलती हुई, डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर को इस वक्त आगे बुला लिया गया 20 गज के दायरे के अंदर। और ओवर की पहली गेंद लेकर गुरदास गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को खेल दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ कर आए। 1 रन मात्र बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद जब तक फील्ड शॉट स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 27 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर इन फैक्ट। और फिर से एक बार गुरदास गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार उछाला लगोन पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंचने में असफल। हालांकि पहले सोचा कि गेंद तक पहुंचा जाए फील्डर ने, लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपने दौड़ को रोकते हुए गेंद को आफ्टर फर्स्ट बाउंस अपनी ओर आने दिया और गेंद को सीमा रेखा के अंदर एक टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस कलेक्ट कर लिया। इस वक्त ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, रन के लिए दौड़ पड़े गेंद को बिना देखे और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है रन आउट के रूप में। हॅलो चेक बोटिंग झोनालागी एक फूड कोर्ट आसा, थंय तुम्ही आतां वचून फूड घेवता। बोटिंग झोनाला अशे फूड कोर्ट ओपन आसा, थंय तुम्ही वचून फूड घेवता।
So number 6 batsman is now comes out to the middle for Mumbai United. रोहन नायक और वो इस वक्त सामना करेंगे इस वक्त गुरदास की गेंदों का और गुरदास गेंदबाजी करने के लिए इस वक्त तैयार और गेंद की परीक्षा करने के बाद एक बार फिर से गेंदबाज के हाथों में लौटाते हुए बल्लेबाज रोहन नायक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और रोहन के लिए इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद जबकि लॉन्ग ऑफ और कोई डीप कवर पॉइंट इस वक्त दिखाई नहीं देता हुआ और गुरदास अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार ये गेंद फुल टॉस हल्के से गेंद को पुश कर दिया गेंद को बल्ले तक आने दिया और एक रन के साथ गेंद को इस वक्त खेल दिया और इस वक्त एक रन का इजाफा हो चुका है वेट फील्ड की वजह से गेंद इस वक्त ट्रैवल नहीं कर रही है घास पर और बड़ी मुश्किल के साथ गेंद अपनी रफ्तार को वृद्धि करती हुई और अंतिम क्षण में अपना रफ्तार को खो देती है जैसे ही बल्लेबाज स्ट्रोक्स खेलते हैं और यहाँ पर बल्लेबाज जान चुके हैं इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट उन्हें अपनानी है और सेंसिबल क्रिकेट के जरिए इस वक्त उन्हें रन सब बटोरने हैं आक्रामक स्ट्रोक लगाना इस वक्त मुश्किल होता जा रहा है बल्लेबाजों को और इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट अपनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए बल्लेबाज अपनी अगली गेंद के लिए तैयार इस वक्त गुरदास दाहिने हाथों पर विकेट ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर नहीं मिड विकेट पर गेंद पहुंच चुकी है रनआउट का खतरा इस बीच और यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि जब विकेट चटकाए गए थे तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं तो यहां पर नॉट आउट घोषित किया गया है कोई इशारा नहीं हुआ इस वक्त और जहां तक सवाल है विकेट का तो विकेट यहां पर बल्लेबाज का बच चुका है और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 30 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर गेंदबाज आगे बढ़ाते हैं मैदान के चारों ओर सीमा रेखा पर रंग बिरंगे झंडे इस वक्त गाड़े गए हैं ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त खेल दिया पॉइंट पर एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके 6 ओवर की समाप्ति 32 पर 4 32 for 4 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स और जैसा कि मैं फरमा रहा था मैदान की चारों ओर सीमा रेखा पर झंडे रंग बिरंगी जो गाड़े गए हैं इस मैदान की शोभा को और बढ़ाते हुए कुल मिलाकर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला GPL उत्सव 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए और जहाँ तक मैचेस का सवाल है तो मैच नंबर 22 मैच नंबर 22 ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर बिटवीन मल्पे यूनाइटेड वर्सेस राइजिंग स्टार मैंगलोर मल्पे यूनाइटेड इस वक्त रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करता हुआ और कुल मिलाकर उनकी पारी के 6 ओवर समाप्ति होने के बाद 31 रन इस वक्त जोड़ चुका है काफी नजदीकी मामला हो सकता था मॉनिटर पर देखिए दिखाया जा रहा है लेकिन अंतिम क्षण में इससे पहले के विकेट कीपर विकेट चटका है बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर लैंड कर चुके थे रख चुके थे और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और 7वां और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 7th ओवर इन फैक्ट फॉर मल्पे यूनाइटेड फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज पद्मनाभा गेंदबाजी शुरू करते हुए रोहन नायक का जो कि 2 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथों पर बाएं हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा यह गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला गेंद जाते हुए इस वक्त कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर लेकिन मैंने समझता गेंद सीमा रेखा को पार करेगी और गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद वेट आउटफील्ड के कारण वहां पर लगभग रुकते हुए और फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करने के बाद जब तक थ्रो करे गेंदबाज के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका इस बीच 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 7th एंड फाइनल ओवर इन फैक्ट इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए स्टंप्स एक्सपोज करके हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद जाते हुए वहां पर फीडर गेंद को पीछा करते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरे रन के लिए तौर पड़े नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन थ्रो में ज्यादा रफ्तार रहे और थ्रो इससे पहले कि आफ्टर फर्स्ट और सेकंड बाउंस पहुंचे सीधे विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दूसरा रन यहां पर चुरा चुके थे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस स्टिल 4 बॉल्स लेफ्ट इन द इनिंग्स 4 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और देखते हैं इन बचे हुए 4 गेंदों में मल्पे यूनाइटेड के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज पद्मनाभा जी इस वक्त अपनी अगली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा अंतिम क्षण में गेंद को ज्यादा उछाल लेते हुए नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज काफी आगे निकला है स्ट्राइकर एंड पर पहुंच गए दोनों बल्लेबाज एक छोड़ पर और असर सा रन आउट यहां पर होता हुआ नॉन स्ट्राइकर पर विकेट कीपर द्वारा 5वां विकेट गिर चुका है 35 for 5 with just 3 balls to go now in their innings.
So a good innings came to none from Vinayak P. Scored 14 runs into his credit, including one boundary. And after being playing a good knock for their side, he is back to pavilion. And the fifth wicket lost for Mumbai United is 35 for 5. And now just 3 balls left in their innings. And the fourth delivery of their innings is now, of their last over is now coming up. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्कूप किया, शफल होते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची. आफ्टर फर्स्ट बाउंस कलेक्टेड बाय द फील्डर जस्ट इनसाइड द फेंस. इस बार दूसरा रन लेने का प्रयास और रन आउट इस वक्त हो चुका है नॉन स्ट्राइकर एंड पर. दूसरा रन लेने का कोई सवाल ही वहां पर नहीं पैदा होता था, लेकिन यहाँ पर दूसरा रन लेने की जोखिम बल्लेबाज ने उठाई और भुगतान उन्हें करना पड़ा. एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है. It's 35 now for the loss of 6 wickets. Just couple of balls now left in the innings. सिर्फ 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और इंतजार है इस वक्त नंबर 8 बल्लेबाज का. फ्लडलाइट्स की जगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है. घने अंधेरे को चीर कर मैदान पर रोशनी गिरती हुई और अंडर फ्लडलाइट एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए GPL उत्सव 2023 के नाम पर जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन बेंगलोर ने. जेएसपी प्रीमियर लीग 2023 के नाम पर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. एक गेंद डॉट हो चुकी है और अब अंतिम गेंद बाकी उनके बारे में. सो द लास्ट बॉल नाउ रिमेनिंग इन द इनिंग्स और पद्मनाभा धीरे धीरे अपने गेंदबाजी के मार्ग पर इस वक्त जाते हुए गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज रोहन नायक के लिए. The last ball of the innings is now coming up. बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार कट करना चाहा, टॉप एज विकेट कीपर की दाईं ओर से गेंद निकली. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरा रन लेना चाहते हैं. स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो को गैदर करने में सफल और बल्लेबाज तीसरे रन के लिए यहाँ पर दौड़ पड़े और 3 रन यहाँ पर पूरे कर चुके हैं. चौथा भी मिल सकता है और चौथा भी यहाँ पर मिल चुका है. शायद 5वां भी मिल सकता है, देखेंगे मिलता है या नहीं. और थ्रो पहुंच चुका है लेकिन इस बार 5वां रन नहीं मिलेगा. तो 4 रन जुड़ चुके हैं अंतिम गेंद पर और विकेट गिर चुका है इस वक्त रन आउट के रूप में. 4 added to their total in the final delivery of their innings and they finished off with exactly 40. 39, they finished with 39 for the loss of 6 wickets in their stipulated 7 overs. And now the target for and now the target for Rising Star Bangalore is exactly 41 the target in fact. 40 runs scored by Mumbai United at batted first in 7 overs and 41 the target set for Rising Star Bangalore. 41 they have to score for victory and with a required run rate of just under 6 runs per over. That means in exactly calculation it's going to be 5.84 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. 41 रनों का लक्ष्य. 41 the target in 7 overs and their innings now going to start within just short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके साथ अंग्रेजी में सतीश के साथ जब यहाँ पर राइजिंग स्टार बैंगलोर की पारी की शुरुआत होगी. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक एंड आल्सो इट्स टाइम फॉर डीजे. थैंक यू, धन्यवाद.
Thank you, DJ, for the entertainment. And we are back into this match. And 41 is going to be a target for Rising Star Mangalore to get their first victory of this tournament. And we will see how well they will going to get their first victory. Meanwhile, the opening batters already occupying their respective places in the pitch. The strikers end, the batter Prajwal, the left-hand batter, and Indian on-striker and Avirat. And being the opening batter for the side. And on behalf of Mumbai United, looks like Sachin will go into start the proceedings. And everybody knows the ability and the potential of Sachin. Is a very good starter and of course a very useful bowler, especially when you are coming into the power play overs. He is one of the best bowler. And that's why he will go into start the proceedings from the commentary box. And 41 going to be a target. Here is the first ball. Right arm over the wicket, nicely dabs that one down to short mid wicket region for an easy single. With that single there off the mark, they started their journey, and we will see how difficult and how easy this journey will going to be. But one thing is sure is that Rising Star really in the last match they need to rise. Star need to shine, and if they wanted to need to get the victory, the stars of Rising Stars need to shine in this particular match. And wait and see how well the 11 stars will going to get the victory for Rising Star Mangalore. Meantime, United coming back to Mumbai United after they got 2 victories in the league matches. They wanted to continue their winning track, and that's why they will definitely going to work hard, fight hard for the victory. Altogether, it's good competition between these two teams. And here is the next one. Right arm over the wicket balls. Nicely driven. Lack of placement. Straight to the hands of short extra cover. The Vinayak by the fieldsman there. The short extra cover quickly moving towards the direction of the ball. And denying the single from these two batters. So first over and then the 2 overs. Definitely going to be 2 over of the power play is a key here for Rising Star Mangalore to get some runs in that over. Again, forcing the batsman onto the back foot. This time, Sachin got a misfield on his follow throw so that Prajwal Shanai, correction, Avirat Kamath is off the mark with a single. Both the batters off the mark with the single, 2 without loss of any wicket in the over number first in progress. Sachin bowling in the power play, keeping one fielder in the deep wideish long on and long off region. Again, nicely getting the placement down to backward point region by Prajwal Shanai. Both the batter knows that how important to get some partnership in the beginning, because they're chasing 41 to win this match. As far as the required run rate is concerned, they're really almost 6 runs per over is the required run rate in the beginning itself, and that's why both the batsmen are just looking for the rotation of strike, and they know exactly if they're able to rotate the strike each and every ball, they can win the match. Right arm over the wicket, try to pull that one, not quite getting under that ball. There's going to be a chance of run out in the strikers end. Now umpire Arish Padil referring for the third umpire for that run out. This is definitely going to be a disaster. If the umpire's decision will going to be out, it's going to be a really disaster for Rising Star Mangalore, because just like I mentioned about the partnership is so important. The need to lay the foundation in the beginning. Losing wicket, putting them into more pressure, and this time no understand at all between these two batters. After the batter Avirat Kamath tried to pull that one, not really getting that one from the middle of the bat, but along with that pull shot he went for the single. No response coming from his partner Prajwal Shanai, and at the same time the throw came from the fielder from the mid wicket towards the wicket keeper's hand, and wait and see whether the batsman safe or not. And absolutely it was really looks like it's going to be a fantastic atmosphere out here in the beautiful cricket ground. Even the time is exactly 11:30 in the night, but it never looks like it's going to be 11:30 of the night. It looks like 11:30 of the morning, seeing that the number of spectators, absolutely it's a jam-packed stadium out here in the most beautiful Adyar cricket ground of this prestigious GPL 2023 season 7. Which is proudly organized by Kodial Sports Association of Mangalore, and of course lot of entertainment. The 3 days of not only the cricket, but more than anything else is entertainment for the spectators.
मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल So का no doubt, which is the call मृत्यु from मरता umpire. The batsman just survived from the run out, and it looks like it's going to be a good news. It's a good news here for Rising Star Mangalore that the batsman is safe after having a lot of angles and from the technicians of the media, and umpire has got evidence enough that the batsman is safe. So it's good news here for the Rising Star. The batsman, opening batsman, still there in the middle, and now Sachin bowling with the short run up. So far it's a good over. It's a very quiet over indeed. Just the 3 runs in the 5 deliveries. Right up over wicket balls. Beautifully bowled. Forcing the batsman onto the backward chance of round out in the strikers, and the ball just missing the stump. It's going to be one more opportunity. If the ball going to hit the stumps, it's going to be one more opportunity for Arish Padil to call for the third umpire, and ball just missing the stump, and batsman survives. After completion of 1 hour, chasing total score of 37 to win this match, searching for the right track, 4 without loss of any wicket. So 41 is going to be a target, and that means the first over which is completed, 4 runs scored, 4 which is deducted from 41, that means 37 more runs required for the victory in 36 deliveries. That means match is evenly poised. It's going to be anybody's game. And as far as the winning perspective of our Rising Star is concerned, after their losing 2 matches in their league matches, just like I mentioned earlier, they wanted to finish their journey in this particular tournament with the victory. At the same time, the opposition team, Malpe United, doesn't want to lose the winning track here after winning their 2 matches in the league matches. So from the river end, Samir is brought into attack, and wait and see how Samir will going to contribute from the bowling. Avrat Kamath going for the cut shot, not really getting that one from the middle of the bat, mistimed that one, but there is no problem for a single in the negation before the fielder from the mid after rushing to the ball. Both the batters are completed a very quick single. Excellent running between the wicket, good understanding. Scored now moves on to 5 on the board without loss of any wicket in the over number 2nd in progress. Altogether, we are witnessing some fantastic cricket tournament, electrifying atmosphere out here in this most beautiful Sahyadri cricket ground here in Adyar. And we can see that festival atmosphere, absolutely festival atmosphere. Just look at that one in excitement in the crowds. They are really enjoying each and every the golden moments of this cricket tournament. Now the batsman just little correction. The captain not really happy with the field set. Little bit of an exchange of field. The mid-off fielder coming towards a short cover point region, and that same fielder going back to short mid-off. There is a deep long of one fielder is stationed at a deep mid wicket, and all we can see that this time a pull shot plays it quite nicely between the 2 fielders, and before the fielder from short fine leg to run back towards the deep fine leg region, ample time for the batter to complete the single. With that single, scored numbers on to 6 on the board without loss of any wicket in the over number 2 in progress. As far as winning this match is concerned, the Rising Star, just like I already mentioned, the stars always rising in the night. But unfortunately, in the yesterday's 2 matches, the Rising Star fails to rise. But in the last match, I really hoping that the Rising Star will going to rise in their final match. First ball, next ball, right above the wicket, lofted that one quite nicely, up and over, down to deep long of region, 1 bounce over the rope for 4 runs. Absolutely astonishing cricketing stroke. It is not an easy stroke to play in the books. When the batsman trying to play the inside out cricketing stroke, you know exactly where the fielder is. Just getting the place spent towards a deep extra cover boundary for GPL boundary. Just breaking the shackle in the right time. You know exactly the batsman. This is the last over of the power play. When there is a fielding restriction is on, one of the best way to play that such kind of cricketing stroke. Very safe stroke to play, where there is no fielder in that region. Of course, there is no ample pace in that ball, and it didn't got adequate field for that. And batsman just capitalizing that one very well, and he got a boundary for that. Now one fielder from extra cover going back to deep extra cover region after that boundary which just came from the bat of Avrat Kamath. They kept one fielder in the deep extra cover,
And fielder from deep long. This time it's going to be one more big shot. The fielder is going back. Will going to take the catch. Oh my goodness, he's just had a very good hand. Looks like it's going to be one more boundary, but the fielder is did a great job of saving the boundaries. Just look at the crowd acknowledging that effort of the fielder. Once looks like it's going to be one more boundary. Just look at it on a replay. Hitting that one right over the head of the bowler. And look at the effort of the fielder. And almost absolutely great save. Really good save indeed. He just kept the eye on the ball till the last moment. And he simultaneously need to see the boundary line. At the same time, the ball you need to save from the boundary. It's a good effort there from the fielder. 12 without loss of any wicket. Right arm over wicket balls. Good comeback here by the bowler, forcing the batsman onto the back foot, but negotiated very well by the batsman. Just pushing the ball right in the gap. Soft hand comes into play to pick the single. Then intelligent cricket in that occasion there from Prajwal Shenoy. After correction, Avrat Kamath, after getting the single, after getting the boundary, then he's looking for the rotation of strike. You know exactly, they are rightly back in a track of winning this match, especially in this over. The batsman just started to freeze their arm. Prajwal Shenoy is on strike now, left-hand batter. The Prajwal Shenoy, we're talking about the icon player for the side of Rising Star. He need to justify why he's the icon player. Already bowled 2 very good overs, but he need to perform from the bat. Again, beautifully played that one. Off the toes, plays it down to deep long on region for a walkable single. With that single, scored moves on to 14 on the board. 2 overs completed after completion of over number 2, chasing 41 to win this match. And now another 27 more runs required for the victory in the remaining 5 overs. 30 ball, 27 required for the victory. So before the next over going to commence, it's a time for a change in commentary box. It's going to be a guest commentator. Amit will going to take over the microphone in English. So welcome back once again for our guest commentator, Amit. Thank you. Thank you. It's the 3rd over in progress now. It will be Vinayak P who will be bowling to Prajwal, who is the icon player of the Rising Stars Mangalore. Prajwal is the very good left-handed batsman. He's not played to his reputation so far today, but this match he's really bowled 2 very good overs, and now he's with the bat. On strike. It's a good start for the Rising Stars. They're 14 for no loss after 2 wickets. After 2 overs, Good shot there, drilled down to the mid-off fielder, and they take a quick single. With that single, the score moves on to 15. Avirat and Prajwal have given the team a good start. They've laid a solid foundation. So far, it will be Vinayak to bowl the second time in this over. It's a good left there by the batsman. It's a wide delivery. So that's an extra run to the total of the Rising Stars. These extras will not help the bowling team. Vinayak again. Good bowling there. It's again just a single for the batsman. He's taken. They're taking good singles now, because they know that the required run rate is well under control. They need 24 runs from 28 deliveries. Hence Prajwal again facing Vinayak. Full toss there, drilled down to the long fielder. With that single, the score moves on to 18. Both these batsmen know that the required run rate is very much under control. They need much lesser than run a ball, and hence they're only doing singles, taking singles. They're not taking
those risks. Hence, the bowling team captain needs to do something proactive to stop these singles and build up a little bit more pressure on these batsmen. Good delivery there. The batsman slips. Big appeal there from the bowling team, and that's the end of Avirat. The leg umpire has given that as out. It was very unfortunate for the batsman who slipped in between the pitch, because there's a lot of dew on the ground today, and he'll have to be very careful while running between the wickets. Will that run out? That's the first wicket down for the Rising Stars. Avirat, who really played a good hand in this partnership, has to depart for a made 11 runs out of the 18 of the team's total. The new batsman is Narasimha. He will be on the striker's end, facing Vinayak, who has really bowled a good tight over so far. Vinayak will be bowling to Narasimha for the 5th time in this over. They need 23 runs from 26 deliveries. Still very much under control. Again, straight down the ground for another single. So with that single, Narasimha opens his account. The score moves on to 19. It's time the bowling team captain brings in his field to stop these singles, so that there's a little bit more pressure created. Because if not, with these singles, it's very easy for the batting team to really chase down this target. It's only 22 required. A few big hits, it's really going to end the game really quickly. Good delivery there, right on the mark, and a very good, very quick single taken from Prajwal. He is playing a captain's knock in this innings. Really playing only those shots for for those singles. And he's making sure that he takes his takes his team home after having their first victory in this tournament. With that single, that ends the 3rd over. After 3 overs, the score is 20 for the loss of 1 wicket, and another 21 runs required from the remaining 4 overs. It's the new bowler will be Samir. He'll be bowling his 2nd over of this match. 2 bowlers can bowl 2 overs or out of the 7 overs. Hence, Samir, being their spearhead, will be bowling his 2nd over. They need to create more pressure on these batsmen. If not, things are really looking bleak for the bowling team. And Samir bowling to Prajwal. Good delivery there. He's drilled it straight to mid-on for a single. With that single, the score moves on to 21. These 2 batsmen really are very calm and very composed. They just know that they just need singles really to win this game, and Prajwal making sure that Narasimha knows the same thing, that they just need to take a few singles and the match is theirs to be won. So Samir bowling 2nd time in this over to Narasimha. Narasimha just shimmying across, and that's the wicket. That's the wicket they wanted. Narasimha goes straight to the short fielder there. And Narasimha, after scoring 1 run, has to depart. So good captaincy there, that he made Samir bowl his 2nd over, who he always goes to when he wants to pick up wickets, and Samir has delivered with that wicket, and that brings the Malpa United back into this match. Wickets do create a lot of pressure
on these batsmen, and things will be slightly more difficult when they keep losing wickets. Narasimha will be replaced by Lokesh. He will be facing Samir for the third time in this over. Still the asking rate below 6 runs per over, 20 required from 22 deliveries. Yes, here's Samir for the third time. Good delivery there, straight in his mid-ribs, and again they pick up a single. So they're doing it quite easily. The Malpe United need the wicket of Prajwal to create some more pressure on the batting team, whereas Prajwal knows that he is the key wicket and is being very, very calm. He's only picking up singles without taking much risks. He knows that only he can make his team win today. Again, that's a lofted shot straight down the ground. Will they go for 2 runs? Yes, there's a mix-up. Yes, quite safe at the end. There was a mix-up, yes, no, in between the wicket. However, they finally go for that run, and they've completed the 2 runs. Good running between the wickets. There was always 2 there. However, slight confusion. That's what pressure does to you. And with that double, the score moves on 24. So 17 more runs required of 20 deliveries. Samir coming for the 5th time in this over. Again, a good shot. It's actually a very good line in length being bowled by Samir. He's keeping it very simple, and the batsmen are respecting those deliveries and only trying to place it between the fielders and pick up those singles. So with that single, score moves on to 25. It's Lokesh who's going to face Samir for the last time in this match. Good shot there, lofted down the ground, and it's a single. So very good fielding there to restrict that to a single. With that single, the score moves on to 26. So we're down to the business end of this match. They need 15 from the next 3 overs. So that's just around 5 runs per over. Well, it's going to be Gautam who's going to bowl the 4th over of this match. Fifth over, sorry. He'll be bowling to Lokesh. He's marked his run up. He'll be bowling right arm over the wicket. Good delivery there. Oh, batsman's completely missed it. It's quite pacey, as the batsman was completely beaten by the pace of the bowler there. So good delivery. Seems to be a very smart decision from the captain to bring in Gautam at this moment of the match. It's a very short run up, and hence he generates a lot of pace from
Gautam now facing Gautam now bowling his second delivery of this over. Again, good delivery there, straight to Gautam, and that's a dot delivery again. It's a very good start to this over from Gautam. He's bowled 2 dot deliveries. This is going to create some bit of pressure for the batsman. Again, Gautam, good delivery there, right in the pads of the batsman, and the batsman just only can just play it down straight back to Gautam. So 3 dot deliveries, really good pressure being built up by the batsman. That's why Prajwal is just going and speaking to Lokesh to just say it's okay, calm down, we got a lot of deliveries yet, the match is still under control, so not to try any fancy strokes and get out at this moment, which will create more pressure on the batting team. Gautam will want to continue this same performance. Again, good delivery there. Again, straight to the fielder. They're going for the run, and the bowler fails to collect it. So that's the first run of this over from Lokesh. Wonderful over so far for Gautam. Only 1 run given in his first 4 deliveries. He'll be bowling now to the much experienced Prajwal, the left-hander. And Gautam will want to pick up the wicket of Prajwal so that the match will be more interesting then. So few field changes. That's what the left-hand, right-hand combinations will do. A lot of cheer for the bowler now. He'll be bowling to Prajwal. Good delivery there, and Prajwal very smart to just tap it down on the offside and pick up a single of that delivery. He knows that he doesn't want to give his wicket away to Gautam, who's in between of a beautiful spell in this over. So Gautam, in his last ball of this over, good Yorker length delivery. It's drilled straight to the long on-fielder for a single. So only 3 runs of that over. With that single, the score moves on to 29. They need 12 runs from the remaining 12 deliveries. Hence that over from Gautam has really pulled things back. It's going to be a tight finish now. So it's Vinayak who bowled the 3rd over, who will be bowling the 5th over now. 6th over now. Vinayak in his first over just gave away 6 runs. So he'll be wanting to perform the same, so that the last over there'll be some target of around 8 or 9 runs for the last bowler. It's Vinayak now. Good delivery there. Oh, the batsman's left that was slightly above the wide line. Hence, that's an extra run for the batting team. With that extra, the score moves on to 30. You really don't want to give these extras to the batting team when it's 12 from 12 required. Vinayak again. Good delivery, big appeal there from the bowling team, but no. These umpires are very professional. They didn't hear any nick on that. Hence, he says not out. Again, Vinayak coming. Second time. Oh, that's really a full toss, and it's a no ball called from the umpires. So even though that catch was taken at short mid wicket, the run stands. So that's 1 more run added to the total as they've run a single, and also for the extra,
no ball, there's one more run added to the total. And also, as it's no ball, it's a free hit. Hence, Prajwal will really be keen to smash this out of the park as it's a free hit. So Vinayak going to ball to Prajwal. Good delivery there, and he's really smashed that at mid wicket, and it's gone for 6. What a shot! Wonderful shot there from Prajwal. He smashed that at cow corner. And that has woken up the DJ. Come on, guys. Yes, wonderful shot there from Prajwal. With that maximum, they only need 3 more runs now. Prajwal really want to finish this match with one more big hit. They're going for 2. Good throw from the deep fielder, and Prajwal has taken 2 more runs. Scores are level now. The rising stars of Mangalore need only 1 more run to win this. And as expected, it's their icon player Prajwal who has almost taken them to victory in this match. Good delivery there from Vinayak. He is in no mood of giving up. Very good delivery there, right in the block hole, which Prajwal completely missed. So 2 more deliveries to go in this over. Vinayak would really want the wicket of Prajwal. However, he's bowled wide, and with that wide, the rising stars of Mangalore have won this match quite comprehensively. They won this match by 8 wickets. Come on, guys. Dakaya, talent is right. Happy weekend, enjoy Korea. Dorke, mama no maya no ya tumne. Amchi gaila enjoy Korea together. Na sori chana yo re. Ullasu ottu melta yo re. Etana sori chana yo re. Urdasu vari vatta yo re. Cricket khele together yo re. Mari tu boundary six yo re. Pulara anka manglura yo re. Wandu ya khushi sakka. Khaya sama khaya kha. Pongolu ponta nanje varantu. Recipe nave food kotantu. Halu devaitu pottantu. Yeah. Jirai bonta santantu. Samosa vai. Muda. Shavai. Sareya ebeja
पार्टी शुरू हुई है I request the extra player of both teams to please report to the stage immediately to tell the player's name. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಇತರ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಪರ್ಲ್ ಸಿಟಿ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು. Right, the match starts. Match number 23 of this tournament is now coming up now exclusively right in front of you between Olalanke Fighters Mulki versus Pearl City Cricketers Puttur. So news is here represented as the captain of Olalanke Fighters Mulki after what the toss. He likely to field first, and because of that their fielders are the field and the openers of Pearl City Cricketers Puttur are the crease. Just we are waiting for the start of the match. Match number 23 of GSP Premier League 2023. It's proudly presented by Kodiak Sports Association Bangalore is now coming up just in front of you, that's exclusively. Olalanke Fighters, I once again request the extra player of Pearl City Cricketers Puttur to be please to be reported here to tell the player's name. Pearl City Puttur ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳ ದಯವಿಟ್ಟು I request all the players to please set the field immediately. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. Come on guys, dakaya talent joy. Happy weekend enjoy Korea. Dorke amne mamano mayano yeya tumne amchi gaile ekade media. Yo re etana sori echana yo re ulasu ottu melta yo re etana sori echana. So Rakesh and Ashwath are the openers for Pearl City Cricketers Puttur. They are at the crease. Meantime, the bowler is Rohit. Start the fresh proceedings from the commentator box, and we are just waiting for the first ball of the match number 23 of GSB Trophy, GSB Premier League 2023. It's proudly presented by Kodial Sports Association Bangalore. So this is a practice match of 1 over for drone shot. Please continue the match, please.
तो ड्रोन शूट के लिए ये एक ओवर का मैच यहाँ पर खेला जा रहा है और जहां तक सवाल है इस वक्त पहली गेंद लेकर गेंद सो दिस इज एन प्रैक्टिस मैच ऑफ 1 ओवर फॉर ड्रोन शॉट प्लीज कंटिन्यू द मैच प्लीज तो ड्रोन शूट के लिए ये एक ओवर का मैच यहाँ पर खेला जा रहा है और जहां तक सवाल है इस वक्त पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला कवर पॉइंट के बाहर इस वक्त और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है इस वक्त 4 रनों के लिए 6 रनों के लिए इनफैक्ट इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ ह्यूज वन इनफैक्ट एंड ड्रोन शॉट इस वक्त लिया जा रहा है हाई व्यू से और जहां तक सवाल है एक ओवर प्रति पारी यहां पर खेले जाएंगे एक ओवर का मैच और इस बीच ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और 2 गेंदें इस वक्त फेंकी जा चुकी है उनकी पारी में और अपनी अगली गेंद हळू हळू देवाई तू पोट्टान तू ये जिराई बोंदा बोंदा सांगतान तू समोसा 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 बैल टोमॅटो सॉस रकलू मारी बेबी कॉर्न हुला हुला शमय 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 भक्ति सारे पियावा के this is a massive one in fact it's gone over the fence for a huge one for 6 उल्लास ಒಟ್ಟು ಮೆಲ್ತನ್ ಯೋ 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 ಯೋರೆ ಎತ್ತಾನ ಸೋಡಿ ಎಚ್ಚನ यो 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 और देखिए किस तरीके से इस वक्त ड्रोन कैमरा मैदान पर लहराता हुआ और ड्रोन शॉट के लिए ये एक ओवर का मैच जो कि यहाँ पर खेला जा रहा है और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार दिस टाइम जस्ट मिसिंग ऑफ साथ लेग स्टंप एंड अ वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर So everything is done and now I request the umpires to please start the match. So Bulalanke fighters Mulki after won the toss they elected to field first against Pearl City Cricketers Puttur and the openers for Pearl City Cricketers Puttur are the crease and fielders of Bulalanke fighters Mulki are now spreading out on the field and we are just waiting for the first ball of the match. Match number 23 of this tournament, second last match of tonight is now going to start of this tournament, GSB Premier League 2023, the prestigious cricket tournament in this beautiful Sahyadri greenery ground which proudly presented by Kodial Sports Association Bangalore, broadcast partner Youth of GSB Worldwide. And we are just waiting for the first ball of the match. The match starts now within just a while. So Rakesh Kamath and Ashwath are the openers for Pearl City Cricketers Puttur and the bowler who starts the proceedings is now Rohit K and the first ball of the match is now coming up. Everything set now and power play is now on and first ball of the match is now coming up. Left arm over the wicket bounce outside the off stump, just going for drive, missing the line completely and collected by wicket keeper behind the stump. The ball missing 2 foot outside the off stump and because of that umpire called it a wide and that single run brings run second open for Pearl City Cricketers Puttur. It's one without loss in the first over for Pearl City Cricketers Puttur. As far as the good score is concerned for Pearl City Cricketers Puttur, they desperately have to make a strong start if they have to read the huge score
the situation. This time, lofted that one just over the infield. In fact, it's could be gone all the way. In fact, it cuts it off just inside the fence, and because of that, the batsmen have got plenty of time to come back for the second run. And that a couple of runs, increasing the total to 3 without loss now in the first over for Pearl City Cricketers Puttur in the over number first in progress. Rakesh Kamath hit that one just square off the wicket at the last moment, clearing the infield, and because of that, he's got a couple of runs for that stroke, and 3 runs on the board, yet to lose any wicket for Pearl Puttur. And now once again, the bowler comes Rohit K, just on his bowling mark. Still some fielding adjustments is going on there, and once again here he comes, left arm over the wicket to the right-handed batsman is now going to face outside the this is an absolutely terrific. I think he's got a bottom edge on that at the last moment, but the ball was dropped by a wicketkeeper at the last moment. That was a chance at the last one. He's got a bottom edge on that, but luckily for the batsman, it just flicked out of a wicketkeeper's hand, and the batsman gets in alive. Just look at this in the replay. Frustrations for the wicketkeeper at the last moment after dropping the ball, and the batsman survived in this delivery, and the scoreboard stays at 3 without loss now in the first over. So Rakesh Kamath is now survived, and the scoreboard stays at 3 without loss in the first over. Next match will be the last match of tonight. Will be played between Udupi Blasters versus GSP Royals Kodial, and that match is now coming up loud exclusively right after this match. Again, the bowler bowls left arm over the wicket outside the off stump. Quicker one, fuller length delivery. Just wanted play reverse shot at the last moment, asking for wide. In fact, no says umpire, and collected rightly so, and the scoreboard stays at 3 without loss in the over number first in progress for Pearl City Cricketers Puttur. And once again, the bowler slowly walking towards to his bowling mark, ready to run. Rohit, left arm over the wicket, but pull that one this time into the gap, and this it cuts it off just inside the fence brilliantly. This is an no, in fact, I think it's gone all the way. His efforts gone in vain at the last moment after being he's just pushing the ball inside the fence, but the ball went outside the line after being gone just a little bit of a front of him at the last moment, and because of that, the batsman got a boundary for that stroke. This time, just look at this in the replay. Actually, what was happened, and it's crossed over the fence after touching his hand. After a couple of bounces, it's the ball gone over the fence for the boundary. And with that boundary, the scoreboard moving up to 7 without loss now in the first over for Pearl City Cricketers Puttur. And once again, Rohit comes left arm round the wicket to the right-handed batsman. Here he bowls. And there's still some fielding adjustments is going on there. Long off fielder standing just a little bit of wider for the right-handed batsman at this situation. And once again, here he bowls. Outside the off jump, just gone for loft. God is caught behind, and that is the wicket number 1 for them. He's got a deflection on that, and the last movement just wanted to heave the ball on the onside area, not succeeded. He's got a nick on that, and the wicketkeeper behind the stumps made no mistake. That is the wicket number 1. Rakesh Kamath departs, and now Pearl City Cricketers Puttur loses their first wicket. It's 7 for 1, and now it's time for DJ. Mari tu boundary six ya 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 re Kulara amka manglura ya 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 re Wandu ya kushi sakka Khaya 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 sama khaya khaya kha Wangolu ponta nanje varantu Recipe nave nave food kotantu Halu halu devaitu pottantu yeah yeah Jirai ponta ponta So Rakesh departed just short while ago, just got behind the wicketkeeper at the last moment, just wanted to hit the ball on the onside area, not succeeded, and got behind the wicket by wicketkeeper. New man, one more good striker of the ball. Varun Chanbag is now comes out to the middle as a number 3 batsman. This time he facing left-handed bowler outside the leg stump, turns it away this time down to a corner, deep backward square leg fielder after it at the last moment, and the batsman before that got plenty of time to cross over for the single, at that single increasing the total to 8 for the loss of 1 wicket. First over has been completed, and after first over, Pearl City Cricketers Puttur, after being losing the toss and putting to bat by Volalankia Fighters Mulkin, the match number 23 of GSP Trophy, GSP Premier League 2023. They made a mixed start. In fact, they managed to score 8 runs on the board after completion of first over. Still in overall calculation, it's going to be 6 overs remaining in their innings.
So Aditya Pai, the bowler brought into the attack from the commentator box, starts the fresh proceedings, and the second row starts in Pearl City Cricketers Puttur Singh. First ball of his fresh over is now coming up. पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार और सामना इस वक्त करते हुए बल्लेबाज वरुण शानबाग जो कि पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर खाता यहां पर खोल चुके हैं. ओवर की पहली गेंद, ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को पुल किया. इस वक्त शॉट स्क्वायर की दिशा में एक रन मिलेगा. और जहां तक सवाल है, दोनों बल्लेबाज आखिरकार अंतिम क्षण में अपना छोड़ बदल चुके हैं और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट. और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो पर्ल पुतूर को इस वक्त कम से कम 40 का आंकड़ा पार करना होगा, क्योंकि इन हालातों में 40 का आंकड़ा बेहतर होगा. देर रात इस वक्त हो चुकी है और मैदान जो कि लगभग यहां पर धुंध से गीला हो चुका है, ड्यू जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, और गेंद जो कि खुलकर ट्रैवल मैदान पर नहीं कर रही है. तो इसका फायदा इस वक्त गेंदबाजों को उठाना. इस वक्त एक सतर्क लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करनी है और गेंद जो कि बल्लेबाजों के बल्ले पर आसानी के साथ नहीं आ रही है और काफी दिक्कतों का इस वक्त सामना कर रहे हैं बल्लेबाज गेंद को खेलने के लिए. तो देखते हैं गेंदबाज इसका फायदा किस तरह उठाते हैं. दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में मिसफील्ड, बैकअप होता हुआ रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज. 1 रन इस बीच मिलेगा. जैसे ही गेंदबाज के हाथों से चूकी, बल्लेबाज ने रन से दौड़ना शुरू किया और आखिरकार जब तक गेंद को बैकअप किया जाता, सिले में डाउन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. और 1 रन के साथ इस वक्त स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. आदित्य, ये गेंद अच्छी गेंद थी, हल्के से गेंद को पुश करना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी और आखिरकार 1 रन बल्लेबाज को मिला. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. आदित्य माफ कीजिए, वरुण शानबाग और अश्वथ भाई इस वक्त पारी की भागदौड़ को यहाँ पर संभाले हुए अपने टीम के लिए एक साझेदारी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. आदित्य, गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर फुल टॉस गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को बोर्ड मिड विकेट पर गेंद रफ्तार को खोने के बाद जब तक फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. थ्रो पहुंच चुका है, बेहतर फील्डिंग वहां पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर. फ्लड लाइट्स की झकमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध यहाँ पर कर चुकी है. देर रात इस वक्त हो चुका है, ठीक तरह से कहा जाए तो 12:15 यहाँ पर बच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैदान जो कि दर्शकों से लगभग भर चुका है. तो ऐसा कहना पड़ेगा एक फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट का त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है इस सह्याद्री के मैदान पर. ऑफ स्टंप से बाहर एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, गेट सम एक्स्ट्रा बॉल्स बट द बॉल मिसिंग 2 for Sadio ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट एंड इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द wicket-keeper wide declared by umpire. And with that one run, the scoreboard is now moving up to 12 for the loss of 13 in fact for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. गेंदबाज की गेंद कट किया इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद बल्ले के मुंह को खोलते हुए गली की दिशा में, और जब तक गेंद को वहां पर फीड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर. 14 for the loss of 1 wicket. 2 overs in fact 2 overs पूर्ण होने के लिए इस वक्त गेंद बाकी है 1 और इस बीच गेंदबाज आदित्य गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. फुल टॉस ड्राइव किया खूबसूरती के साथ और जब तक गेंद को मिड ऑफ पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 1 रन के साथ कुल रन संख्या इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर. 15 for the loss of 1 wicket. 2 overs have been bowled and good progressing here for Pearl Puttur, except they lost their wicket, 1 wicket. They managed to score 15 runs on the board after their first completion of the 2 overs with a run rate of exactly 7.5 runs per over. रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे और किन्ने रंग बरसे
So third over starts in Palpaturs innings. Sharad starts a fresh proceedings. First ball, पहली गेंद टॉप एज पर गेंद टकराई, स्क्वायर लेग की दिशा में और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, टॉप एज पर गेंद टकराई और आखिरकार प्लेसमेंट सही नहीं, स्क्वायर लेग फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की। एक और विकेट गिर चुका है। 15 for 2. Yo 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 tuva khartana sodi achana yo 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 re ullasa ottu meltan yo 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 re yetana sodi achana yo 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 re urga suvari battan yo 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 re cricket khelya together yo 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 re mari tu boundary sixer yo 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 re kulara amka manglura yo 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 re one two ya khushi sakha youth of GSB है worldwide platform for better life GPL world कितने wonder विसोरु China है नवा yo 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 re इतना सोड़ी अच्छना yo 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 re So Palpatur just lost their second wicket a short while ago. And now they are 15 for the loss of 2 wickets at the start of the third over. In fact, और गेंदबाज शरत इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है। अर्जुन भट्ट इस वक्त जो कि सामना करने के लिए तैयार है और इस बीच शरत अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार कैच छूट चुका है इस वक्त। That wasn't a sharp chance at the last moment, but the ball was flicked out of fielder's hand. At silly point area, in fact. और एक मुश्किल सा मौका जरूर था, लेकिन गेंद को अंतिम क्षण में फील्डर इस वक्त लपक नहीं पाए। अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ। इसलिए पॉइंट के फील्डर ने ड्राइविंग लगाकर गेंद को रोकना चाहा, लेकिन गेंद उनके नीचे से निकलती हुई जब तक बैकअप हो कवर पॉइंट पर बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और जहाँ तक का सवाल है एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का, तो इन हालातों में कम से कम 40 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा पलपुत्तर को, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो वलालंके फाइटर्स मुल्की के खिलाफ, क्योंकि वलालंके फाइटर्स मुल्की के पास जो सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है उस पर दबाव डालना है, तो कम से कम 40 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा। और इस बीच ड्राइव किया, गेंद को खाली क्षेत्र ढूंढने में असफल, वहां पर उनके समर्थकों की चीखें इस वक्त सुनाई देती हुई और अपने टीम के खिलाड़ियों का मनोबल वो यहाँ पर बढ़ाते हुए तालियों के साथ सीटियों के साथ इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, इन फैक्ट फील्डर कलेक्टेड द बॉल इनसाइड द फेंस एंड द बैट्समैन आर फाइनली सैटिस्फाइड विद द सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर, जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। तो इस बीच गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त हाफ स्टॉप, और इस बार गेंदबाज गेंद तक पहुंचे, अंडरआर्म थ्रो इस वक्त किया था, बैकहैंड थ्रो जिसे कहते हैं, लेकिन आखिरकार गेंद स्टंप से दूरी पर निकलती हुई और एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 3 ओवर की समाप्ति, 18 रन बच चुके 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट फॉर Palpatur स्कोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स विद द रन रेट ऑफ एग्जैक्टली 6 रन्स पर। देखिए किस तरीके से यहां पर मिसफील्ड हुआ था, बैकअप किया गया था, बैकहैंड थ्रो इस वक्त फेंकते हुए फील्डर गेंदबाज, लेकिन निशाने से दूर इस वक्त थ्रो निकलता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, 18 पर 2। So Aditya, the bowler, is now brought into the attack once again. His second over, start the fresh proceedings from the commentator box end. और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त अर्जुन भट्ट इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार फुल लेंथ गेंद पर ऑन साइड पर खेलना चाहा था, चूंकि पूरी तरह और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, और इसे देखते हुए बल्लेबाज ने तुरंत अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया अंतिम क्षण में, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है, अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद पटकी हुई गेंद कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, लेकिन गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद जब तक गली क्षेत्र पर फील्ड हो, एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक प्रतिष्ठित प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट GSP प्रीमियर लीग 2023 GPL उत्सव के नाम पर यहाँ पर एक शानदार प्रगति पर करता हुआ, और इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा दिन
का दूसरा अंतिम मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ कट किया बैकफुट पर जाने के बाद और इस बीच गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है पॉइंट और गली के दरमियान और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाए बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 19 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर रन्स ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए इस वक्त और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। रिवर्स शॉट टॉप एज मौका हो सकता है और इस कैच को लपकने में सफल बेहतरीन तरीके से फील्डर रहा। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट मिडलिकेट एट द लास्ट मोमेंट द बॉल गॉट इज टॉपर ऑफ द बैट एंड cover point fielder took a good catch just running towards to his backside at the last moment. He took us on that ball and grabbed the catch successfully at the last moment. Just have a look at this in the replay. इस बार गेंद को उछाला था रिवर्स शॉट के जरिए गेंद हवे में थी और पीछे की ओर जाकर इस कैच को लपकने में सफल और इस कैच की बदौलत एक और विकेट यहाँ पर हो चुका है। इस वक्त विकेट कुछ हद तक संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। They are looking in trouble a little bit. It's 19 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. So 20 for the loss of 3 wicket, 3.4 overs gone in their innings. नए बल्लेबाज नंबर 6 batsman is now coming out to the middle with lots of responsibility for Pearl City Cricketers Putur. He is at the crease और इस बीच वो सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज आदित्य की ओवर की अगली गेंद का और आदित्य इस ओवर में अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार पटके हुई गेंद स्टीयर किया इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद गेंद कुछ देर तक हवा में जरूर थी लेकिन टिप्पा खाते हुए शॉट गली फील्डर के आगे और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज पर पुत्तूर के अपने सही राह को यहाँ पर तलाशते हुए जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग का मुआयना करने के बाद इस बीच गेंदबाज अपनी ओर के अगली गेंद ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और विराज ने अंतिम क्षण में गेंद को वाइड घोषित किया और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 21 in fact for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Just a ball left in this over और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद पटके हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर और वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति हो चुकी है इस वक्त पर्ल सिटी क्रिकेटर्स पुत्तूर के बारे में। 4 overs completed and after 4 overs still the batsmen of Pearl Puttur are searching for the right track. It's 21 for the loss of 3 wickets with a run rate of exactly 5.25 runs per over they scored and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in the innings. And now it's time for DJ. सो फिफ्थ स्टार्ट्स और 5वां ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ पहले गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार शरत और बल्लेबाज वरुण शानबाग इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया वरुण शानबाग ने 1 रन मिलेगा उन्हें इससे पहले कि वाइड स्लॉग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाता है। जहाँ तक वरुण शानबाग का सवाल है ये श्रृंखला उनके लिए बेहतर रही है कुछ रन उन्होंने बल्ले से बनाए हैं और उस सफलता के सिलसिले को यहाँ पर इस मैच में भी वो आगे बढ़ाने की कोशिश में वरुण की नहीं सामना करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा स्टंप्स को कवर करने के बाद लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और इस बीच वाइड का इशारा यहाँ पर हो चुका है। वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट और रनों के लिए अभी भी संघर्ष करते हुए बल्लेबाज अपनी ओर की अगली गेंद ये गेंद हल्के से गेंद को चिप किया इस वक्त सीधे एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में
ऐसा कहना पड़ेगा, अपने स्ट्रोक को चेक किया था, स्ट्रोक को रोक लिया था, लेकिन प्लेसमेंट गलत था और एक्स्ट्रा कवर फील्डर जो कि गेंद की ताक में खड़े हुए थे, उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की। एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 23 for 4। कैसी है तेरी जो तू पलकों को झुकाए, रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी शिवली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी शिवली। So 4.2 overs gone in their innings, 23 for the loss of 4 wickets. Struggling time continuing here for the batsmen of Pearl City Cricketers, and let's see what will happen in the remaining 2.4 overs of their innings. And before the next delivery balls, for the next further comments, I would like to invite my friend Satish in English. Please come, Satish. Thank you. Dhanyavad. Thank you very much, Gopi. And for City, looks like after getting a start here, they're just losing the momentum. So 23 for the loss of 4 wicket. Right above the wicket went for the big shot, and again not really getting the timing behind the stroke. The short mid wicket fielder fields the ball back to bowler. Sharat Prabhu is a bowler, one who got a fantastic record in the tournament. Again going for the big shot, swings and missed. And the batsman really is struggling against the bowling of Sharat Prabhu. Dayananda Pai against the bowling of Sharat Prabhu, one who really got a consecutive Man of the Series award in this GPL. Right, over the wicket, drives that one down to mid-off region, but ball is landed safely after one bounce collected by the fielder, and batsman completed singles. DJ, and after winning toss selected to field first, Valalanke are doing a good job against Pearl City Puttur. 24 for the loss of 4 wicket. The very good battle is on between these two teams, and Deepak Shana is brought into attack from the committee box end. Right arm over the wicket balls to Dayanand Pai. This time Dayanand Pai looks like he's not ready to face, and first ball, and the bowler back to his bowling mark, Deepak Shana. Short run up, bowling with the medium face bowling. Right arm over the wicket balls. This time batsman drives that one out to deep long on region. Lot of support coming here for Valalanke. And the Valalanke fighters, of course, the name what they got, fighters. They're fighting hard for the victory against Pearl City Cricketers Putturu. And again, Deepak Shana back to his body mark. Right arm over the wicket to Varun Shanbag. Varun Shanbag, one more the very good striker of the ball, but so far he yet to talk with his bat, and is a one who can hit the ball very hard. And here is one more delivery. Almost it's a ball is a full toss one, and batsman tried to play the reverse stroke, not really getting that much of timing behind the stroke, and they got a single for that. With that single, score moves on to 26 for the loss of a 4 wicket in the over number 6 in progress. Slow progress here for the team Putturu, the Pearl City, and here is again Deepak bowls. This time batsman drives that one nicely down to right in the gap towards the widest long on region before the middle long on fielder to run towards his right, chance of run out, and is gone. Dayanand Pai tried to get the second run. By doing that, he is really not getting that much of good response from his partner Varun Shanbag. Pays the penalty for that. One more wicket is back into pavilion. 26 for the loss of 4 wickets. Thank you, DJ. Quite understandable why the crowds are cheering for the team is that the reason behind is that they wanted to win the match. It's a do or die match for
both the teams, after losing their first match and winning one match and losing one match, both the teams desperately wanted to win this match. It's a do or die match for both the teams. That's why the level of competition going to be very high. The next match, Udupi Blasters versus GSP Royals Kodial. This time, gone. It's gone. One more wicket is back into pavilion. It's a huge wicket. The big fish in the net. Varun Shanbag departs. It's a 27 for the loss of 5 wickets. Enjoy Kodiak together. Thank you, DJ, for a very beautiful and melodious music. But of course, it's a melodious music for the supporters of the team Pearls Puttur, but not melodious for the team. Of course, melodies for the team Valalanki, but not melodies for the team Pearls Puttur. Meanwhile, I request the two teams captain please report here for the tossing ceremony. Udupi Blasters as well as GSP Royals Kodial. This time again, nicely driven down to deep long on region for a single. The new batsman just came into middle as a Prajwal Pius is the new batsman, came into middle. And Sunith and Prajwal, they need to deal with some big shots desperately because they didn't got enough runs on the board. 28 for the loss of 6 wickets. Last 7 deliveries remaining. And wait and see how many runs they will go into score. Deepak Shen again bowling away from us. Right arm over the wicket balls. Going for the full shot. Again not able to meet the ball. Ball which is not coming to the bat. Outstanding bowling performance comes to an end from Deepak Shen. Just 4 runs and a wicket. And last over remaining in the innings of Pearl City Puttur. And wait and see how many runs they will go into score here. Now time for the DJ. Aponu gevnu yore tanka vaggi. Aponu gevnu yore tuwa vaggi. GSP mana mele laggi. Yeah. Gamat ratri palle gauji masti. Come on guys. Dakaya talent is right. Happy weekend, enjoy Korea. Dorke amme mama no mayano yeya tumne amchi gaile ekade meda. Thank you, DJ. So last over going to start here. Meanwhile, I once again request the two captains. The last match of day number 2 of day night match, Udupi Blasters versus GSP Royals Kodial captain Adarsh Begili Barbeku. ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ for the last match. The last over going to start from the far end. Right up over the wicket, beautifully bowled. Wicket keeper behind the stump. A little bit fumble. Looks like the batsman, the bowler is so excited. Might be the ball just kissing the stump. Maybe they're saying umpires that ball kisses the stumps, but Wales which is not uprooted. It's not happening in the first time in this tournament. Several times, even yesterday also, the 3-4 times, even the fielder hitting the stumps pretty hard, but the bail spot which is not coming out. That might be the big problem here. And umpire asking the wicketkeeper to need to correct the stumps. And again the bowler back to his bowling mark. Suhas Prabhu bowling from the far end. Right arm over the wicket bounce. This time going for the big drive, missing it completely. The fantastic piece of bowling performance continues here from the bowlers of Valalanki Mulki, and looking in a commanding position. All the bowlers doing their job, but Pearl City Puttur really struggling to get a big total. The fantastic crowd watching this game of cricket. Both the teams has got their own supporters supporting, cheering their team. Ball him, cleaned him up. This time Bales is uprooted from the stumps, and wicket number 7 which is back into pavilion. Look at the crowd, the supporters of Valalanki. They are really there on their feet, and they know exactly winning match here
takes them into the next round, the playoff round of this prestigious GPL 2023. And nowhere near the pitch of the delivery in that occasion. Just I want to see it in the replay that the batsman doing a big mistake by looking for the big shot. Tomorrow will be the last day of this tournament, and once again I request that tomorrow the first match will be played exactly in the morning, 9:30 a.m. Please note that tomorrow 9:30 a.m. the first match will go into start between qualifiers quarterfinal. Of course, the quarterfinal first A1 versus C2, and the next one batsman quite nicely turns that one down to mid-wicket division for an easy single. With that single, score number on to 29 for the loss of 7 wickets. Please note all the team players. Tomorrow match will go into start at the right time. The reporting time for the two teams 9 o'clock and 9:30 match will go into start. Toss will go into complete exactly at 9:15 a.m. in the morning. The match will go into start exactly 9:30 a.m. in the morning. Next ball right above the wicket. Just straight to the fielder. Second attempt, he completes the catch. Once it looks like the batsman going over the top of the fielder, but ball went straight to the hands of a short fine aggression. And the bat ball, once it looks like the fielder is going to drop the catch, but in the second attempt he complete the catch. Thank you, DJ. So last year, in fact, 8 wickets back into pavilion, and what a fantastic performance continues here from the bowlers of Valalanchi Fighters Samolki. They're really justifying the name, the fighters. Of course, the fight back in this tournament, especially in this match. Right arm over the wicket, balls drives that one over the top of the bowler, side down the ground, down to deep long on region. Running hard for the second. In comes the throw from the deep. A chance of run out in the umpire now. Referring for the third umpire to get the decision. Umpires asking for the third umpire to get the decision of that run out. Both the batters desperately wanted to get the runs in the final over, and by doing that they wanted to steal the second run. But we wait and see, because this is the last delivery of the innings. They wanted to get as much run as possible, but a decision which is pending, and it's a time for DJ until decision coming from umpire, third umpire. It's not a music, it's a heartbeat. Enjoying Kodiak together, was there the GPL to play? Yeah, 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 ha, yeah, 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 ha, yeah, 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 ha, yeah, 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 ha. Aponu gevnu yore tanka vaggi, aponu gevnu yore tuwa vaggi. GSB mana mele laggi, yeah, yeah. Gamat ratri palle gauji masti. Come on, guys. Dakaya, talent is right. Happy weekend, enjoy Korea. Dorke, amme. Mama no mayano yeya tummi. Amchi gaile ekade media. Yo re. Etana sodi echana. Yo re. Ulasu ottu meltan. Yo re. Etana sodi echana. Yo re. Urdasu varivartan. Yo re. Cricket खेले together. Yo re. Mari tu boundary six. Yo.
The out is a call from third umpire. That means total score is 30 and 31. 30, which is the total score. 31 going to be a target for Walalanki Mulki to qualify for the next round of this cricket tournament. Just coming back to the schedules for tomorrow's tomorrow and final day of this cricket tournament. First, we starts with the morning match exactly at 9:30 a.m. The quarterfinal number 1, A1 versus C2, and the second quarterfinal will be played between B1 versus D2. And quarterfinal number 3 will be played between C1 versus A2, and the last quarterfinal of this tournament will be played between D1 versus B2. And after that, semi-final, quarterfinal, the winner, quarterfinal 1 winner versus the quarterfinal 3, and then afterwards the semi-final, and the final will go into play 8:30 a.m. tomorrow. The mega final 8:30 p.m. tomorrow. So after the toss for the next match, we are talking about GSP Royals. Kodial's captain won the toss for the final match of the second day night tournament. Udupi Blasters versus GSP Royal Kodial. And captain of GSP Royal Kodial won the toss, and they elected to field first, which is the last match after this match. And now it's a 31 is a target for Walalanki Mulki, and wait and see how well they will going to get this 31 runs in the stipulated 42 deliveries, excluding wides and no balls. Little bit correction, after winning the toss, GSP Royals Kodial, they elected to bat first, not field first. They elected to field first, bat first. GSP Royals Kodial elected to bat first against Udupi Blasters. Now opening batters walking towards the middle, and wait and see how quickly they will go into complete this match, and wait and see how well the fielding team Pearl City Puttur will go to defend this small total. Of course, it's not a small total under this condition. If the bowlers bowl well, fields well, they can put some pressure onto the opposition team. And for that, I think they need to have a good start from the bowling. The attacking bowling is so important. At the same time, sensible batting, which is required for Walalanki Mulki. And both of the supporters, they're on their feet. They're supporting the favorites. First ball outside line of off stamp. Good start from the ball from Sohan K. And this ball is almost looks like we're going to very close to the bat in irrigation. Batsman going for the cut shot. Luckily that ball didn't go outside of the bat. The wicketkeeper behind the stump. Varun Shanbag did the rest, and bowler back to his body mark. Sohan bowling from the far end. River end, right arm over the wicket, balls. Ooh, that was a very close to the stumps. Very lucky again. The batter, the Vijay Rajpai, really not understands what kind of ball that is. Almost looks like ball is not really having that much of deviation, and I wanted to play the cut shot, which is almost on the middle end of stump. Luckily, that ball just going over the top of the stumps. Sohan K. Again setting a field, asking that fielder from mid-wicket to run a little bit finer between almost in the cow corner between mid-wicket and deep long on. Again cuts at one, set to the answer fielder, chance of run out, and is gone. Absolutely fantastic piece of fielding there by the backward point fielder. Now look at the crowds, look at the supporters of team Pearl City Cricketers Puttur. They are on their feet.
So that's what they needed. The Pearl City, they're depending a small total. I already mentioned in this condition, it's not going to be a easy target if they bowl well, fields well, and of course the fielder backing up the bowler very well. The backup point fielder fields the ball, returns the ball, and Varun Shanbag completes the formalities of making a run out. First wicket is back into pavilion. It's a 0 for 1, and Sharath Prabhu came into middle here. He is in non-strikers end. Vishwanath will be the striker of the backward copybook style of defensive stroke played there by little correction. Sharath Prabhu is a striker, played at defensively, and man of the series winner consecutive 2 times, who rides a lucky man, rides a bike, and wait and see how it's going to be for Sharath Prabhu this season 7 of this prestigious GPL 2023. But first priority here is that they wanted to get the place in the quarterfinal. This time Sharath Babu just opening the face of the bat, running it down to third man region for a single. This time it's going to be a overthrow, and we're ready to see that it's going to be overthrow. A little bit of absence of mind here from the fielders, and umpire definitely going to allow the runs because ball is in play. When the ball is in play, then it's definitely going to be a run here. The 2 for the loss of 1 wicket, and over number first in progress. Sohan K has got a very good start from the ball, but it's a little bit shackling start here for Valalanki Mulki. 2 for the loss of 1 wicket. Sharath Prabhu is a key player for the side. Will going to face next delivery. Again, bowler's back drive. Nice driven down to mid-on region for a easy single. With the single, he will going to keep the strike for the next over. First over completed. It's an equal battle is on for the victory between these 2 teams because this is a do or die match for both the teams. And both the teams wanted to finish their finish this match with the victory so that they get the place in the quarter-final. 3 for the loss of 1 wicket, 3 deducted from 31. That means 28 more runs required for the victory and remaining 5 overs. The equation, 30 ball, 28 required. Time for DJ. टोमेटो सॉस रखनु मारी बेबी कॉर्न हुला हुला शमय 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 बत्ती सारे पियावा कैबेजा बुत्ती कूल कूल आइसक्रीम यो 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 तू खाता न सोडी अच्छा यो 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 Thank you. I not really understand the song there. And here is the next one. First, second over going to start from the commentary box end, and bowler is been introduced from the commentary box end. Vijay Nayak will go into ball the second over, and after getting a very good start from the first over, wait and see how Vijay Nayak will go into continue here. In front of him, Sharath Prabhu. Sharath Babu went for the reverse sweep. Pebble for leg before it is gone. It's gone. Sharath Prabhu is gone. It's going to be a huge wicket. Look at the celebration here from the fielding team. They know exactly. They got a huge wicket in this condition. That will going to be a turning point of this match. The wicket of Sharath Babu definitely going to make a big impact for this match. Youth of GSB है वाई प्लेटफॉर्म for better life GPL world कितने wonder बिसोरो जाना है नावा yo 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 रे इतना सोड़ी अच्छा ना yo 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 रे उल्लास वोट मिलते yo 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 रे इतना सोड़ी अच्छा ना yo 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 रे Well. This is really a good bowling performance continues here. And this time Sharath Babu, they wanted to play the switch it, but he's almost finding himself right in front of stumps, isn't it? And when you wanted to play the reverse sweep, you need to see that the line of delivery which is suitable for the switch it or not, switch it which is suitable or not, but he's choosing a wrong delivery for the switch it, and he just pays the penalty for that. And bowler Vijay Nayak is really got a very important breakthrough here. Now we can see that some fielders coming very close to the batsman, try to put some pressure onto the incoming batsman. Suhas Prabhu is the new batsman going for the cut shot. Nicely done right in the gap. Long chase here for the fielder, and before the fielder from the ring running towards a deeper cow point region, ample time for the batter to complete that couple of runs.
With that couple of runs scored moves on to 5 for the loss of 2 wicket. Every run you can see that the cheer coming from the supporters of Olalanki Mulki, and every wicket you can see that the cheer coming from the dugout of Pearl City Putturu. Vijay Nayak will go to continue. Right arm over the wicket balls. This time sensible, absolutely sensible batting. This is what required. The using your mind is so important in this situation. One can't see the face in a boiling water rather than the warm water. Of course, they're chasing up not a huge total, but this time I think handling the pressure is so important. Handling the pressure is so important for the batters of Olalanki Mulki, because one small partnership definitely will go into take Olalanki Mulki into target. But at the same time, Pearl City Putturu don't want to get any partnership. They wanted the wicket in a frequent intervals. Each and every over they wanted one wicket if they wanted to win the match. The mid-wicket fielder coming little but squarer, almost in a straighter version. There's deep long on is there. The mid-off is inside the ring. There is no protection deep in the offside region. Right arm over the wicket balls. This time batsman tried to turn that on the onside. They're going for the single, but rightly so. Suhas sending rightly back his partner. Otherwise going to be a chance of one more wicket here in the form of run out. And this is what they're talking about the cricket, isn't it? When you are performing in front of huge spectators, it's not so easy. When everyone is watching you, huge spectators out here in this on this beautiful cricket ground, and in front of huge spectators, performing is only going to be the great feeling. It's a full toss and very opportunity of catch is gone. Oh my goodness! Can you believe this? It's a screamer from the fielder, powerfully driven down to short cow point region. Look at the reaction from the fielder. Absolutely, that's just a fraction of second. That ball went to him. The wicket number 3, which is back into pavilion. Thank you, DJ. Look at the reaction there from Sudhit. Why not? Everyone is jumping into him, and looks like they're celebrating their own way. Why not? Because the batsman hit the ball very firmly, isn't it? The reaction time is more little bit, isn't it? Just a fraction of second for that fielder, because that fielder is standing very close to the batsman, and batsman hitting the ball pretty hard, and ball after hitting the hand of the fielder, and then in the second attempt is complete the catch. Catches win the matches, which is one of the greatest slogan of cricket. And after getting that catches, then definitely it's going to be a gate opened for Pearl City Putturu in this match. Because quite unusual scoreboard here. 6 for the loss of 1 wicket. 6 for the loss of 3 wickets, little correction. 6 for the loss of 3 wickets. And it's really competition between wicket and run in the scoreboard. Olalanki fighters, Mulki, they need to justify the name fighters. Of course, the batters have to fight back. But here is Pearl City Putturu looking so good. Now, batsman looks like he's not really ready to face the ball. Might be that the fielder, the closing fielder, is talking when the bowler has got a run up. And that's why the batsman straight away is get away from the strike. Vijay Raj. Vijay Raj Pai is on strike. Suhas Prabhu is a non-striker stand. Vignesh is on strike. Little bit correction. This time tries it on. Chance of catch is gone. 4th wicket is back into pavilion. Can you believe this? Absolutely unbelievable comeback here from Pearl City Putturu.
They got one more wicket here. 6 for the loss of 4 wicket. Absolutely unbelievable comeback. तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया. Absolutely catching, absolutely fantastic catching. One of the best catching here from Pearl City Puturu in these do or die matches. Absolutely, they're sending the strong message to the opposition team, Walalanki fighters, that they're not really given up this match. They're not really given up this match. It's going to be anybody's game. After getting a 4 wickets for 6 runs, this match is evenly poised. It's going to be anybody's game. So what a fantastic performance continues here from Vijay Naik. Just look at that, it's bowling figure. He picked up 3 wickets. Absolutely unbelievable. It's some really mesmerizing bowling performance here from the bowler. Picking up 3 wickets and with the difficult condition. And when it's there, depending a small total, looks like it's going to be all over. All over for team Pearl City Puturu, but they're not really given up. They're not really lost their confidence. Self-confidence is definitely going to be the keys for the success. Sohan will go into ball the next over. Right arm over the wicket balls. Going for the pull shot. And that's going to be a delivery, which is umpire will go into call. It's a legal and fair delivery because batsman shuffled across the line of the delivery. At the same time, bowler coming right in front of umpire. That's a big problem, isn't it? The follow through is always going to be a big issue here, and outside the line of not that much of the line which is going down the leg stump, and that's why umpire not interested to call that wide. Right arm over the wicket balls, going for the cut shot, beautifully plays it down to deep extra coverage, and before that fielder from mid off to run across to his left to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single, score numbers on to 7 on the board for the loss of 4 wicket. Walalanki Mulki desperately wanted one partnership. They wanted one big partnership here. Without getting a partnership, I think it's very difficult for them to win this match. And that's why these batters have to spend their time a little bit in the middle. This time again, this is a kind of cricket, isn't it? This is a kind of cricket is so important. You can't neglect the singles in any form of the games. Just like always I'm mentioning about, you can't neglect the singles. Rotation of strike is so important. Maybe it's going to be a small run, but but you need to understand the fact that you're not chasing a big total. And only the rotation of strike is quite enough for Walalanki Mulki to win this match. Right arm over the wicket balls. Oh, what a walk! What a walk! This time, I think Varun Shanbag has done a great job behind the stumps. Just in a blink of eyes. Electrifying work behind the stump. 1 more wicket is back into Pebble, and it's 8 for the loss of 4 wicket. 5 wickets, little bit correction. Baby, when you see me coming, yeah, you better run for cover. Cause you know when I find you, yeah, I'm gonna be your lover. Baby, when you see me coming, yeah, you better run for cover. Cause you know when I find you, yeah, I'm gonna be your lover. बच्चे लोग करेंगे आकर प्यार मुझे मैं तो लाख बना हूँ नींद चला लो होश बना दूँ मैं तो बाहों में लेकर राह बना दूँ बात बना दूँ चाहे क्या आए दिल को छुपा बातों की बातों में तुम मुलाकात Well, look at that, what in the first innings, when the wickets of Pearl City Puttur is falling in the middle, then supporters of Walalanki Mulki, they are really cheering. Now, quite a different situation. The wickets of Walalanki is tumbling here, and supporters of Puturu,
they are celebrating each and every wicket. That's what the cricket is all about, isn't it? Cricket is the best teacher of up and downs. And here is both the teams, they are working hard for the victory. So new batsman in. Deepak Shanai is the new batsman in. 5 wickets, half of the wickets already back into pavilion of Valalanki Mulki. Sohan K again from the far end. Right arm over the wicket, balls to new batter. Again steering it down to third man division. Good piece of fielding by the fielder. This time opportunity of run out in the no strikers and that bowler missed it. Oh, this is going to be one more disaster. This is going to be one more disaster for Valalanki Mulki if the bowler will go and collect the throw from the fielder. What a fantastic piece of fielding there by the fielder. Rakesh has been outstanding in that region. Responsible for the run out in the earlier, and one more fantastic piece of fielding. And look at that wicket keeper, what he's doing here. He's just returning the ball quickly to the bowler, but bowler completely missed out that throw. And batsman survives. So 9 for the loss of 5 wicket. Pressure is building up. Not for the fielding team, but for the chasing team. Right arm over wicket bounce. Going for the cut shot. Again, not really convincing cut shot. Ball is just got outside edge of the bat. Again, a good piece of fielding by the fielder. The 10 for the loss of 5 wicket. Rakesh is giving 100% in this. 9 on the board application. 9 for the loss of 5 wicket. 3 overs completed. What a fantastic cricket is progressing here. Absolutely magnificent. Now, just coming back to the equation. 9 deducted from 31. 22 required. And remaining 24 deliveries. So one stage it's going to be a very easy target for the Valalanki Mulki. But once the wickets are started to tumble, then straight away pressure onto the Valalanki Mulki. Now wait and see how Valalanki will going to come out from the trouble. The needed one partnership, just like I mentioned about Deepak Shanai and Tilak Kini, know exactly the condition of this game. Even the under pressure situation, but handling the pressure is so important. Handling the pressure, which is so important here for the batters of Valalanki Mulki. That's all happening. When you are playing your first match, first league match, second league match is quite different. When it's going to be a do or die match, then it's going to be more pressure. And that's why the Valalanki Mulki are batters really struggling against the bowling of Putturu. Pearl City Putturu. Again, sensible. This is really a good sensible batting here from the batter. No, exactly, the fielder is standing well behind, so that pushing the ball right in front of mid-off region, and got the single for that. With the singles covered moves on to 10 on the board for the loss of 5 wicket in the over number 4 in progress. Fantastic cricket is progressing here. Even it's a late night, time is exactly 1:05, but look at the crowd here cheering. Never looks like it's going to be the 1 o'clock. It looks like they're enjoying the game of cricket. Even till the morning, if the match will go into progress, the crowd definitely going to back up, and they will go into cheer their favorite teams. Again, right arm over the wicket, balls, cuts at one, beautiful shot, but not more than a single for that. Off the back foot, he plays it quite nicely down to backward point region for a single. With that single scored moves on to 11 for the loss of 5 wicket. So singles, just talking about, maybe we can compare that single into the raindrops, isn't it? Raindrops may be small in a size and shape, but continuous fall of rains will make river overflow. And just similarly, in cricket, if you picked up a singles each and every ball, then it makes so easy to get the target. 31, which is the target, that means 20 runs required for the victory. Again, nicely done, just up and over. Chase here for the fielder, and before the throw coming from the deep, the batsman turning out for the second, and they made it quite easily. Now, after a long time, I'm just hearing the cheer from the dugout of Valalanki Mulki. They're having a pin drop silent when the wickets are falling. Now straight away, that couple of runs, now cheer little bit started to coming from the dugout of Valalanki Mulki. 13 for the loss of 5 wicket. One of the best match is in progress. Do or die match for both the teams. Both the teams wanted to be in the quarter final. And Deepak Shanai and Tilak Kini taking initiative of taking Valalanki Mulki to victory. Oh, got a ball opportunity.
It's a tough opportunity for the Vijay Nayak to take the cotton ball. And what an outstanding bowling spell so far from Vijay Nayak. He picked up 3 valuable wickets. It's definitely going to be a 4th one here for Vijay Nayak if he's able to take the catch. Of course, it's always going to be a very difficult one when batsman hitting the ball back into the bowler. Reaction time is always going to be a very small, and that's why he couldn't manage to react quickly. So ball just kissing his hand and dropped by Vijay Nayak. Right arm over wicket, drives that one down to a long off region for an easy single. The mid-off fielder almost running towards his back and fields the ball. Now both the batsmen really looks like is comfortable in the middle, just rotating the strike, getting some partnership. Just I mentioned earlier, one small partnership which is enough for Wolalanki Mulki to win this match. And at the same time, just I mentioned earlier, Putturu City, Pearl City, they desperately wanted the wickets in each and every over if they wanted to win the match. 15 for the loss of 5 wickets. Equal battle is on. 16 runs required for the victory. Right arm over the wicket, Vijay bowls. This time batsman off the back foot, played it defensively, not for run. One more over completed. Over number 4 completed. After completion of over number 4, chasing 31 to qualify for the quarterfinals. And looks like the match is evenly poised. 3 overs remaining, 18 balls remaining. They have to get another 16 runs to win this match. And Gopi, just I want to welcome you for this wonderful match, isn't it? Once it looks like when it's 31 going to be a target. 31 going to be a target, Gopi. So looks like it's going to be an easy target for the team Wolalanki Mulki. But outstanding comeback, isn't it? An unbelievable comeback. And all the bowlers done a great job. And because of that team effort from the bowlers and the fielders. Of course, the bowlers bowled well and even fielders supported well. And now it looks like, Gopi, it's going to be anybody's game. And I want to say the match is evenly poised. It's 50-50 for both the teams. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, एक वक्त ऐसा लगा था तब वोलारंग के फाइटर्स मुल्की के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप के लिए 31 रन कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए पर्ल सिटी क्रिकेटर्स पुत्तूर के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर और परिस्थिति को अपने नियंत्रण में करते हुए बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखते हुए इस वक्त 5 विकेटों को उखाड़ चुका है 5 रनों पर। हालांकि 8 रनों पर 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद एक साझेदारी यहाँ पर बन चुकी है इस वक्त तिलक किनी और दीपक शेनाई के बीच में। और जहां तक मैच के विजय का सवाल है, still I must say it's going to be 50-50 at this situation. 16 runs more now they have to score for victory and 3 overs left in their innings. और 5वां ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ। ओवर की पहली गेंद बाएं हाथ ओवर द विकेट, इस बार कट किया बैकफुट पर जाने के बाद खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची एक्स्ट्रा कवर पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ तक सवाल है बचे हुए रन का, तो 15 रन इस वक्त बनाने हैं विजय के लिए और गेंदें बाकी हैं 17। 15 more runs now they have to score for victory in remaining 17 deliveries. देर रात इस वक्त हो चुकी है, लगभग रात के 1:10 यहाँ पर बच चुके हैं, लेकिन संघर्ष की तीव्रता इस देर रात में भी बढ़ती नजर आती हुई दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है और दर्शकों की संख्या में अभी भी बढ़ोतरी इस मैदान पर नजर आती है। कुल मिलाकर एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला जीएसपी प्रीमियर लीग 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई ये गेंद इस बार गेंद को छाला लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई फील्डर गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद को रोकने में इस वक्त असफल हो चुके हैं। हालांकि गेंद फ्लेक्स के साथ वो गिर पड़े हैं, लेकिन मैं समझता हूँ गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेलने में सफल रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 रन बल्लेबाज को मिले। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। एक्चुअली व्हाट वाज हैपन, गेंद को इस वक्त उछाला था हवा में और गेंद का पीछा करते हैं फील्डर गेंद तक पहुंचे, अंतिम क्षण में गेंद को इस वक्त रोकने में सफल और फ्लेक्स के साथ खुद दर्शक के बीच वो गिर पड़े, लेकिन आखिरकार 2 रन अपनी टीम को बचाने में सफल और इन 2 रनों के साथ इस वक्त स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 13 रन और चाहिए। बेहतर स्ट्रोक यहाँ पर दीपक शेनाई के बल्ले से लगता हुआ और अश्वत पई इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ऊपर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ बाएं हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और इस बीच बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए स्टीयर किया इस वक्त शॉर्ट थर्ड की दिशा में, नॉन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज काफी आगे निकला है, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित है और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा जोखिम भरा रन उठाना चाहा था, लेकिन अंतिम क्षण में अपने इरादे को बदलते हुए नॉन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज ने अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया और इस वजह से
सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बेहतर लिंक तो लाइन के साथ इस वक्त अश्वत भाई गेंदबाजी करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद बाएं हाथ ऊपर विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया, इनफील्ड डिक्लेयर करते हुए कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे। गेंद कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर बढ़ते हुए और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करे डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त उछाला था खूबसूरती के साथ इनफील्ड डिक्लेयर करते हुए और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर गेंदें बाकी हैं 14 रन से चाहिए 11। 11 टू गेट फ्रॉम 14 डिलीवरी। स्टिल द मैच इज नाउ इक्वली बैलेंस्ड। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो अश्वत भाई इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए लगभग ठंडी भरा माहौल इस मैदान पर छा चुका है। नमी ड्यू इस वक्त गिरते हुए और यहाँ पर इस ठंडी भरे माहौल में मैच यहाँ पर इस देर रात में आगे बढ़ता हुआ। अश्वत भाई की गेंद इस बार कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल। शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची और इस बीच बल्लेबाज के पास रन लेने का कोई अवसर नहीं और स्कोर रुक चुका है 20 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर अश्वत भाई इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट ओवर द विकेट माफ कीजिए गेंदबाजी इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार। 20 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को रक्षात्मक तरीके से ढकेला, रन के लिए दौड़ पड़े। सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए ओवर थ्रो के रूप में इस वक्त रन मिल सकते हैं 2, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज रन लेना मुनासिब उन्होंने नहीं समझा। हालांकि 1 रन पूरा करने के बाद काफी आगे निकल गए थे तो इस वजह से दूसरा रन के लिए वो मुड़ नहीं सके और आखिरकार 1 रन के साथ संतुष्ट हो चुके। 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। सो 10 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 2 ओवर्स। तो कुछ खास इस ओवर में नहीं बदला सतीश, लेकिन इस वक्त 16 रन बनाने थे, 6 रन कुछ खास तो बना इस ओवर में। और जहां तक सवाल है 2 ओवर में 10 रन चाहिए अब विजय के लिए और इस ओवर में अगर 6 से 7 रन अगर बल्लेबाज पटुरते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा अंतिम ओवर में। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है अश्वत भाई इस ओवर में किफायती गेंदबाजी माफ कीजिए गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी पर उतरने वाले हैं और जो भी उतरेंगे वो इस वक्त इस ओवर में अगर किफायती गेंदबाजी करते हैं तो यहाँ पर इस मैच में अपना तख्ता भारी कर सकता है पर्ल सिटी क्रिकेट स्पोर्ट। फिलहाल 2 ओवर का खेल बाकी और 2 ओवर में मैं समझता हूँ सतीश जहाँ तक विजय की संपूर्णता का सवाल है इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। Exactly, Gopi. It's going to be a 50-50, but sensible batting in the previous over, isn't it? They rotated the striker, getting a couple of runs by placing the ball here and there. That's what's really required in this condition, Gopi. Handling the pressure is so important, not only for the bowler, but even for the batters as well. I think these 2 batters, after the fall of 5 wickets, is a condition not that much of easy. But so far, I think they batted very well, and they played as per the condition required. But job which is not yet over, Gopi. 10 runs which is required in 2 overs. The asking run is exactly 5 runs per over, and just like you're mentioning about, this is going to be a very decider over for both the teams. What is the batting team desperately wanted to rotate the strike, at the same time the fielding team desperately wanted 1 wicket if they wanted to back into this game. Exactly, Satish. There is no doubt about that. बिल्कुल सही बात आपने फरमाया और देखते हैं क्या होता है इस ओवर में। दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार बैकफुट पर गई, गेंद को कट करना चाहा, चूंकि एक्स्ट्रा की फिगर गेंद थी थोड़ी सी उछाल लेते हुए और आखिरकार पंजों पर उछलते हुए गेंद को इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट कट करना चाहा था, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 11 गेंदें बाकी हैं, 10 रन चाहिए विजय के लिए। मैच में कशिश अभी भी बरकरार इस देर रात में। और फिर से एक बार सुनीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और दीपक शड़े इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई और सुनीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंद और 1 रन यहाँ पर मिलेगा। इस मौके पर यहाँ पर वाइड प्रदान करना तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में रन प्रदान करने के बराबर है और यहाँ पर तोहफे के रूप में रन प्रदान कर चुके 1 रन गेंदबाज वाइड के रूप में और अपने अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज दीपक शेना इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। ये गेंद इस बार पटकी हुई गेंद, रक्षात्मक तरीके का खेल, बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन नहीं मिलेंगे। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। 10 balls remaining and 9 more runs now they have to score for victory.
31 the target, 22 already scored for losing 5 wickets. 5 wickets they got kept intact. और जहाँ तक सवाल है बचे हुए 9 रनों का, तो देखते हैं इन बचे हुए 9 रनों को बनाने के लिए किस तरह की रणनीति यहाँ पर अपनाते हैं बल्लेबाज और गेंदबाज। इस वक्त यार सुनीत गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ दाहिना राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर आगे से आगे की ओर दौड़ कर आए, गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने का समय था और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 23 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 8 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 90 डिलीवरीज। स्टिल द मैच इज इन बैलेंस। विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। सुनीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके का खेल, बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन से नहीं मिलेगा। गेंद इस वक्त ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आ रही है, नमी के कारण, ड्यू के कारण, और इस बार रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला था। गेंद हालांकि रुक कर आई थी बल्ले पर कुछ हद तक, आखिरकार स्ट्रोक्स को ठीक तरह से खेल नहीं पाए और सिले में डाउन पर गेंद को स्वयं इस वक्त गेंदबाज फील्ड करते हुए रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक गेंद व्यर्थ, 8 गेंदें बाकी, 8 रन चाहिए विजय के लिए। 8 to get from 80 डिलीवरीज। What a fantastic match is now going on here. दर्शक खामोशी के साथ मैच का आनंद यहाँ पर लेते हुए इस देर रात में, और फिर से एक बार गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सुनीत तिलक के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद कट किया, इस बार गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। कट करना चाहते थे लेकिन इस बार खेला 2 स्ट्रेटर। जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन इस बीच मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। It's 24 for the loss of 5 wicket with just a ball to go in this over and just 7 balls to go in their innings. 7 गेंदें 7 रन चाहिए विजय के लिए, और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, सुनीत की गेंद कट करना चाहा, चूंकि डॉट गेंद, और इसी के साथ एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति यहाँ पर कर चुके हैं सुनीत। इस ओवर में कुल मिलाकर सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किया। और सतीश, हमने जिक्र किया था इस ओवर से प्रारंभ से पहले, अगर किफायती गेंदबाज करते इस ओवर में तो निस्संदेह यहाँ पर पलड़ा भारी हो जाएगा। सो सिर्फ 3 रन इस ओवर में सुनीत ने प्रदान किया, और इस ओवर की बदौलत अब मैं कहूंगा यहाँ पर पलड़ा कुछ हद तक भारी हो चुका है पर्ल सिटी क्रिकेटर्स पुत्तूर का। Absolutely, Gopi. Just I mentioned earlier before the start of this match, this is going to be a decider over for both the teams. And of course, the bowler Sunit bowled a magnificent over, Gopi. That 3 runs, excluding 1 wide balls. He bowled 7 deliveries, but only 2 runs which is came from the bat of the batters. That shows how accuracy that Sunit is bowled in that over. And now, Gopi, it's going to be very interesting, isn't it? 7 runs required from last over, and now wait and see how Deepak Shanai so far at Gopi is played a good innings, but all we can say that can he able to finish the match for his team, and definitely it's going to be a very interesting, Gopi. But 7 to get from 6 ball, Gopi, it's going to be anybody's game, and both the teams has got opportunity to win the match. It's again the match is going to be 50-50 between these 2 teams. Absolutely, Satish. There is no doubt about that. It could be anybody's game at this situation. 7 required of 6 deliveries. और फील्डिंग में यहाँ पर जमावट करते हुए विकेट कीपर और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। ओवर की शुरुआती करते हुए राकेश कामत ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। तिलक की नी इस वक्त सामना करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज की ओर की गेंद इस बार पटकी हुई गेंद, इस गेंद को खेला नॉट स्ट्राइकर, सबसे पर गेंद टकरा चुकी है और ऑटोमेटिक रन आउट यहां पर होता हुआ नॉट स्ट्राइकर हेड पर। गेंदबाज के हाथ पर गेंद आए थे, हाथ से टकराने के बाद सीधे टकरा चुकी है नॉन स्ट्राइकर एंड स्टंप्स पर बेल से डिस्टर्ब होते हुए, और इस ऑटोमेटिक रन आउट की बदौलत यहां पर अब समस्याएं कुछ हद तक ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए किस तरीके से हुआ था, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। और यहां पर हालांकि कैमरा इस वक्त चले गया था मिड ऑफ पर, लेकिन वहां पर सब घटना जो कि घटी थी पिच के बीच, और यहां पर ये विकेट गिर चुका है, और इस विकेट के पतन के साथ अब यहां पर और मुश्किलों में पड़ चुका है इस वक्त। जहां तक सवाल है वल्लंग के फाइटर्स समूल की, तो ये गेंद व्यर्थ रहा, और ये व्यर्थ गेंद, ये डॉट गेंद उनके ऊपर के दबाव को और बढ़ा चुका है सतीश। Absolutely, Gopi. It's definitely going to be an unbelievable and lucky breakthrough, isn't it? It's definitely going to be lucky breakthrough, and absolutely luck is a fundamental ingredient in a success, and luck definitely going to be going in a favor of fielding team. Dan will they be able to grab this luck, Gopi, because they got a big wicket, a subtle batsman back into pavilion, isn't it? He looks very good, scoring some
runs and losing his wicket in this situation. Looks like Volalanke, they are in a more pressure and under pressure. And now last 5 deliveries remaining. They have to get 7 runs to win this match. एग्जैक्टली सतीश, इस वक्त लक इज अ फंडामेंटल, जैसा कि आपने फरमाया। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है, देखना यह है कि यहाँ पर किस्मत उनका साथ देता है या नहीं। ये गेंद बैकफुट पर गए, खूबसूरती के साथ निकाला जरूर, लेकिन फील्डर वहां पर कैच को जी नहीं लपकने में असफल, और बल्लेबाज रन के लिए यहाँ पर दौड़ पड़े। ओवरथ्रो, और ओवरथ्रो के रूप में बल्लेबाज एक रन यहाँ पर पूर्ण करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिलेगा रन। 2 रन यहां पर पूर्ण करते हुए ऑफ द बैकफुट गेंद को स्मैश किया था, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को जीतोड़ कोशिश की लपकने की, लेकिन आखिरकार गेंद को लपक नहीं पाए। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। एक्चुअली व्हाट वाज हैपेंड एट एक्स्ट्रा कवर, इन फैक्ट ही ड्रॉप द कैच एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट डाइविंग टुवर्ड्स हिज फ्रंट साइड एट द लास्ट मोमेंट, और 2 रन यहां पर मिले। अब 26 रन 6 विकेट के नुकसान पर 26 for 6 नाउ, एंड 5 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 4 डिलीवरीज। So 5 required of 4 deliveries, and कल जो कि पहला मैच खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल नंबर 1 A1 C2 के बीच, और वो मैच शुरू होगा सुबह ठीक 9:30 बजे 9:30 AM। Tomorrow will be the first quarter final match of this tournament will be played between A1 versus C2। और इस बार ऑन साइड पर उछाला, खूबसूरती के साथ मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर, गेंद को रोकने में सफल। 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा। The tide is now slowly turning, and now it's 28 for 6, 3 required of 3 deliveries. What a fantastic match is now progressing here. One shot का इशारा, तो इस बीच सिर्फ 1 रन मिलेगा। अब 3 गेंदें बाकी और 4 रन चाहिए। तो कल सुबह पहला मैच खेला जाएगा, क्वार्टर फाइनल मैच सुबह 9:30 बजे। रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे। A1 और C2 के टीमों के सर्व सदस्य कृपया ध्यान दें। रिपोर्टिंग टाइम इज exactly 9 AM for the players of A1 and C2. The quarter final match number 1 will be played between these 2 teams on tomorrow morning exactly at 9:30 AM. So that's schedule of the tomorrow morning's first match, and let's straight away coming back to this match. The equal battle is now continuing here. 4 required, 3 balls remaining. It could be anybody's game at this situation. The pressure is now building up on both sides. और इस बीच गेंदबाज राकेश कामत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए आदित्य सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त उछालना चाहा, स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉइंट पर गेंद पहुंच चुकी है। विकेट यहां पर गिर चुका है, और इसी के साथ इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा यहां पर पर्ल सिटी, माफ कीजिए, वोलालंके फाइटर्स मुल्की के लिए उम्मीदें यहां पर काफी हद तक कम हो चुकी हैं। ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳಲಂಕೆ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ the interesting stage of the match is now continuing here. 4 required, 2 balls remaining, and still I must say it could be anybody's game at this situation. The pressure is now building up on both sides. और गेंदबाज इस वक्त तैयार राकेश कामत, गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये this is a good ball. This is another run out, and the tide is now slowly turned. Completely turned, in fact, I think so. 4 required of last ball. और सतीश यहाँ पर अब ऐसा कहना पड़ेगा चौका या छक्का ही अब वोलालंके ಫೈಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿಕ ಭವಿಷ್ಯ यहाँ पर बदल सकता है. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಒಳಗಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So last ball and 4 runs. और सतीश यहाँ पर
एक बेहतरीन कमबैक अंतिम चंद गेंदों में यहाँ पर कर चुके हैं गेंदबाज. Absolutely, Gopi. The last ball, 4 runs required for the victory, but Rakesh Kamath handling the pressure. The last 2 overs definitely, Gopi, and Pearl City really grabbing the opportunity very well, isn't it? Because they knows that the batsmen of Valalanki, they're under pressure, and they're just using that pressure situation. They're using the mind very well, and I think the bowler did a great job. But job which is not yet over, Gopi, because we will get so many examples. The match which is finished in the last ball, even 4 runs to get for the victory. The last ball, we will get a witness of one of the perfect example. I think Miyanda the hitting boundary against Chetan Sharma. Valalanki definitely is under pressure because they are the last year winners, Gopi. They are defending champion, and the defending champion doesn't want to lose this match. Exactly, Satish. देखते हैं डिफेंडिंग चैंपियन है वोलालंके मुल्क की और यहाँ पर इस मैच को बचा पाते हैं या नहीं देखना पड़ेगा. चौके की दरकार अंतिम गेंद पर 4 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट डिलीवरी. Here we go. इस वक्त गेंदबाज तैयार. दर्शकों की दिल की धड़कनें यहाँ पर तेज होती हुई. क्या होगा इस गेंद के बाद पता चलेगा. अंतिम गेंद चाहिए 4 रन और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट राकेश कामत. Here we go. Last ball of the match is now coming up. Again, चूके. That's it. That's it. Pearl City Cricketers Puttur are won the match thrillingly by 3 runs against Valalanke Fighters Molki. The defending champions face a defeat in this match. They faced defeat in this match against Pearl City Cricketers Puttur. And DJ, stop. And this is an absolutely fantastic victory for Pearl City Cricketers Puttur against Valalanke Fighters Molki. Kyo Satish? Absolutely unbelievable victory, Gopi. Everyone thought that it's all over. It's going to be all over for Pearl City Puttur when they got only 30 runs on the board. Looks like Valalanke Mulki, they got a tremendous batting department, Gopi. But one of the big drawback in this particular match is, Gopi, the wicket of Sharat Prabhu, one of the key player, back into pavilion. Then look at the way that the bowlers bounce back. Once they got the wicket of Sharat Prabhu, then they are just dreaming about the victory, and dreams which comes through only because of great effort by all the players of Pearl City Puttur. They deserve this victory, and congratulations for the winners. I request the last match of tonight, Udupi Blasters will take over GSB Royal Kodial, and because of that I request all the players of the last match of tonight to please start the match immediately. ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ GSB ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ GSB ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪ್ಲೀಸ್. Now it's a time to announce the Man of the Match award of a thrilling finish. A thrilling finish, absolutely one of the best match. Nail-biting finish, isn't it? And at last, the celebration begins in the dugout of Pearl City Puttur, defeating the defending champion Valalanke Mulki by a thriller, absolutely thriller. And congratulations for the winner. Now time to announce the man of the match, the man who's turned the match around with a fantastic bowling performance. Absolutely the one who's really dismantling the batting department of Valalanke Mulki. It's none other than Vijay Nayak is the man of the match for his wonderful bowling performance. 3 wickets. 2 overs, no made and 9 runs, and picked up 3 valuable wickets. So that I request Vijay Nayak to please come and collect your man of the match award from chief guest. Now time for DJ. Thank you. Yo 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 re, etana sodi echana. Yo 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 re, ulasu ottu meltan. Yo 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 re, etana sodi echana. Yo 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 re, ulasu parivattan. Yo 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 re, cricket kela together. Yo 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 re, kulara amka manglu. Yo 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 re, enjoy Korea together. Yo 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 re, reserve GPL together. So tomorrow will be the first quarterfinal match will be played between Kodiak Super Kings versus Pearl City Cricketers Puttur, and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match at tomorrow exactly at 9 AM.
The reporting time for the first quarter-final match teams. Kodiak Super Kings versus Pearl City Cricketers Puttur. All the players of these two teams please to be reported on tomorrow morning exactly at 9 a.m. The match will be resume. Exactly at 9:30 a.m. on tomorrow morning. So this is the quarter-final match number 1 of this competition, which will be played on tomorrow morning exactly at 9:30 a.m. Reporting time for all the players is exactly 9 a.m. Right, the last match of tonight is now going to start. So extra player of GSB Royals Kodial please to be reported here to tell the players name. ಅಲ್ಲಿ GSB Royals Kodial ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Right, the last match of tonight is now going to start between Udupi Blasters versus GSB Royals Kodial. And in fact, surprisingly, GSB Royals Kodial, after one toss, they elected to bat first. Under this condition, they are going to bat first, and the bowlers of Kodial Blasters starts the proceedings from the commentator box. And then first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार कौशिक एस, जबकि राधा कृष्णा सामना करते हुए मैच की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे और वेट आउट फील्ड के कारण गेंद जब तक अपनी रफ्तार को खोने के बाद फील्ड और डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. और इन 2 रनों के साथ 1 शॉट का इशारा यहाँ पर हो चुका है. बिना क्रीज छुए हुए दूसरे रन के लिए इस वक्त दौड़ पड़े और इस बीच एकमात्र रन उनके खाते में जुड़ेगा और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. इस वक्त जीएसबी रॉयल्स कोडियाल के लिए और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार. ये गेंद absolutely fantastic one this time. Much straighter line, get some extra bounce at the last moment and went into the hands of wicketkeeper after baiting the batsman, and there is no possibility of any run. और एक बेहतर गेंदबाजी इस वक्त करते हुए गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए तो इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद बॉल्ड आउट. गेंद टॉप स्टंप पर जाकर टकरा चुकी है और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है जीएसबी रॉयल्स कोडियाल की ओर से. The ball missing. The ball came just outside the off stump at the last moment, but it nipped back a little bit at the last moment. और जहां तक देखिए किस तरीके से बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ निप बैक नहीं हुई थी गेंद और सीधी रफ्तार के साथ गेंद को फेंकी थी ऑफ स्टंप को केंद्रीकृत करते हुए और गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद स्टंप से ऊपर जा टकराई. गिल्लियां बेल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है 0 पर जीएसबी रॉयल्स कोडियाल का. तो अंतिम लीग मैच यहां पर खेला जाता हुआ. द लास्ट लीग मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग yet just started in fact just short while ago between Udupi Blasters versus GSB Royals Kodial. और
नए बल्लेबाज नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल। सत्यजीत पी इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और कौशिक यस इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथों पर तो विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पावर प्ले इस वक्त जारी। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ना चाहा, स्टंप्स को कवर करने के बाद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड किस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ते हैं, पटकी हुई गेंद हल्के से गेंद को फ्लिक कर दिया पंजों पर उछलते हुए अंतिम क्षण में गेंदबाजी फर्स्ट शॉट्स को लेकर दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। देर रात इस वक्त हो चुकी है, लगभग रात के 1:40 यहाँ पर बच चुके हैं और आज का अंतिम मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है और उडुपी ब्लास्टर्स और जीएसबी रॉयल्स कोडियाल्स के बीच ये मैच इस वक्त शुरू हो चुका है। चंद मिनट पहले दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, लेग स्टंप से कुछ हद तक बाहर की ओर निकलते हुए और आखिरकार बल्लेबाज के पास समय था। इसका बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, नो सिग्नल केम फ्रॉम अंपायर और 1 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। कौशिक एस की ओवर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार उछाला खूबसूरती के साथ लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, जी नहीं गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी तोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की लेकिन आखिरकार गेंद उनके आगे यहाँ पर टिप्पा खाते हुए। क्रिकेट में एक स्लोगन है कैचेस विन मैचेस और यहाँ पर कैच पकड़ने की जी तोड़ कोशिश यहाँ पर की थी जरूर लेकिन आखिरकार गेंद तक पहुंचने में असफल और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। दिस इन द रिप्ले किस तरीके से हुआ था देखिए, जी तोड़ कोशिश की थी जरूर लेकिन आखिरकार गेंद को लपक नहीं पाए और 1 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 5 runs scored by the batsmen of GSB Royals Kodial after being won the toss and elected to bat first. They made a mixed start. In fact, they managed to score 5 runs on the board for losing 1 wicket after completion of first over. 7 overs per side to be played. And still in overall calculation, it's going to be 6 overs left in that innings. 6 over का खेल यहाँ पर बाकी और इस बीच गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए नई ओवर की पहली गेंद लेकर दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ उनकी पारी में और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए लगभग सन्नाटे भरा माहौल मैदान पर छा चुका है, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं। और आज का 12वां मैच कुल मिलाकर इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का 24वां मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है। दर्शक खामोशी के साथ इस वक्त मैच का मुआयना करते हुए, हालांकि दर्शकों की संख्या में कुछ हद तक कमी जरूर हो चुकी है, कुछ दर्शक घर वापस जरूर लौट चुके हैं लेकिन दर्शकों का अस्तित्व अभी भी मैदान पर नजर आता हुआ और काफी मात्रा में दर्शक इस मैदान के चारों ओर इस वक्त मौजूद मैच का मुआयना करते हुए। बाएं हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद पटकी हुई गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, चूंकि लगभग बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है जीएसबी रॉयल्स कोडियाल का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतरीन साझेदारी यानी पार्टनरशिप, एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होने के लिए। और गेंदबाज कार्तिक नायक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। सत्यजीत पी सामना करते हुए ये गेंद बैकफुट पर गए, कट करना चाहा लेकिन गेंद की लाइन को भापते हुए गेंद को इस वक्त छोड़ दिया, बल्ले को हवा में उठाते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका, 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त कार्तिक नायक का इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सत्यजीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है और अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार पटकी हुई गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, कंसेक्यूटिव वाइड्स फॉर द बॉलर और वाइड की रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट in the over number 2nd in progress. Still 7 balls gone in their innings and 35 more deliveries have to come and still they got 9 wickets kept intact and let's see how many runs they are making in this remaining 35 deliveries with the help of remaining 9 wickets। और इस बीच गेंदबाज कार्तिक नायक को टीम के अन्य खिलाड़ी कुछ समझाते हुए कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए और अपनी अगली गेंद लेकर कार्तिक
नायक इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार दैट्स बेटर, इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट कवर पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और ऐसा कहना पड़ेगा जीएसपी रॉयल्स कोडियाल के बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर जमने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए बाएं हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला इस वक्त बेहतरीन स्टॉप वहां पर शॉट्स को लेकर दिशा में गेंद को रोका गया हाफ स्टॉप और दोबारा वो पीछे की ओर जाकर गेंद को यहाँ पर फील्ड करते हुए और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तुरंत इस वक्त सिंगल्स के रूप में बनते हुए और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाजी इस वक्त बाएं हाथों पर द विकेट फुल टॉस पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर गेंद जाती हुई फील्डर गेंद के नीचे आते हुए अंतिम क्षण में इस कैच को लपकने में सफल और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। आमतौर पर इस मैदान का स्वभाव ऐसा है कि रात होने के बाद हवा का रुख काफी हद तक कम हो जाता है और यहाँ पर स्ट्रोक से खेला था जरूर लेकिन कोई हवा नहीं और गेंद अपने रफ्तार को खोते हुए सीधे पहुंची, काफी उम्दा काफी ऊंचा उछाला था, सीधे पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को फील्डर ने लपका और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। दे आर लुकिंग इन ट्रबल नाउ फॉर जीएसपी रॉयल्स कोडियाल 9 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. We're just waiting for the number 4 batsman of GSP Royals Kodial is now coming out to the middle with lots of responsibility और वो इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज के रूप में और मैदान के सीमा रेखा के पास जो रंग बिरंगी झंडे इस वक्त गाड़े गए हैं वो झंडे उन झंडों में से कुछ झंडे इस वक्त लहराते हुए और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख जो है कुछ हद तक काफी हद तक कहना पड़ेगा धीमा इस मैदान पर मैदान की दाईं से बाईं और हवा इस वक्त गुजरती हुई नेत्रावती तट पर स्थिर ये मैदान सह्याद्री का हरा भरा मैदान कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह है और यहाँ पर एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला मशहूर श्रृंखला की शानदार प्रगति होती हुई जीएसपी प्रीमियर लीग 2023 जीपीएल 2023 के अंतर्गत इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके इससे पहले डीप बैकवर्ड स्क्वायर फील्डर अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए जब तक गेंद को फील्ड करे और थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। रन इस वक्त चाहिए बल्लेबाजों को वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए बल्लेबाज रन बनाने का हर तरीके का प्रयास हर तरीके की कोशिश यहाँ पर करते हुए कार्तिक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रविकांत के लिए बाएं हाथों पर द विकेट इस ओवर में अंतिम बार यह गेंद जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट बट द बॉल kept low at the last moment and went into the hands of wicket keeper and dot ball to end the over 2 gone and it's 2 after 2 it's 11 for the loss of 2 wickets scored by GSP Royal Kodial with a run rate of exactly 5.5 runs per over। तो 5 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 5 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। जहाँ तक सवाल है एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का तो मैं और मेरे काबिल दोस्त सतीश इससे पहले कुछ बार फरमा चुके कम से कम 40 के आंकड़े तक यहाँ पर पहुंचना होगा इन हालातों में क्योंकि मैदान इस वक्त काफ़ी हद तक गीली हो चुकी है और इस गीली फील्ड में अगर आपको ज़मीन के सारे स्ट्रोक्स खेलना है तो काफ़ी ज़ोरदार स्ट्रोक्स खेलने होंगे और यहाँ पर गेंद ज़्यादा हद तक ज़मीन पर खुलकर ट्रैवल नहीं कर रही है तो यहाँ पर इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की ज़रूरत है और उसे इस वक्त जीएसपी रॉयल्स कोडियाल के बल्लेबाजों को अपनानी है और देखना यह है कि बचे हुए 5 ओवर में वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं एक बेहतर स्कोर खड़ा करने के लिए। तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ द बॉलर स्टार्ट्स द प्रोसीडिंग्स डॉक्टर विनोद नायक इन फैक्ट द बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक और मॉनिटर पर डॉक्टर एन इस वक्त डाला गया इस वक्त इस वजह से अंदाजा नहीं लगाया गया तो डॉक्टर विनोद नायक एक बेहतर गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं और इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर विनोद नायक और काफ़ी अनुभव है उनके पास और नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और डॉक्टर विनोद नायक अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार विजय कामत सामना इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ
ऊपर द विकेट, पहली गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर, गेंद को स्विंग करना चाहा, गेंद इस वक्त जा चुकी है फाइन लेग की दिशा में, विकेट कीपर को बीट करते हुए और पैर से लगकर गेंद गई थी और आखिरकार लेग बाई के रूप में ये रन उनके खाते में जुड़ चुका है। एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। इन फैक्ट फॉर GSB रॉयल्स कोडियाल और डॉक्टर विनोद नायक अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद हल्के से गेंद को खेलना चाहा, परिवर्तन के तौर पर लेग कटर गेंद, धीमी लेग कटर गेंद, रन लेने की हड़बड़ाहट दिखाए, विकेट कीपर ने निशाना दागा स्टंप्सों पर और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। रविकांत की पारी समाप्त। धीमी लेग कटर गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए और गेंद को बिना देखे रन लेने की हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाई। देखिए किस तरीके से हुआ था, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। ऑन साइड पर गेंद गई और गेंद को बिना देखे रन लेने की हड़बड़ाहट दिखाई, फॉरवर्ड शॉट लेग पर तेजी के साथ विकेट कीपर लपके और गेंद पर निशाना और स्टंप्सों पर निशाना दागा और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। It's 12 for the loss of 3 wicket. They are looking in trouble now. GSB Royals Kodial, after being won the toss and elected to bat first against Udupi Blasters in the last league match of the day 2 of GPL Utsav 2023. They are still searching for the right track. Number 5 batsman Sandeep Kamath is now comes out to the middle for GSB Royals Kodial और वो इस वक्त सामना करेंगे डॉक्टर विनोद नायक की ओवर की अगली गेंद का। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करने के बाद गेंदबाज डॉक्टर विनोद नायक का गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अंपायर से इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए नियमों के बारे में और बातचीत इस वक्त जारी है और कुछ बातचीत करने के बाद इस वक्त तैयार डॉक्टर विनोद नायक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर नए बल्लेबाज संदीप कामत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला, गेंद हवे में जरूर लेकिन गेंदबाज की पहुंच से बाहर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मिड ऑन पर एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके और एक रन के साथ कुल स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस फॉर GSB रॉयल्स कोडियाल और डॉक्टर विनोद नायक का इस बार गेंदबाजी करेंगे विजय कामत को दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता, थोड़े से सफल होते हुए लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली एंड द बॉल केम क्वाइट लेटली एंड बिकॉज ऑफ दैट नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैट एंड बॉल क्लीनली एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। और डॉक्टर विनोद नायक की ओर की अगली गेंद, ये गेंद फुल लेंथ गेंद थी, गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा चूंकि अंतिम क्षण में और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए और आखिरकार इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए डॉक्टर विनोद नायक का सिर्फ एक रन अब तक 2 रन अब तक प्रदान कर चुके हैं पहले 5 गेंदों में और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद टॉप एज पर टकराने के बाद गेंदबाज डॉक्टर विनोद नायक के सिर के ऊपर से निकलती हुई, हालांकि अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद पर लपकना चाहता लेकिन गेंद आखिरकार उनके पहुंच से बाहर और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और इस 1 रन के साथ संदीप कामत का खाता यहाँ पर खुल चुका है। He keeps the strike और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर 14 for the loss of 3 wicket after completion of 3 overs for GSB Royal Kodial. The batsmen of GSB Royals Kodial still searching for the right track. देखते हैं बचे हुए 4 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आज दूसरी अंतिम बार फॉर द सेकंड लास्ट टाइम ऑफ टुनाइट मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में सतीश को आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. And GSB Royals searching for the right track, but a little bit struggling in the middle. And 14 for the loss of 3 wicket. Nothing much wrong with the run rate, but they lost 3 valuable wickets back into pavilion. And Kaushik is a bowler, is brought into attack to bowl the 4th over. Nicely pulls that one down to deep. Wideish long on region. They're running hard, looking for the second. Comes the throw from the deep and direct hit and comes into play now. Arish Padil.
umpire, the field umpire Arish Padil, asking for the third umpire to get the result. And it's all happening when the field, whenever there is a direct hit, and the field umpire will go into refer for the third umpire, because there's always going to be a touch and go, and it's going to be a very close one, isn't it? An umpire doesn't want to take a risk of taking a decision immediately, so that they are asking for the third umpire to get the decision and wait and see how the decision is going to be, whether it's going to be batsman safe or not. It's a 14 for the loss of 3 wicket, and if the runs is going to complete, it's going to be 16 for the loss of 3 wicket. If it is a wickets falling in the form of run out, then it's going to be 15 for the loss of 4 wicket. And all we can see that the third umpire, what could be the decision here. And meanwhile, it's the last match of the second day night of this cricket tournament, and it looks like it's going to be a wonderful condition here. It looks like even spectators not really leaving their places. Even it's a late night, exactly 2 o'clock of the next day. It's not a Saturday. It's absolutely, we have started Sunday and at 2 o'clock and the late night, and just waiting for the umpire decision now. Waiting for the third umpire decision now. It's a do-or-die match for both the teams. Just have a look at that one in a replay in the big screen. The batter running hard. And here is a decision coming from the third umpire. The batsman is safe. Absolutely, batsman is safe, because when the ball hits the stumps, the batsman dragging his bat right into the crease, inside the crease, and that's why they got a couple of runs. With that couple of runs, Auburn was on to 16 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Tomorrow, exactly morning 9:30 a.m., the first quarter final will going to start of this prestigious GPL 2023. Next ball right over the wicket. Batsman going for the across the line of the delivery, but missing it completely. This time Kaushik, seeing the intention of the batsman that is going for the on drive, he ball a little bit away from the bat of the right-hander batter, and he missed it completely. This time going for the full shot, ball is there, and again the ball landed safely after one bounce collected by the extra cover fielder, short extra cover fielder, and batsman again now very safe here. So with that, single score was on to 17 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress, and both the teams really battling hard for the victory, because they know exactly the victory here takes them into the next round of this prestigious cricket tournament. Again they're running hard, but I think that for the team Udupi Blasters, more than Udupi Blasters, GSP Royals, Kodial, they have to win this match with a big margin as far as the condition and run rate is concerned. I think the big margin victory is badly required for the team GSP Royals, Kodial. That's why they're trying hard to get some big score. And absolutely it's a do or die for both the teams. I think for the Royals, I think the victory will be enough for them to qualify for the next round. But for the Udupi Blasters, I think it's a victory which is enough for them to qualify for the next round. But for the GSP, they needed a victory with a big margin. This is a big margin, always going to be a key for GSP Royals to win this match for qualify for the next round. Now, one more over is completed, and looks like it's going to be a very, very slow progressing year for team GSP Royals against Udupi Blasters. 18 for the loss of 3 wicket after getting a very good start in the first over and the first 2 overs, but it's going to be a slow start. It's quite understandable. Once the wickets are falling, then it's very difficult to get the run rate. Acceleration of run rate becomes very difficult, especially under this condition. And the morning and night condition is a total different condition, isn't it? The morning we are witnessing some big shots, boundaries and sixes coming very freely from the bat of the batters. And once the lights are on, then all in sudden the pitch which is converting into bowler's paradise rather than the batter's paradise. And so far it's going to be fun, wonderful cricket here in this most beautiful Sahyadri College Cricket Ground here in Adyar, under the beautiful nature. We are watching this cricket tournament. Right arm over the wicket balls. Beautifully balled right on the block out. Nicely turns that one on to mid-wicket region. The running are looking for the second. In comes the throw from the David. Chance of run out in the non-strikers, and that is gone. This is what the problem here for team GSP Royals Kodials, that they need to win this match with a big margin, so that they are trying for the runs, quick runs, and but by doing that, I think the wickets are falling
And one more wicket is back into pavilion of GSP Royals. Kodial now looks like they are in a little bit under pressure. So one more wicket is fallen here, and the new batsman walking towards the middle. So Dr. Vinod Nayak brought in the attack to bowl this second over. Of course, he's bowling in the second over. The first ball which run out taken place. Dr. Vinod Nayak, of course, one of the very popular players, especially when coming to the GPL trophy. He's definitely got a very good record in the GPL. Right, over the wicket, going for the big shot, chance of wicket here, and one more wicket is back into pavilion. Vinod Nayak strikes, just like I mentioned earlier. Every time when he's in action, he's got ability of doing something for his team. He desperately wanted to do something from his bowling, and again he picking up wickets for his team. And now looks like Royal are looking in a trouble. Absolutely, GSP Royals, Kodial deep in trouble. But Udupi Blasters really blasting some wickets from the bowling of their opposition. It's a 19 for the loss of 5 wickets. Over number 5 in progress as the new batsman is slowly walking towards the middle for GSP Royals. GSP Royals, just I mentioned earlier that after winning the toss, they elected to bat first. Only the reason that they wanted to get some big score, and so that they can restrict the opposition and try to win the match with the big margin. But everything is going in favor of Udupi Blasters. But you can't underestimate the cricket, isn't it? Just seeing the result of the previous match, no one can underestimate cricket, isn't it? And that's the perfect example of how the cricket is unpredictable. It's absolutely unpredictable game. And 19 for the loss of 5 wicket in the over number 5 in progress. Right arm over the wicket. Batsman nicely steers that one down to third man revision for a walkable single. With that single, score numbers on to 20 for the loss of 5 wicket in the over number 5 in progress. Quite a disappointment. Absolutely one of the shocking news in this GPL season 7 2023 is that the defending champion Walalanki Mulki, they are out of the tournament, and that is a big news. In this day number 2 of this cricket tournament. Again, nicely bowled. Ball is in there for a while, but ball is not really got any contact with the bat, but just a fad which has been involved, and there is no chance at all for any run at all. It's a 20 for the loss of 5 wicket, and the Pearl City cricketers Puttur really looking very happy faces. We can see that after they're defeating the opposition team, defending champion Walalanki Mulki. They are through to the quarter-final of this cricket tournament. Again, nicely driven, and the ball went straight to the hands of backup point fielder, but ample time for the batter to complete the single. With that single, score numbers on to 21 for the loss of 5 wicket. This is the last match we are watching here under some very good crowd, and still there was a very good crowd enjoying the game of cricket. And again, not only live here in this cricket ground, but some many number of viewers watching this live telecast of this cricket tournament, and of course broadcast partner Youth of BSB Worldwide having such a fantastic live telecast of this cricket tournament. There also, even it's a late night, some very good numbers of viewers enjoying the game of cricket. One more over completed of completion of over number 5. GSP Royals Kodial really struggling in the middle. It's 21 for the loss of 5 wicket, and last 2 overs remaining. 12 balls remaining in their innings, excluding wides and no balls. And we will see how well they will go to get some score here. And really, Royals, just like what name they got, Royals, they need to bounce back as a Royals. And wait and see how Udupi Blasters will go into restrict the opposition. So far, very slow cricket is we are witnessing here. Quite understandable. It's not so easy condition for the batter, but at the same time, some different tactics
need to be implemented from the batters, isn't it? When you're looks like it's going to be difficult condition, it's very difficult to hit the big shots. But just we can make that sure that you can get runs by picking up the single, by placing the ball here and there, and rotation of strike is not so important. But this is lacking here. Everyone is looking for the big shot. Again, the ball is in the air for a while, but luckily that ball is not landed to the hands of the fielder. Of course, ball landed into the hands of the fielder, but not in the pull. But one bounce collected by the fielder, so that batsman completed a single. 22 for the loss of 5 wickets in the over number 6 in progress. Bowler Sanket from the far end. Bounce. This time batsman slashes it hard, but protection has been given in the deep backward point position, cover point position in fact, and again they got an opportunity to complete the single. With that single, score numbers on to 23 for the loss of 5 wickets in the over number 6 in progress. Sanket back to his bowling mark, right arm over the wicket, went for the reverse sweep. This time it's get over the top of the infield, ball running down to deep third man region. Fielder behind the ball just winning the race against the fieldsman. Just looks like it's a cat chasing a mouse, and just like the fielder chasing the ball, but at last the ball just winning the race against the fielder. The much required boundary coming here for GSB Royals, and after a long break they're getting the boundary here, and a little bit opportunity for the supporters of GSB Royals to cheer that boundary, and 27 for the loss of 5 wicket. And right time Santosh got a boundary by playing a switch it. And Sanket once again back to his bowling mark. Now he's keeping one fielder in the deep in the third man division after that switch it. This time again, red bit across the line of the red. He wanted to hit the ball, chance of run out, but ball misses the stumps, and umpire not missing the opportunity to signal the wide. 1+1, 2 more to the total. Now very important runs coming in this over for GSP Royals. 29 for the loss of 5 wicket in the over number 6 in progress. Might be the wetness in the ball. Very difficult for the bowler to grip the ball. Item over wicket balls. This time absolutely bad judgment. Absolutely bad judgment. He's really shuffled across the line of the delivery too much, isn't it? The ball just missing his leg stump. Luckily that ball is just going over the top of the stumps, and he's just questioning over the umpire Arish Patil. Maybe he's giving wide, but Arish Patil is so experienced umpire. You know exactly that ball is just within the reach of the batsman. This time ball just hitting the leg of the batter after getting a boundary and from Santosh B. But Deepak Shana is just missing some deliveries of very important 6th over. He need not play the dotted deliveries because GSP Royals, just I mentioned, they needed a huge victory if they wanted to win the match. This time he hit that one pretty hardly off the back foot, and just a single for Deepak Shanai. With that single, he will going to retain the strike for the next over. After completion of over number 6, it's 30 for the loss of 5 wicket. GSP Royals against Udupi Blasters. Kodial Sports Association, Mangalore, presenting this GSP Premier League 2023. And in this most beautiful Sahyadri cricket ground here in Adyar, Mangalore, one of the most beautiful cricket ground. And here in Mangalore, under the beauty of nature, the greeneries, and more than anything else, one of the most beautiful view of this cricket ground is that the Netravati River just passing behind this cricket ground, and it looks like it's going to be a little bit hot, not hot, it's a cold condition there because of the dew factor in the night, and that probably is encouragement for the bowlers rather than the batters finding a little bit hard to get big shots because the ball a little bit wet, very difficult to get the timing behind the stroke. 30 for the loss of 5 wicket. Last over going to start from the commentary box, and Prasad brought in the attack. This time starts with the dotted delivery. Once again, problem continues here from Deepak Shanai. He scored only 3 runs for out of 7 deliveries. That means he faced 4 dotted deliveries and he wasted 4 deliveries. Again, this is sensible. This is what you needed in the early stage, isn't it? After playing dot balls, quickly realizing
Deepak Shanai that need not to play the dotted delivery, saying that his partner Santosh has played very well so far, scored 6 runs, and his job is to give the strike as much as possible to Santosh. Now Santosh back on